Good morning, everybody. The 10,085th meeting of the Security Council is called to an order. As this is the first formal meeting of the Security Council this year, I should like to extend my warm wishes on the new year to all members of the Security Council, the United Nations, and the Secretariat. In presiding over this first formal meeting of the Council in 2026, I'm happy to welcome the new members, Bahrain, Colombia, Democratic Republic of Congo, Latvia, and Liberia. We look forward to their participation in the work of the Council. Their experience and wisdom will be invaluable assistance in the discharge of the Council's responsibility. I shall also take this opportunity to express the Council's gratitude to the outgoing members, namely Algeria, Guyana, Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia, for their important contributions to the work of the Council during their terms. I shall also like to take this opportunity to pay tribute on behalf of the Council to His Excellency, Mr. Samuel Zobogar, a permanent representative of Slovenia, for his service as the President of the Council for the month of December. I'm sure I speak for all members of the Council in expressing deep appreciation to Ambassador Zobogar and his team for this great diplomatic skill with which they conducted the Council's business last month. The provisional agenda of this meeting is the threat to international peace and security. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Argentina, Brazil, Chile, Cuba, Eritrea, Islamic Republic of Iran, Mexico, Nicaragua, Paraguay, South Africa, Spain, Trinidad and Tobago, Uganda, and the Bolivarian Republic of Venezuela to participate in this meeting. It's so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of the Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Rosemary DiCarlo, the Under-Secretary General for the Political and Peace-Building Affairs. Mr. Jeffrey Sachs, President of UN Sustainable Development Solutions Network and Director of Center for Sustainable Development at Columbia University, and Ms. Mercedes de Freitas, Founder and Executive Director of Transparencia Venezuela. It's so decided. Security Council will now begin its consideration for item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you, Mr. President. Today, I'm going to deliver a statement from Secretary General António Guterres, who is not able to be here this morning. Mr. President, members of the Security Council, we meet at a grave time following the 3 January United States military action in the Bolivarian Republic of Venezuela. The broad outlines of the events of Saturday have been widely reported. Early that day, U.S. forces were active across Caracas and in the northern states of Miranda, Aragua, and La Guaira. The extent of casualties resulting from these actions remains undetermined. In a statement on social media on Saturday, President Donald Trump announced the conduct of a, I quote, large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, end quote. During a press conference on Saturday, President Trump stated, and I quote again, "We are going to run the country until such time that we can do a safe, proper, and judicious transition," end quote.
The government of Venezuela has characterized the United States' action as a military aggression carried out in civilian and military areas and as a flagrant violation of the Charter, posing a threat to international and regional peace and security. As we speak, President Maduro is being held in New York, accused by U.S. authorities, along with his wife, Celia Flores, of serious criminal offenses. What is less certain is the immediate future of Venezuela. I am deeply concerned about the possible intensification of the instability in the country, the potential impact on the region, and the precedent it may set for how relations between and among states are conducted. Mr. President, the situation in Venezuela has been a matter of regional and international concern for many years now. Attention on the country only grew following the contested presidential elections in July 2024. The panel of electoral experts I appointed at the Venezuelan government's request to accompany the elections highlighted serious issues. We have consistently called for the full transparency and the complete publication of the results of the elections. As reported to the Council on 23 December, the Office of the High Commissioner for Human Rights has cataloged serious violations. On 3 January, Venezuelan interim President Delcy Rodriguez invoked an emergency decree throughout the national territory, extending additional security powers to the government. Mr. President, the latest developments follow a period of heightened tensions beginning in mid-August, as discussed in this Council on 2 previous occasions. I have consistently stressed the imperative of full respect by all for international law, including the Charter of the United Nations, which provides the foundation for the maintenance of international peace and security. I remain deeply concerned that rules of international law have not been respected with regard to the 3 January military action. The Charter enshrines the prohibition of the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The maintenance of international peace and security depends on the continued commitment of all member states to adhere to all the provisions of the Charter. Mr. President, Venezuela has experienced decades of internal instability and social and economic turmoil. Democracy has been undermined. Millions of its people have fled the country. The situation is critical, but it is still possible to prevent a wider and more destructive conflagration. I call on all Venezuelan actors to engage in an inclusive, democratic dialogue in which all sectors of society can determine their future. This entails the full respect of human rights, the rule of law, and the sovereign will of the Venezuelan people. I also urge Venezuela's neighbors and the international community more broadly to act in a spirit of solidarity and in adherence to the principles, laws, and rules erected to promote peaceful coexistence. I welcome and am ready to support all efforts aimed at assisting Venezuelans in finding a peaceful way forward. Mr. President, Excellencies, in situations as confused as complex as the one we now face, it is important to stick to principles. Respect for the UN Charter and all other applicable legal frameworks to safeguard peace and security. Respect for the principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity of states. The prohibition of the threat or use of force. The power of the law must prevail. International law contains tools to address issues such as illicit traffic in narcotics, disputes about resources, and human rights concerns. This is the route we need to take. Thank you, Mr. President. I thank Ms. DiCarlo for her briefings. I now give the floor to Mr. Jeffrey Sachs. Mr. President, distinguished members of the Security Council, the issue before the Council today is not the character of the government of Venezuela.
The issue is whether any member state, by force, coercion, or economic strangulation, has the right to determine Venezuela's political future or to exercise control over its affairs. This question goes directly to Article 2, Section 4 of the United Nations Charter, which prohibits the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The Council must decide whether that prohibition is to be upheld or abandoned. Abandoning it would carry consequences of the gravest kind. Let me offer some background. Since 1947, the United States foreign policy has repeatedly employed force, covert action, and political manipulation to bring about regime change in other countries. This is a matter of carefully documented historical record. In her book, Covert Regime Change, political scientist Lindsay O'Rourke documents 70 attempted U.S. regime change operations between 1947 and 1989 alone. These practices did not end with the Cold War. Since 1989, major United States regime change operations undertaken without authorization by the Security Council have included, among the most consequential, Iraq 2003, Libya 2011, Syria beginning in 2011, Honduras 2009, Ukraine 2014, and Venezuela from 2002 onward. The methods employed are well established and well documented. They include open warfare, covert intelligence operations, instigation of unrest, support for armed groups, manipulation of mass and social media, bribery of military and civilian officials, targeted assassinations, false flag operations, and economic warfare. These measures are illegal under the UN Charter, and they typically result in ongoing violence, lethal conflict, political instability, and deep suffering of the civilian population. The recent U.S. record with respect to Venezuela is also clear. In April 2002, the U.S. knew of and approved an attempted coup against the government. In the 2010s, the United States funded civil society groups actively engaged in anti-government protests. When the government cracked down on the protests, the U.S. followed with a series of sanctions. In 2015, President Barack Obama declared Venezuela to be, and I quote, an unusual and extraordinary threat to the national security and foreign policy of the United States. In 2017, at a dinner with Latin American leaders on the margin of the UN General Assembly, President Trump openly discussed the option of the U.S. invading Venezuela to overthrow the government. During 2017 to 2020, the United States imposed sweeping sanctions on the state oil company PDVSA. Oil production fell by 75% from 2016 to 2020, and the real GDP per capita declined by 62%. The UN General Assembly has repeatedly voted overwhelmingly against such unilateral coercive measures. Under international law, only the Security Council has the authority to impose such measures. On the 23rd of January 2019, the United States unilaterally recognized Mr. Juan Guaido as interim president, and a few days later froze approximately $7 billion of Venezuelan sovereign assets held abroad and gave the designated authority over certain of these assets. These actions form part of a continuous U.S. regime change effort spanning more than 2 decades. In the past year, the United States has carried out bombing operations in 7 countries, none of which were authorized by the UN Security Council, and none of which were undertaken in lawful self-defense under the Charter. The targeted countries include Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Yemen, and now Venezuela. In the past month, President Trump has issued direct threats against 6 UN member states, including Colombia, Denmark, Iran, Mexico, Nigeria, and of course, Venezuela. Members of the Council are not called upon to judge Nicolas Maduro. They are not called upon to assess whether the recent U.S. attack and ongoing naval quarantine results in freedom or in subjugation. Members of the Council are called upon to defend international law
and specifically the UN Charter. The realist school of international relations, articulated most brilliantly by John Mearsheimer, accurately describes the condition of international anarchy as the tragedy of great power politics. Realism is therefore a description, not a solution for peace. Its own conclusion is that anarchy leads to tragedy. In the aftermath of World War I, the League of Nations was created to end the tragedy through the application of international law. Yet the world's leading nations failed to defend international law in the 1930s, leading to renewed global war. The United Nations emerged from that catastrophe as humanity's second great effort to place international law above international anarchy. In the words of the Charter, the UN was created, quote, to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind. Given that we are in the nuclear age, failure cannot be repeated. Humanity would perish. There would be no third chance. To fulfill its responsibilities under the Charter, the Security Council should immediately affirm the following actions. The United States shall immediately cease and desist from all explicit and implicit threats or use of force against Venezuela. The United States shall terminate its naval quarantine and all related coercive military measures undertaken in the absence of authorization by the UN Security Council. The United States shall immediately withdraw its military forces from within and along the perimeter of Venezuela, including intelligence, naval, air, and other forward deployed assets positioned for coercive purposes. Venezuela shall adhere to the UN Charter and to the human rights protected in the Universal Declaration of Human Rights. The Secretary General, I recommend, should immediately appoint a special envoy mandated to engage relevant Venezuelan and international stakeholders and to report back to the Security Council within 14 days with recommendations consistent with the Charter, and the Security Council should remain urgently seized of this matter. All member states should refrain from unilateral threats, coercive measures, or armed actions undertaken outside the authority of the UN Security Council. In closing, Mr. President and distinguished members of the Council, peace and the survival of humanity depend on whether the United Nations Charter remains a living instrument of international law or is allowed to wither into irrelevance. That is the choice before this Council today. Thank you very much. I thank Mr. Sachs for his briefings. I now give the floor to Ms. Mercedes de Freitas. My apology. I now give the floor to Ms. Mercedes de Freitas. Good morning. I speak in Spanish. Good morning, ambassadors, representatives of states and governments. Thank you very much for giving me this opportunity to speak. Can you hear me? Can you hear me? Good morning. I speak in Spanish. Buenos días, señor. Good morning, ambassadors, representatives of heads of state and government. Thank you to enable me to tell you something about Transparency Venezuela, the work that we have been doing. We have organized I've organized some information I'm going to put forward to you in 5 points.
Bueno, he Continue. organizado la información que voy a presentar. I've arranged the information I'm going to give to you in around 5 points. Let me make the most of my time. First of all, one, the corruption in Venezuela is seen in 73 countries of the world. We have we've seen hundreds of cases that we have documented over the years, more than 500, 600 cases in various countries. Can you hear us? Solo en los sistemas de justicia We looked at the justice systems of 30 countries, and 172 cases were dealt with for corruption, and more than $72 trillion were involved. $1 million were involved. This was public Venezuelan money. Nicolas Maduro and his family. The interpreter cannot hear the speaker. ha sido el instrumento central, involucrada directa e indirectamente en el It was a system that was involved in 90% of the corruption cases. Point number 2. The national criminal organizations. The interpreter cannot hear the speech to provide sufficient interpretation. I apologize. soportar, proteger y dirigir las operaciones ilícitas. Las economías ilícitas de oro, droga, extorsión y trata de personas alcanzaron en 2024 $8.000 billones. Can you hear según us? nuestras estimaciones. Ms. Freitas? De la producción de oro, ¿sí? Can you hear us? The interpreters cannot hear you. Can you slow down and raise your voice a little bit? Hay un delay. There's a delay, says the speaker. The problem the interpreter is having is with the quality of the sound, which is insufficient for interpretation. It's not the speed. Sí, la oigo con delay. I'm hearing you, but with a delay, says the speaker. I can hear you, though. Please proceed now. Ok, perfecto. Very well. Point 2. National and international criminal organizations have a symbiotic relationship with the regime of Nicolas Maduro, sharing capacity, using the state structures to facilitate their work and to protect illicit operations in gold, for example, drugs, extortion, and human trafficking. And according to our estimates, this accounts for about $8 billion. Gold, for example, only 20% is reported to the National Treasury. The rest goes to private accounts where there are members and allies with the government. This mining industry has exploited so many people using national parks and also the Amazon area. And then to launder the money from corruption, the network has money laundering structures that are very sophisticated. And since 2021, they've been involved in this work. 3, great corruption has led to a decrease in the income of the state and therefore public expenditure, and therefore affecting the quality of basic services. The current economy is in crisis. There's no money either to service the debt. And Venezuela has been in technical default since 2017.
we owe more than $15 million. Four, Venezuelans have had to learn to live with just a few hours of electricity per day in very many parts of the country. And we've learned to protect ourselves from daily extortion from the armed Colombian groups or the organized crime groups, but also elements of the state. So many families only have one meal per day below the calories that they need, affecting their nutrition, which is getting worse day by day. Humanitarian programs are not sufficient. And then 5, there's no checks and balances between government departments. The government has captured all institutions, beginning with the justice institutions and also the oil company responsible for the majority of income for the country. In order to maintain control and the impunity of these illicit operations, a repressive system that's getting worse and worse is being applied. And today, there are more than 1,000 political prisoners. At the end of the year, 26 people died during torture or because of a lack of medical care. United Nations has documented many of these cases. We need a transparent state that is accountable, that will guarantee the rule of law and human rights, that will protect public goods for everyone without privilege, a system that's autonomous and independent. We need investment in building capacity that will enable us to have a dignified life. We must respect the will of the Venezuelan people to live in peace and democracy. And finally, a request to you. Freedom for all political prisoners in the country. Thank you very much. I thank Ms. Freitas for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of Colombia. Mr. President, Colombia would like to thank Somalia in your quality as President of the Security Council for having quickly responded to our request to convene this emergency meeting, as well as thanking China and Russia for their support for holding of this meeting. And we wish you, Mr. President, a successful month managing the work of the Council at a particularly delicate time for international peace and security. I'd also like to thank Under-Secretary General for Political Affairs and Peace Building of the United Nations and the invited briefers. We thank them all for their briefings. This is the first time Colombia is taking the floor in the Security Council as a non-permanent member for the period 2026-2027. Colombia is taking on this responsibility with a deep sense of duty, and we are going to do this from the first day, defending international law and the purposes and principles enshrined in the United Nations Charter. International peace and security, the peaceful settlement of disputes, the prohibition of the use of force, sovereign equality, respect for the territorial integrity and political independence of all states. Colombia condemns categorically the events that occurred in the early morning of the 3rd of January in Venezuela, where we saw multiple explosions and air activity over Caracas and other areas of the country as part of a military attack carried out by the United States, which included bombings of civilian and military infrastructure, creating panic amongst the population. All of this
represents clear violations of the sovereignty, political independence, and the territorial integrity of Venezuela. There is no justification whatsoever under any circumstances for the unilateral use of force to commit an act of aggression. Such actions constitute a serious violation of international law and the United Nations Charter, including the prohibition on the use or the threat of the use of force, the principle of the respect for sovereignty and the full authority of states over their territory, including their natural resources, the territorial integrity of states, and the principles of collective defense, particularly when they directly endanger the population and civilian assets. Defending these principles is not an option. Indeed, it's a common obligation that we have in order to preserve international peace and security. We need to remember that the provisions of the Charter allow for the use of force only under exceptional circumstances, in legitimate defense in the face of an armed attack, or when there is an express authorization by this Council in accordance with Chapter 7. And even in those cases, this does not amount to assuming political control of another state. In this regard, we reject any unilateral military action, any act that could worsen the situation or endanger the civilian population, and we would call for a de-escalation and non-resort to the use of force, which endangers people finding themselves in this delicate situation. They must be the absolute priority. We have learned from our experience that the civilian population is always the one that pays the highest price in armed conflict. Mr. President, Latin America and the Caribbean have proclaimed themselves to be a zone of peace, and this collective commitment and will of our region must be respected. Unilateral action that is contrary to international law endangers regional stability, increases insecurity, and worsens the already complex conditions being faced by the civilian population, with devastating effects that will transcend the sovereign borders of Venezuela to have a direct impact on countries of the region, such as Colombia. In order to act preventively, Colombia has engaged in measures to protect the civilian population and preserve the stability of the border, addressing the possible needs of the population, particularly the migrant population, in coordination with local authorities. Colombia has been and will continue to be show solidarity in receiving the Venezuelan people who, given the uncertainty created by these attacks, this may lead to a massive outflow of migration, which will require significant efforts in terms of resources and capacities to provide the necessary support and assistance to those areas affected by taking in the migrants. Mr. President, these actions that we have seen remind us of the worst interference in our area in the past, in our zone of peace. And it calls to mind the commitment that we have as states to resolve our differences peacefully through dialogue and negotiation or other forms of peaceful settlement, in full accordance with international law and with its instruments to which we have subscribed at the hemispheric and regional levels, such as the Charter of the Organization of American States. It's also important to understand the dimension of this situation for international peace and security beyond our region, particularly when a permanent member of the Security Council takes the decision to use force and assume control unilaterally of another sovereign state, with the aim, amongst other things, of
taking its natural and strategic resources. This is very worrisome for the international community, the international order that was established after the Second World War, and flagrantly violates international law and is in clear contradiction with the United Nations Charter and the very goal for which this council was created. If a country, and particularly a country that is a permanent member of this council, disregards international law that we designed in San Francisco, what then is the role of this council, and where are the foundations for international peace and security? We are accepting that the law and the interests of the strongest prevail over multilateralism and over agreements that we have forged with dialogue and diplomacy in this very chamber. Democracy cannot be promoted or defended through violence or coercion, and it cannot be superseded either by economic interests. Democracy can only be built and sustained through respect for the will of peoples, the reaffirmation of the rule of law, through political dialogue and peaceful and inclusive processes. Venezuela deserves to live in peace, in democracy, prosperity and dignity, with a government that is defined in sovereignty by no one else than the Venezuelan people and their institutions. This is why Colombia has reiterated its call to open up paths for democracy in Venezuela through specific popular decisions being taken. The importance of preserving peace, respect for international law and the protection of life and human rights must prevail over anything else. Colombia reaffirms its conviction that working tirelessly under these principles in our new role as a non-permanent member of the Security Council is what we plan to do, and we make ourselves available, our good offices available for a diplomatic way out of the current crisis in this brotherly country. We will meet our responsibility, primary responsibility, to maintain international peace and security. And given the seriousness of the events, we will continue to pay attention to this issue. And we'd also like to thank the Secretary General of the United Nations for providing his good offices to defend the purposes and principles of the United Nations Charter, to activate channels for mediation available to him and facilitate dialogue with the parties concerned, looking in the search for alternatives that will make it possible to find a way out of the situation led by Venezuelans themselves and provide assistance to Venezuelans that need this. In conclusion, we'd urge the parties to exercise maximum caution and restraint, to de-escalate tensions and to follow dialogue and diplomatic channels and develop mechanisms to avoid continued flagrant violations of international law. This will require the help of the United Nations and of regional organizations. Thank you very much, Mr. President. I thank the representative of Colombia for her statement and now give the floor to the representative of Russian Federation. Mr. President, first and foremost, we wish to congratulate you on your accession to the presidency of the Security Council. And second, we wish to welcome the newly elected members of the Security Council. The beginning of this new year shocked all of those throughout the world who cherish the hope that respect for international law and non-intervention in domestic affairs of other states, as well as a reliance upon diplomacy and seeking of compromise, became key principles in the work of the new U.S. administration. The assault against the leader of Venezuela, compounded by the deaths of dozens of Venezuelan and Cuban citizens, in the eyes of many, become a harbinger of a turn back to the era of lawlessness and U.S. domination by force, chaos, and lawlessness,
which continues to afflict dozens of states in various regions of the world. There is no and can be no justification for the crimes cynically perpetrated by the United States in Caracas. We firmly condemn the U.S. act of armed aggression against Venezuela in breach of all international legal norms. In connection with the confirmed reports about the presence of the abducted president of Venezuela, Nicolas Maduro, and his spouse in the United States, today, as we are aware, they are in New York, we call upon, corrects the Speaker, the U.S. leadership to immediately release the legitimately elected president of an independent state and his spouse. Any problems existing or conflict between the United States and Venezuela need to be resolved through dialogue. And this is precisely what is enshrined in the UN Charter, the purposes and the principles of which a number of states in recent years have begun to apply selectively, depending upon the political landscape. Today, we are reaping the consequences of their recklessness and selectivity in matters related to respect for the norms of international law, which were linked to the so-called rules-based world order. Here is your rules-based world order in all of its glory, which is horrifying even the staunchest Atlanticists. Mr. President, we extend our firm solidarity with the people of Venezuela in the face of the external aggression. We firmly support and completely support the policy of the Bolivarian government, which is geared towards protection of their national interests and the sovereignty of the country. Washington's aggressive acts have already been condemned by many states and multilateral associations, including the Non-Aligned Movement, the African Union, as well as a group of friends in defense of the Charter of the United Nations. We hope that the international banditry will immediately be met with objective and comprehensive assessment at the international legal level with United Nations, universal mechanisms, and other multilateral formats being brought to bear. This process must not be impacted by the recognition or non-recognition by any given states or groups of states of the legitimacy of Nicolas Maduro. For this reason, unintelligible murmurings and attempts to avoid principled assessments by those who in other circumstances at the mouth and demand that others respect the UN Charter today seem particularly hypocritical and unseemly. We hope you will recognize this, and we hope that you will abandon double standards and that you will not attempt to justify such an egregious act of aggression due to a fear of angering the American global gendarme, which is attempting to once again rear its head. We are particularly appalled by the unparalleled cynicism with which Washington did not even attempt to conceal the true aims of its criminal operation, namely the establishment of unbridled control over Venezuela's natural resources and the assertion of their hegemonical ambitions in Latin America. In this way, Washington is generating fresh momentum for neocolonialism and for imperialism, which were repeatedly, decisively condemned and repudiated by the peoples of this region and by the global South as a whole. Distinguished colleagues, under these circumstances, it is exceedingly important for the entire international community to unite and to definitively reject the methods and tools of U.S. military foreign policy, which have been demonstrated in the case of Venezuela. This is the only way it is possible to compel Washington to revisit and to abandon their dangerous misconceptions. As we stated during previous meetings on Venezuela, the bell now tolls across the region, ringing for every country of the Western Hemisphere. The bell is ringing for all UN member states and for the future of the organization itself. Failing to hear this call today is tantamount to projecting cowardice and the lack of principle, essentially blessing ongoing encroachments of international law and rejecting civilized international conduct as a whole. We cannot allow the United States to proclaim itself as some kind of a supreme judge
which alone bears the right to invade any country, to label culprits, to hand down and to enforce punishments, irrespective of notions of international law, sovereignty, and non-intervention. Is this the world we sought to attain as we marked the 80th anniversary of the adoption of the Charter of the United Nations, when we all signed on to the relevant Security Council presidential statement? Is this the aim of United Nations reform, which we all advocate? Or has the United Nations and Security Council thereof, do they no longer exist? And is there need now to seek from Washington a patent rule, so to speak? And is the self-determination of every person and their right to determine their future worthless? These are the questions that we all must address today. And if this response is sincere, if it is principled, then perhaps the U.S. leadership, too, which openly is asserting intention to run another country for the benefit of the United States, they will perhaps glance at their own constitution, their constitution of the United States, which begins with the words, "We the people of the United States," and will begin, in fact, to recognize the sovereignty of other states rather than deposing inconvenient regimes. Thank you. I thank the representative of Russian Federation and now give the floor to the representative of China. President, China supports the Security Council holding an emergency meeting regarding the United States military strikes on Venezuela. And thanks USG DK for reading out the briefing of the Secretary General Guterres. I have listened carefully to the statements of the briefers, and we welcome to this meeting the permanent representative of Venezuela and representatives of other countries. On January the 3rd, the United States blatantly launched large-scale military strikes against Venezuela, forcibly seized Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife, and took them out of the country. It claimed that it will run Venezuela and even didn't rule out launching a second round of military operations on an even larger scale. China is deeply shocked by and strongly condemns the unilateral, illegal, and bullying acts of the U.S. For some time now, the international community has repeatedly expressed grave concern over the U.S. sanctions, blockade, and threats of force against Venezuela. The Council convened 2 emergency meetings, during which Secretary General Guterres, many Council members, and countries in the region and beyond unanimously called for abiding by the UN Charter and the international law, maintaining calm and restraint, resolving disputes peacefully, de-escalating tensions, and safeguarding regional stability. However, as a permanent member of the Council, the U.S. has disregarded the grave concerns of the international community, wantonly trampled upon Venezuela's sovereignty, security, and legitimate rights and interests, and seriously violated the principles of sovereign equality, non-interference in internal affairs, peaceful settlement of international disputes, and the prohibition of the use of force in international relations. These principles constitute the fundamental tenets of the UN Charter and form the cornerstone of maintaining international peace and security. The U.S. has placed its own power above multilateralism and military action above diplomatic efforts, posing a grave threat to peace and security in Latin America and the Caribbean, and indeed internationally. China firmly opposes this, and the international community has also expressed widespread grave concern and strong condemnation. We urge the U.S. to heed the overwhelming voice of the international community, abide by international law and the purposes and principles of the UN Charter, cease infringing upon the sovereignty and security of other countries, stop toppling the government of Venezuela, and return to the path of political solutions through dialogue and negotiations. We call on the U.S. to ensure the personal safety of President Maduro and his wife and to release them at once. We support the Council in fulfilling its primary responsibility to maintain international peace and security, and we support all efforts by the UN Secretary General, regional countries, and organizations that contribute to promoting dialogue and de-escalating the situation.
President, the lessons of history are a stark warning. Military means are not the solution to problems, and the indiscriminate use of force will only lead to greater crisis. The U.S. bypassed the Council to launch military operations against Iraq, blatantly attacked Iran's nuclear facilities, and imposed economic sanctions, military strikes, and even armed occupations on multiple countries in Latin America and the Caribbean. These actions have caused persistent conflict, instability, and immense suffering for the ordinary people. Did these actions bring peace and stability? Did they bring development and prosperity? The international community sees this clearly. Venezuela is an independent sovereign state with every right to defend its sovereignty and national dignity. Countries in Latin America and the Caribbean are important forces in maintaining world peace and stability and promoting global development and prosperity, and they have every right to independently choose their development paths and partners. No country can act as the world's police, nor can any state presume to be the international judge. China firmly supports the government and people of Venezuela in safeguarding their sovereignty, security, and legitimate rights and interests. We firmly support the regional countries in upholding the status of Latin America and the Caribbean as a zone of peace. We demand that the United States change its course, cease its bullying and coercive practices, and develop relations and cooperation with regional countries on the basis of mutual respect, equality, and non-interference in international affairs. China stands ready to work with the regional countries and the international community to strengthen solidarity and cooperation, uphold fairness and justice, and jointly support peace and stability in Latin America and the Caribbean. I thank you, President. I thank the representative of China for the statement, and now give the floor to the representative of Liberia. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the A3 members, namely the Democratic Republic of Congo, Somalia, and my own country, Liberia. We thank the Presidency for promptly convening this important meeting. We congratulate Somalia on assuming the presidency of the Security Council this month and warmly welcome all new members. The A3 appreciates USG DeCarlo's comprehensive briefing and listened carefully to the remarks offered by civil society representatives. We also welcome the representative of Venezuela and the representatives of the region to this meeting. Mr. President, the A3 aligns itself with the recent communique of the African Union on the situation in the Bolivarian Republic of Venezuela and continues to monitor developments there with deep concerns. In particular, we need national law, including the full respect for the sovereignty and territorial integrity of states as enshrined in the Charter of the United Nations in the interest of regional stability and international peace. We believe these are essential foundations for international cooperation and peaceful coexistence. Our position underscores the importance of dialogue, the peaceful settlement of disputes, and respect for constitutional and institutional frameworks. Mr. President, the complex situation in Venezuela requires a comprehensive response that is both inclusive and nationally owned. We continue to hold that a sustainable and peaceful resolution
can only be found through constructive dialogue among Venezuelans themselves, with genuine respect for the aspiration and rights of the Venezuelan people, and with the constructive support of the international community. The A3 expresses its solidarity with the people of Venezuela and reiterates the African Union's commitment to peace, stability, and mutual respect among nations and regions. It's important for all parties, both within Venezuela and in the broader international community, to exercise restraint and responsibility, upholding international law and avoiding any action that could escalate tension or threaten regional stability. The A3 stands ready to support all efforts within this Council and in cooperation with regional partners to facilitate a peaceful, inclusive, and lasting resolution to the situation in Venezuela. I thank you. I thank the representative of Liberia for this statement and now give the floor to the representative of the United States. Mr. President, thank you for chairing. And I particularly want to thank you, Mr. Freitas, for your briefing. And I'll point out that Mr. Freitas is in exile, having fled the regime. Thank you for your courage, and thank you for shedding a light on the true atrocities of the illegitimate Maduro regime. This past weekend, colleagues, the United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it. And undeniably, the region was more stable. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect Americans at home and abroad against a fugitive who is directly responsible for narco-terrorism that has killed hundreds of thousands of Americans and created destabilizing violence throughout our hemisphere. Nicolas Maduro and his co-defendant, Celia Flores, have been transferred here to the United States to stand trial for their crimes. Maduro was indicted by a grand jury in the Southern District of New York and faces very serious criminal charges for his involvement in a wide-ranging conspiracy to conduct narco-terrorism, to traffic cocaine and other drugs, and conducting international weapons trafficking. The overwhelming evidence of his crimes will be presented openly in U.S. court proceedings. Colleagues, Maduro is not just an indicted drug trafficker.
he was an illegitimate so-called president. He was not a head of state. For years, Maduro and his cronies have manipulated Venezuela's electoral system to maintain their illegitimate grip on power. In fact, just 2 years ago in 2024, a UN panel of experts report found that the election in that year was absolutely and completely a farce and fell well short of the most basic transparency and integrity measures essential to upholding credible elections. If the UN and the United Nations in this body confers legitimacy on an illegitimate narco-terrorist and the same treatment in this charter of a democratically elected president or head of state, what kind of organization is this? We should note that over 50 countries, many nations, including the European Union, including a number of Latin American countries in the region, and of course the United States, again, over 50 countries rejected the legitimacy of Maduro's re-election following the disputed 2024 elections and do not recognize him as Venezuela's legitimately elected president. Maduro unlawfully refused to peacefully cede power after the Venezuelan people voted him out of office in the 2024 election. So therefore, Maduro was a fugitive from justice. He is the head of a vicious foreign terrorist organization, Cartel de los Soles. This regime-sponsored enterprise coordinates with and relies on other vicious criminal organizations, namely Tren de Aragua, again, among others, to carry out its objective of using illegal narcotics as a weapon against the United States. And for its part, Tren de Aragua is a designated foreign terrorist organization with thousands of members, many of whom have unlawfully infiltrated the United States and are conducting irregular warfare and undertaking hostile actions against the American people and against the United States. It's terrorizing criminals commit brutal crimes, including murders, kidnappings, extortions, and human, drug, and weapons trafficking. This administration, President Trump, will not stand for it. In fact, in March of 2025, President Trump declared that Tren de Aragua is quote, Tren de Aragua is undertaking hostile actions and conducting irregular warfare against the territory of the United States, both directly and at the direction, clandestine or otherwise, of the Maduro regime in Venezuela. Maduro and his cronies have partnered with some of the most violent and prolific drug traffickers and narco-terrorists in the world for decades, facilitating the flood of illegal drugs coming in the United States, estimated to be several hundred tons annually. He has become rich, incredibly wealthy, off the misery of untold numbers of Americans, Venezuelans, and others, aiding and abetting international terrorist organizations like Hezbollah, coordinating with corrupt Iranian officials, and other malign actors to influence not only the region, but to malignly influence the United States. In fact, in its own 2025 World Drug Report, the United Nations Office on Drugs and Crime identified Venezuela as a key trafficking route in the Western Hemisphere for illegal drugs, predominantly cocaine, entering the United States and increasingly Europe. As Secretary Rubio stated just yesterday, this is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be used as a base of operation for our nation's adversaries and competitors and rivals of the United States. You can't turn Venezuela into the operating hub for Iran, for Hezbollah,
for gangs, for Cuban intelligence agents, and other malign actors that control that country. You cannot continue to have the largest energy reserves in the world under the control of adversaries of the United States, under the control of illegitimate leaders, and not benefiting the people of Venezuela, and stolen by a handful of oligarchs inside of Venezuela. But it doesn't stop there. Numerous UN and international human rights organizations have issued reports documenting serious human rights abuses by the Maduro regime, including reports of extrajudicial killings, political prisoners, torture, and arbitrary and unlawful detentions. In fact, over 8 million Venezuelans have fled the country, destabilizing their neighbors in the region and creating the world's largest refugee crisis. Members of this council, colleagues, the United States wants a better future for Venezuela. We believe a better future for the people of Venezuela and for the people of the region and the world is stabilizing the region and making the neighborhood that we live in a much better and safer place. And this is why millions of Venezuelans that have fled this brutal regime are celebrating and cheering around the world as this body pontificates. Including, those celebrating are including in my home state of Florida, where hundreds of thousands of Venezuelans have fled this regime's brutality. I want to reiterate, President Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. Maduro refused to take them. President Trump made it clear that the narco-terrorism must stop, and yet it continued. The United States will not waver in our actions to protect Americans from the scourge of narco-terrorism and seeks peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. I thank you, Mr. President. I thank the representative of the United States and now give the floor to the representative of Panama. Gracias, señor. Thank you, Mr. President. We'd like to extend a warm welcome to the representatives of Bahrain, Colombia, Liberia, Latvia, and the Democratic Republic of Congo, and who have joined the Security Council as elected members and who are joining us today in the chamber. And we congratulate Somalia on assuming the presidency of the Security Council this month. We'd like to thank Under Secretary General for Political Affairs, Rosemary DiCarlo, for her detailed report representing Secretary General António Guterres. She's briefed us on the situation under discussion today. We're also very grateful for the very valuable presentations by Mr. Jeffrey Sachs and Ms. Mercedes de Freitas. In this context, the Republic of Panama would like to refer to the situation that has taken place in the territory of the Bolivarian Republic of Venezuela, which is of concern due to its possible impact on peace and regional stability. However, in the light of the unfortunate reality of the facts that we have seen, we now need to turn our attention constructively towards the future of Venezuela. However, it's important to point out that in terms of a constant principle of our foreign policy, Panama would like to reiterate our unfailing commitment to multilateralism, to the sovereignty of states, and to the unrestricted respect for international law, especially the principles enshrined in the United Nations Charter, including non-intervention, respect for territorial integrity, and the prohibition of the use of force. This is mentioned in Article 2 of the United Nations Charter. These principles
are, and they continue to be, the indispensable framework for the peaceful coexistence between nations. Panama also believes it's necessary to highlight that the situation Venezuela is facing is unfolding in an environment marked by the disregard for the will of its people, as well as by a sustained erosion of democratic institutions. In this regard, Panama reiterates that it does not and will not recognize the authoritarian and illegitimate regime that has held Venezuelan men and women hostage, plunged them into one of the gravest political, social, humanitarian, and security crises in our region. Unfortunately, we have witnessed how the situation has gradually deteriorated under the regime, especially over the last year, with increased systemic erosion of democracy, the hollowing out of institutions, and the rise of authoritarian and repressive practices, which have contributed to an unfortunate outcome and therefore cannot be ignored by the international community. In particular, it is essential to call for the unconditional release of persons detained for political reasons. Many of them have been deprived of their liberty merely for raising their voices in a context in which dissent is not tolerated. From this moment on, we must demand that all political prisoners that the regime continues to hold hostage, Venezuelans and foreigners alike, be released without delay. Their physical well-being and safety must be guaranteed. Likewise, freedom of expression and the unequivocal respect for human rights must be immediately ensured. In this context, Panama underscores that its position does not stem solely from a principled democratic solidarity, but also from direct impact. A Panamanian citizen, Mr. Olmedo Núñez, remains arbitrarily detained in Venezuela without formal charges, without due process, without full access to a defense, and without effective consular guarantees. Added to this is the human impact of a multidimensional crisis that has forced around 9 million Venezuelans, men and women, to leave their homes, compelled to live in displacement and vulnerability as a consequence of the institutional and social collapse generated by the regime. A crisis that has had significant regional repercussions, reflected both in the irregular migration flows from south to north of a significant number of Venezuelan nationals, as well as reverse migration movements, including also a lot of Venezuelans, the effects of which are felt particularly in countries of transit and destination that this affects, including Panama. And this has decisively contributed to illegal migration. In the face of this reality, Panama issues a clear and firm call for Venezuela's short-term future to be fully democratic. Power emanates from the people, and as stated by His Excellency, the President of the Republic of Panama, José Raúl Molino, the people, the true sovereign, have already spoken at the polls, granting an indisputable victory with 70% of the votes on July 28, 2024, to the opposition candidate, Mr. Edmundo González Urrutia, as well as to Maria Corina Machado, who was prevented by the regime from running despite having won the primary with 93% of the votes on October 22, 2023. Additionally, the popularity of both has increased in recent months, including among police and military sectors. The elected government
has the teams and work programs ready to be implemented immediately, guaranteeing an orderly transition that provides the rule of law, respect for human rights, and confidence. In line with this commitment, Panama proudly safeguards the electoral records that reliably certify said victory as testimony to the inalienable right of the Venezuelan people to determine their own political destiny. Recognizing any authority other than that of the elected president would amount to legitimizing electoral fraud, normalizing authoritarianism and undermining the universal principle of free elections as the source of legitimacy. Likewise, any attempt to establish a permanent government headed by figures from the repressive apparatus, such as Delcy Rodriguez, would constitute continuity of the system and not a genuine transition. Any political solution must be peaceful, it must be democratic, and led by the Venezuelans, with the responsible assistance of the international community, including the United Nations and regional mechanisms such as the Organization of American States. Panama does not wish and would like to avoid a scenario in which Venezuela's reality simply evolves into a change from one crisis to another, one crisis replacing another. There can be no genuine transition with Madurismo if it remains, or if we have the same power structures preserved under new names. Any arrangement that keeps figures associated with the repressive apparatus at the center of governance would, in practice, constitute continuity of the system and not a real transition. Comparative experience shows that merely nominal transitions tend to prolong conflicts, intensify migratory flows, and perpetuate regional instability to the detriment of international peace and security. Panama will always stand in solidarity with an orderly and democratic transition process, anchored in the popular will already expressed at the polls on July 28, 2024, aimed at restoring democratic institutions through an interim period strictly limited in time, the sole purpose of which is to create the conditions necessary for the effective exercise of the Venezuelan people's right to self-determination. As a country that recovered its democracy and sovereignty, Panama can state clearly that there can be no peace without legitimacy, nor legitimacy without democracy, and that every democracy is ultimately based on respect for the popular will. Mr. President, Panama, due to our commitment to multilateralism and international law, in its capacity as member of the Security Council, will continue to contribute responsibly to collective efforts aimed at preserving peace, strengthening democracy, and supporting legitimate and sustainable solutions anchored in the sovereign will of peoples and respect for international law. Thank you very much. I thank the representative of Panama for the statement and now give the floor to the representative of Latvia. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to congratulate Somalia on assuming the presidency of the United Nations Security Council in January, and wish you all success. Latvia takes its seat on the Council with a profound sense of honor and responsibility for this role. And let me thank Under-Secretary General Rosemarie DiCarlo for today's briefing on behalf of the Secretary General, and I thank the invited briefers. The Security Council bears primary responsibility for the global efforts to uphold peace, security, and rule of law worldwide. Latvia recalls that under all circumstances, the principles of international law and the UN Charter must be upheld.
All efforts now focus on ensuring de-escalation and stability in Venezuela, based on inclusive dialogue and broad societal support. Latvia encourages all relevant actors to prioritize diplomatic efforts and work collectively towards a peaceful, democratic, and sustainable future for Venezuela. Latvia stands in solidarity with the people of Venezuela and their right to freedom and democracy, rights that were not respected by the Maduro regime during 2024 presidential elections and before, and which remain unmet to this day. The regime of Nicolas Maduro was rooted in mass repression, corruption, organized crime, including drug trafficking, and posed a grave threat to security of the region and the world. It has repeatedly violated the UN Charter and undermined international law, including through open support for Russia's aggression against Ukraine. The Maduro regime does not represent the will of the Venezuelan people and has relied on widespread, systematic repressions of human rights across the country to maintain power. 8 million Venezuelans have been forced to flee the country since 2014. Latvia also remains committed to working jointly together with partners to counter global transnational organized crime networks, including in Latin America and Caribbean. Such criminal activities place the lives of countless people at grave risk, particularly women and children. Addressing these challenges requires sustained cooperation in full respect of international law. Latvia continues to closely monitor the situation in Venezuela and stands prepared to continue working with its partners to support a peaceful, democratic, and just transition that reflects the aspirations of the Venezuelan people. And I thank you. I thank the representative of Latvia for her statement and now give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Mr. President. And let me also thank Undersecretary General DK for her briefing on behalf of the Secretary General. We also listened carefully to the briefing by Ms. de Freitas and Mr. Sachs. Mr. President, Denmark joins the Secretary General in expressing deep concern over the evolving situation in Venezuela. Since this Council met to discuss the situation 2 weeks ago, we have seen a drastic escalation culminating in a large-scale military operation on January 3rd. At our last meeting, Denmark urged all actors to strictly adhere to international law and to de-escalate tensions and exercise the necessary restraint. Today, we echo the Secretary General in his concern regarding the worrying implications of this military action. Independent of the situation in Venezuela, these developments constitute a dangerous precedent. International law and the UN Charter, as a pillar of the international security architecture, must be respected by all states. Denmark recalls the foundational principle of international law that forbids states from threatening or using force against another state's territorial integrity and political independence. This imperative is enshrined in Article 2, Paragraph 4 of the UN Charter. Members of the UN Security Council have a special responsibility to uphold these principles. The principles of sovereignty, political independence, and territorial integrity must be respected. The inviolability of borders is not up for negotiation. These are universal, sacrosanct principles enshrined in international law. They apply everywhere. Mr. President, once again, Denmark calls on all parties to urgently de-escalate tensions that could threaten peace and stability in the region and beyond. International disputes should be settled by peaceful means, as stated in the UN Charter. We further call on all parties to exercise maximum restraint and to engage in dialogue and diplomacy. Denmark takes note of official statements from the United States government stating that the military operations are to combat drug trafficking and stem the illicit flow of illegal narcotics. Denmark shares the priority of combating organized crime and drug trafficking, while reiterating that counter-narcotic efforts, as all other efforts, must be conducted in strict accordance with international law, including the fundamental rules
and principles of the UN Charter. Mr. President, against this backdrop, Denmark wishes to recall our solidarity with the people of Venezuela. Denmark does not recognize Nicolas Maduro as the legitimate president of Venezuela following the lack of transparency and integrity in the 2024 presidential elections, which failed to meet basic democratic standards. In Maduro's attempts to cling to power, his authoritarian regime grew increasingly oppressive. His regime bears responsibility for widespread and systematic violations of human rights against his fellow citizens, and he should be held accountable. The victims of the Maduro regime's alleged crimes against humanity have to be heard. The Venezuelan people have a right to democracy and self-determination exercised through peaceful, inclusive, and credible democratic processes, free from fear of political persecution, intimidation, or repression, and external political interference. This includes the rights of Venezuelans alone to determine their political, economic, and social future without coercion, pressure, or manipulation by external actors. No state should seek to influence political outcomes in Venezuela through the use of threat of force or through other means inconsistent with international law. Venezuela's future can be decided only by the Venezuelans. We call on all parties and stakeholders to come together for a negotiated and peaceful transition to democratic rule in a process led by and owned by Venezuelans. At this critical and uncertain time, it is imperative that all parties fully respect human rights and international law. Denmark remains committed to supporting Venezuela and the aspirations of its people on its path to lasting political stability. I thank you. I thank the representative of Denmark for her statement and now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. I congratulate Somalia on the assumption of the presidency of the Council for the month of January. And I thank our briefers for their remarks. Colleagues, the Venezuelan people have suffered for years. This Council now meets at a pivotal moment for Venezuela's future. Maduro's actions created extreme levels of poverty, violent repression, and failing basic services. His regime's rule precipitated a displacement crisis affecting the whole region. The United Kingdom has long been clear that Maduro's claim to power was fraudulent. To date, Venezuela's National Electoral Council has failed to publish the full results of the July 2024 presidential elections, and independent domestic and international reports also observed significant irregularities and a lack of transparency. President, the United Kingdom wants to see a safe and peaceful transition to a legitimate government that reflects the will of the Venezuelan people. They deserve a government which reflects their vote at the ballot box and delivers a more stable, prosperous future for all Venezuelans. Finally, President, the United Kingdom reaffirms its commitment to international law and the principles enshrined in the Charter of the United Nations. These foundations are essential for maintaining global peace, security, and the rule of law. I thank you. I thank the representative of the United Kingdom for his statement and now give the floor to the representative of France. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. First and foremost, I wish to congratulate you upon your presidency of the Security Council during the month of January. I also wish to thank Madam Rosemary DiCarlo for having conveyed to us the information from the Secretary General of the United Nations on the recent developments which have taken place in Venezuela. Mr. President, France
has continued to stand in solidarity with the Venezuelan people as they face the crisis that has been plaguing them for far too many years. Specifically, and in particular, since the summer of 2024, on the 20th of July, 2024, the Venezuelan people exercised their right to vote peacefully in order to shape the future of their country. Their right to choose their leaders, nonetheless, has been stripped away from the people by Nicolas Maduro. Must we recall the facts? The electoral process has been was marred by numerous irregularities, and the final counting of votes was marred by a flagrant lack of transparency. In light of the democratic aspirations of the Venezuelan people, Nicolas Maduro has systematically responded with the repression of dissident voices, of members of the opposition, and of civil society, as well as with numerous arbitrary detentions. France has always expressed itself with clarity about the fact that these practices are unacceptable and that respect for human rights must be upheld. Mr. President, the military operation which has led to the capture of Nicolas Maduro runs counter to the principle of peaceful dispute resolution and runs counter to the principle of non-use of force. The proliferation of violations of the Charter of the United Nations and of violations of international law by states vested with responsibility as permanent members of the Security Council chips away at the very foundation of the international order. Contravening the principles of the Charter, including the principle of respect for independence and the territorial integrity of states, undermines the foundation of the United Nations and weakens international peace and security. France remains faithful and committed to respect for the Charter of the United Nations and of the principle of peaceful dispute resolution. We have an obligation to uphold these principles at all times and in all places. Respect for these principles is indispensable. Mr. President, France wishes to reiterate our commitment to respect for the will of the Venezuelan people. The transition which is currently being opened up for Venezuela needs to be peaceful and democratic and carried out in a manner which respects the choice of the Venezuelan people, a sovereign people. This transition must be led by and for the Venezuelans. France stands ready, alongside states in the region and our partners at the European Union, to uphold dialogue with a view to the restoration of the free democratic expression in Venezuela. We stand ready to support regional stability. This also needs to be the role of the Security Council. Thank you. I thank the representative of France for the statement and now give the floor to the representative of Bahrain. Sayyid Rais, أود بداية. Mr. President, I wish to take this opportunity to congratulate first and foremost the Federal Republic of Somalia on its presidency of the Security Council during this month of January. We wish you every success. We also wish to take this opportunity to thank delegations whose mandate at the Council ended, namely Algeria, Guyana, the Republic of Korea, Sierra Leone, as well as Slovenia. We wish to thank them for their significant contributions to the attainment of the goals and the mission of the Council. I also wish to thank Madam Rosemary DiCarlo, Undersecretary General for Political and Peace-Building Affairs, for her valuable briefing related to the latest developments which have taken place at in the Bolivarian Republic of Venezuela, and I wish to thank other briefers as well. We appreciate the reaffirmation by His Excellency the Secretary General of the United Nations, reaffirmation of the commitment to the fundamental principles of the Charter of the United Nations, a commitment to the peaceful diplomatic resolution of disputes. The Kingdom of Bahrain supports the call of the Secretary General for all stakeholders in Venezuela to engage in inclusive dialogue which guarantees respect for international law, and this in order to ease tensions, to preserve regional stability, and to avoid any potential adverse repercussions for security and stability in the region. The Kingdom of Bahrain
also extends its support for efforts undertaken at the regional and international levels in order to reduce tensions and to enhance diplomatic means in order to provide for international peace and security. The Kingdom stresses the importance of the promotion of international cooperation in order to support all regional and international efforts which are geared towards combating international organized crime, trafficking in drugs, as well as scourges which are related to this. This undermines the stability of societies, undermines achievement of sustainable development. Therefore, these issues need to be dealt with in accordance with international relevant conventions. By way of conclusion, the Kingdom of Bahrain reaffirms our support for regional and international efforts to achieve a political, lasting solution in the Bolivarian Republic of Venezuela. This needs to be achieved through regional cooperation and with respect for national sovereignty. The goal is to provide for security and stability in Venezuela, to avoid risks of conflict and division, to protect civil peace, and to contribute to the preservation of regional security and stability, as well as international peace and security. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Bahrain for the statement and now give the floor to the representative of Pakistan. Thank you, Mr. President. Allow me to begin by congratulating Somalia on its assumption of the presidency for this month and assuring you of my delegation's full support and cooperation. We welcome the new members joining the Council. I thank Under-Secretary General Rosemary DiCarlo for reading out the remarks of the Secretary General and the valuable briefing. We also take note of views shared by Mr. Jeffrey Sachs and Ms. Mercedes de Freitas. I welcome the participation of the permanent representative of Venezuela alongside the representatives of other countries from the region and beyond in the meeting. Mr. President, Pakistan views the recent developments in Venezuela with profound concern. In a world already beset by multiple crises, escalating tensions and instability in the Caribbean do not augur well for regional and international peace and security. The UN Charter enjoins us to refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. The UN Charter also binds member states to sovereign equality, non-interference in the internal affairs of others, and settlement of international disputes by peaceful means. Unilateral military action contravenes these sacrosanct principles and the doctrine of sovereign immunity. Such actions set dangerous precedents that risk eroding the foundations of the global legal framework. They also fuel instability, which, as history has shown time and again, can lead to unpredictable and uncontrollable outcomes for years to come. Mr. President, at this critical juncture, the path forward must be one of dialogue and diplomacy. Durable solutions to political differences can only be found through peaceful means, with full respect for the will of the Venezuelan people, free from any external interference. We hope that Latin American and the Caribbean region, as a zone of peace, will remain free from conflict and confrontation and continue its march towards enhanced regional cooperation and improved prosperity for the people. We urge all parties to exercise maximum restraint, de-escalate tensions, pursue peaceful coexistence, refrain from any actions that could exacerbate the volatile situation, and engage in dialogue, including by utilizing the sincere offers of mediation. The good offices of the Secretary General also always remain available for that purpose. Lastly, Mr. President, I affirm Pakistan's commitment to contributing constructively to the discharge of the Security Council's primary responsibility for addressing the threat to international peace and security by diffusing tensions, promoting pacific settlement, and upholding respect for international law and the UN Charter. Peace and stability of Venezuela and the welfare and prosperity of its people, with full ownership, must be the overriding objective of all efforts. I thank you. I thank the representative of Pakistan for the statement and now give the floor to the representative of Greece. Thank you, Mr. President. At the outset, I would like to congratulate Somalia for assuming the presidency of the Council for the month of January
and I would like to welcome the newly elected members joining the Council. I would also like to thank USG DiCarlo for her briefing on behalf of the Secretary General, as well as Mr. Sachs and Ms. De Freitas for their remarks. Mr. President, Greece is closely monitoring developments in Venezuela. We urge all actors to exercise maximum restraint and to refrain from actions that would deepen the crisis and undermine prospects for peace and stability. Greece reiterates that the Charter of the United Nations and international law, including human rights law, must always be respected. We also recall the obligation of all parties to protect civilians, especially in times of heightened tensions. Greece shares the priority of combating transnational organized crime and drug trafficking, which pose a significant security threat worldwide. We reiterate that these challenges should be addressed through sustained cooperation in full respect of international law. Mr. President, Greece firmly believes that dialogue and diplomacy are the only viable tools for a peaceful transition and a sustainable resolution of the crisis. We join the Secretary General in encouraging all actors in Venezuela to engage in inclusive and meaningful dialogue in full respect of human rights, democratic principles, and the rule of law. We have long been clear that Nicolas Maduro's and illegitimate president's claim to power lacks legitimacy. Greece has not recognized the results of the rigged elections of July 28, 2024, and has always supported initiatives aimed at achieving a democratic solution for Venezuela. We stand firmly with the people of Venezuela in their pursuit of a democratic future, and we express the hope that the recent events will lead to this effect. The voices of all Venezuelans need to be heard, and they deserve governance that reflects their will through peaceful and inclusive processes. In this spirit, we will continue to support efforts aimed at achieving a peaceful, negotiated transition that ensures the will of all Venezuelans is fully respected. Greece stands ready to support all regional and international efforts aimed at the peaceful resolution of the crisis in line with the Charter of the United Nations and international law. I thank you. I thank the representative of Greece for this statement and now give the floor to the representative of Bolivarian Republic of Venezuela. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. President. Before coming to the substance of our statement today, I think we need to make an institutional clarification. We note with concern that an attempt is being made to present to the Security Council a supposed representative of civil society, a person whose public career trajectory bears the hallmarks of sustained funding from foreign governments and transnational corporations. This has been the case for years, as well as participation in processes of political destabilization and the promotion of institutional breakdown in her own country. The instrumental use of this person to legitimize narratives of confrontation, justify the use of force, or minimize violations of international law does not contribute in any way to the purposes of this Council or to the strengthening of multilateralism. On the contrary, it erodes the credibility of the debates and distorts the Security Council's mandate entrusted with the maintenance of international peace and security. Mr. President, on January 3rd, 2026 is a date of profound historical significance, not only for Venezuela, but for the international system as a whole. On that day, the Bolivarian Republic of Venezuela was the target of an illegitimate armed attack lacking any legal justification by the government of the United States of America, which included bombing of our territory, the loss of civilian and military lives, the destruction of civilian infrastructure, essential infrastructure, and the kidnapping of the constitutional president of the Republic, Nicolas Maduro Moras, and the First Lady, Cilia Flores. Venezuela comes before this Council today
with a deep conviction that international peace can only be sustained if international law is respected without exception, without double standards, and without selective interpretations. The events of January 3rd constitute a flagrant violation of the UN Charter perpetrated by the US government, in particular the violation of the principle of sovereign equality of states, of the absolute prohibition of the use or threat of use of force against the territorial integrity or political independence of any state, as enshrined in Article 2, Paragraph 4, and a violation of the duty to settle disputes by peaceful means. Similarly, these acts also seriously violate the Geneva Conventions and protocols, as indiscriminate attacks were carried out against the civilian population and assets. International human rights law has also been violated, particularly the right to life, personal integrity, and security. Of particular seriousness is the kidnapping of the President of the Republic by the government of the United States of America, which constitutes a direct violation of an essential norm of the international legal order, namely the personal immunity of heads of state in office. This immunity is not an individual privilege. It is an institutional guarantee that protects the sovereignty of states and the stability of the international system. Its disregard not only affects Venezuela, but also sets an extremely dangerous precedent for all states represented in this chamber, regardless of their size, power, or alliances. Mr. President, General Assembly Resolution 3314 clearly defines as an act of aggression the bombing of the territory of one state by the armed forces of another state, as well as the invasion or occupation, even without formal annexation. The events we are denouncing here unequivocally fit this definition. In 2004, the International Court of Justice affirmed that occupation exists when a state exercises effective control, even without formal annexation or the continuous presence of troops. Security Council Resolution 242, for its part, emphasizes that the acquisition of territory by force is inadmissible, while General Assembly Resolution 2625 establishes that the territory of a state shall not be subject to military occupation as a result of the use of force in contravention of the UN Charter. Allowing such acts to go without an effective answer would amount to normalizing the replacement of law by might, while eroding the very foundations of the collective security system. Today, it is not only Venezuela's sovereignty that is at stake, the credibility of international law, the authority of this organization, and the validity of the principle that no state can set itself up as the judge, party, and executor of the world order are also at stake. Mr. President, we cannot ignore a central element of this US aggression. Venezuela is the victim of these attacks because of its natural resources. Our country's oil, energy, strategic resources, and geopolitical position have historically been factors of greed and external pressure. When force is used to control resources, impose governments, or redesign states, we are faced with a logic that harks back to the worst practices of colonialism and neocolonialism. Accepting such a logic would mean to open the door to a deeply unstable world in which countries with greater military capacities can decide by force the political and economic destinies of other states. This scenario not only threatens Venezuela, it threatens international peace and security as a whole. If the kidnapping of a head of state, the bombing of a sovereign country, and the open threat of further armed action are tolerated or downplayed, the message sent to the world
is a devastating one, namely that the law is optional and that force is the true arbiter of international relations. Venezuela firmly believes in diplomacy, dialogue, and peaceful coexistence among nations. That has always been our historical position, and it remains so today, even in the face of an aggression of this magnitude. It is precisely that commitment to peace, the one that was violated on the 3rd of January. Therefore, Venezuela urges this Security Council to fully assume its responsibility and to act in accordance with the mandate conferred upon it by the Charter of the United Nations. In that regard, we request, A, that the government of the United States of America be demanded to fully respect the immunities of President Nicolas Maduro and First Lady Celia Flores, as well as their immediate release and safe return to Venezuela. 2, that the use of force against the Bolivarian Republic of Venezuela be clearly and unequivocally condemned. Thirdly, that the principle of non-acquisition of territory or resources by force be reaffirmed. And 4, that measures aimed at de-escalation, the protection of the civilian population, and the restoration of international law be adopted. Mr. President, in spite of the seriousness of the events, Venezuela would like to inform this body and the international community that its institutions are functioning normally, that constitutional order has been preserved, and that the state exercises effective control over all of its territory. In accordance with our Constitution, Executive Vice President Delcy Rodriguez is being sworn in as acting President of the Republic, thereby guaranteeing institutional continuity, stability, and internal peace. We wish to convey a message of serenity, confidence, and hope to the Venezuelan people. Venezuela is a nation that believes in peace, work, and dignity. Our commitment is to diplomacy and law, and the law is firm and unwavering. We defend our sovereignty without renouncing our values. We bet on dialogue without accepting imposition. We believe in a future of coexistence, development, and mutual respect among nations. We trust that this Security Council will rise to the historic moment facing humanity and choose the path of legality, collective responsibility, and peace. Thank you very much, Mr. President. I thank the representative of the Bolivarian Republic of Venezuela. I'll now give the floor to the representative of Argentina. Buenos días. Good morning, and thank you very much, Mr. President. Mr. President, the government of the Argentine Republic values the decision and determination demonstrated by the President of the United States of America and by his government in the recent actions taken in Venezuela that resulted in the capture of the dictator Nicolas Maduro, leader of the Cartel of the Suns, declared a terrorist organization by Argentina in 2025, the same year in which Argentina also declared the Tren de Aragua a terrorist organization. The Argentine Republic trusts that these events represent a decisive step forward against narco-terrorism that affects the region, and at the same time open a stage that will allow the Venezuelan people to fully recover democracy, the rule of law, and respect for human rights, in accordance with the principles of international law, and put an end to the oppression exercised for years by the authoritarian regime that plunged the Venezuelan people into poverty and forced 8 million Venezuelans to have to flee their country. Mr. President, the illegitimate regime of Nicolas Maduro has not only constituted a direct threat to Venezuelan citizens through the systematic violation of human rights, the appropriation of the country's resources, and the destruction of democratic institutions, but also to the entire region by leading and exporting its networks of drug trafficking and organized crime. Since the inauguration of President Javier Milei, Argentina has been clear and consistent in its position regarding this situation. We have unequivocally denounced the lack of freedoms and the serious human rights
and we have actively contributed with the determination and responsibility to international efforts aimed at the return of democracy in Venezuela. In March 2024, when others opted for inaction or ambiguity, Argentina granted diplomatic asylum to 6 Venezuelan opposition leaders, assuming an enormous challenge for our representation in Caracas. Subsequently, after denouncing the fraudulent nature of the result announced in the 28 July 2024 elections and recognizing Edmundo González Urrutia as president-elect, Argentina was expelled from Venezuela. Our embassy, where the asylum seekers remained, was subject to a permanent siege. Despite these pressures, the Argentine Republic maintained its unwavering conviction to continue denouncing the situation in Venezuela and to act in every available international forum so that Venezuela could once again embrace freedom and democracy. Mr. President, this is not the first time that Argentina has addressed this Security Council regarding the situation in Venezuela. On the 23rd of December last, we expressed our deep concern over institutional and humanitarian deteriorating situation, noting the effects of the illegitimate regime of Nicolas Maduro transcended the domestic sphere and negatively affected regional stability, constituting a concrete threat to hemispheric security. In the same vein, President Milei stated at the Mercosur summit that Argentina welcomed the pressure from the United States aimed at freeing the Venezuelan people. Today, the international community faces a new scenario that poses a dual challenge: to support a genuine democratic transition in Venezuela and to contribute to the lasting restoration of peace and security in our region. Faced with both challenges, the Argentine Republic stands ready and willing to cooperate. We reaffirm our firm commitment to the full restoration of institutional normalcy and the rule of law in Venezuela, always safeguarding the freedom, human dignity and prosperity of the brotherly Venezuelan people, as well as our determination to continue fighting against the scourge of narco-terrorism and those who contribute to its financing. The process that begins today requires the firm and coordinated commitment of all those countries that have accompanied the Venezuelan people in their long struggle, so that Venezuela can leave behind more than 2 decades of political, humanitarian and social crisis and can finally be reunited with freedom, democracy, respect for human rights and economic prosperity. Mr. President, finally, the Argentine Republic requests the authorities responsible for administering the transition in Venezuela contribute to the immediate release of the Argentine citizen Nahuel Gallo, who has been in a situation of enforced disappearance since the 8th of December 2024, in clear violation of his human rights, and that his prompt and safe return to our country be guaranteed. Thank you. I thank the representative of Argentina and now give the floor to the representative of Chile. Thank you, Mr. President. Chile would like to thank Somalia for convening this informational briefing under the item Threats to International Peace and Security. We'd also like to thank Madam Rosemary DiCarlo, USG for Political and Peacebuilding Affairs, as well as the briefings from Mr. Jeffrey Sachs and Ms. Mercedes de Freitas. President, Chile would like to express our deep concern and firm condemnation of the unilateral military action taken by the United States in the territory of the Bolivarian Republic of Venezuela. We also reiterate consistently our firm commitment to respect for international law, sovereignty and territorial integrity of states and the peaceful settlement of disputes, the prohibition of the threat or the use of the threat of force, and full respect for human rights. These affirmations are accepted by the majority, and they must maintain their importance in order to preserve international peace and security. We said this on the 23rd of December when we took the floor, and we reiterate this today. Chile does not recognize the Maduro regime, but
The serious violations of human rights being faced by Venezuela do not have a military solution. They can only be addressed through peaceful, gradual and inclusive measures that will take into account the legitimate aspirations of the Venezuelan people. Respect for international law does not allow for exceptions, including when it comes to addressing the illegitimacy of a president. Problems must always be solved within the normative framework that we have provided for ourselves as nations. The future of Venezuela must include free elections, citizen participation, and international assistance, and not with actions that could create dangerous precedents or escalate tensions in the region with serious consequences for the population. Chile, as a witness of history and based on our own experience with the loss of democracy, where there was foreign interference that caused extreme damage and pain for the Chilean people, we were able to recover our democracy through a transitional process that was carried out with the assistance of the community, the strength of organized citizens, and through our institutions. Mr. President, Chile would like also to underscore the urgent need to continue with coordinated efforts multilaterally to address transnational organized crime. And we're also convinced that Latin America and the Caribbean must continue to be a zone of peace, because that zone of peace not only serves Latin America and the Caribbean, but the entire world. An armed conflict will have devastating humanitarian consequences in Venezuela and in the region. It will worsen the suffering of the civilian population and worsen even further the displacement, insecurity and vulnerability aspects of the situation. We reiterate that any differences must be dealt with exclusively through peaceful means in strict respect for international law, the sovereignty of states, and the prohibition of the use or the threat of the use of force. As was recently indicated by the heads of state of Brazil, Chile, Mexico, Uruguay and Spain, we express our concern with regard to any attempt to control government administration or foreign ownership of strategic assets. This would be against international law and would threaten the political, economic and social stability of the region. Mr. President, given this complex scenario, Chile welcomes the role that could be played by multilateral fora. And here, particularly, we would refer to the role of the United Nations, and particularly the role that could be played by the Secretary General and by this Council, with the consent of the parties involved to contribute to de-escalating the situation and searching for an understanding that would favor a peaceful and lasting exit to the crisis. Prudent leadership and experience of our organization, as well as the regional organizations and mechanisms, could be very relevant to avoid a further worsening of the situation and to keep open the channels of communication. Chile reiterates its preparedness to support constructive initiatives that will point in this direction and work together with countries of the region and with the international community for stability and mutual understanding and respect for the principles that underpin this organization. Thank you. I thank the representative of Chile for the statement and now give the floor to the representatives of Brazil. Mr. President, we'd like to thank Somalia for convening this emergency session of the Security Council. Brazil categorically and firmly rejects the armed intervention in Venezuelan territory in flagrant violation of the Charter of the United Nations and of international law. The bombings on Venezuelan territory and the capture of its president cross an unacceptable line. These acts constitute a very serious affront to the sovereignty of Venezuela and set an extremely dangerous precedent for the entire international community. The Charter of the United Nations establishes as a pillar of the international order the prohibition of the use of force against the territorial integrity or political independence of any state, except in the circumstances strictly provided for therein. The
acceptance of actions of this nature would inexorably lead to a scenario marked by violence, disorder, and the erosion of multilateralism, to the detriment of international law and institutions. The effects of the weakening of international governance and cooperation mechanisms are already evident. The record number since the Second World War of 61 active armed conflicts, the unprecedented figure of 117 million people in situations of humanitarian disaster around the world, reflecting the increase in wars, displacement, and crimes against humanity, such as the genocide in Gaza, and the global increase in military spending, which is approaching the historical mark of $2.7 trillion. As Brazil has reiterated on numerous occasions, the norms that govern coexistence among states are mandatory and universal. They do not admit exceptions based on ideological, geopolitical, political, economic, or any other kind of interests or projects. They do not admit that the exploitation of natural or economic resources justifies the use of force or the illegal change of a government. The multipolar world of the 21st century, which promotes peace and prosperity, must not be confused with spheres of influence. We cannot accept the argument that the end justifies the means. This reasoning lacks legitimacy and opens the possibility of granting the strongest the right to define what is just or unjust, what is right or wrong, and even to ignore national sovereignties, imposing the decisions to be taken by the weakest. Latin America and the Caribbean have made peace a conscious, lasting, and irreversible choice. The resort to force in our region evokes chapters of history that we believed we'd left behind us and endangers the collective effort to preserve the region as a zone of peace and cooperation, free of armed conflicts, respectful of international law and the principle of non-intervention. Armed interventions in the past have had profoundly negative and lasting consequences. Contrary to freedom and democracy, those interventions produced authoritarian regimes and serious violations of human rights, leaving as a lamentable result thousands of dead, political prisoners, tortured persons and disappeared persons whose families still today search for their loved ones, as well as justice and reparation. For the first time in South America, a profoundly alarming event has occurred. An external armed aggression with the deployment of troops and bombings in a neighboring country contiguous with Brazil, with which we share more than 2,000 kilometers of border. Mr. President, South America is a zone of peace. I insist upon that. We have upheld and will uphold with full determination peace and non-intervention in our region. Furthermore, Brazil does not believe that the solution to the situation in Venezuela lies in the creation of protectorates in the country, but rather in solutions that respect the self-determination of the Venezuelan people within the framework of its constitution. The events of January 3rd transcend the regional sphere. The attack on the sovereignty of any country, regardless of the direction of its government, affects the entire international community. This and other cases of armed intervention against the sovereignty of a country, its territorial integrity, or its institutions must be vehemently condemned. It is up to this Council to assume its responsibility and react with determination, clarity, and obedience to international law in order to prevent the law of force from prevailing over the force of law. Brazil trusts that the future of Venezuela will be built by the Venezuelan people through dialogue, without external interference, and within the framework of international law. Thank you. For Brazil, for the statement, and now give the floor to the representative of Mexico. Mr. President, thank you for having convened this emergency meeting of the Council. The government of Mexico has already
made its position clear with regard to our condemnation of the military aggression of January 3rd against targets in the territory of Venezuela, in clear violation of Article 2 of the Charter of the United Nations. These actions must not be allowed, as they constitute a severe blow to the Charter and to multilateralism. Mexico would like to clarify the following points. 4 points. Number 1, the prohibition of the threat or the use of force against the sovereignty, territorial integrity, or political independence of any state is the foundation of international law, regardless of the country or the government involved. 2, rhetoric pointing towards the escalation or expansion of military actions, including to other countries in our region, threatens regional stability. 3, the Security Council has the responsibility and, above all, it has the obligation to act decisively and without double standards in the face of serious violations of the Charter, and to restore international peace and security in strict adherence to the provisions of Article 24 and observing Article 27.3. 4. It is for sovereign peoples to decide their destiny and to find peaceful, democratic and negotiated solutions to their political differences within a framework of unrestricted respect for human rights. Regime change by external actors and the application of extraterritorial measures are not only acts contrary to international law, but historically all they've done is exacerbate conflicts and weakened the social and political fabric of nations. Mr. President, esteemed colleagues, despite the political differences among our governments, Latin America and the Caribbean has been forged as a zone of peace. Collectively, we have, for decades now, resorted to the available political and legal mechanisms available in order to peacefully settle disputes. The current violation of this fragile balance gravely endangers the political stability and the security of the region, as well as the well-being of our peoples. Those who justify these acts deny the independent history of Latin America and the Caribbean. Mexico, firm in its constitutional principles of foreign policy and its pacifist calling, emphatically reiterates that dialogue and negotiation are the only legitimate and effective ways to resolve existing differences. I reiterate the call of the President of Mexico for the UN to do more to resolve this and other conflicts, including through the good offices of its Secretary General. In view of the events of January 3rd, Mexico reaffirms its willingness to support any effort at facilitating dialogue, mediation, or providing assistance that promotes peace in the region. Finally, we cannot overlook the fact that this session of the Council has been held only now,
when what we face is a serious situation that puts international peace and security at risk. Thank you. I thank the representative of Mexico for his statement and now give the floor to the representative of Paraguay. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. The delegation of Paraguay would like to thank the Presidency and the members of the Council for the opportunity to take the floor at this very important session. Paraguay has already pointed out the situation with regard to Venezuela under President Maduro and the Cartel de los Soles and the criminal organization that was formally declared as such by our national authorities, and his continued presence was a threat to the region. The exit of the leader of that terrorist organization should immediately lead to the restoration of democracy and to the rule of law in Venezuela, making it possible for the popular will expressed at the ballot box will be the foundation for reconstruction in Venezuela. We would also urgently call for the release of all political prisoners that are still in the prisons of that country, and we reiterate that a return to democratic institutions in Venezuela and the possibility for the legitimately elected authorities to resume their functions are fundamental steps for stability in the region. And finally, Paraguay reaffirms our historic commitment to the peaceful settlement of disputes, and we would observe the current events in Venezuela, and we would urge democratic means to be given priority for an ordered transition. Our commitment will continue to be to the democratic principles of the rule of law and peace in society. Thank you very much, Mr. President. I thank the representative of Paraguay for his statement and now give the floor to the representative of Cuba. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. Mr. President, Cuba aligns itself with the statement to be delivered by Eritrea on behalf of the group of friends of the United Nations and Uganda on behalf of the non-aligned movement. Since September of last year, Cuba has been denouncing the hegemonic and criminal plans of the United States and its aggressive projection against Venezuela and the region. We have clearly been exposed to the serious and unpredictable consequences of the irresponsible conduct of the U.S. government for the political, social, and economic stability of Latin America and the Caribbean, and more generally, for international peace and stability. On the 23rd of December, in this very body, we set out the sequence and escalation of actions carried out by the United States with the aim of overthrowing by force the legitimate and constitutional government of Venezuela and destroying the civic military union. The United States resorted to various maneuvers to materialize its plans for domination, including vile extrajudicial executions and acts of piracy, maritime terrorism against oil tankers and their crews in international waters of the Caribbean Sea, as well as the imposition of an illegal naval blockade against Venezuela and the politically motivated designation of its legitimate government as a foreign terrorist organization. Previously, it had subjected that country to prolonged unilateral coercive measures, economic asphyxiation, smear campaigns, and attacks against some of its important institutions, exposing it to a cruel psychological war. With absolute disrespect for the Charter of the United Nations and international law, including relevant resolutions adopted by this Council and by the General Assembly, on January the 3rd, United States military forces attacked Venezuela with total brutality and treachery, and in an unacceptable and barbaric act kidnapped its legitimate president, Nicolas Maduro, and his companion, Celia Flores. Cuba condemns in the strongest terms the military aggression of the United States against Venezuela, while categorically reiterating its absolute support and solidarity with the Venezuelan people, and
joins the demand that the government of the United States release the constitutional president, Nicolas Maduro Moros, and his companion, Celia Flores. In the criminal attack perpetrated by the United States, 32 Cubans lost their lives in combat actions. They were carrying out missions on behalf of the Revolutionary Armed Forces and the Ministry of the Interior at the request of counterpart bodies of that country. Our compatriots honorably fulfilled their duty and fell after fierce resistance in direct combat against the attackers or as a result of the bombings of the facilities. Through their heroic actions, they upheld the solidarity sentiments of millions of our compatriots. Mr. President, the cowardly U.S. aggression against Venezuela is a criminal act in violation of international law and the UN Charter. It constitutes a dangerous escalation of the sustained war campaign waged for years by the United States against that sister nation, which intensified since September 2025 with the aggressive naval deployment in the Caribbean Sea under mendacious pretexts and unfounded accusations without any evidence whatsoever. The U.S. military attack against Venezuela has no justification whatsoever. It does not respond to any provocation, nor does it possess legitimacy. It is based on the aberrant doctrine of peace through force and undermines the stability and peace that have characterized our Latin American and Caribbean region for years. It seeks to promote a change in the constitutional order of the Bolivarian Republic of Venezuela, freely chosen by its people. Its ultimate objective is not the false narrative of combating drug trafficking, but control over Venezuela's land and natural resources, as has been openly and shamelessly declared by President Trump and his Secretary of State. This is an imperialist and fascist aggression with objectives of domination that seeks to revive the U.S. hegemonic ambitions over our America, anchored in the outdated Monroe Doctrine. It also seeks to intimidate and subjugate the governments of Latin America and the Caribbean. Cuba calls for an urgent reaction from the international community against this criminal attack on Venezuela, a peaceful nation that has not attacked the United States or any other country. Call on all governments, parliaments, social movements, and peoples of the world to condemn the U.S. military aggression against Venezuela and to confront this act of state terrorism that threatens international peace and security and seeks to impose a new doctrine of U.S. imperialist domination in Latin America and the Caribbean and in the world. Mr. President, the recent statements about imperialist plans to steer Venezuela toward a supposed safe, appropriate and prudent transition are totally unacceptable. In the U.S. vision of domination, this means imposing a puppet government functional to its predatory goals, particularly unrestricted access to and plundering of natural resources that, by right, belong to the Venezuelan people. Determining the destiny of Venezuela is an exclusive right of its people, without external interference. If the U.S. government, lacking any moral authority whatsoever, truly cared about the peace, freedom and justice of Venezuelan men and women, it would not have bombed that territory with absolute disregard for the lives, sovereignty and territorial integrity of that nation. I conclude by reaffirming our unwavering adherence to the proclamation of Latin America and the Caribbean as a zone of peace, and by calling for action with the firmness and determination that current circumstances demand, always in defense of international law and of a future of peace for all the peoples of our America and of the world. Thank you. I thank the representative of Cuba for the statement and now give the floor to the representative of Nicaragua. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. President. Latin America and the Caribbean is a zone of peace, declared by the Community of Latin American and Caribbean States, CELAC, on behalf of all of the peoples and governments of our region. This zone of peace must be fully respected by all governments of the world without exception, and in particular by the members of this Security Council,
responsible for international peace and security. This decision, these desires and aspirations of our peoples, are a noble contribution to world peace, to international law, and to the United Nations Charter. Mr. President, Nicaragua supports what was expressed by the interim president of Venezuela, Delcy Rodriguez, calling for the immediate release of the constitutional and legitimate president of Venezuela, Nicolas Maduro Moros, and the first fighter of the country, Celia Flores. All member states of the United Nations have the duty to respect international law, the spirit, the purposes and principles of the United Nations Charter, the right to sovereignty, self-determination, territorial integrity of states, non-interference, and peaceful coexistence. The Venezuelan people are a dignified people, the people of Bolivar, of Chavez, and of Maduro, and they have never bowed the knee. They defend their right to sovereignty and their right to peace. Nicaragua will always stand with Venezuela. Peace has been deeply damaged, and the human family, the community of nations, the peoples of the world. We urge all of you to respect the dignity of all peoples. Thank you. I thank the representative of Nicaragua for the statement, and now give the floor to the representative of Trinidad and Tobago. Thank you, Mr. President. The delegation of Trinidad and Tobago thanks the Security Council for convening this urgent meeting following the recent developments in the Bolivarian Republic of Venezuela. My delegation addresses this council today as a Caribbean nation, a neighbor of Venezuela, and a long-standing advocate for peaceful coexistence and the rule of law. The government of Trinidad and Tobago has taken note of the military operations undertaken by the United States in Venezuela. We remain committed to cooperative efforts led by the United States to disrupt and dismantle networks that enable transnational crime across the Americas, whose activities have had debilitating effects on the security and stability of the region. Trinidad and Tobago remains steadfast in its support of the United States of America's initiatives that strengthen regional security, reinforce the rule of law, and safeguard the well-being of our societies, the Americas. The government of Trinidad and Tobago, while valuing its long-standing and robust partnership with the United States, remains equally committed to maintaining a constructive and respectful relationship with the Bolivarian Republic of Venezuela, and continues to uphold peaceful relations with the people of Venezuela. The delegation of Trinidad and Tobago wishes to underscore its long-standing relationship with both the United States and Venezuela, and stands ready to work collaboratively with all partners who share the aspiration of a safer, more prosperous and stable hemisphere. Mr. President, I thank you. I thank the representative of Trinidad and Tobago, and now give the floor to the representative of Spain. Mr. President, at the outset, allow me to congratulate you on assuming the monthly presidency of the United Nations Security Council and wish you every success in the discharge of your duties. I thank you for convening this important meeting, and I also extend my thanks to the Under-Secretary General and Head of Political and Peacebuilding Affairs of the United Nations, Madam Rosemary DiCarlo. Thank her for the information provided today. Spain
would like to express our profound concern about what's happened in Venezuela. And as the Secretary General of the United Nations has noted, it constitutes a very worrying precedent with implications for the region and for the world. Respect for the principles of the Charter of the United Nations, particularly the sovereignty and territorial integrity of states and the prohibition of the use or the threat of use of force, is indispensable to ensure international coexistence. Spain defends the validity of an international order that is rules-based, where it is imperative, as set out in Article 2.3 of the Charter, to pursue the peaceful settlement of disputes. We consider that these actions constitute a very troubling precedent for regional peace and security, and we recall that the natural resources of a country are part of its sovereignty. We share the view that the fight against organized crime in the region is a priority, but that fight can only be waged through international cooperation. We also share the view that it is a priority to defend human rights and fundamental freedoms in Venezuela. Spain seeks to work for peace, stability, democracy, progress, and social justice, and that cannot be imposed by force. It can only come through broad dialogue among Venezuelans, leading to a peaceful and democratic Venezuelan solution. It must be the voice of the Venezuelan people that determines the destiny of Venezuela. Spain did not recognize the results of the most recent elections held in Venezuela in July 2024 and has been unequivocal in condemning any violations and threats to human rights. We have provided protection to opposition leaders who have been persecuted and have expressed firm rejection of any undemocratic conduct and abuses against the citizenry, but such condemnation can only be exercised with full respect for international law. Spain will work to unite Venezuelans, men and women, and is committed to dialogue and peace because force never brings more democracy. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Spain, and I now give the floor to the representative of South Africa. Thank you, Mr. President. We wish to congratulate the Federal Republic of Somalia for assuming the rotating presidency of the United Nations Security Council for the month of January, and wish you and your delegation all the best in the execution of your responsibilities. We also wish to thank you for convening this debate and affording all UN member states to participate, because the situation in Venezuela concerns all UN member states, given its implications for the credibility of the UN Charter and international law. Mr. President, integral to the maintenance of international peace and security since the establishment of the United Nations is the understanding that no nation can claim to be legally or morally superior to another. We are all nations born out of different histories and contexts, ascribing to the common values and principles enshrined in the Charter of the United Nations. Chief amongst these principles is the sovereign equality of all its members. By signing the Charter, we have all committed to settle our international disputes by peaceful means in such a manner that international peace, security, and justice are not endangered. We have also committed to refrain in our foreign relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes and principles of the United Nations. The International Court of Justice has also previously affirmed that international law prohibits the use of force and intervention in another state's affairs. Due to the shortcomings of its predecessor, the League of Nations, the UN was created to prevent countries from resorting to conflict, to settle disputes and prohibit the use of force unless it is done in a legally prescribed manner. In doing so, the UN has played a pivotal role in ensuring peaceful existence amongst nations, including in ending the colonial subjugation by powerful countries over others, underpinned by respect for the equal rights of nations, large and small, and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples. Joining the organization and committing to its principles afforded protection to many of us, with the supposed assurance that no longer would one nation be seen as inferior to another. Unfortunately, when countries ignore the Charter and act contrary to its central premise, it undermines the credibility of the entire system, in which we all undertake our international relations. The stability of the international system depends not only on the respect, but on the consistent application of these established legal norms.
We all benefit from a rules-based international order based on international law. When we break those norms, we invite anarchy and an environment where might makes right, ignoring the complexity of interrelations and interdependence in our modern world. Mr. President, the unilateral military strikes carried out by the United States of America against Venezuela and the abduction of President Nicolas Maduro and his spouse from Venezuelan territory for transfer to the United States wantonly violates the sovereignty and territorial integrity and independence of Venezuela. These actions are also in stark contrast to our established legal norms, reinforcing the belief that might is right and undermining diplomacy. History has repeatedly demonstrated that military invasions against sovereign states yield only instability and deepen crises. Unlawful unilateral force of this nature undermines the stability of the international order and the principle of equality among nations. Such use of force also undermines the institutional infrastructure established to regulate relations among nations. We have seen examples of these in Libya, Iraq, and countless cases in Africa where foreign interventions and interference create security crises and undermine national governance institutions cultivated through nuanced and complex national contexts. South Africa stresses that allegations of internal governance challenges, human rights concerns, or acts of criminality by a head of state cannot justify a breach of the Charter's prohibition on the use of force, particularly Article 2.4 of the Charter. The peaceful resolution of disputes and internal matters must proceed in accordance with international law and through multilateral mechanisms. Additionally, under international law, a state has exclusive jurisdiction over persons and conduct within its own territory. Any enforcement of domestic law, including arrest by one state within the territory of another state without the state's consent, is an unlawful violation of sovereignty. There are recourse mechanisms at the disposal of states to implement international law. This includes taking action by bringing a case before the International Court of Justice or seeking action from the Security Council. We note the statement issued by a group of concerned countries, mainly those in the Latin American region, most affected by the developments in Venezuela, which reiterates that the situation in Venezuela must be resolved exclusively through peaceful means, through dialogue, negotiation, and respect for the will of the Venezuelan people in all its expressions, without external interference and in accordance with international law. Mr. President, each one of our countries, including our peoples, that are members of this organization and that are bound to its charters, have the right to determine our own democratic and political path. This inherent charter-given right to self-determination cannot and should not be abrogated. If we do not stand up for the sovereign rights of any nations or states when they are undermined and wantonly violated, then which one of us are safe or are guaranteed protection by the principles of the Charter and international law? Failure to act decisively against such violations is tantamount to inviting anarchy and normalizing the use of force and military might as the main form of discourse in international politics. This would be a regression into a world preceding the United Nations, a world that gave us two brutal world wars, and an international system prone to severe structural instability and lawlessness. We cannot afford to proceed into a complex future without the stability and protection afforded by international law. I thank you. I thank the representative of South Africa for his statement, and I now give the floor to the representative of Eritrea. Thank you, Mr. President. Allow me at the onset to congratulate Your Excellency and the government of the Federal Republic of Somalia on assuming the presidency of the Security Council for the month of January. We also extend our congratulations to Bahrain, Colombia, the Democratic Republic of Congo, Liberia, and Latvia on their election to the Security Council. As this is the first Security Council meeting of the year, allow me to pay tribute to the outgoing members, Algeria, Guyana, the Republic of Korea, Sierra Leone, and Slovenia, for their dedicated service and diligent work throughout the tenure of the Council. I read this statement on behalf of the Group of Friends in Defense of the United Nations Charter. The Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations condemns the most unequivocal and categoric manner
the act of aggression perpetrated on 3rd January 2026 against the Bolivarian Republic of Venezuela by special forces of the United States of America, which included armed attacks against civilian and military objects in the capital city of Caracas, as well as in various other cities of the Venezuelan territory, and the illegal abduction of the President and First Lady of the Bolivarian Republic of Venezuela, His Excellency Mr. Nicolas Maduro Moros, and Her Excellency Mrs. Celia Flores de Maduro. The member states of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations expressed their serious concern at the impact of these series of armed attacks, particularly on civilians and their human rights to life, which have included military assaults with U.S. Special Forces, while emphasizing that such acts constitute a clear breach of international law and of each and every principle governing international relations, including those foreseen in the Charter of the United Nations. The Group of Friends of the Charter of the United Nations reiterates its firm support to the constitutional government of the Bolivarian Republic of Venezuela under the leadership of President Nicolas Maduro Moros, and emphasize the importance of ensuring strict respect for the inviolability of the immunities accorded to heads of states and government under international law, while renewing its unwavering solidarity with the Venezuelan people in their ongoing struggle for defending their homeland, including through the actions it may take within the framework of international law to exercise its inalienable right to self-defense. The member states of the Group of Friends in Defense of the Charter of the United Nations demand for the immediate cessation of all hostilities against the Bolivarian Republic of Venezuela, for the full respect for the sovereignty, territorial integrity, political independence, and inalienable right to self-determination of the Bolivarian Republic of Venezuela, for the immediate return of President Nicolas Maduro and First Lady Celia Flores de Maduro to the Venezuelan national territory, and for those responsible for these acts of aggression to be held accountable. The Group of Friends of the Charter of the United Nations firmly reject the remarks delivered by the President of the United States of America during the afternoon of 3rd January 2026, in which he not only threatened with additional airstrikes against the Venezuelan territory, but also claimed to resolve to occupy and govern the Bolivarian Republic of Venezuela, and to exploit the natural resources and administer the wealth of that sisterly nation in what can only be described as the confession of a clear plan of annexation that foresees, among others, the complete obliteration of the inalienable rights of the Venezuelan people, as well as the fundamental rights of the Venezuelan state as a whole. The member states of the Group of Friends of the Defense of the Charter of the United Nations call on all relevant international bodies, including the Security Council and the General Assembly of the United Nations, to swiftly mobilize in order to uphold the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations, and to urgently take appropriate measures to avoid further escalation of the situation on the ground, particularly additional acts aggression against the sovereignty and territorial integrity of the Bolivarian Republic of Venezuela, and preserve both regional and international peace and security. I thank you. I thank the representative of Eritrea for her statement, and I now give the floor to the representative of Islamic Republic of Iran. Thank you. In the name of God, the compassionate and merciful, thank you, Mr. President, for convening this emergency and important meeting. We acknowledge the presence of the Undersecretary General, Mr. Carlo, at this meeting and extend our appreciation to Professor Jeffrey Sachs for his informative and insightful briefing. At the outset, I would like to extend my warm congratulations to Somalia on its assumption of the presidency of the Security Council for this month. I also wish to warmly congratulate the newly elected members of the Council, Bahrain, Colombia, Republic of Congo, Latvia, and Liberia on their election. Mr. President, the Islamic Republic of Iran would like to associate itself with the statement delivered by Eritrea on behalf of the Group
of Friends in Defense of the Charter of the United Nations and wishes to make the following remarks in its national capacity. First, the Islamic Republic of Iran condemns in the strongest possible terms the military attack carried out by the United States of America against the Bolivarian Republic of Venezuela. This illegal act constitutes a state terrorism, a manifest violation of Charter of the United Nations, particularly Article 2, Section 4 and Section 7, and peremptory norms of the international law, and amounts to an internationally wrongful act and a full-fledged act of aggression. Such military aggression against an independent member state of the United Nations establishes a serious breach of regional and international peace and security, with far-reaching consequences for the international system as a whole. Second, the abduction of democratically elected President and the First Lady of the Bolivarian Republic of Venezuela by the United States constitute a flagrant violation of customary international law, including the principles of the inviolability of the immunities accorded to the heads of a state and government under international law, and represent a grave assault on the sovereign equality of states. The Islamic Republic of Iran recalls Venezuela's inherent right to self-defense and underscores the legal responsibility of the United Nations, in particular the Security Council, to take immediate measures to halt this unlawful aggression and to ensure accountability for all those responsible. Iran also affirms its full support for the people and legitimately elected government of the Bolivarian Republic of Venezuela. Third, the United States is openly seeking to substitute its domestic law for international law and the Charter of the United Nations. This represents a serious warning to the international community and to all member states. Such unlawful conduct strikes at the very foundations of the Charter-based international legal order and establishes a dangerous precedent that must be categorically and unequivocally rejected. The so-called declared U.S. policy of peace through strength prescribes the law of the jungle and the rule of force instead of rule of law, and if tolerated and normalized, would render the collective security system established by the Charter ineffective and devoid of purpose. Fourth, the continued inaction and paralysis of the Security Council in the face of the explicit threat and act of aggression by the United States have fostered a dangerous climate of impunity. It has emboldened the United States to persist in unlawful conduct that poses a grave threat to regional and international peace and security. In recent days, the President of the United States has repeatedly issued public threat of the use of force against the Islamic Republic of Iran in manifest violation of Article 2 of the Charter of the United Nations. At the same time, the United States is shedding crocodile tears for the Iranian people and hypocritically claims to support them while maintaining a well-documented record of intervention, the use of force, and the imposition of unlawful unilateral coercive measures against Iran. This includes its direct political, military, and operational support and involvement for Israeli regime unlawful joint war of aggression against Iran between 13 and 24 June 2025, which resulted in loss of civilian life, attacks on civilian infrastructure, and serious violations of fundamental human rights of the Iranian people. Iran reaffirms its inherent right to defend its sovereignty, territorial integrity, and national security, and to protect its people against any foreign interference. The United States of America will bear full responsibility for consequences arising from its unlawful threats and any ensuing escalation. Finally, we unequivocally reject the baseless allegation and unwarranted reference made to Iran by the representative of the United States at this meeting. The facts on the ground are clear, speak loudly for themselves, and cannot be concealed by political rhetoric or manufactured narrative. I thank you.
I thank the representative of Islamic Republic of Iran and now give the floor to the representative of Uganda. Thank you, Mr. President. I have the honor to deliver this statement on behalf of the Non-Aligned Movement, NAM, representing 121 member states united by the shared principle of respect for the sovereignty and territorial integrity of all nations. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement, NAM, categorically condemns the act of aggression perpetuated by the United States of America against the Bolivian Republic of Venezuela since the early hours of 3rd January 2026, which included armed attacks against civilian and military locations in the capital city of Caracas, as well as in various other cities of the Venezuelan territory. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement notes that attacks in question, which blatantly violate the purposes and the principles enshrined in the Charter of the United Nations, as well as the norms of the international law, constitute an act of war against the Bolivian Republic of Venezuela that undermines both regional and international peace, security, and stability, while also threatening the very right to life of the Venezuelan people. Excuse me. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement demands the immediate cessation of all hostilities against the Bolivian Republic of Venezuela, the full respect of the sovereignty, territorial integrity, political independence, and inalienable rights to the self-determination of Bolivian Republic of Venezuela, and that those responsible for those ongoing acts of aggression to be held accountable. The Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement reaffirms the inviolability of the immunities accorded to the heads of states and government under international law, which constitute a fundamental pillar of sovereign equality, peace, coexistence, and stable international relations. These immunities, firmly rooted in customary international law and consistent with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, must be respected universally without discrimination, and any actions or measures that undermine or selectively disregard them risk eroding multilateralism, destabilizing international relations, and weakening the international legal order. Excuse me. Mr. President, the Coordinating Bureau of the Non-Aligned Movement reiterates its full solidarity with the people and government of the Bolivian Republic of Venezuela at this critical time, and insists that military solutions are not viable avenues for addressing any issues that may be of concern between members of the international community. I thank you, Mr. President. I thank the representative of Uganda for the statement. I now give the floor to the representative of Cuba, who has asked for the floor to make a further statement. Gracias, señor presidente. Thank you, Mr. President. Mr. President, my delegation feels it must take the floor again to respond to the unfounded accusations formulated by the United States against Cuba. We are indignant that those that have led unilateral aggressions and systematic violations of international law pretend to judge other sovereign states with a totally immoral and irresponsible attitude lacking respect. We fundamentally reject the accusations that Cuba has intelligence assets in Venezuela. These kinds of statements lack any factual base and are a clear attempt to take the eyes of the world off the criminal acts of the United States in the region. Cuba strictly respects the sovereignty, independence, and inalienable right of the Venezuelan people to decide their own destiny, as established by the United Nations Charter.
Cooperation between both countries is in multiple spheres, has legitimate bases, and is based on bilateral agreements signed by both parties. As has been declared by the revolutionary government, the 32 combatants that fell in terrorist acts perpetrated by the United States were in missions of the revolutionary forces at the request of Venezuela. Those patriots were heroic in their action, showing solidarity with millions of Cubans. These accusations attempt to suggest that Cuba is involved in this way in Venezuela. We categorically reject that. Thank you. I thank the representative of Cuba for the statement. There is no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned. Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos
en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. Por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional.
Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva la patria! Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplida los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia.
la nueva Asamblea Nacional. El debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva la patria de Venezuela! Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplida los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia,
pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Silvia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva! Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, Los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea.
paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva la patria! Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, Los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria,
como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva la patria de Venezuela! Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, Los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero.
Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. Por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso.
reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva! Si así lo hiciere, que la patria y justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca. Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Cilia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso.
extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva la patria! Si así lo hiciere, que la patria y la justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios. Los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. Por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolas Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha, batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Silvia. Los vas a ver, Silvia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Estudios y labores públicas en el área deportiva. Hoy tenemos muchas más medallas olímpicas que las que... Tengo la convicción de que con unión y más unión, con unión y más unión, con unión y más unión, nosotros vamos a vencer. Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy, Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca.
cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca, y estamos firmes en unidad absoluta para lograr los objetivos de la paz en Venezuela, de sacar al país adelante y que regresen Nicolás y Silvia. Esta nueva Asamblea Nacional, el debate será provechoso, extraordinario e interesante. Rodríguez Gómez para la presidencia de la Asamblea Nacional. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Estamos aquí reclamando los derechos. Trump, devuélvenos a Nico y a la primera combatiente. ¡Viva la patria de Venezuela! Si así lo hiciere, que la patria, justicia y paz, Magali Colmenares, por los empresarios, Los padres libertadores. Jura por su honor. Juro por la patria. Juro por la valentía y la sangre derramada de nuestras soldadas y soldados caídos en los hechos abominables del pasado 3 de enero. Juro por la vida plena que nuestra patria se merece. Juro por la paz que construiremos todas y todos juntos. Que no daré reposo a mi brazo hasta ver cumplidos los propósitos que se me asignan como presidente de la Asamblea Nacional. por los estudiantes de educación básica, Amy Guevara, por Pedro Montoya. El sagrado territorio de la patria venezolana, su cielo sagrado. Hemos buscado la guerra. Nunca. Como diputado, como hombre de esta patria, como padre de mis 4 hijos, como persona que ama hasta los huesos este territorio sagrado, que mi función principal en los días por venir, mi función como hombre, como diputado, como presidente de esta Asamblea Nacional, será recurrir a todos los procedimientos, a todas las tribunas y a todos los espacios para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, mi hermano, mi presidente. Diputadas y diputados investidos de la Asamblea. Paz, democracia, soberanía, dignidad, unidad, lucha.
batalla y victoria. Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que... मेरा नाम है एल लाइमयूम मनीमोल शर्मा। मैं साइटोन बाज़ार में रहता हूँ और मैं सीआरपीएफ से सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ और मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पटेल राष्ट्रपति जी के भी मुझे सम्मानित किया गया था और मैं साइटोन बाज़ार का रहने वाला हूँ। तो आज यहाँ पे बम फटा हुआ है और 2 भी घायल हो चुका है। हाँ, तो उसके बारे में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताइए। अचानक ही आज ही हम भी आराम से अपने घर में सो रहे थे तो अचानक ही 5:15 साढ़े 5 बजे करीब इतना तगड़ा धमाका हुआ कि मेरे घर का खिड़की दरवाजे भी गर 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 ऐसे करने लगा। तब मैं बिस्तर से एकदम उतर के अपना जो अभी फ़िलहाल ड्रेस पहना हुआ है यही ड्रेस पहन के मैं अपना गाड़ी छोटा वाला एक्टिवा लेकर के और प्रधान को मैंने इंफॉर्मेशन दिया नदी के पास पुल के पास चलो तब कंफर्म हो जाएगा। तो उधर जा कर के पुल के पास मैं खड़ा हुआ तो अपना हमारे रेजिमेंट अपना सीआरपीएफ का भी और ये फोक्सा इकाई का और ये ओसी और अदर जितना भी पुलिस संबंधित है क्योंकि मैं इनसे बड़े अच्छा संपर्क में मैं रहता हूँ आज तक और इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके फ़ोन करके पूछा शर्मा जी कहाँ क्या हुआ है। तो मैंने इनको सबको इन्फॉर्मेशन दिया सर मैं अभी फ़िलहाल पुल में हूँ और इन्फॉर्मेशन मालूम होते ही सर आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पुल पे खड़ा हूँ सीआरपीएफ की बंकर में। तो ये चीज़ हमने बताया तो थोड़ी देर में बंगाली लोगों को प्रधान ने फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद उन्होंने बंगाली का एक लड़के ने हमको बताया फलाना बोल के एक मैतई का घर है उधर क्वांग मनी बोल के उसका नाम है, दुनिया ने ऐसे नाम रखा हुआ है, उसकी घर में जो है धमाका हुआ है बोल के एक बंगाली लड़के ने हमसे इन्फॉर्मेशन किया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं हर जगह में जितना आर्मी से जितना हमारा संपर्क है पैरामिलिट्री का हो जाए कोई भी हो मैंने इनको बता दिया। बताने के बाद तो तू हमारे रेजिमेंट का जो हमारा अंदर में सीडेन में साइड में रह रहा है और फोगोक्सा इकाई में रह रहा है, कंगबाई में रह रहा है, हर फोर्स यहाँ आ गए इकट्ठा हो गए और अभी जो है हम लोग भी अंदर घुसे। बम ब्लास्ट हुआ था उस जगह पे सारे औरतें भी बाहर आ गए और न पुल पार करके हम लोग उसी गांव में घुसे थे। घुसने के बाद हम लोग ने हालत देखा, हालत देखने के बाद बाहर निकलते हम बाहर निकलते हम लोग यहाँ बाहर निकलते ही जोरदार एक और धमाका बांस की बम्बू के बीच में जो धमाका हुआ है तीसरा धमाका है। ये होते ही हमारा कोई घायल नहीं हुआ उस समय तो मैं खुद उसकी ब्लास्ट के पास ही मैं खड़ा था। तब मैं दौड़ के आया मेन रोड पे, थोड़ा रोड में आते ही मेन रोड यूँ पहुँचा, मेन रोड का बाएं साइड में एक और धमाका हुआ। उसी धमाका से एक साइटोन का एक्समैन है वो भी सीआरपीएफ से, वो जवान जो है अभी इंजर्ड हुए हैं। एक लेडीज़ है हाई कौन का महिला है वो भी घायल हुआ है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं मणिपुर में कि हम शांति ला रहा है बोल करके श्री अजय बालाजी अपना राज्यपाल गवर्नर जो है उन्होंने आदेश दिया हम लोगों को हथियार सौंपो ये करो। तो हमारा पास जो भी हथियार थे अजय बाला ने जैसे बोला हम लोग तो अच्छी बात है, एक सरकार ने अच्छा सुझाव ला रहे तो हम उनके पीछे चलना चाहिए बोल के कोई भी हथियार हमारे पास नहीं है, हम लोग ने सब इंडिया मणिपुर गवर्नमेंट को सौंप दिया है। तो सौंपने के बाद भी अपना जो टेररिस्ट पार्टी कुछ है हथियार गैंगबंदी अभी तक इनकी हथियार अपना इंडिया गवर्नमेंट की जितना मिलिट्री रहा है इनकी हथियार को अभी तक रिकवरी क्यों नहीं किया। मैतई लोगों को तो हिंदू लोगों को तो पूरा हथियार को इन्होंने रिकवरी कर दिया, जमा कर दिया। तो हम लोगों के ऊपर फिर बार बार ऐसे ही हम शांति को जो अमन में ला रहे बोल के हम भी खुश था। आज मैं थार की बात देख लो 2-2.5 साल की बात, आज इतना जोरदार धमाका 4 धमाके हुए गानुकोन में, उसमें बाल बाल बचे हम, मैं भी बचा, उसके बगल में हम खड़े थे। मेरे सामने का एक लेडीज़ एक जेन जो है घायल हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मणिपुर में अच्छा शांति आए। हम तो बार बार अजय बाला जी को हम तो यही चाहते हैं गवर्नर जी को कि ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए क्योंकि हिंदू के ऊपर ही इतना तगड़ा आक्रमण क्यों हो रहा है बार बार। हमने क्या किया? हमने आज तक मणिपुर में क्या किया? हमने अपना गांव को ही बचाव किया है। कुकी ने हमारा गांव को ही आग जलाने के लिए
इन्होंने अपना हाथ में हथियार, बढ़िया अच्छा हथियार वेपन लेकर के हमें हमला किया है। हम तो डबल ब्रेन से ही अपना गांव की बचाव किया है। हमने इनके अलावा कुकी के गांव में घुस करके हमने किसी को भी हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतना नुकसान नहीं पहुंचाने के बाद भी कुकी हमसे चाहता क्या है, हम तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और हिंदू के ऊपर ही मेन टारगेट क्यों कर रहा है मैतई हिंदू के ऊपर ही। हमारा इनसे हमारा कोई जाति दुश्मनी है ही नहीं, कोई हमारा नहीं। ऐसे ही बड़ा तत्व में आने वाला, बाहर से आने वाला, इन्हीं के पीछे। और अपना इंडियन आर्मी भी जितना भी है, हम ये चाहते हैं इंडियन आर्मी से भी कि ये जो आज हुआ है ये बार बार ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी CRP के कंपनी आज तैनात है, पुल पे भी इनकी तैनात है, मोर्चा बंकर बना हुआ है। तो अंदर में इनकी कैंप के नज़दीक 100 मीटर पे कैसे बम ब्लास्ट हुआ? हम तो सवाल कहते हैं इंडिया गवर्नमेंट से, आप लोगों ने भेजा हुआ जितना फोर्स है उनके सामने ऐसे बम ब्लास्ट क्यों हो रहा है ये बार बार? अभी थोड़े दिन पहले ये अपना 16 तारीख में इस साइड में भी अपना फोकजाई खाई में तोरबुंग बांग्ला में घुस रहे थे कुछ मैतई लोग, उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया। ये बार बार ये चीज़ें होना नहीं चाहिए, ये बार बार होता क्यों है? अजय बालाजी से हम अभी भी गवर्नर साहब से हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ से आइंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैतई के ऊपर हम लोग ने क्या गलती किया कुकियों के ऊपर को, हमने कौन सा अन्याय किया इनका? तो हम तो अजय बालाजी से हम भी अभी भी हम ये चाहते हैं मणिपुर में शांति अमल लाना चाहिए। हम शांति की तरफ हम लोगों का कदम चले हुए हैं। जो हमने कहना इंडिया गवर्नमेंट का अपना होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने बोला था, उसके आधार पे हम लोग शांति में हम आ रहा है। तो बार बार हम लोगों को ऊपर ऐसे ही काम क्यों हो रहा है? इस चीज़ को देखने के बाद हम एक फौजी एक्समैन होते हुए हमारा दिन में भी थोड़ा सा दर्द होता है। हमारा बाल बच्चे कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। रात दिन हम लोग कब तक इनकी अपना सुरक्षा करते रहेंगे? इतना फोर्स रहने के बाद तो ऐसे काम आइंदा नहीं होना चाहिए। भला जी नमस्ते, और आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। थैंक यू। Manipur is like forcing Tambiroba. Central forcing Lotok Pigano. Central forcing Lotok Pigano. What have they central force Tamba Panda? Come
이때도 꼼짝하게. No, either just a president, no problem, sir. You gotta call the. We will come up with it. Yeah, we'll go decide it. Manipur Manipur khanda di juga. Kemarin saya menjauh. Manipur boleh apa? Kalau noi Manipur khang jadi Manipur. Padi noi tu milayo. Mai jai na tahu raga na nom sa sao hai chena onda hai rak pura. Bolo na. ये बोल रहा था ये सत्यन को मैंने आपको बोल रहा है ऐसे मैं आपको बता रहा था बोलो ना आपको जवाब चाहिए बोला जवाब नंग नरोन ठोक रहा अदुदी तुम्हारे घर में जाओ ना ले रहा थी कई कान घर में जाओ हाँ नंग नंग में पाई तो कदम नम ना हाँ बोलो नंग में था वो पंग नात्र न साई ngam nim ne बनवा बोलो ना नत्रो नंग भी जाती है Jangi ya de hai je kadai dai nu ka pai sei cha o asigi ma pham ma sam da yeng kya yo khoi di yeng ma cha tong ne ha yo ta wai ma ro da ma lo ko khoi ne yo ga tham ra ba ma khoi ne tham ra ba lu ma ga tham ra ba moi na adu de akhoi je ne de ba so ke ma lo ko ek bar jani de no ma hai ma hat na ma dai be pau ka sa bar jani adu asibo ko ne sang ga ha yo adu akhoi noi sang ga me te akhoi sang ga ado Hujikse hujik koi dai ba situation sida Manipur gi se tang du lai ta darai na koi khanjara me ba ko adu ga ada ga pyar la roi adu to roi center na interesting lai na thabak to bira darai na koi yam harau jarure ba adu ga di mapan da na phajja ba wahai wata to ga to sana ba manung da na asuk na kharba po chidai koi da etek to ga nongmai ka pa ga pokhai haldana khotana koi mi soli se Silai da moina karim ta tau dana silent da lai oje ai mangon da ansar question lama hange ma ansar piu ya da maron thok re adu di noi chat lo nayum da adu ga naron thok ta ba khulai do khoi gi mai tai sing ura ga da mat le thangat pa adu ga furam ba landa ba adu gum ba refugee me am duna tau ra ga na nong mai chingdon do le ba ma kha da tau ba achugum ba security sing se India go na ma di state government ki governor na kamlong na thami bino hai ba wahang se media da phajan happy ro duga ansar che pibiro o hai beche ai ahan ba da thamjage ba huje koi dai ba situation si da di ingna chingna lai ra si ai khoi mong hadana leimina ra si haidana isa isu mayam amadagi noi gi leibak to phare noi ingna chingna lai ro governor na khulai pukhalo o pyar la en ngai na thamage hai gi ba ai khoi isa yaw na khulai thingal halu re ba hojik te adugi opposite ona taina badala e ba adu orga di pyar gi matam sida anau ba suggestion mayam ama nongmai kapaga khurak hangdan leiba sibai singse akhoi Manipur gi sing sare pamu re ba khoi pijaba pamu re akhoi myam nga oi do bani na adu oiraga di noi yam ngoi si yam thuna lokthok pi gro adu ga akhoi ge security sing na nga an bi ro ba state force na nga an bi ro ngam dar ga na akhoi gi hujik thati yo wari sari ba party oina lauraga myam gi damakta ne chong tho bai cha sing sarkar ga yana dar mapan tho ba iwe lep se sigi battalion lam su thambira ga chap chana ekhoi chingak sel hela se ba yaning bre yaning da brama ya niam da ya ba hai ba se ai duna su ya bam tho e aduna moi sing sidi cha ba tingna na bani aduga kuki ga mo ga no khera ga nuai na leina na bani hojik te ekhoi se pr se lok thok mi ro ekhoi gi mla oi ri ba sing sina ne
मोइना कइनो मा हाइबदे अखोई एमएलए पावर लेत्रे है पावर दि लेत्रे तोलोब दि सारिबा अदु अरगदि पावर फुदोसी सेंटर दा अखोई म्याम चटलगा एमएलए सिंग पुलप चटलगा नोइना चप चाबी रूल तौना प्रेसिडेंट रूल चलाइ बिसे लोथोक पिरो अखोई की ओइबा सरकार से अखोइना सेमजरगे अदु ngमोइदोब लेरगना लोइना मंग डिसमिस तौरगा एमएलए सारी अखोइगे इलेक्शन से बाय इलेक्शन से तौरगने अखोइ सरकार से पाइननबा अखोइना दोखोन तौजनबा आइदे अखोइना ngakjanabagi policy ama sinbiro madu ngamoidobodi एमएलए अखोइ लोइनमक इंडिया के सुगुम्बा पॉलिटिक्स की मरी लेनबा पोसिदा लेपगा ngasi अखोइगे साचोन से अखोइना तौरगा असेंबली मेंबर अमो ओइना लेबाक से अकाय तोय थोल अफाबा ओहेने वाचकिबदो मदु प्रजाना याद्रे खोइ तोक्चरगे हाइबा सही से तौरगा खोइ पिमिनरुरा सेबा मसिदे एमएलए सिंसु पुन्ना वाखन तौबिरो ngमोइदबा लेरगा लेबाक से आथोंगा से पियार ने थैदोक बिरनु तोलोब चारिबा एमएलए दिरबामी एरिया फल्लौरिबा सिंदो लोइन तोकबिरो अदुगा अखोइ लोइनमक कइनोदा चलगा सेंटर दा चलगा अखोइ सु याउजरगे चमिनरे से डिमांड तौमिनुरसे ngमगदौरा पुनम अदुगा गवर्नर ना होरेन हाये संग्रिबदो बिथोक पिरो अखोइ ngakjarगे बलेबाक से मोइदि खुलाइ से तौरगा कुकी उरगना सुमाइनो नोंधाबा मैतै उरगना सुमाइ चिंखटपदुदि मसिगि ड्रामा से तोकपिरो स्वाइद लोइसनबिरो नत्रगदि अखोइ मसेन यामना फिबम चानर अरोय चानरिङैसिदा नुसी चाना चिनना शान्ति वारी सारगा लेबाक से अमोहना सरकार से छेमन लगा प्रेसिडेंट रू लौथोगा इंग तमना उता पानमिना जे हाइबो अफम जे असि मीडिया थोंदा इफुदोक से मणिपुर द लोइ ngangadौने कोइ इरम मणिपुर लायदि मणिपुर मितेरन लोन गदो संग यादि दुआ थारो आइदि नंग रोन सुमा ngang खंदे मणिपुर खंदि नै युम चलो मणिपुर खंग मणिपुर लाइजि मोय करिंदो तो दुजि दिदि की बरो लौरा दे गया चंगो आपके शुभ नाम और आप कहाँ पे रहने वाले हैं बताइए। मेरा नाम बीना कुमारी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो आज सुबह जो कुछ हुआ है बताइए, आज के बारे में क्या आज में हम लोग का गांव साइटोन है, साइटोन उसके गानुकोन है, एग्जैक्टली गानुकोन वो साइटोन के अंदर में रहते हैं। इसमें पहले मैतई था, मैतई कुछ मैतई का घर 10 ऐसा था, वो सब घर आग जला दिया। एक तो बचा हुआ वो घर में आज सुबह दो बम ब्लास्ट हुआ था, वो वही घर के एक बसा हुआ घर के अंदर में। इसके बाद में हम लोग गांव वाला सब आके देखता है, वो फौजी रहते हैं, उन लोग को पूछता था हम लोग ने क्या हुआ, वो आवाज़ ज़ोर से आया था, वो क्या है पूछता था। तब वो लोग ने बोला वो बम नहीं है, बोम्बला है कहते हैं, बोम्बला कहते हैं। इसकी वजह से हम लोग तो इतना आवाज़ के सब बोम्बला हुआ था, वो देखना चाहिए बोल के हम लोग सब जाकर देखा था। वो वापस आया, आने के टाइम में 2 बम और भी ब्लास्ट हुआ था रुंगानुकोन में। अभी जो रहते हैं वो CRPF, वो कमांडेंट स्टार 3 स्टार लगाता है, अभी उसके नाम अभिजीत दत्ता। वो पहले बहुत CRPF और फौजी बहुत था, वो लोग कुछ नहीं, वो लोग की एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं अच्छा से देखभाल हुआ था। मगर अभिजीत दत्ता के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में तो 2-3 बार हुआ था। पहले भी क्या हुआ था, एक बार ऑटो ड्राइवर एक फौजी ने पकड़ के और गानुकोन के अंदर में गया था। एक फौजी ने घर से छुट्टी आया था, तब वो ऑटो उसने हायर किया। गानुकोन के अंदर में जाने के टाइम में क्या हुआ, 2 कुकी आया था, वो पता चल गया वो कुकी ने ये लड़का मैतई है। उसी टाइम में ये कौन है पूछा था वो कुकी ने फौजी लोग को। तब उसी टाइम में फौजी भी सब एक साइड में एक काम के लिए गया था। तब वो मैतई लड़का ने खेती में बहुत मुश्किल से
बाकी आया था, ऐसा उसका जिंदा अभी भी है। ये क्या सोचा है ये फौजी लोग अभी क्या कैसे चल? अभी ये रहते हैं ना अभिजीत दत्ता के वो ग्रुप, अब हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो लोग चेंज करना चाहिए, वो लोग जल्दी चेंज करना चाहिए। और उसके ऊपर में यहाँ पर ये 15-16 तारीख में भी शायद यहाँ पे फायरिंग हुआ था पहले, वो तोरबुंग इससे 3 किलोमीटर दूर है, उसमें 16 दिसंबर में भी वो लोग ने रात में गन फायरिंग किया था बहुत रात में। उसके बाद में आज फिर शुरू किया। तो आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहिए, अभी हम लोग मैतेई रिलीफ कैम्प में बहुत सारा है आदमी, वो लोग घर वो लोग के उन लोग के घर में जाना चाहिए। आज भी एक लड़का इसमें बम ब्लास्ट हुआ था ना, उसके पास में एक घर है, वो पकड़ नहीं सकता है, मेरा घर में जाने वाला है, मेरा घर में जाने वाला है बोल के पकड़ नहीं सकता है एक्चुअली। तो वो आईडीपी, सभी आईडीपी उन लोग के घर में रखना चाहिए। हम लोग शांति चाहिए पहले के जैसा। थैंक यू। ओ मैडम आगे बाबा हमारे पास बात करो इसलिए आप लोग का सेफ्टी के लिए हम लोग छोड़ देगा यहाँ से मणिपुर से निकल जाएगा, त्रिपुरा से आया, लेकिन आप लोग का सेफ्टी के लिए आया है तो हम लोग त्रिपुरा में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तो आप दोनों का बीच में फिर लड़ा होगा, ये दोनों के लिए हम लोग का सेफ्टी रखा हुआ है, इसलिए आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग के लिए सेफ्टी के लिए यही है। सर सेफ्टी के लिए तो हम लोग है, हम लोग को मालूम है सर, क्योंकि ये जगह जिस जगह पे आज जो ब्लास्ट हुआ है ना, उस जगह से तो ये जगह बहुत दूर है, तो अंदर में भी हम लोग का जो परिवार रहता है उन लोग की सेफ्टी के लिए यहाँ से हटा के वहाँ पे बंकर बनाने के लिए हम लोग ठीक है, हम लोग करेगा तो ऊपर से आदेश आएगा तो आप तो कर देगा, लेकिन जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तो हम लोग ये हटा नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग अपने लेवल में नहीं लगाए ये तो आदेश के आगे में एक लगा दीजिए आप लोग की सेफ्टी के लिए, फिर वहाँ पे जितना वो बंकर बनाना है वहाँ पे बना लीजिए ना, वो तो ठीक है, हम लोग आदेश है तो हम लोग बना देंगे। आदेश मिलने के बाद हम लोग मर जाएगा, और जब तक हम लोग अभी तो अच्छा हुआ है ना, आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार भी फायरिंग नहीं किया आप लोग की तरफ से, उस तरफ से बम खाता है ना हम लोग के साइड में, तो आप लोग क्या कर रहा है बोलो तो नहीं चाहता है, हम लोग नहीं चाहता है वहाँ अभी क्या देख रहा है। अरे जो बुर्किना फायर गया था अभी दिसंबर में, मैं खुद फायर गया, आप लोग माना, अरे मेरा कैंप एरिया में फायर गया तो मैं उन लोग का ऊपर में फायर गया, तो हम लोग ने तो नहीं देखा है। अरे आप लोग तो नहीं देखा है, लेकिन मेरा तो विश्वास तो करो, मैं खुद फायर गया, मैं तो ऐसी हूँ, मैं ऊपर में जाके मोर्चा में रह के मैंने किया, ऐसा नहीं है कि हम लोग पीछे का सपोर्ट में है, हम लोग किसी का सपोर्ट में नहीं, हम लोग का पब्लिक के लिए है, दोनों इनोसेंट आप लोग दोनों के लिए है। हम लोग मई का बंदूक तो आप लोग ने सब उठा दिया है, हमारा बच्चा सब कुछ पकड़ लिया है, नहीं सकता है, इतना हम लोग ने जो खुद हम लोग उसके लिए हम लोग क्या शांत करेगा भाई, क्या शांत करेगा, क्या शांत करेगा, क्या किया था आज सुबह आपने कहा क्या किया था हमारे ऊपर, क्या करेगा आप ये Street तुम सुनने लाको तो मी मैम स्ट्रीट हम तो बताना नहीं चाहते, बात करने के लिए
हम आगे नहीं जाएंगे, बस इन्हीं लोग से मिल रहे हैं। नाम और आप कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम है एल लाइमयूम मनीमोल शर्मा। मैं साइटोन बाज़ार में रहता हूँ और मैं सीआरपीएफ से सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। और मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पटेल राष्ट्रपति जी के भी मुझे सम्मानित किया गया था। और मैं साइटोन बाज़ार। नाम और आप कहाँ पे रहते हैं? मेरा नाम है एल लाइमयूम मनीमोल शर्मा। मैं साइटोन बाज़ार में रहता हूँ और मैं सीआरपीएफ से सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। और मैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पटेल राष्ट्रपति जी के भी मुझे सम्मानित किया गया था। और मैं साइटोन बाज़ार का रहने वाला हूँ। तो आज यहाँ पे बम फटा हुआ है और 2 भी घायल हो चुका है। हाँ, तो उसके बारे में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ बताइए। अचानक ही आज ही हम भी आराम से अपने घर में सो रहे थे तो अचानक ही 5:15 साढ़े 5 बजे करीब इतना तगड़ा धमाका हुआ कि मेरे घर का खिड़की दरवाजे भी गर 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 ऐसे करने लगा। तब मैं बिस्तर से एकदम उतर के अपना जो अभी फ़िलहाल ड्रेस पहना हुआ है यही ड्रेस पहन के मैं अपना गाड़ी छोटा वाला एक्टिवा लेकर के और प्रधान को मैंने इंफॉर्मेशन दिया नदी के पास पुल के पास चलो तब कंफर्म हो जाएगा। तो उधर जा कर के पुल के पास मैं खड़ा हुआ तो अपना मारे रेजिमेंट अपना सीआरपीएफ का भी और ये फोक्सा इकाई का और ये ओसी और अदर जितना भी पुलिस संबंधित है, क्योंकि मैं इनसे बड़े अच्छा संपर्क में मैं रहता हूँ आज तक। और इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके फ़ोन करके पूछा शर्मा जी कहाँ क्या हुआ है। तो मैंने इनको सबको इन्फॉर्मेशन दिया सर मैं अभी फ़िलहाल पुल में हूँ और इन्फॉर्मेशन मालूम होते ही सर आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन देंगे। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं पुल पे खड़ा हूँ सीआरपीएफ की बंकर में। तो ये चीज़ हमने बताया। तो थोड़ी देर में बंगाली लोगों को प्रधान ने फ़ोन किया था और फ़ोन करने के बाद उन्होंने बंगाली का एक लड़के ने हमको बताया फलाना बोल के एक मैतई का घर है उधर क्वांग मनी बोल के उसका नाम है, दुनिया ने ऐसे नाम रखा हुआ है, उसकी घर में जो है धमाका हुआ है बोल के एक बंगाली लड़के ने हमसे इन्फॉर्मेशन किया। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मैं हर जगह में जितना आर्मी से जितना हमारा सपड़क है पैरामिलिट्री का हो जाए कोई भी हो मैंने इनको बता दिया। बताने के बाद तो तू मार रेजिमेंट का जो हमारा अंदर में सीधेन में साइड में रह रहा है और फोगोक्सा इकाई में रह रहा है, कंगबाई में रह रहा है, हर फोर्स यहाँ आ गए इकट्ठा हो गए। और अभी जो है हम लोग भी अंदर घुसे, बम ब्लास्ट हुआ था उस जगह पे सारे औरतें भी बाहर आ गए और न पुल पार करके हम लोग उसी गांव में घुसे थे। घुसने के बाद हम लोग ने हालत देखा, हालत देखने के बाद बाहर निकलते हम बाहर निकलते हम लोग यहाँ बाहर निकलते ही जोरदार एक और धमाका बांस की बम्बू के बीच में जो धमाका हुआ है, तीसरा धमाका है। ये होते ही हमारा कोई घायल नहीं हुआ उस समय। तो मैं खुद उसकी ब्लास्ट के पास ही मैं खड़ा था। तब मैं दौड़ के आया मेन रोड पे, थोड़ा रोड में आते ही मेन रोड यूँ पहुँचा, मेन रोड का बाएं साइड में एक और धमाका हुआ। उसी धमाका से एक साइटोन का एक्समैन है वो भी सीआरपीएफ से, वो जवान जो है अभी इंजर्ड हुए हैं। एक लेडीज़ है हाई कौन का महिला है वो भी घायल हुआ है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं मणिपुर में कि हम शांति ला रहा है बोल करके आज श्री अजय बाला जी अपना राज्यपाल गवर्नर जो है उन्होंने आदेश दिया हम लोगों को हथियार सौंपो ये करो। तो हमारा पास जो भी हथियार थे अजय बाला ने जैसे बोला हम लोग तो अच्छी बात है, एक सरकार ने अच्छा सुझाव ला रहे तो हम उनके पीछे चलना चाहिए बोल के कोई भी हथियार हमारे पास नहीं है, हम लोग ने सब इंडिया मणिपुर गवर्नमेंट को सौंप दिया है। तो सौंपने के बाद भी अपना जो टेररिस्ट पार्टी कुछ है हथियार गैंगबंदी अभी तक इनकी हथियार अपना
इंडिया गवर्नमेंट की जितना मिलिट्री रहा है इनकी हथियार को अभी तक रिकवरी क्यों नहीं किया? मैतेई लोगों को तो हिंदू लोगों को तो पूरा हथियार को इन्होंने रिकवरी कर दिया, जमा कर दिया। तो हम लोगों के ऊपर फिर बार बार ऐसे ही हम शांति को जो अमन में ला रहे बोल के हम भी खुश था। आज मैं थार की बात देख लो, 2-2.5 साल की बात, आज इतना जोरदार धमाका, 4 धमाके हुए गानुकोन में, उसमें बाल बाल बचे। मैं भी बचा, उसके बगल में हम खड़े थे। मेरे सामने का एक लेडीज एक जेन जो है घायल हुआ है। तो हम तो ये चाहते हैं कि मणिपुर में अच्छा शांति आए। हम तो बार बार अजय भल्ला जी को हम तो यही चाहते हैं, गवर्नर जी को, कि ऐसे चीज़ों को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि हिंदू के ऊपर ही इतना तगड़ा आक्रमण क्यों हो रहा है बार बार? हमने क्या किया? हमने आज तक मणिपुर में क्या किया? हमने अपना गांव को ही बचाव किया है। कुकी ने हमारा गांव को ही आग जलाने के लिए इन्होंने अपना हाथ में हथियार, बढ़िया अच्छा हथियार वेपन लेकर के हमें हमला किया है। हम तो डबल ब्रेन से अपना गांव की बचाव किया है। हमने इनके अलावा कुकी के गांव में घुस करके हमने किसी को भी हमने आज तक किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया है। इतना नुकसान नहीं पहुंचाने के बाद भी कुकी हमसे चाहता क्या है, हम तो ये नहीं समझ में आ रहा है। और हिंदू के ऊपर ही मेन टारगेट क्यों कर रहा है? मैतेई हिंदू के ऊपर ही। हमारा इनसे हमारा कोई जाति दुश्मनी है ही नहीं, कोई हमारा नहीं। ऐसे ही बड़ा तत्व में आने वाला, बाहर से आने वाला, इन्हीं के पीछे। और अपना इंडियन आर्मी भी जितना भी है, हम ये चाहते हैं इंडियन आर्मी से भी कि ये जो आज हुआ है, ये बार बार ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी CRP के कंपनी आज तैनात है, पुल पे भी इनकी तैनात है, मोर्चा बंकर बना हुआ है। तो अंदर में इनकी कैंप के नज़दीक 100 मीटर पे कैसे बम ब्लास्ट हुआ? हम तो सवाल कहते हैं इंडिया गवर्नमेंट से, आप लोगों ने भेजा हुआ जितना फोर्स है उनके सामने ऐसे बम ब्लास्ट क्यों हो रहा है ये बार बार? अभी थोड़े दिन पहले ये अपना 16 तारीख में इस साइड में भी अपना फोकचाई खाई में तोरबुंग बांग्ला में घुस रहे थे कुछ मैतेई लोग, उसके ऊपर भी इन्होंने हमला किया। ये बार बार ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। ये बार बार होता क्यों है? अजय भल्ला जी से हम अभी भी गवर्नर साहब से हम तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ से आइंदा नहीं होना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि मैतेई के ऊपर हम लोग ने क्या गलती किया? कुकियों के ऊपर को हमने कौन सा अन्याय किया इनका? तो हम तो अजय भल्ला जी से हम भी अभी भी हम ये चाहते हैं मणिपुर में शांति अमल लाना चाहिए। हम शांति की तरफ हम लोगों का कदम चले हुए हैं। जो हमने कहना इंडिया गवर्नमेंट का अपना होम मिनिस्टर श्री अमित शाह ने बोला था, उसके आधार पे हम लोग शांति में हम आ रहा है। तो बार बार हम लोगों को ऊपर ऐसे ही काम क्यों हो रहा है? इस चीज़ को देखने के बाद हम एक फौजी एक्समैन होते हुए हमारा दिन में भी थोड़ा सा दर्द होता है। हमारा बाल बच्चे कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। रात दिन हम लोग कब तक इनकी अपना सुरक्षा करते रहेंगे? इतना फोर्स रहने के बाद तो ऐसे काम आइंदा नहीं होना चाहिए। भल्ला जी नमस्ते, और आप लोग इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करिए। थैंक यू। मणिपुर स्टेट की फोर्सिंग थम्बीरोबा सेंट्रल की फोर्सिंग लौथोकपीगनो सेंट्रल फोर्सिंग लौथोकपीगनो अखोई हौजी सेंट्रल फोर्स थम्बा पामदे
adagide isin mai na pa bita tin dura dikto kai sakra Come sei detto? 이때도 검증하게. No, इधर जा सकता है सर, नो प्रॉब्लम सर. इधर खोल देगा. Will come up this way. Yeah, we'll go this side. Manipur लड़का मणिपुर रोड खंडा दी यू को दोबारा घर में जाओ मणिपुरी बोलो चलो नोय मणिपुर खंग जदी पति नोय तुमी लयो माइतै न तौरगना नोंसा साव हाइछे नवंदा हाइरकपरा बोलो ना ये बोल रहा ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल रहा है ऐसे मैं आपको बता रहा था बोलो ना आपको जवाब चाहिए बोला जवाब नंग नरोन थोकत्रा अदुदी तुम्हारे घर में जाओ जाओ ना ले रहा दी कान नहीं घर में जाओ हां नंग नोंगई पाई दु के दो नमनो हां बोलो नोंगई थादा मफंग नात्र न साइ ngam nim ne बनवा बोलो ना नत्र जंगी यादी हो जंगी यादी हाइ से कदाई जइनु का पैसे छा ओ असिगी मफम मसन द येंग क्या यो खोदी येंग म चा तौने हायो तवै मरोन दा मालो को मालो को मोइने लोग थमरबा मखोइने थमरबा लोग म थमरबा मोइने अदुदि अखोइ जि नहीं दे बस मालो को एक बार जाने दे नोम नोम खतना बोदि बने पाव अदो असिबो को संग हायो अदो अखोइ नोइ संग या बने ते अखोइ संग ये अदो हुजिसे अखोइ कोइ रै बा सिचुएशन सिदा मणिपुर की से तंग लेता दराइ ना कोइ खंजरमे बको अदुगा अदागा प्यार लारोय अदु तौरोय सेंटर ना इंटरेस्टिंग लेना थबक तौबिरा दराइ ना कोइ याम हराव जरूर है बा अदुगदी मपानदना फज्जाब वहै वता तौरगा तौसनबा मनुंदना असुकना खरबा पोचिदाइ कोइदा एटेक तौरगा नोमै कापागा पोखाइ हलदना खोतना कोइ मी सोलिसे सिदैदा मोइना करीमता तौदना साइलेंट लै औजे आई मंगोदा आंसर क्वेश्चन लमा हंगे मा आंसर पियु यादे मरोन थोकरे अदुदी नोइ चलो नयुमदा अदुगा नरोन थोकतबा खुलाइ दो खोइगे मैतै सिंग ओरगना मतिले थांगतबा अदुगा हुरामबा लंदाबा अदुगुम्बा रिफ्यूजी मयामदुना तौरगना नोंमै चिंगदोन दो लेबा मखादा तौबा अछुगुम्बा सिक्युरिटी सिंगसे इंडिया गवर्नमेंट अमदि स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नर न कमदौना थम्मिबिनो हाइबो वहंगसे
ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯟꯁꯥꯔꯁꯦ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯡ ꯍꯥꯗꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇꯣ ꯐꯔꯦ ꯅꯣꯏ ꯏꯪꯅ ꯆꯤꯛꯅ ꯂꯩꯔꯣ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯑꯣ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤꯑꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯤꯡꯒꯠꯍꯜꯂꯨꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠ ꯑꯣꯟꯅ ꯇꯩꯅꯕꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯤꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯒ ꯈꯨꯔꯛ ꯍꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯐꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯄꯥꯝꯃꯨꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯖꯕ ꯄꯥꯝꯃꯨꯔꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯥꯡꯑꯣꯏꯗꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯔꯣꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯉꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯔꯣ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯑꯕ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯌꯥꯅꯗꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯑꯕ ULFꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯍꯜꯂꯁꯦꯕ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯥꯏꯟꯗꯨꯅꯁꯨ ꯌꯥꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯕ ꯇꯤꯡꯅꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯅꯣꯛꯈꯦꯔꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯄꯤꯌꯥꯔꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLA ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯄꯋꯥꯔꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯂꯣꯞꯇꯤ ꯆꯥꯔꯤꯑꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯐꯨꯗꯣꯛꯑꯁꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯠꯂꯒ MLAꯁꯤꯡꯒ ꯄꯨꯂꯞ ꯆꯠꯂꯒ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕꯤ ꯔꯨꯜ ꯇꯧꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯗꯤꯁꯃꯤꯁ ꯇꯧꯔꯒ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯕꯥꯏ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯦ ꯄꯥꯏꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯣꯈꯣꯟ ꯇꯧꯖꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯕꯗꯤ MLA ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯀꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯑꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯦꯅ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯛꯆꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯍꯤꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯔꯁꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯕ ꯂꯩꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛ ꯉꯥꯏꯁꯦ ꯄꯤꯌꯥꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯅꯨ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯆꯥꯔꯤꯕ MLA ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯐꯜ ꯂꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯎꯖꯔꯒꯦ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯒꯣꯕꯔꯅꯔꯅ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯧꯁꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕꯗꯣ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯛꯆꯔꯒꯦꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤ ꯎꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯣꯟꯊꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯎꯔꯒꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯁꯦ ꯇꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯤꯕꯝ ꯆꯥꯅꯔꯛꯑꯔꯣꯏ ꯆꯥꯅꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅ ꯆꯤꯟꯅꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ सरकार से सेमहल्लगा प्रेसिडेंट रूल लौथोगा इंग तमना उता पानमिना जे हाइबो वाफम जे ngasi media thongda I phongdokse महेंद्र चाहिए पायल adun ngasai ngoi kan hai di kai manipur da loi ngang dong ne koi iram dang manipur la yadi manipur mitor onlon ga da kam ba ya de do ataro ai di nang ro na suma ngang ko manipur khanda ni nei unda chalo akhang manipur khang ni manipur la jibo kari no ta du ji di ki ba lo lo ra da dia oi chango आपके शुभ नाम और आप कहाँ पे रहने वाले बताइए। मेरा नाम बीना कुमारी, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। இல்ல அவங்க பேசிட்டோம் அவர் பேசுறாரு ஒட்டுமொத்தமா டெக்னிக்கல் டீடைல் அவர் பேசுறாரு கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம் வெற்றிவேல் முருகனுக்கு இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய முருக பக்தர்கள் வாங்க முன்னாடி வாங்க முருக பக்தர்களுடைய அந்த வேண்டுதல் பலித்திருக்கிறது. இந்த மேதகு 2 நீதியரசர்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த நீதிமன்றத்தில்
முருக பக்தர்களுக்கான ஒரு அருமையான தீர்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த திருப்பரங்குன்ற பக்தர்கள், மதுரை பக்தர்கள், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தினுடைய பக்தர்களுக்கான இந்த தீர்ப்பு ஒரு மிக அற்புதமான தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கிறார்கள். அரசு தரப்பிலையும் நம்முடைய ஆட்சியர் தரப்பிலையும் காவல்துறையினர் தரப்பிலையும் அறநிலையத்துறை தரப்பிலையும் மேல்முறையீடு செய்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த மேல்முறையீட்டினுடைய விஷயமானது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அங்கே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தீபத்தூண்ல தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். அதே இடத்துல தீபம் ஏற்றணும். அதற்கான வேலைகளை அங்கே இருக்கக்கூடிய தேவஸ்தான நிர்வாகம் பார்க்கணும். அதற்கு தேவையான உதவிகளை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக ஏஎஸ்ஐனுடைய ஒரு டீமு, அதே மாதிரி காவல்துறையினுடைய ஒரு டீமோட சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை செய்து முடிக்கணும். இதற்கு ஆட்சியாளர் சரியான வகையில், அதாவது ஆட்சியர் அவர்கள் சரியான வகையில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இதை கோஆர்டினேட் பண்ணி எந்த இடத்துல நாம வேண்டிக் கொண்டோமோ, மலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய தீபத்தூண்ல தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று நாம வேண்டிக் கொண்டோமோ அந்த இடத்துல தீபம் ஏற்றுவதற்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டும். ஒரு தரப்புல இதனால சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும், ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாம்பீடு மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரப்புல செய்யப்பட்ட அந்த வாதங்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்தினுடைய செயலற்ற தன்மையை காண்பிக்கின்றது என்றுதான் மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் தங்களுடைய தீர்ப்புகளில் சொல்லியிருக்காங்க. ஏற்கனவே பல தீர்ப்புகளுடைய விவரங்கள், அதனுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் கூட அடிக்கோடிட்டு காண்பித்து ஒட்டுமொத்தமாக இந்த தீபம் ஏற்றுவதனால இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தரப்புக்கு மன கஷ்டம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை முன்னெடுப்பது தவறு. இந்த இடத்துல லைட் ஏத்திருக்கணும், ஃபைட் இருந்திருக்க கூடாது. அரசாங்கம் முன்னின்று இந்த இரண்டு தரப்புக்குள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக ஒரு இரண்டு தரப்புல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி இருக்கணுமே தவிர்த்து அரசாங்கம் இதை மேற்கொண்டு வெவ்வேறு காரணங்களால வெவ்வேறு தரப்பினுடைய அப்பீல்னால இது ரெண்டு தரப்புக்கூடிய ஒரு பெரிய பிரிவினை ஏற்படுத்தின மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அதை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்று நீதியரசர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு எப்ப ஏற்றணும் என்ன ஏது கார்த்திகை மாதத்தில் அந்த விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. மேற்கொண்டு இதனுடைய வழக்கினுடைய விவரங்கள் டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்முடைய வழக்கறிஞர் பெருமக்கள் சொல்லுவாங்க. ஒட்டுமொத்தமாக இது தமிழக இந்துக்களுக்கு, தமிழகத்தினுடைய முருக பக்தர்களுக்கு, ஒட்டுமொத்த முருக பக்தர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி. இது எந்த வகையிலும் அதாவது தமிழக வரலாற்றில் ஒரு தனி சிறப்பு மிக்க ஒரு தினம், ஒரு தீர்ப்பு. அதனால நாம் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் முருகனுடைய அருள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. முருகனுடைய ஆசிகளால் இது நிச்சயமாக நடத்தும். தீபத்துள்ள தீபம் ஏற்றுவோம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. ஐயா பொறுங்க வக்கீல் பேசட்டும், நம்ம வழக்கறிஞர் பேசுவாங்க, அப்புறம் கேட்டுக்கலாம். எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாசமா இந்த திருப்பரங்குன்றம் விஷயங்களை நம்ம மீடியாவில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். பல்வேறு கட்டுக்கதைகள், பல்வேறு பொய்கள், பல்வேறு தவறான சங்கதிகள் எல்லாமே மீடியாக்களில் திட்டமிட்டு பரப்பப்படுது. அது முக்கியமாக இந்து மக்களுக்கு எதிராக பரப்பப்படுது. அது மீடியா மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு அரசாங்கமே நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு பொய்களை அடுக்கடுக்காக சொன்னாங்க. நம்ம அதை பார்த்தோம். திருப்பரங்குன்றம் தமிழ்நாடுடைய உலகத்திலே உள்ள 6 படை வீடுகளில் முதல் படை. அந்த படையில் உள்ள மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுறதுக்கு தான் மனிதர் ராம ரவிக்குமார் நவம்பர் மாதம் அதுக்கான பிள்ளையார் சொல்லி போட்டார். அதற்கப்புறம் ஈவோ அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. நீதிமன்றத்துக்கு வந்தோம். தனி நீதிபதி அவர்கள் நேரடியாக போய் பார்த்தாங்க. எல்லா எவிடன்ஸும் கொடுத்துருந்தோம். தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. அதற்கு மேலே ஒரு 3-4 வழக்குக்கு கிட்டத்தட்ட 20 அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்து சமய அறநிலைத்துறை இந்து மக்களுடைய உரிமைகளை, கோவிலுடைய பாரம்பரியங்களை, கோவிலுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய இந்து சமய அறநிலைத்துறை இந்து மக்களுக்கு எதிராகவே 3 அப்பீல் தாக்கல் செஞ்சிருந்தாங்க. அந்த 3 அப்பீல், அது போக கவர்மெண்ட், கலெக்டர், கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ்
எல்லாருமே அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக வந்து அப்பீல் தாக்கல் செஞ்சிருக்கிறத பார்க்கும்போது இந்து மக்களுக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கமே எதிராக இருக்குங்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம வந்து முடிவெடுக்க முடியும். அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் கிட்டத்தட்ட 20 அப்பீலையும் பொறுமையாக இருநபர் நீதிபதிகள் திரு ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் வந்து அதை கேட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 நாள் வந்து அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு. வக்ஃபு வந்து அவங்க அப்பீல் வரதில் ஒன்றும் ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது. அது அவங்களோட உரிமையை கேட்குறாங்க. அது உரிமை இருக்கா இல்லைங்கிறத நம்ம நீதிமன்றம் இன்னைக்கு சொல்லிருச்சு. இன்னைக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு வந்து ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு அன்னை சொன்ன மாதிரி வந்து அதை கொடுத்தாங்க. அந்த தீர்ப்பில் அடிக்கோடிட்டு காமிக்கும்படி என்ன சொல்லணும்னா, நீதிமன்றம் ரொம்ப தெளிவான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அரசாங்கம் ஒரு லைட்டை ஏற்றி இருந்தா, நான் உங்களுக்கு கலோக்கியலா சொல்றேன் இந்த வார்த்தையை, அரசாங்கம் ஒரு லைட்டை ஏற்றி இருந்தா அந்த ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனா இதை ஃபைட் பண்ற அளவுக்கான வந்து கொண்டு வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் விட்டது தவறுன்னு வந்து மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து தீர்ப்பு கிட்டத்தட்ட 200 பக்கம் தீர்ப்பு. அவங்க நீதிபதிகள் அந்த கடைசி சில பேராகிராஃப் மட்டும் படிச்சதை மட்டும் தான் வச்சு நான் சொல்றேன். தீர்ப்புகள் இன்னும் நம்ம அதை படிக்க போறோம். இப்போ இது கண்டிப்பா வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை செயல்படுத்தி ஆகணும். ஏன்னா இது இந்து மக்களுடைய உணர்வுகள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு முருக பக்தருடைய உணர்வு. அதை முதல்ல தயவு செய்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை வந்து உணர்வுகளுக்கு வந்து மதிப்பளிக்கணும். இந்த ராமரவிக்குமார் கிட்டத்தட்ட 150 வருஷம் கழிச்சு இதை வந்து இது ஏற்கனவே ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி 1994 ஒருத்தவங்க வழக்கு தாக்கல் செஞ்சாங்க. அவங்க நெகட்டிவா அதில் ஏற்றக்கூடாதுன்னு வழக்கு தாக்கல் செஞ்சாங்க. அப்பயுமே இந்து மக்களுக்கு உணர்வளிக்கும் வகையில் திரு நீதிபதி கனகராஜ் அவர்கள் தீபம் ஏத்தணும்னு உத்தரவு கொடுத்திருந்தாங்க. ஏத்தலாம் கோர்வையா நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க அதுக்கப்புறம் கேளுங்க. அவங்க வந்து 15 மீட்டருக்கு அப்புறம் எங்க வேணா ஏத்திக்கலான் இருக்காங்க. அதுவும் வந்து கோவிலுக்கு நிர்வாகத்துக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லா ஒர்ஷிப்பரும் அதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறதே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப 1996 கொடுத்த உத்தரவை திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டு வரும்போது அரசாங்கங்களும் இந்து மக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடே வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ 2025 இதுக்கான அடுத்த ஊனா சொல்லி ஆரம்பிச்சாச்சு. 2014 சில வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டும் அது வந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலும் இந்த வழக்கு வந்து இப்போ 2025 நீதிமன்றம் ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த தீர்ப்புல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட தீபத்தூண்ல தீபம் திருக்கார்த்திகை அப்போ கோவில் தேவஸ்தானம் ஏஎஸ்ஐயோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குங்கிறதுனால அவங்களுடைய கன்சல்டேஷனோட அந்த இடத்துல மலையில வந்து உச்சியில உள்ள தீபத்தூண்ல தீபம் ஏற்றணும். அதுக்கு மாவட்ட நிர்வாகமும் காவல்துறையும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க மாவட்ட நிர்வாகம் 2 பேரையும் கூப்பிட்டு சமரசம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீடியேஷன்ங்கிற பேர்ல பீஸ் கமிட்டிங்கிற பேர்ல மக்களை இன்னும் பிளவுதான் படுத்துறீங்களே தவிர ஒற்றுமையை உருவாக்குறதுக்கு நீங்க எந்தவித செயல்பாடும் நீங்க செய்யலங்கிறதையும் மூஞ்சில் அடிச்ச மாதிரி இன்னைக்கு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்துக்களுக்கு எதிரான முருக பக்தர்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடை செயல்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. தயவு செய்து இதை நீதிமன்றத்தோட உத்தரவை இப்பயாவது நீங்க காப்பாத்துனீங்கன்னா முருக பக்தர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதரவா இருப்பாங்க. இல்ல இதுக்கும் மேல நீங்க வந்து இன்னும் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு நாங்க போறோம்னா நல்லதா, உங்களோட உரிமை தாராளமா போகலாம். பட் எப்ப நாங்க மட்டும் இல்ல, முருகனும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காருங்கிறது ஒரு வழக்கறிஞரா இல்லாம ஒரு இந்து பக்தரா ஒரு முருக பக்தரா நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். சார், பொது அமைதி அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது காரணமே அரசு தான்றதை வந்து நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க. அரசியல் காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த அரசியல் செய்யக்கூடாதுன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த தீபத்தூண் இருக்கிற இடம் வந்து அந்த கோவில் தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமான இடம்ன்றதையும் தீர்ப்புல சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி அதுல வந்து இப்போ கடைசியா நீதிபதி அவர்கள் படிச்ச அந்த வரிகளை நம்ம வந்து கவனிக்கும் போது இது இத்தனை ஆண்டுகள் கழிச்சு இதை வக்ஃபு போர்டு வந்து எங்களோடது, அந்த இடம் வந்து தீபத்தூண் எங்களோடதுன்னு சொல்றதை ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இப்போ மீடியாவில் பார்த்தீங்க, ஒவ்வொரு நாளும் ஆர்கியூமெண்ட்ல முதல் நாள் கிரானைட் தூண்னு சொன்னாங்க, அடுத்தது சர்வே தூண் சொல்லல, சர்வே தூண்னு சொன்னாங்க, அடுத்த நாள் வந்து சமணர் தூணுன்னாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன தோணுச்சோ, முருகனுக்கு 2 மனைவின்னு கேலி செஞ்சாங்க. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ எல்லாத்துக்குமான ஒரு பதிலா நீதிமன்றம் இந்த இடம், அந்த தீபத்தூண் இருக்கிற இடம் தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமானதாங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமான இடத்துல தீபம் ஏற்றுறதுக்கு எந்தவித தடையும் இல்லைங்கிறத இன்னைக்கு வந்து போடிட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க. இது முக்கியமா அரசியலும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கிறாங்க. அது முக்கியம். பொது அமைதி, ஆமா. அதாவது பொதுவா ஒரு அரசாங்கம்ங்கிறது ஒரு இரண்டு மக்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த பிரச்சனைய சமரசம் பண்ணி
முடிஞ்ச அளவுக்கு அமைதிப்படுத்துறது தான் அதோடைய கடமையை தவிர இதை வந்து கற்பனையாக ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி இதன் மூலமாக அரசாங்கம் ஒரு தவறான ஒரு முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதையும் ஒரு சுட்டி காமிச்சிருக்கிறாங்க. அரசாங்கத்தினுடைய செயலற்ற தன்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம வந்து படிச்சுக்கிறோம். அதுக்காக வர கார்த்திகை தினங்கள்ல என்ன தூண்கிறதுல கிளாரிட்டி இது வரைக்கும் வராதா? ஏஎஸ்ஐடி இருக்காதுல்ல, அது என்ன தூண்கிற கிளாரிட்டி இருந்தா அதை கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லாத பட்சத்துல அந்த ஏஎஸ்ஐயோட அனுமதியோட எப்படி கோயில் ஏற்ற முடியும்? என்ன தூண்கிறதுல கிளாரிட்டி? இல்ல, இப்ப நீங்க வந்து இப்ப இந்த நீதிமன்றத்தோட நீங்க வந்து உத்தரவு நீங்க இப்ப கொஸ்டின் பண்றீங்கன்னா, ஒரு ரிப்போர்ட்டரா நீங்க கொஸ்டின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் போகணுங்க. இல்ல சார், அதுதான் கன்க்ளூஷன் ஆகி தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க இன்னும் திருப்பி வந்து அது தீப தூணா இல்லையா சர்வே தூணா நம்ம கேட்க முடியாது. இன்னைக்கு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அது இருக்கிறது தீபத்தூண் தான், அந்த இருக்கிற இடம் தேவஸ்தானத்தோட தான். அதுல கார்த்திகை மாசம் தேவஸ்தானமே தீபம் ஏத்தணுங்கிறத சொல்லிட்டாங்க. கோவில் நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது, ஏன்னா தனி அதிகாரம் கொண்டது. எங்களுக்கு பரிசீலிங்கன்னு வேணா சொல்ல முடியும், எங்களுக்கு நேரடியாக அதை செய்யுங்கன்னு ஆர்டர் போடுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு தொடர்ச்சி அவங்களுடைய வாதம். அது அந்த வாதம் தான் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டுச்சு. அந்த வாதத்தை தான் ஏத்துக்கலையே. அந்த வாதத்துக்கு ஏத்து தான் இப்ப தீர்ப்பாக கொடுத்துட்டாங்களே இருநபர் நீதி. இப்ப ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, தனிநபர் நீதிபதி திரு GR சுவாமிநாதன் அவர்கள் பிராமின்ங்கிறதுனால அவரை வந்து ஒரு கட்டம் கட்டி அவரை வந்து சில பேர் வந்து அவரை முழுவதும் வந்து கார்னர் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு இருநபர் நீதிபதிகள் ஏற்கனவே LPAல கண்டெம்ட்டுக்கு மேல போன அப்பீல் LPAல என்ன உத்தரவு கொடுத்தாங்க, அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு உத்தரவு கொடுத்துட்டாங்க. இப்ப இவங்களை நீங்க வந்து அடுத்து என்னென்னலாம் வந்து நீங்க ஒரு புழுத வாரி எரிய போறீங்க, அவதூறு சொல்ல போறீங்க. அப்போ ஒவ்வொரு நீதிபதியும் ஒரு உத்தரவு வந்து தனது மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு பயந்து அது நியாயமா தர்மமா அது வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு உத்தரவு கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு நீதிபதிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உள்நோக்கம் கற்பிச்சோம்னா அப்ப தமிழ்நாட்டில் எந்த நீதிபதியும், நான் சொல்றது வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்ல இருந்து சப் ஜட்ஜ்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ்ல இருந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வரைக்கும் யாருமே நம்மளுக்கு எதுக்குப்பா வம்பு, இந்த தீர்ப்பு வேணா ஒண்ணு வேணான்னு ஒரு சாதாரண மக்கள் இப்ப இன்னைக்கு இந்த அரசாங்கம் செய்யறத நாளைக்கு அவர் மாவட்ட செயலாளர் செய்வார், மாவட்ட செயலர் செய்யறத நாளைக்கு ஒன்றிய செயலாளர் செய்வார். அப்ப எல்லாருமே இந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றமே இருக்காது, நீதிமன்றத்தோட அவங்களோட சுதந்திரம் சுத்தமா இருக்காது. அப்ப இத தமிழ்நாடு மக்களும் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. தயவு செய்து இது என்ன நடங்குறத தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க. இதுதான் உண்மையான ஃபேக்ட். சார், இந்த வழக்குல தனி நீதிபதி அனைத்து தரப்பு வாதங்களை கேட்டுதான் அந்த உத்தரவை பிறப்பிச்சாங்க. அவர் சகோதரர்களுக்கு ஆதரவாக வாதாடிய அனைத்து வழக்கறிஞர் சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தினசரி இந்த விஷயத்தை உலகிற்கு தெரிவித்த பத்திரிகை சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள். வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த திருப்பரங்குன்றம் தீபம் குறித்தான வழக்கு முருகனர்களால் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இந்த வெற்றி நிச்சயமாக மேற்கொண்டும் தொடரும் என்று நம்புகிறோம். இந்த வெற்றிக்காக போராடிய அந்த உள்ளூர் மக்கள், என்ன வந்து வெளியூர்காரன் சொன்னாங்க, நான் மதுரைக்காரன் தான், நான் எழுமலைக்காரன், உள்ளூர்காரர் வெளியூர்காரன்லாம் பொய்வாதம் பரப்புனாங்க. வழக்கு தொடுத்தவர் மீதும் வழக்குக்கு நீதி சொன்ன நீதிபதிகள் மீதும் அவதூறு கற்பித்தாருங்க. நாங்கள் நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவை மதித்து சட்டத்தின் பிள்ளையாக எந்த விதமான வார்த்தைகளையும் நாங்கள் பேசவில்லை. இன்று நீதிமன்றம் எங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது, முருகருக்கு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது. மாண்புமிகு நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவுகளை நாங்கள் மதிக்கிறோம். இந்த வெற்றியை இந்த திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்காக போராடிய அந்த திருப்பரங்குன்றம் மக்களுக்கும், இதற்கு முன்பு பலியான எங்கள் ஐயா ராஜகோபாலன் உள்ளிட்ட காளிதாஸ் யாதவ் உள்ளிட்ட பூர்ணச்சந்திரன் ஐயா பேராசிரியர் பரமசிவம் உள்ளிட்ட இந்த நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று தன்னுடைய உடலை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்த பூர்ணச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் இந்த வெற்றி நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். நிச்சயமாக தொடரும். அவதூறு கிளப்பியவர்கள் மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கங்க. எல்லாத்தையும் முருகன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். முருகன் தராசுக்காரன், அவர் நீதிபதிக்குரிய அந்த தராசோடு உடையவன் தான் திருப்பரங்குன்றம் முருகன். நீங்கள் அவதூறு கற்பித்தவர்கள், எவ்வளவு ஏளன பேச்சு பேசியவர்கள், எங்களை அவமானப்படுத்தினீர்கள். அந்த அவமானங்களை எல்லாம் அடித்து உடைத்து தகர்த்து முருகன் எங்களுக்கு வெகுமானம் தந்திருக்கிறான். எல்லா புகழும் முருகனுக்கு, எல்லா புகழும் முருகனுக்கு, எல்லா புகழும் முருகனுக்கு. தமிழக அரசு அனைத்து மக்களுக்கும் சாதகமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மதசார்பற்ற அரசு, ஆனால் இந்துக்களுக்கு மட்டும் விரோதமாக இருந்தது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை தர்காவிற்கு ஆதரவாக, இஸ்லாம் மக்களுக்கு ஆதரவாக மாண்புமிகு நீதிமன்றம் இதற்கு முன்பு கொடுத்த போது கூட தர்காவிலிருந்து 15 மீட்டர் தள்ளி ஏற்றிக் கொள்ளலாம் என்று தீர்ப்பு இருந்தும் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு
நீங்கள் ஏற்றுங்கள். அதே நேரத்தில் மசூதி இருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். சமூக நல்லிணக்கம், மத நல்லிணக்கம், சமூக இணக்கம் கெட்டு போயிருன்னு சொன்னாங்க. இந்துக்கள் யாரும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நாங்கள் இல்ல. நீதிமன்ற உத்தரவு கொடுத்த போது கூட சட்டத்தின்படி தான் நாங்கள் அதை மதிச்சு போனோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் மேல்முறையீடுன்னு சொல்லி அந்த நீதிமன்றம் கொடுத்த உத்தரவுக்கு எதிராக மேல வந்து வாதிட்டு கோவிலுக்கு எதிராக, கடவுளுக்கு எதிராக, சமயத்துக்கு எதிராக, மக்களுடைய மத உணர்வுக்கு, மன உணர்வுக்கு எதிராக நடந்தது ஏற்கத்தக்கதல்ல. மக்களிடம் ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி இந்த அரசாங்கம் சம்பாதித்திருக்கிறது என்பதே உண்மை. ஐயா ஜிஆர் சுவாமிநாதன் ஐயா சொல்லிட்டாங்க, இது இஷ்யூ நாட் இன் ஆகமா, இது ஆகமம் குறித்தான விஷயம் அல்ல. மாண்புமிகு நீதி அரசர்கள் கொடுத்த உத்தரவு தர்கா காம்பவுண்ட் வால் இருந்து 15 மீட்டர் தள்ளி உள்ளதுதான் தீர்வு. இப்ப நீங்க கேட்டதுக்கு டிவிஷன் பெஞ்ச்ல இப்ப சொல்லியிருக்கிற பதில் என்னன்னா, இப்ப ஆகமத்தை பத்திலாம் அவங்க பேசல. ஒரு சாதாரண மனிதன் தன்னுடைய பக்கத்துல உள்ள ஒரு கோவில்ல மலை உச்சின்னு சொல்லல அதுக்கு வார்த்தை, ஹைட்டான இடத்துல எலிவேட்டட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. அந்த வார்த்தை எலிவேட்டட் பிளேஸ்ல ஒருத்தங்க அந்த தீபம் ஏத்தும் போது அந்த உள்ளூர் மக்கள் அதெல்லாம் வந்து பார்த்து அதன் மூலமா வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் பிராக்டிஸை ஃபாலோ பண்றாங்க, நம்பிக்கையா இருக்கிறாங்கிறத வார்த்தையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால இது ஆகமா கிடையாது. உள்ளூர் அந்த மலையோட உச்சியில ஏற்றும் போது உள்ளூர் மக்கள் அனைவருக்கும் அந்த தீபம் தெரியும். அவங்க வீட்டில் தீபங்கள் தேவைப்படுவாங்க. சுற்றி வட்டார மக்கள் எல்லாரும் அவங்க வீட்டில் தீபங்கள் ஏற்றுவாங்க. இது வந்து இந்து மக்களுடைய ஒரு கலாச்சாரம், பாரம்பரியம், பண்பாடு. அதை வந்து இந்த நான் சொல்றேன், ஒரு செகண்ட் நண்பர் பதில் சொல்றேன். இல்ல பதில் சொல்றேன். அவங்களே வந்து அதை தப்புன்னு சொல்லி அவங்களே வந்து எங்களோட இதை ஃபோர்ஜரி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க பிச்சை குருக்கு, பிள்ளையார்பட்டி பிச்சை குருக்களும் திருப்பரங்குன்றம் சந்திரசேகர் பட்டர் என்ற ராசா பட்டரும் இந்த லெட்டர் கொடுத்துட்டு மாத்தி மாத்தி பேசுறாங்க. அவங்க ஏதோ கையெழுத்து வாங்கிட்டாங்க, முன்னாடியே போட்டோம்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அவங்க வந்து இந்த திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விஷயத்துக்காக சொல்லல, இந்த தேதியில தீபம் ஏத்தலாம், இந்த நட்சத்திரம் ஏத்தலாம் சொன்னாங்களே ஒழிய அவங்ககிட்ட அந்த லெட்டரை வாங்கிட்டு இவங்க உள்ள சொல்லிட்டாங்க. ரெண்டாவது, பழனி கும்பாபிஷேகம் கடந்த வருஷம் 2 வருஷம் முன்னாடி நடந்தது, ஆகமத்திலே கிடையாது. மார்கழி மாசம் நாள் செய்வது என்பது எந்தவித ஆகமத்திலும் கிடையாது. ஆனால் ஆகமத்தை மீறி அரசுக்கு சாதகமாக, ஆட்சியாளருக்கு சாதகமாக நடத்துறாங்க. எங்க பழனியாண்டவன் கோயில் ஆகம விதிமீறல் நடந்தது. ஆகமத்தை மீறி கருவறைக்குள்ள அமைச்சர் சேகர்பாபு உள்ளிட்ட ஆட்கள் போனாங்க. இது எந்த ஆகமத்தில் வருது? கோயிலுக்குள்ள பூசை பண்ணுவதற்கு அர்ச்சகர் போகலாம், அமைச்சர் போகலாமா, அவன் கட்சிக்காரன் போகலாமா? இதெல்லாம் ஆகம விதிமீறல். நாங்க இந்த வழக்கு மட்டும் நீர்த்து போக கூடாதுனால வேற எதுவும் பேசல. ஆகமம் குறித்தான விஷயம் இது அல்ல. இவர்கள் ஆகமத்தை சுட்டி காமிச்சாங்கன்னா ஆகமப்படி உண்டியல் இருக்கா, ஆகமப்படி அமைச்சர் உள்ள வரலாமா, ஆகமத்துக்கு விரோதமா பக்தர்களை கேவலமா பேசலாமா இந்த அமைச்சர்? அதனால இந்த குறித்து வழக்கு, திருப்பரங்குன்றம் தீபம் குறித்தான வழக்கு வந்து நிச்சயமாக சட்டத்தை நாங்கள் மதிக்கிறோம். சட்டத்தின் பிள்ளைகள், சட்டத்தை மீறல, நீதி அரசர்கள் விமர்சிக்கல, நீதிபதிகள் குறித்து தவறாக நாங்கள் பேசல. நாங்கள் மீண்டும் 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 நம்பியது முருக கடவுளை. இந்த நல்ல நாள்ல தீர்ப்பு வந்திருக்கு. 6/1 என்னங்க செவ்வாய்க்கிழமை 6/1/2026 6 படையில முதல் படைக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்கு. எல்லாம் வெற்றி முருகனுக்கு, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு, வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. முதல் படை அவ்வளவுதான், முதல் அடுத்தடுத்து வரும். நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க. தேங்க்யூண்ணா, எல்லாருக்கும் நன்றிண்ணா, எல்லாருக்கும் நன்றி. நம்முடைய இந்த மலை மேல தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை தியாகம் செய்த பூர்ணச்சந்திரன் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த தீர்ப்பை நாம் எல்லாரும் காணிக்கையாகின்றோம். 1, அவருடைய குடும்பத்தாருக்கு தேவையான உதவிகளை செய்வதாக வந்திருக்கக்கூடிய பெருமக்கள் அத்தனை பேரும் சொல்லியிருக்காங்க. 2, 3வது விஷயம், இந்த தீர்ப்பிற்காக உழைத்த அந்த ஊர் மக்கள், குறிப்பாக தினசரி ஆட்சியர் அலுவலகத்துக்கு போய் பெட்டிஷன் எல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் தொடர்ச்சியாக அவங்க ஒரு பெரிய வேண்டுதல் வைத்திருந்தாங்க. அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாம வந்து ஒரு மிக பெரிய கடமைப்பட்டிருக்கோம். அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாம நன்றியை தெரிவிக்கிறோம். அதே மாதிரி அந்த சுத்து வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 48 கிராமங்கள், அங்க இருக்கக்கூடிய வியாபாரிகள் அந்த நேரத்தில் ஒரு சிறிய கடையெடுப்பு செய்து அங்க தீபமெல்லாம் ஏற்றி அவர்கள் எல்லாம் இந்த தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு வைராக்கியத்தோட அவங்க ஒரு விரதம் போல கடையடைப்பெல்லாம் நடத்தி கடைகளில் தீபம் ஏற்றினாங்க. அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நாம வந்து மிகுந்த கடமைப்பட்டிருக்கோம். அவங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறோம். ஒரு அடையாள உண்ணாவிரதம் நடந்தது.
அடையாள உண்ணாவிரதத்தில் நிறைய பேர் கலந்துக்கணும், ஆனால் அதுக்கும் இடையூறு செய்தார்கள். 50 பேர் கலந்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு உத்தரவு கிடைத்து அந்த உண்ணாவிரதத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் அடுத்தடுத்து வந்து கலந்து கொண்டாங்க. அதில் ஈடுபட்ட ஒரு 300-400 பேருக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கான ஒரு நன்றி தெரிவிக்கின்ற ஒரு நேரமாகவும் இந்த நேரத்தில் நாம் தெரிவிக்கிறோம். அதே போல வீடுகளில் சேவர் கொடியை பறக்க விட்டு தீபமேற்றி அங்கே தங்களுடைய அந்த ஆதங்கத்தை கோலங்கள் வாயிலாக வெளிப்படுத்தி அந்த பெண்கள் உட்பட ஏராளமான பேர் இந்த தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்தோடு செயல்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு முருகனுடைய அருள் கிடைக்கும், அவர்களுக்கு நாம் நன்றி தெரிவிச்சிருக்கோம். அதே போல தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று நீதியரசர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. தீபத்தூணில் கார்த்திகை மாதத்தில் இது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா, அது காவல்துறை, ஆட்சியரெல்லாம் சேர்ந்து அதை மேற்கொண்டு அதை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக வரக்கூடிய பிப்ரவரி மாதம் 23ஆம் தேதி வளர்பிறை சஷ்டி வரக்கூடிய அன்னைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா வீட்லையும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும், எல்லா கோயில்களிலும் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்காக கந்தர் சஷ்டி கவசம் பாட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் முருக பக்தர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கு நம்முடைய இங்க இருந்து இந்த மனுதாரர்களாக இருந்த அத்தனை சகோதரர்கள் திருப்பி ஆகமம் இருக்குல்லப்பா After the order of the land civil have been passed, the act அப்படியே எங்க போறேன் if the stand of the government there could be a law and order problem to be true, then it is லைவ்ல இருக்கா ஆமாண்ணா failure on the part of the ஜேம்ஸ் எங்க கிருஷ்ணா வரலையாவா அந்த பக்கம் உட்காந்து ஊட்டி இருக்காருன்னா வரல நீங்க பேச சொல்றேன்னு ஃபர்ஸ்ட் போனேன் அண்ணா லைவ்ல இருக்குண்ணா ஆடியோ லைவ்ல இருக்குண்ணா awaiting for the copy of the judgment. Only the copy of the judgment is இத போறேன் will be able to give more clarity. The interview could be given நான் ஷார்ட்ஸ் எடுத்து ப்ளே பண்ண சொன்னீல, ஷார்ட்ஸ் எடுத்து ப்ளே பண்ணறவங்க இவங்க வந்துட்டாங்க. Niranjan is அப்படியே சாரி ஒன் செகண்ட் அப்படியே திருப்பி அப்படியே பக்கத்துல போய் திருப்பிடுவா and respondent is taking சார் ஒரு நிமிஷம் சார் ஒன் செகண்ட் எல்லாரும் சொன்னாம்லனே நான் என்னனே இப்ப வளர கஷ்டப்பட்டு லைவ் டைம்ல இருக்கேன். வச்சுக்கிறேன் ஒரு 2 நிமிஷம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா வச்சுக்கிறேன். வழக்கறிஞர் ரெடி ஆயிட்டு தான் இருக்காரு. சீக்கிரமா சரி அதை நாம இப்ப சொல்லக்கூடாது. சரியா இருக்கா சரியா இருக்கா ஓகேவா அண்ணா ஓகே தானே போலாமண்ணா அட்வொகேட் ஃபார் பெட்டிஷனர் அரசுபாண்டி நிரஞ்சன் குமார் சொல்லியிருக்கா. அப்படி இருந்தாலும் நீங்க சொல்லுங்க உங்க பாண்டியில் போலாங்கண்ணா. இன்று மாண்புமிகு இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவது சம்பந்தமாக தீர்ப்பு வெளியிடப்பட்டது.
நீதிபதிகள் முதல்ல தீபம் ஏற்ற வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் அப்படின்றத உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. அந்த மலை உச்சியில தூண்ல தீபம் ஏற்ற வேணும் அப்படின்றத நீதிபதிகள் ரொம்ப தெள்ள தெளிவா அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த தீபத்தை ஏற்ற வேண்டிய கடமை யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா அறநிலைத்துறைக்கும் அந்த கோயிலுடைய நிர்வாகத்துக்கும் தான் இருக்கு அப்படின்றதையும் உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. இதுல அவங்க எந்த காலகட்டத்திலையும் எந்த காரணமும் சொல்லி இதை தவிர்க்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வேற யாரும், அதாவது தனிநபர்கள் யாரும் மேல அனுமதிக்கப்பட மாட்டாது. இது அவங்க அறநிலைத்துறை சார்பும் ஈஓ சார்புலையும் தான் இதை செய்யணும்ன்றதை உறுதிப்படுத்தியிருக்காங்க. இதில் ரொம்ப மிக முக்கியமாக பார்க்கப்பட வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, தனி நீதிபதியான திரு ஜி.ஆர். சுவாமிநாதனுடைய உத்தரவுக்கு பிறகு அங்கே ஏற்ற சென்றப்ப நடந்த நிகழ்வுகள் எல்லாமே அவங்க கருத்தில் கொண்டிருக்காங்க. அதில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு நிர்வாகத்தை சேர்ந்த ஒரு 10 பேர் மேலே போய் விளக்கு ஏற்றுறதுனால அங்கே ஒரு சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வந்துடும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றது எதை குறிக்குதுன்னா அரசாங்கத்தினுடைய கையாலாகாத தனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படி இல்லை, எய்தர் இட் இஸ் a incompetency of the state to maintain its law and order or it is a political stand taken by the government னு சொல்றாங்க. உங்களால உங்க சட்டம் இதை நீங்க செயல்படுத்த முடியாததுக்கான காரணம் ஒரு 5 பேரோ 10 பேரோ மேல போய் இந்த தீபத்தை ஏற்றி கார்த்திகை அன்னைக்கு மக்கள் வழிபடுறது உங்களால செய்ய முடியல, இதுல சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனை வரும்னு நீங்க சொல்றது. ஆனால் அப்ப இது முழுக்க முழுக்க உங்களுடைய லா அண்ட் ஆர்டர் ஃபெயிலியர் ஆர் உங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் கெயினுக்காக நீங்க செய்யக்கூடிய மிஸ்சீஃப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம்னா முக்கியமான ஒரு விமர்சனம் என்ன அப்படின்னா, சிங்கிள் ஜட்ஜ் ஜஸ்டிஸ் ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் முன்னாடி எழுப்பப்படாத ஒரு ஆர்குமெண்ட்டை டிவிஷன் பெஞ்சில் அவங்க ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வக்ஃப் போர்டு, அதாவது தீபத்தூன்றது எங்களுடைய சொத்து, அது எங்களுடைய பவுண்டரி, எங்களுடைய எல்லைக்குள்ள வர்றது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது ஹைலி மிஸ்chievous ஸ்டாண்ட். இதை கண்டிக்க வேண்டிய அறநிலைத்துறையோ கோவில் நிர்வாகமோ அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்காம அதுக்கு அதை சார்ந்த நிலை எடுத்ததையும் அவங்க கண்டிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு இது முதல் கட்ட தீர்ப்பா நம்ம அவங்க கோர்ட்டில் வாசிச்சதை வச்சு நம்ம புரிஞ்சிருக்கோம். தீர்ப்பினுடைய முழுமையான நகல் வெளியே வரவும் அதை படிச்சுட்டு அதை பத்தி நம்ம விரிவா பேசுறது சரியா இருக்கும். வேற ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? அந்த மொத்த மலையுமே ஏஎஸ்ஐ ப்ரொடெக்டட்னு அவங்க சொல்லியிருக்கனால ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஒரு முக்கியமான தரப்பினர்னு முடிவு கொண்டிருக்காங்க. இல்ல இனிமேல் வரக்கூடிய எந்த விதமான அங்க பண்டிகைகளோ அல்லது எந்த ஒரு நிகழ்வா இருந்தாலும் யாருக்கா இருந்தாலும், இந்துக்களா இருந்தாலும் சரி, முஸ்லீமா இருந்தாலும் சரி, இல்ல யாருக்கா இருந்தாலுமே அவங்க கிட்ட அனுமதி பெறணும். அதே மாதிரி காவல்துறையிடம் ஒப்புதல் பெறணும். அதுக்கப்புறமா தான் இதை செயல்படுத்த முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா கார்த்திகை தீபத்தை பொறுத்த மட்டுக்கும் கட்டாயம் ஏற்றப்படணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால அதை பொறுத்த மட்டுக்கும் இது கட்டுப்படுத்தும்னு எனக்கு தெரியல. பட் தீர்ப்பை படிக்கும் பொழுதுதான் நம்ம முழுமையாக அதை பத்தி புரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா ஏஎஸ்ஐயும் போலீஸையும் கட்டாயம் இனி வருங்காலங்களில் எந்த ஒரு நிகழ்வா இருந்தாலும் பண்டிகை இருந்தாலும் அந்த மானுமெண்ட், அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய கட்டடங்கள்ல பயன்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை வரும் பொழுது அதை கட்டாயம் அவங்கள்ட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அனுமதி வாங்குறாங்க. அதே மாதிரி மாவட்ட நிர்வாகம் காவல்துறை அந்த ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல. ஆமா, ரொம்ப நீதிபதியோட உத்தரவை உறுதிப்படுத்திட்டாங்களா? அதை பத்தி அதாவது அதான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மாவட்ட நிர்வாகத்தையும் தமிழக அரசையும் இதை விட ஒரு தோலுரிச்சு காட்ட முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ரொம்ப கிளியரா அந்த ஆர்குமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஹியர் பண்ணிட்டு they have made an observation that it is nothing but either a law and order failure or a political gain. அப்ப இது ரெண்டுலயுமே நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியுது அரசாங்கம் இந்த விஷயத்தை எப்படி கையாண்டிருக்காங்கன்னு. இதுல உண்மையிலே ஒரு வியக்கத்தக்க விஷயம் என்னன்னா, இது அந்த ஸ்பாட்ல இருந்த எங்களுக்கு நேரடியாக அனுபவிக்க முடிஞ்சிச்சு. நம்ம அங்க இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கும் அங்க மனதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமத்துகளுக்கும் அனுபவிக்க முடியும். ஆனா இது ஆர்குமெண்ட்லயே அவங்க புரிஞ்சிருக்காங்கன்னா அதுதான் அவங்களுடைய தனித்துவமான விஷயங்கள். அந்த நீதிபதிகள் சொல்லும் பொழுது எங்க எல்லாருக்குமே முழுமையான ஆச்சரியங்க. அதாவது எப்படி இதை தெளிவா அவங்க புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். 144 போட்டது ஆன்டிடேட், இது செட்டப் 144ன்றதையும் போன எல்பி ஆர்ல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முழுமையா அரசாங்கத்தினுடைய சாயம் வெளுக்கப்பட்டு விட்டதுன்றதான் நான் புரிஞ்சுக்கிறேங்க. இதுல வேற எது இருக்குங்கண்ணா? இல்லை நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அவுட்லைனாக தான் நான் சொல்ல முடியும். ஜட்மெண்ட் படிக்காமல் நான் கிளாரிஃபை கொடுக்க முடியாது. பட் அவங்க ஃப்ரம் தி ரீடிங் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் பை ஜெயச்சந்திரன் இது ஒரு அப்பலண்ட், இது ரிட் அப்பீல். ஸோ அப்பீலில் இதில் அரசாங்கம் இது ஆகம விதி மீறல்னு நிரூபிக்க கடலை, இது தூண் இல்லை, இது தீபத்தூண் கிடையாதுன்னு நிரூபிக்க முடியல. ஏன்னா அவங்களுடைய கேஸ் அப்பலண்ட் தான் இந்த இடத்துல அதை ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். இது ஒரிஜினல் ரிட் பெட்டிஷன்ல ஒரு ஆர்டர் வந்துருச்சு. அந்த ஆர்டர் சரியா தவறான நம்ம அப்பீல டெஸ்ட் பண்றோம். அப்ப தமிழக அரசாங்கம், அதாவது அறநிலைத்துறை, எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர், டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், வக்ஃப் போர்ட்,
தர்கா அத்தாரிட்டிஸ் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் அந்த அப்பீல் தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அப்பீல்ல அவங்க சாட்சிகள் சான்றாவணங்கள் மூலமா இப்படி ஏற்றக்கூடிய முறை அங்கே இல்லை, இதை தீபத்தூண் இல்லை அப்படின்னு அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடியல. அதுக்கு ஆகச்சிறந்த உதாரணம் கடைசி க்ளோசிங் டே ஆர்குமெண்ட் அன்னைக்கு அட்வொகேட் ஜெனரல் திரு PS ராமன் அவர்கள் சொன்னாரு, எங்க எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒரு கருத்துக்கள் தெரிவித்திருந்தாலும் இதை தீபத்தூண் இல்லைன்னு ஒருத்தர் இது கிரானைட் கல்லுன்னு ஒருத்தர் வந்து இது சர்வே கல்லுன்னு ஒருத்தர், இப்படி ஒவ்வொரு மாறுபட்ட கருத்துக்கள் சொல்லியிருந்தாலும் ஒரு அட்வொகேட் ஜெனரல் ஆஃப் த ஸ்டேட்ல என்னுடைய சப்மிஷனே ப்ரிவைல் ஆகும், எங்களுக்கு இது என்னன்னே தெரியலன்னு முடிச்சிட்டாரு. ஸோ தேர்ஃபோர் அவங்களுடைய ஸ்டாண்டிலே கான்ட்ரரி ஸ்டாண்ட் எடுத்தனால நீதிபதியில் அதை முழுமையாக ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இது வந்து அவங்க இது தீபத்தூண் இல்லைன்னு நிரூபிக்க தவறியிருக்காங்கன்றதை ஹோல்டு பண்ணியிருக்காங்க. இன்னுமே முழுமையான ஜட்மெண்ட்டை படிச்சாதான் அதுக்கான தெளிவான விளக்கங்களை சொல்ல முடியும். அறகுறையா நம்ம கோர்ட்ல ஏற்பனதை வச்சு நம்ம சொல்றது சரியா இருக்காது. அதுக்கான அப்பீல் போறதுக்கு முன்னாடி சொன்னது என்னன்னா பெட்டிஷனர் அவர்தான் இதனால ஏத்தணும்னு சொல்றாரு. அப்ப அவரும் நிரூபிக்கல தானே அது தோணுது. அதான் சார், இதை நம்ம அந்த டீட்டெயிலாக அந்த ஜட்மெண்ட்டை பார்த்தா தான் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் என்ன காரணத்தினால அதை கொண்டிருக்காங்க அப்படின்ட்டு. ஆனா நீங்க என்னுடைய புரிதலில் நான் சொல்றேன், தனி நீதிபதி திரு டி ஆர் சோமனாவுடைய தீர்ப்புல ரொம்ப தெளிவாக அதில் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இது ஏற்கனவே பல காப்பியங்கள்லயும் வந்து பல பாடல்கள்லயுமே இது குறிக்கப்பட்டிருக்கு. ரெண்டாவது, அறநிலைத்துறை சார்பா 1960 வெளியிட்ட 1998 வெளியிட்ட அவங்களுடைய நூல், அந்த அறநிலைத்துறையினுடைய எக்ஸிகியூட்டிவ் ஆபீசர் சார்பா திருப்பரங்குன்றம் பத்தி ஒரு நூல் வெளியிட்டாங்க. அந்த நூல்லையே மேல தீபத்தூண் இருக்குன்றதை அவங்க சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நம்ம எடுத்து சொல்லியிருக்கோம். அதெல்லாம் தீர்ப்புல குறிச்சிருப்பாங்கன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். தீர்ப்பு முழுமையா வரவும் நம்ம அதை படிச்சு நன்றா சொல்லுவோம். தமிழக அரசுக்கு நீதிமன்றம் கொடுத்த உத்தரவை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? தமிழக அரசோட செயல்பாடுக்கும் நீதிமன்றம் கொடுத்த உத்தரவை அதாவது ரொம்ப ஒரு காமன் டேர்ம்ல சொல்லணும்னா இது ஒரு அவங்களுடைய கான்சியஸை வந்து வேக் பண்ற மாதிரி, இன்னும் அவங்களுடைய நாடகம், இன்னும் அவங்களுடைய இந்த விஷபத்தனமான விஷயங்கள் இனி பலிக்காதுன்றதை அவங்க தெளிவா சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிறேன். இல்ல சார், அதாவது இப்ப இன்னைக்கே அந்த ஜட்மெண்ட் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பின்னாடி அடிஷனல் அட்வொகேட் ஜெனரல் ஒருத்தர் மென்ஷன் பண்ணி கந்தூரியில வந்து இந்த மாதிரி அவங்க மேல தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு வழக்கு தாக்கல் பண்ணியிருக்காங்கன்னு, அந்த கந்தூரி வழக்குல 50 பேர் மட்டுமே மேல ஏறணும்னு தனி நீதிபதி சொல்லியிருக்கதாலையும் அதை அவசர வழக்கா விசாரிக்கணும்னு கேட்டாங்க. நீதிபதிகள் அதை அறவே மறுத்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு எங்களுடைய தீர்ப்பை முதல்ல நீங்க படிங்க, அதுலயே நாங்க எல்லா சப்ஜெக்டையும் கவர் பண்ணி சொல்லியிருக்கோம். அதை படிச்சுட்டு ஒருவேளை அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்களோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஐயப்பாடுகள் இருந்தா நீங்க கட்டாயம் எங்கள்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை பொறுத்த மட்டுக்கும் நம்ம அரசாங்கம் இன்னும் முழுமையா அந்த இந்துக்கள் ஆதரவு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடை எடுப்பாங்க. ஆதரவுன்னு இல்லைங்க, சமநிலை கொள்ளணும். நீங்க இந்துக்களா இருந்தாலும் முஸ்லீமா இருந்தாலும் ஒரே பார்வையில பாருங்க. நீங்க உங்க ஓட்டுக்காக, உங்க எலெக்ஷனுக்காக, உங்க ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக நீங்க இப்படி செய்யாதீங்க அப்படின்றது எங்களுடைய ஒரு தார்மீகமான கருத்து. அதை அரசாங்கம் உட்கொள்வாங்க நான் வந்து நம்புறேன். இனியாவது அரசாங்கம் எல்லாருக்குமான அரசாங்கமா இருக்கணும். அதாவதுங்க, இப்ப புரிஞ்சுட்டேன். இப்ப நீங்க ரிட் அப்பீல் வந்து அவருடைய இறுதி உத்தரவுக்கு மேல பிறப்பிக்கப்பட்ட அதுக்கு மேல ஃபைல் பண்ண அப்பீல், அந்த அப்பீலை பொறுத்த மட்டுக்கும் முழுமையா ஹியர் பண்ணி இன்னைக்கு ஆர்டர் சொல்லிட்டாங்க. நான் புரிஞ்சுக்கிறது என்னன்னா அவருடைய தீர்ப்பை உறுதி செஞ்சுட்டாங்க, அவருடைய தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. ஆனா மேற்கொண்டும் டைரக்ஷன்ஸ் தர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறனால அதை வந்து அவங்க அப்பீலை டிஸ்போஸ் பண்ணி ஃபர்தர் டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப கண்டெம்ப்ட்ன்றது அன்னைக்கு பிறப்பித்த தீர்ப்பு, அதாவது அந்த சிங்கிள் ஜட்ஜ் பிறப்பிச்ச 1ஆம் தேதி பிறப்பிச்ச உத்தரவுல அவங்க தீபாவளத்துல மேல போய் ஏத்தணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அது ஏற்றப்படவில்லை. அதுக்காக அவர் மறு உத்தரவு 3ஆம் தேதி பிறப்பிச்சாரு. அந்த 3ஆம் தேதி பிறப்பிச்ச உத்தரவு மதிக்கப்படல. சோ அதுக்கான கண்டெம்ப்ட் தான் இப்ப வந்து 9ஆம் தேதி வாய்தா வருதுங்க. இப்ப இந்த வழக்கு என்ன ஆயிருந்தாலும், ஒருவேளை டு தி எக்ஸ்ட்ரீம் எண்ட்ல இந்த எல்லா அப்பீல் அரசுக்கு சாதகமா அளவே செய்யப்பட்டிருந்தாலும் அந்த கண்டெம்ப்ட் கட்டாயம் நிலைக்கத்தக்கது. ஏன் அப்படின்னா அந்த உத்தரவை அன்னைக்கு தேதிக்கு அவங்க மதிச்சாங்களா, ஒரு நீதிமன்ற உத்தரவை அவங்க செயல்படுத்தினாங்களா, அதுல சொல்லிருக்கக்கூடிய அந்த லெட்டர் அண்ட் ஸ்பிரிட்ல அதை ஒபே பண்ணாங்களான்றது அதுல முக்கியமான விஷயமா பார்க்கப்படுது. அது அவங்க செய்யலன்றது என்னுடைய தார்மீக கருத்து. அது அன்னைக்கு இப்ப இந்த ஆர்டர் வந்து தனி நீதிபதி எடுக்கக்கூடிய கண்டெம்ப்ட எந்த வகையிலையும் பாதிக்காது. முழுமையா அவங்களுடைய எதிர்த்தரப்பு, அதாவது கண்டெம்னர்ஸ்னுடைய தரப்பு வாதங்களை கேட்டுட்டு இது பனிஷ் செய்யப்படணுமா அல்ல என்ன மாதிரியான உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்றத தனி நீதிபதி அவர்கள் 9ஆம் தேதி முடிவெடுப்பாருன்னு நாங்கள் நம்புறோம். அதாவதுங்க, எப்பயுமே ஒரு சின்ன ஒரு கோர்ட்ல ஒரு இது இருக்குங்க. தனி நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பிச்சிட்டார் அப்படின்னா அதுக்கு மேல நம்ம டிவிஷன் பெஞ்ச், இரு நீதிபதி கொண்ட உத்தரவு ஒரு பெஞ்சுக்கு போவோம். அவங்க ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சிட்டாங்கன்னா நம்ம அதுக்கு மேல கூடிய சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நம்ம போவோம்.
பொதுவாக ஏன் இந்த மாதிரினா நம்மளுடைய ரைட், இட் இஸ் ரைட் அண்டர் த கான்ஸ்டிடியூஷன். நம்ம வந்து அப்பீல் ஃபைல் பண்ணுறது நம்மளுடைய உரிமை. ஆனால் அதை சும்மா நாம் கேவாசே தாக்கல் பண்ணி வச்சுட்டு நாங்கள் அப்பீல் போயிட்டோம் நீங்க சொல்லி இந்த உத்தரவை வந்து நிறைவேற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக அரசு செஞ்ச ஒரு ஒரு விஷமத்தனமான ஒரு செயல். அந்த எஸ்எல்பி இன்னைக்கு தேதி வரைக்குமே நம்பர் செய்யப்படலை. அது எல்லாமே டிஃபெக்ட்ஸ் கண்டி ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு. அப்ப அவங்களுடைய நோக்கம் இதை முழுமையா நம்பர் பண்ணி உச்சநீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு கொண்டு வந்து அதுல உத்தரவு வாங்குறது இல்ல. அங்க பேருக்கு ஒரு அப்பீலை தாக்கல் பண்ணிட்டு அந்த டைரி நம்பர்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த டைரி நம்பரை வச்சுக்கிட்டு சிங்கிள் ஜட்ஜிட்டு டிவிஷன் பெஞ்சிலையும் நாங்க அப்பீல் போயிட்டோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்குன்னா இவங்க கைகளை கட்டுப்படுத்த முடியும்னு அவங்க நினைச்சாங்க. அது அறவே அரசாங்கம் தோல்வி அடைஞ்சிருக்குன்னு தான் நான் அதை கருதுறேன். நான் அந்த அப்பீலோட ஸ்டேட்டஸ் கூட நான் காமிக்கிறேன் ஒரு 2 நிமிஷத்துல. அதை இன்ன வரைக்கும் அப்பீல் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகி தான் இருக்கு. அதுல அவங்க இன்னும் அதை நம்பர் பண்ண அதை ப்ராப்பரா பிரசன்ட் பண்ணி அதை நம்பர் பண்ணி விசாரணைக்கு கொண்டு வரக்கான முயற்சியில் அரசு ஈடுபடவே இல்லை. வேறங்கண்ணா அவ்வளவுதானா? நன்றி. கேள்வி நீங்க கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மேடம், can I give it in a single shot, madam, for all of us? I'm just giving it in English. Can you also put your mic? You want a separate one? My throat is not nice, madam. My throat is not nice. அப்படியா? சரி. Oh, I understand. அண்ணா நீங்க கேள்வி கேட்டு நான் பதில் சொல்லணுமா? Today, the Honorable Division Bench was pleased to pronounce its verdict. Madam, can I give it in a single shot, madam, for all of us? I'm just giving it in English. Can you also put your mic? You want a separate one? My throat is not nice, madam. My throat is not nice. அப்படியா? சரி. Oh, I understand. அண்ணா நீங்க கேள்வி கேட்டு நான் பதில் சொல்லணுமா? Today, the Honorable Division Bench was pleased to pronounce its verdict. The Honorable Division Bench has unequivocally held that the lighting of lamp at the Deepam at the top of the hill is a mandate. They have said it should have been lit in this year, and for all future years it has to be lit. Is the finding given by the Honorable Division Bench. The Honorable Division Bench pleased to dispose of all the writ appeals by giving certain directions. They have said lighting of the lighting of lamp at the Deepam on the eve of the Kartika festival is a mandatory one. They have held it for sure, and then they have said for the future years, irrespective of the religion, either be the Hindus or be the Muslim, wherever they wanted to celebrate in the top of the hill at any part, if they are going to touch on any of the ancient monuments which are covered under the ASI, then they necessarily get their permission from the ASI and from the necessary permission of the police so as to conduct any functions in future. That is the finding given by the Honorable Division Bench. The Honorable Division Bench has also come down very heavily on the government by criticizing their stand. They have said lighting, as per the order of the single judge, the Devasthanam is supposed to light the lamp at the top of the hill. And because they have failed to do so, they cite the reason as a law and order issue. The court has clinchingly observed by citing if it's the government's ultimate failure if they state it's a law and order issue, or on the other hand, they have said it's the government's it is the stand of the government on the political score to attain political scores. Therefore, the court has come down very heavily on the government. But however, we are yet to receive the final copy of the judgment. Once we receive the copy of the judgment, we can decide better. What is the state of Supreme Court petition? The government, after the order of the single judge in the contempt application, went before the latest patent appeal before the Honorable Division Bench. The Honorable Division Bench confirmed the order of the single judge in the contempt application and dismissed the LPA. In order to save their skin, they had filed an SLP before the Honorable Supreme Court, and it is at the stage of basic filing, that is the diary number. They have not even taken their efforts to get it numbered and bring it for hearing. The government, just to answer before the Honorable Single Judge in the contempt and to give an answer to the Honorable Division Bench, they have filed this SLP. They have not taken even the basic steps to get it numbered. That is what the present status as on today exists. Previously, at the time of Kanduri, they have not allowed any people in the upstairs, but the state government has helped them to take that flag into upstairs. How do you see this? It is actually violative of the order passed by the Honorable Justice Ilangovan J
in a criminal matter, and as well as the directions issued by Honorable Justice Vijayakumar concurring with Honorable Justice Srimati J. See, it's a normal question that we can put it to ourselves. When the government takes up a stand not to light Kartikeya Deepam at the top of the hill and restricts with their police force at the bottom of the hill, and on the other side, on the other hand, they protect, the police form a human chain. They protect the other religious people, and they are allowed to climb the hills. They are allowed to hoist their flag, and they are allowed to proceed with the Kanduri and other festival. We filed an emergency writ petition before the vacation court, which was again adjourned and taken up on Tuesday on 2nd of January, that is last week, and an injunction was granted. The Honorable Justice Srimati J had once again observed the division bench order, that is Justice Vijayakumar's view and Justice Srimati's view once again, and they have injuncted that animal sacrifice or cooking of animal food or carrying of animal meat or whatever it is in any nature to the hill on Kanduri festival is completely prohibited. That is the judgment which has been delivered on the 2nd, and therefore the government's stand is very clear, that is they are favouring one religious party on the political scores, and that is what has been observed by the Honorable Division Bench in the order. But whatever I have said now is subject to going through the entire copy of the order in its letter and spirit, and then we'll have a better idea to discuss with among ourselves. The Honorable Division Bench has observed in the order that when the matter was argued before the single judge, the Waqf Board did not take a stand that the Deepam belongs to them. But when the writ appeal was argued for final hearing, the Waqf Board has gone to the mischievous stand of saying that the place and the Deepam where at the top of the hill also a property of the Waqf Board. That was seriously criticized by the Honorable Division Bench in the judgment. But however, nearly election is going to come. What will be the upcoming year, the lighting at Kartikeya festival in the top of the hill? Will there be any changes, or they will allow, or they will obey the order of the... Had the present government led by the DMK obeyed the court orders, or had they respected the Hindu cultures and customs, they would have done that. They would have never hurt the sentiments of majority of people who are Hindus. We are not saying that because you are supporting Hindus, Muslims must be targeted. No. We are saying, as per our constitution, act in a fair and transparent manner. Put all the religions on the same page. Do not take advantage of one at the cost of the other. That is what we would like to say, and hopefully the honorable judges have also said that in the order. Finally, many people have sacrificed their life for lighting the lamp in the top of the hill. How do you see that moment and these results? See, as we all have put, it is our sentiment. It is not just a mere act. It is not a religious custom alone. It is a sentiment of several lakhs and lakhs of people who are the devotees of Lord Muruga and Lord Shiva. The lighting of a lamp at the top of the hill is treated to be a sacred one. It is nothing but to eradicate the darkness in your life and to promote light is what the festival actually means. Therefore, it is a sentimental one to all the Hindus. Many people have sacrificed their life, and it should not go meaningless. The government should not treat it lightly. To put it forth, when the writ appeals were reserved for a verdict, one of our close brother, namely Mr. Purnachandran, had set fire on himself, which nobody's intention should be that, but his life is also sacrificed for such a cause. Today, I am happy that we have got a favorable verdict, but we are in complete sadness that one of our brother has lost his life for us, and his family is completely on streets. We are devastated. We are sincerely hoping that our entire Hindu religious community will stand for their with solitude with the family, and we will see that the sentiment of the people are upheld. How do you feel about the date? That is 6th Muruga. The date also 6. How do you feel? And Mudal Padai, we can say today is the day, month of January. Today is a special day for many reasons. One, as my learned brother reporter has pointed out, the 6 adopts. Arupadai Veedu is one of the main thing that has been treated, and Thirupparankundram is the first among the 6. And therefore, today's date is also 6/1, January 6th. And today also happens to be my second son's birthday. So therefore, putting it all together, it is a big treat for us. We are delighted to have this verdict on this particular day. And the government has filed an SLP. Please.
you should take a look at the government's SLP which is filed. Clear ஆக இப்படி பண்ணவா இந்த இதான் கேஜே பிரவீன் குமார்ன்றவர் நம்ம மாவட்ட டிஸ்ட்ரிக்ட் அவர் இஸ் a district collector. அவருடைய அப்பீல் ராம ரவிக்குமார் இந்த கேசஸ் அண்டர் டிஃபெக்ட் லிஸ்ட் வேலிட் ஃபார் 90 days. அவங்க தாக்கல் பண்ணதுல முழுமையா அந்த பேஜஸ் தாக்கல் பண்ணல. இதுல பாருங்க, இதை நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிங்க. You can please zoom it to this and see this is cases under defect list valid for 90 days. They have not even taken their steps to get this appeal numbered. Just Nam Kevase, this has been filed only to, and if you can see the defect, just see the defect. It is not even signed by the parties. Just see this. Page is not in order. Serial number 6 defect. Memo of party is not found. Just see this. Sign of petitioner to missing. Vakalat. Vakalat is a basic thing for which it has to be filed along with the case to be taken up. Today, if you can see, the Vakalat itself is not signed. And this is presented on 6/12/2025. So that only to see that it is just. Thank you. Thank you. Thank you. கையில கொடுப்பா. நல்லா ஒய்டா சார், நல்லா ஒய்டா வாங்கன்றீங்க. எல்லா யூனிட் அங்க இருக்குல்லப்பா, இப்ப மட்டும் ஒய்டா வாங்க. நீங்க என்னங்க எல்லா யூனிட் அங்க இருக்குல்ல, கூப்பிடுவாங்கப்பா. அப்படி கிடையாது, எல்லாரும் பத்திரிகையாளர்கள் இந்த செய்தியை மக்கள் மத்தியில் கொண்டு போய் சேர்ந்ததுல உங்களுக்கு பெரிய பங்கு இருக்கு. அண்ணே ஓபன் பண்ணி கொடுங்கண்ணே. நீங்க கேமரா ஓட்டிருக்கீங்க, நான் வாயில கொடுக்கலாமா? அப்படியே இவருக்கு மட்டும் கொடுங்க, வாயில ஊட்டி விட்டுருங்க. நீங்க ஊட்டி விடுங்க. அப்புறம் மத்தவங்க எல்லாம் போயிட மாட்டாங்களா? ரொம்ப சந்தோஷம் தான் போடுவோம். கொஞ்சம் நல்லா பின்னாடி தள்ளி நீங்க எடுங்க. சாமி கூட இந்த அவர் கூட்டுங்க சார். இவர் அப்ப இருங்க. கொடுத்தீங்க. திரும்பி வாங்கிக்கோண்ணா. மூணு தடவை அரோரா சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ் பா, ரெண்டு பேத்துக்கும் ஆடியோ மாதிரி ஆடியோ மாதிரி. எனக்கு தெரிஞ்ச இங்கிலீஷ்ல சொல்றேன். போலாமா? வெற்றிவேல் முருகனுக்கு. Today is a historical day. The division bench of the Madurai, Chennai branch of Madurai court has given a verdict that all the appeals by the government, HR and CA, Commissioner of Police, Collector, and all the appeals were dismissed. And the Deepam, the light must be lit in the Deepam at the particular place where we are asking from the past 100 years.
So it is a talk of the day, and it is a very celebrating moment for whole India, whole Bharat. So Deepatun light must be lit in Deepatun on the coming Kartigai month. The ASI, the overall site belongs to ASI. So ASI and Devasthanam, with the consultation of the police and taking the necessary consultant from the collector, the light must be lit in the Deepatun. That is the verdict we got from the division bench of the Madurai court. So it is we are celebrating the moment now. We are distributing sweets to everybody. So it is a very good judgment. So as a devotee, as a Muruga Bhakta, how do you feel? How about the Madurai people and Tamil Nadu people look like? It is the victory of all Muruga Bhaktas all over the world. Muruga Bhaktas are in all over the world. So it is a victory to the Muruga Bhaktas. Secondly, for the past 1 month, who were fighting for this, who were wandering on this light should be lit. Very particularly the people of the Thirupparankundram hill, the local people who gave petition to the collector and who made a protest, that is hunger strike, who made a lockdown, sharp lockdown. That we actually very grateful to the people, local people and Madurai people. Overall, for the past 1 month, the prayers were being conducted all over Tamil Nadu. So it is a victory for Muruga Bhaktas. So by upcoming days, when can we see the lighting? Actually, the Honorable Court has said it should be light in Kartigai month. That is next December. The lightning coming December. Coming so lighting will be in both the place, right? In temple. Yes, will be in both the temples. Actually, we didn't read the full judgment. We have to see waiting for the judgment. But what we understand is that light should be lit in the Deepatun, which is in the highest top of the hill. Yes. So as a spiritual, you people are eagerly waiting for the end of the judgment, right? Yes, we are waiting for the judgment. Vetrivel Muruganukku. வாங்க ஜி, நமஸ்தே. வாங்க. கொஞ்சம் லேஸ் வந்துடும். இல்ல அவங்க பேசிருக்காங்க. அவர் ஒட்டுமொத்தமா டெக்னிக்கல் டீடைல் அவர் பேசுறாங்க. கொஞ்சம் ஒரே நிமிஷம் கொஞ்சம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு இன்றைக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இருக்கக்கூடிய முருக பக்தர்கள் முன்னாடி வாங்க. முருக பக்தர்களுடைய அந்த வேண்டுதல் பலித்திருக்கிறது. இந்த மேதகு 2 நீதியரசர்கள் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த நீதிமன்றத்தில் முருக பக்தர்களுக்கான ஒரு அருமையான தீர்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த திருப்பரங்குன்ற பக்தர்கள், மதுரை பக்தர்கள், ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தினுடைய பக்தர்களுக்கான இந்த தீர்ப்பு ஒரு மிக அற்புதமான தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கிறார்கள். அரசு தரப்பிலையும் நம்முடைய ஆட்சியர் தரப்பிலையும் காவல்துறையினர் தரப்பிலையும் அறநிலையத்துறை தரப்பிலையும் மேல்முறையீடு செய்திருந்தாங்க. ஸோ அந்த மேல்முறையீட்டினுடைய விஷயமானது தள்ளுபடி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. தள்ளுபடி செய்யப்பட்டு அங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய தீபத்தூண்ல தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும். அதே இடத்துல தீபம் ஏற்றணும். அதற்கான வேலைகளை அங்க இருக்கக்கூடிய தேவஸ்தான நிர்வாகம் பார்க்கணும். அதற்கு தேவையான உதவிகளை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். குறிப்பாக ஏஎஸ்ஐனுடைய ஒரு டீமு, அதேபோல காவல்துறையினுடைய ஒரு டீமோட சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை செய்து முடிக்கணும். இதற்கு ஆட்சியாளர் சரியான வகையில், அதாவது ஆட்சியர் அவர்கள் சரியான வகையில் ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இதை கோஆர்டினேட் பண்ணி எந்த இடத்துல நாம வேண்டிக் கொண்டோமோ, மலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய தீபத்தூண்ல தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று நாம வேண்டிக் கொண்டோமோ அந்த இடத்துல தீபம் ஏற்றுவதற்கான வேலைகளை செய்ய வேண்டும். ஒரு தரப்புல இதனால சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள் ஏற்படும், ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டாம்பீடு மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் நடக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரப்புல செய்யப்பட்ட அந்த வாதங்கள் எல்லாம் அரசாங்கத்தினுடைய செயலற்ற தன்மையை காண்பிக்கின்றது என்றுதான் மாண்புமிகு நீதியரசர்கள் தங்களுடைய தீர்ப்புகளில்
சொல்லியிருக்காங்க. ஏற்கனவே பல தீர்ப்புகளுடைய விவரங்கள் அதனுடைய விஷயங்கள் எல்லாம் கூட அடிக்கோடிட்டு காண்பித்து ஒட்டுமொத்தமாக இந்த தீபம் ஏற்றுவதனால இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு தரப்புக்கு மன கஷ்டம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயத்தை முன்னெடுப்பது தவறு. இந்த இடத்துல லைட் ஏற்றிருக்கணும், ஃபைட் இருந்திருக்க கூடாது. அரசாங்கம் முன்னின்று இந்த இரண்டு தரப்புக்குள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக ஒரு இரண்டு தரப்பில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தி இருக்கணுமே தவிர்த்து அரசாங்கம் இதை மேற்கொண்டு வெவ்வேறு காரணங்களால வெவ்வேறு தரப்பினுடைய அப்பீல்னால இது ரெண்டு தரப்பு கூட ஒரு பெரிய பிரிவினை ஏற்படுத்தின மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது. அதை தவிர்த்திருக்க வேண்டும் என்று நீதியரசர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதன் பிறகு எப்ப ஏற்றணும் என்ன ஏது கார்த்திகை மாதத்தில் அந்த விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. மேற்கொண்டு இதனுடைய வழக்கினுடைய விவரங்கள் டெக்னிக்கலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்முடைய வழக்கறிஞர் பெருமக்கள் சொல்லுவாங்க. ஒட்டுமொத்தமாக இது தமிழக இந்துக்களுக்கு, தமிழகத்தினுடைய முருக பக்தர்களுக்கு, ஒட்டுமொத்த முருக பக்தர்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி. இது எந்த வகையிலும் அதாவது தமிழக வரலாற்றில் ஒரு தனி சிறப்பு மிக்க ஒரு தினம், ஒரு தீர்ப்பு. அதனால நாம் எல்லோரும் இந்த நேரத்தில் முருகனுடைய அருள் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. முருகனுடைய ஆசிகளால் இது நிச்சயமாக நடத்தும். தீபத்துள்ள தீபம் ஏற்றுவோம். வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா. ஐயா பாருங்க வக்கீல் பேசணும், நம்ம வழக்கறிஞர் பேசுவாங்க, அப்புறம் கேட்டுக்கலாம். எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மாசமா இந்த திருப்பரங்குன்றம் விஷயங்களை நம்ம மீடியாவில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம். பல்வேறு கட்டுக்கதைகள், பல்வேறு பொய்கள், பல்வேறு தவறான சங்கதிகள் எல்லாமே மீடியாக்களில் திட்டமிட்டு பரப்பப்படுது. அது முக்கியமாக இந்து மக்களுக்கு எதிராக பரப்பப்படுது. அது மீடியா மட்டும் இல்லை, தமிழ்நாடு அரசாங்கமே நீதிமன்றத்தில் பல்வேறு பொய்களை அடுக்கடுக்காக சொன்னாங்க. நம்ம அதை பார்த்தோம். திருப்பரங்குன்றம் தமிழ்நாடுடைய உலகத்திலே உள்ள 6 படை வீடுகளில் முதல் படை. அந்த படையில் உள்ள மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுறதுக்கு தான் மனிதர் ரவிக்குமார் நவம்பர் மாதம் அதுக்கான பிள்ளையார் சொல்லி போட்டார். அதற்கப்புறம் ஈவோ அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாங்க. நீதிமன்றத்துக்கு வந்தோம். தனி நீதிபதி அவர்கள் நேரடியாக போய் பார்த்தாங்க. எல்லா எவிடன்ஸும் கொடுத்துருந்தோம். தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. அதற்கு மேலே ஒரு 3-4 வழக்குக்கு கிட்டத்தட்ட 20 அப்பீல் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்து சமய அறநிலைத்துறை இந்து மக்களுடைய உரிமைகளை, கோவிலுடைய பாரம்பரியங்களை, கோவிலுடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்க வேண்டிய இந்து சமய அறநிலைத்துறை இந்து மக்களுக்கு எதிராகவே 3 அப்பீல் தாக்கல் செஞ்சிருந்தாங்க. அந்த 3 அப்பீல், அது போக கவர்மெண்ட், கலெக்டர், கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் எல்லாருமே அந்த உத்தரவுக்கு எதிராக அப்பீல் தாக்கல் செஞ்சிருக்கிறத பார்க்கும்போது இந்து மக்களுக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசாங்கமே எதிராக இருக்குங்கிற அந்த ஒரு சூழ்நிலை தான் நம்ம முடிவெடுக்க முடியும். அந்த ஒரு சூழ்நிலையில் கிட்டத்தட்ட 20 அப்பீலையும் பொறுமையாக 2 நபர் நீதிபதிகள் திரு ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் அதை கேட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 நாள் அந்த ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நடந்துச்சு. வக்ஃபு அவங்க அப்பீல் வரதில் ஒன்றும் ஒரு மாற்று கருத்து கிடையாது. அது அவங்களோட உரிமையை கேட்குறாங்க. அது உரிமை இருக்கா இல்லைங்கிறத நம்ம நீதிமன்றம் இன்னைக்கு சொல்லிருச்சு. இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாள் கழிச்சு இன்னைக்கு இந்த தீர்ப்பு ஒரு வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தீர்ப்பு அன்னை சொன்ன மாதிரி அதை கொடுத்தாங்க. அந்த தீர்ப்பில் அடிக்கோடிட்டு காமிக்கும்படி என்ன சொல்லணும்னா, நீதிமன்றம் ரொம்ப தெளிவான ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காங்க. அரசாங்கம் ஒரு லைட்டை ஏற்றி இருந்தால், நான் உங்களுக்கு கலோக்கியலாக சொல்கிறேன் இந்த வார்த்தையை, அரசாங்கம் ஒரு லைட்டை ஏற்றி இருந்தால் அந்த ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் இதை ஃபைட் பண்ணுற அளவுக்கான கொண்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கம் விட்டது தவறுன்னு மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது தீர்ப்பு கிட்டத்தட்ட 200 பக்கம் தீர்ப்பு. அவங்க நீதிபதிகள் அந்த கடைசி சில பேராகிராஃப் மட்டும் படித்ததை மட்டும் தான் வச்சு நான் இப்போ சொல்கிறேன். தீர்ப்புகள் இன்னும் நம்ம அதை படிக்க போகிறோம். இப்போ இது கண்டிப்பாக தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை செயல்படுத்தி ஆகணும். ஏன்னா இது இந்து மக்களுடைய உணர்வுகள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு முருக பக்தருடைய உணர்வு. அதை முதல்ல தயவு செய்து தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இதை உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளிக்கணும். இந்த ரவிக்குமார் கிட்டத்தட்ட 150 வருஷம் கழிச்சு இதை இது ஏற்கனவே ஒரு 30 வருஷம் முன்னாடி 1994 ஒருத்தவங்க வழக்கு தாக்கல் செஞ்சாங்க. அவங்க
நெகட்டிவா அதில் ஏற்றக்கூடாதுன்னு வழக்கு தாக்கல் செஞ்சாங்க. அப்பயுமே இந்து மக்களுக்கு உணர்வளிக்கும் வகையில் திரு நீதிபதி கனகராஜ் அவர்கள் தீபம் ஏத்தணும்னு உத்தரவு கொடுத்திருந்தாங்க. ஏத்தலாம்னாங்க, அதுக்கு ஏத்தலாம் கோர்வையா நான் சொல்லிடுறேன், நீங்க அதுக்கப்புறம் கேளுங்க. அவங்க வந்து 15 மீட்டருக்கு அப்புறம் எங்க வேணா ஏத்திக்கலான்னு இருக்காங்க. அதுவும் வந்து கோவிலுக்கு நிர்வாகத்துக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லா ஒர்ஷிப்பரும் அதுக்கான ரைட்ஸ் இருக்குங்கிறதே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ 1996 கொடுத்த உத்தரவை திட்டமிட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டு வரும்போது அரசாங்கங்களும் இந்து மக்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடே வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இப்போ 2025 இதுக்கான அடுத்த ஊனா சொல்லி ஆரம்பிச்சாச்சு. 2014 சில வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டும் அது வந்து தள்ளுபடி செய்யப்பட்டாலும் இந்த வழக்கு வந்து இப்போ 2025 நீதிமன்றம் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க உத்தரவு கொடுத்திருக்கிறாங்க. இப்போ இந்த தீர்ப்புல பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சம்பந்தப்பட்ட தீபத்தூண்ல தீபம் திருக்கார்த்திகை அப்போ கோவில் தேவஸ்தானம் ஏஎஸ்ஐயோட கண்ட்ரோல்ல இருக்குங்கிறதுனால அவங்களுடைய கன்சல்டேஷனோட அந்த இடத்துல மலையில வந்து உச்சியில உள்ள தீபத்தூண்ல தீபம் ஏற்றணும். அதுக்கு மாவட்ட நிர்வாகமும் காவல்துறையும் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க மாவட்ட நிர்வாகம் 2 பேரையும் கூப்பிட்டு சமரசம் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீடியேஷன்ங்கிற பேரில் பீஸ் கமிட்டிங்கிற பேரில் மக்களை இன்னும் பிளவு தான் படுத்துறீங்களே தவிர ஒற்றுமையை உருவாக்குறதுக்கு நீங்கள் எந்தவித செயல்பாடும் நீங்கள் செய்யலைங்கிறதையும் மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி இன்னைக்கு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்துக்களுக்கு எதிரான முருக பக்தர்களுக்கு எதிரான ஒரு நிலைப்பாடை செயல்படுத்திட்டு இருக்கீங்க. தயவு செய்து இதை நீதிமன்றத்தோட உத்தரவை இப்பயாவது நீங்கள் காப்பாற்றினீங்கன்னா முருக பக்தர்கள் அனைவரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆதரவாக இருப்பாங்க. இல்லை இதுக்கும் மேலே நீங்கள் வந்து இன்னும் உச்சநீதிமன்றத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம்னா நல்லதாக கூட உரிமை தாராளமாக போகலாம். பட் எப்போ நாங்கள் மட்டும் இல்லை, முருகனும் உங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருக்காருங்கிறது ஒரு வழக்கறிஞராக இல்லாமல் ஒரு இந்து பக்தரா ஒரு முருக பக்தரா நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். சார், பொது அமைதி அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டது காரணமே அரசு தான்றதை வந்து நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்காங்க. அரசியல் காரணங்களை அடிப்படையாக கொண்டு அரசியல் செய்யக்கூடாதுன்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த தீபத்தூண் இருக்கிற இடம் வந்து அந்த கோவில் தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமான இடம்ன்றதையும் தீர்ப்புல சொல்லியிருக்காங்க. அதை பத்தி அதில் வந்து இப்போ கடைசியா நீதிபதி அவர்கள் படிச்ச அந்த வரிகளை நம்ம வந்து கவனிக்கும் போது இது இத்தனை ஆண்டுகள் கழிச்சு இதை வக்ஃபு போர்டு வந்து எங்களோடது, அந்த இடம் வந்து தீபத்தூண் எங்களோடதுன்னு சொல்றதை ஏத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம எல்லாருமே இப்போ மீடியாவில் பார்த்தீங்க, ஒவ்வொரு நாளும் ஆர்குமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் முதல் நாள் கிரானைட் தூணுன்னு சொன்னாங்க, அடுத்தது சர்வே தூண் சொல்லலை, சர்வே தூணுன்னு சொன்னாங்க, அடுத்த நாள் வந்து சமணர் தூணுன்னாங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன தோணுச்சோ முருகனுக்கு 2 மனைவின்னு கேலி செஞ்சாங்க. இப்போ இதெல்லாம் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். இப்போ எல்லாத்துக்குமான ஒரு பதிலா நீதிமன்றம் இந்த இடம், அந்த தீபத்தூண் இருக்கிற இடம் தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமானதாங்கிறத ரொம்ப தெளிவா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த தேவஸ்தானத்துக்கு சொந்தமான இடத்துல தீபம் ஏற்றுறதுக்கு எந்தவித தடையும் இல்லைங்கிறத இன்னைக்கு வந்து போடிட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க. இது முக்கியமா அரசியலும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கிறாங்க. அது முக்கியம். பொது அமைதி, ஆமா. அதாவது பொதுவா ஒரு அரசாங்கம்ங்கிறது ஒரு இரண்டு மக்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அந்த பிரச்சனைய சமரசம் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு அமைதிப்படுத்துறது தான் அதோடைய கடமையை தவிர இதை வந்து கற்பனையா ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கி இதன் மூலமா அரசாங்கம் ஒரு தவறான ஒரு முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாதுங்கிறதையும் ஒரு சுட்டி காமிச்சிருக்கிறாங்க. அரசாங்கத்தினுடைய செயலற்ற தன்மைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை நம்ம படிச்சுக்கிறோம். வர கார்த்திகை தினங்கள்ல தீபம் அது என்ன தூண்கிறதுல கிளாரிட்டி இதுவரைக்கும் வராதா? ஏஎஸ்ஐடி இருக்காது இல்ல, அது என்ன தூண்கிற கிளாரிட்டி இருந்தா அதை கொடுத்துருப்பாங்க. இல்லாத பட்சத்துல அந்த ஏஎஸ்ஐயோட அனுமதியோட எப்படி கோயில் ஏற்ற முடியும்? என்ன தூண்கிறதுல கிளாரிட்டி? இப்ப நீங்க வந்து இப்ப இந்த நீதிமன்றத்தோட நீங்க வந்து உத்தரவு நீங்க இப்ப கொஸ்டின் பண்றீங்கன்னா, ஒரு ரிப்போர்ட்டரா நீங்க கொஸ்டின் பண்ணீங்கன்னா நீங்க இதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு தான் போகணுங்க. இல்ல சார், அதுதான் கன்க்ளூஷன் ஆகி தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க. நீங்க இன்னும் திருப்பி வந்து அது தீப தூணா இல்லையா சர்வே தூணா நம்ம கேட்க முடியாது. இன்னைக்கு அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க. அது இருக்கிறது தீபத்தூண் தான், அந்த இருக்கிற இடம் தேவஸ்தானத்தோட தான். அதுல கார்த்திகை மாசம் தேவஸ்தானமே தீபம் ஏத்தணும்ங்கறத சொல்லிட்டாங்க. கோவில் நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது, ஏன்னா தனி அதிகாரம் கொண்டது. எங்களுக்கு பரிசீலிங்க வேணா சொல்ல முடியும், எங்களுக்கு நேரடியாக செய்யுங்கன்னு ஆர்டர் போடுறதுக்கு நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு தொடர்ச்சி அவங்களுடைய வாதம். அது அந்த வாதம் தான் வந்து புறக்கணிக்கப்பட்டுச்சு. அந்த வாதத்தை தான் ஏத்துக்கலையே. அந்த வாதத்துக்கு ஏத்து தான் இப்ப தீர்ப்பாக கொடுத்துட்டாங்களே இருநபர் நீதி. இப்ப ஏற்கனவே ஆரம்பத்தில் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, தனிநபர் நீதிபதி திரு ஜி.ஆர். சுவாமிநாதன் அவர்கள் பிராமின்ங்கிறதுனால அவரை வந்து ஒரு கட்டம் கட்டி அவரை வந்து சில பேர் வந்து அவரை முழுவதும் வந்து கார்னர் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு இருநபர் நீதிபதிகள் ஏற்கனவே எல்பிஏல கண்டெம்ட்டுக்கு மேல போன அப்பீல் எல்பிஏல என்ன உத்தரவு கொடுத்தாங்க,
அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு உத்தரவு கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ இவங்களை நீங்க வந்து அடுத்து என்னென்னலாம் வந்து நீங்க ஒரு புழுத வாரி எரிய போறீங்க, அவதூறு சொல்ல போறீங்க. அப்போ ஒவ்வொரு நீதிபதியும் ஒரு உத்தரவு வந்து தனது மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு பயந்து அது நியாயமா தர்மமா அது வந்து சட்டத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு உத்தரவு கொடுக்கும்போது ஒவ்வொரு நீதிபதிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு உள்நோக்கம் கற்பிச்சோம்னா அப்ப தமிழ்நாட்டில் எந்த நீதிபதியும், நான் சொல்றது வந்து மேஜிஸ்ட்ரேட்ல இருந்து சப் ஜட்ஜ்ல இருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ்ல இருந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் வரைக்கும் யாருமே நம்மளுக்கு எதுக்குப்பா வம்பு, இந்த தீர்ப்பு வேணா ஒண்ணு வேணான்னு ஒரு சாதாரண மக்கள் இப்ப இன்னைக்கு இந்த அரசாங்கம் செய்யறத நாளைக்கு அவர் மாவட்ட செயலாளர் செய்வார், மாவட்ட செயலாளர் செய்யறத நாளைக்கு ஒன்றிய செயலாளர் செய்வார். அப்ப எல்லாருமே இந்த மாதிரி செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நீதிமன்றமே இருக்காது, நீதிமன்றத்தோட அவங்களுடைய சுதந்திரம் சுத்தமா இருக்காது. அப்ப இத தமிழ்நாடு மக்களும் எல்லாரும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. தயவு செய்து இது என்ன நடங்குற தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க. இதுதான் உண்மையான ஃபேக்ட். சார், இந்த வழக்குல தனி நீதிபதி அனைத்து தரப்பு வாதங்களை கேட்டுதான் அந்த உத்தரவு பிறப்பிச்சாங்க. அவரும் விமர்சிக்கப்பட்டது. இப்ப 2 நீதிபதிகளும் இந்த வழக்குல வந்து ஒரு 6 நாட்களுக்கு மேல அனைத்து தரப்பு வாதங்களை கேட்டிருந்துதான் தற்போது இப்ப தீர்ப்பு என்பது வெளியாயிருக்கு. இப்ப தொடர்ந்து வந்து இந்த தீர்ப்புகள் வழங்கக்கூடிய நீதிபதிகளை விமர்சிக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்வு இதெல்லாம் வந்து ஜனநாயக உரிமை என்ற அடிப்படையில் பேச்சு சுதந்திரம் என்ற அடிப்படையில் கருத்தெல்லாம் சொல்றாங்க. அது எப்படி சார் சொல்றீங்க? எந்த நீதிபதியும் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிக்க முடியாது. அப்படி விமர்சிச்சா அது வந்து கிரிமினல் கண்டெம்ட் ஆகும். கிரிமினல் கண்டெம்ட்ங்கிறது ஒன்று, ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு சுய ஒழுக்கம்னு ஒன்று உண்டு. ஜனநாயகம்ங்கிறது ஒரு எல்லாத்துக்கும் ஒரு வரம்பு உண்டு. ஜனநாயகம்ங்கிறது எல்லா அடுத்தவருடைய மூக்கு நுனி வரைக்கும் தான் வந்து ஜனநாயகம்ங்கிறது உண்டு. அப்போ நீதிமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சுயசார்பு இல்லாமல் ஒரு தீர்ப்பு கொடுக்கும்போது அவருக்கு இப்போ நான் வந்து இன்னைக்கு இவர் கோனார் கொடுத்துட்டாரு, இவருக்கு செட்டியார் கொடுத்துட்டாரு, இவர் ஐயர் அவருக்கு சேதமாக கொடுத்துட்டாரு. அப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து உள்நோக்கம் கற்பிச்சோம்னு சொன்னால் அது நாளைக்கு நீதிமன்றம் தன்னுடைய சுதந்திரத்தை இழந்துரும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. தமிழ்நாடு இந்தியாவில் இது முதல் முறையாக இந்த மாதிரியான ஒரு தவறான ஒரு நிலைப்பாடை அரசாங்கமே செயல்படுத்தி இருக்கிறது. வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. ஒரு வழக்கறிஞராக நான் சொல்றேன், இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. அது வந்து அவங்களுடைய டெசிஷன், அது நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. அது அவங்களுடைய உரிமை. அது நன்றி. நீ பேச நீதிமன்ற மைக் அவர்கிட்ட இருக்கு, மைக் வாங்கிட்டு யாரோட மைக் வந்து இதில் சொல்றீங்க. நான் ஆரம்பத்தில் பேசுவேன். வணக்கம். ராமரவிக்குமார், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்ற வழக்கினுடைய மனுதாரர். எம்மோடு இந்த வழக்கில் இணைத்துக் கொண்ட சகோதரர்களும் நமக்காக வாதாடிய திரு அருண் சாமிநாதன் ஐயா உள்ளிட்ட சகோதரர்களுக்கு ஆதரவாக வாதாடிய அனைத்து வழக்கறிஞர் சகோதரர்களுக்கும் நன்றியை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தினசரி இந்த விஷயத்தை உலகிற்கு தெரிவித்த பத்திரிகை சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள், வாழ்த்துக்கள். வரலாற்று சிறப்பு மிக்க இந்த திருப்பரங்குன்றம் தீபம் குறித்தான வழக்கு முருகனர்களால் வெற்றி அடைந்திருக்கிறது. இந்த வெற்றி நிச்சயமாக மேற்கொண்டும் தொடரும் என்று நம்புகிறோம். இந்த வெற்றிக்காக போராடிய அந்த உள்ளூர் மக்கள், என்ன வந்து வெளியூர்காரன் சொன்னாங்க, நான் மதுரைக்காரன் தான், நான் எழுமலைக்காரன், உள்ளூர்காரர் வெளியூர்காரன்லாம் பொய்வாதம் பரப்புனாங்க. வழக்கு தொடுத்தவர் மீதும் வழக்குக்கு நீதி சொன்ன நீதிபதிகள் மீதும் அவதூறு கற்பித்தாருங்க. நாங்கள் நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவை மதித்து சட்டத்தின் பிள்ளையாக எந்த விதமான வார்த்தைகளையும் நாங்கள் பேசவில்லை. இன்று நீதிமன்றம் எங்களுக்கு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது, முருகருக்கு தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கிறது. மாண்புமை நீதிமன்றத்துடைய உத்தரவுகளை நாங்கள் மதிக்கிறோம். இந்த வெற்றியை இந்த திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பதற்காக போராடிய அந்த திருப்பரங்குன்றம் மக்களுக்கும், இதற்கு முன்பு பலியான எங்கள் ஐயா ராஜகோபாலன் உள்ளிட்ட காளிதாஸ் யாதவ் உள்ளிட்ட பூர்ணச்சந்திரன் ஐயா பேராசிரியர் பரமசிவம் உள்ளிட்ட இந்த நீதிமன்ற உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என்று தன்னுடைய உடலை இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்த பூர்ணச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் இந்த வெற்றி நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம். நிச்சயமாக தொடரும். அவதூறு கிளப்பியவர்கள் மனசாட்சிப்படி நடந்துக்கங்க. எல்லாத்தையும் முருகன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். முருகன் தராசுக்காரன், அவர் நீதிபதிக்குரிய அந்த தராசோடு உடையவன் தான் திருப்பரங்குன்றம் முருகன். நீங்கள் அவதூறு கற்பித்தவர்கள், எவ்வளவு ஏளன பேச்சு பேசியவர்கள், எங்களை அவமானப்படுத்தினீர்கள். அந்த அவமானங்களை எல்லாம் அடித்து உடைத்து தகர்த்து முருகன் எங்களுக்கு வெகுமானம் தந்திருக்கிறான். எல்லா புகழும் முருகனுக்கு, எல்லா புகழும் முருகனுக்கு, எல்லா புகழும் முருகனுக்கு. தமிழக அரசு அனைத்து மக்களுக்கும் சாதகமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு மதசார்பற்ற அரசு, ஆனால் இந்துக்களுக்கு மட்டும் விரோதமாக இருந்தது. இந்து சமய அறநிலையத்துறை தர்காவிற்கு ஆதரவாக,
இஸ்லாம் மக்களுக்கு ஆதரவாக மாண்புமிகு நீதிமன்றம் இதற்கு முன்பு கொடுத்த போது கூட தர்காவிலிருந்து 15 மீட்டர் தள்ளி ஏற்றிக் கொள்ளலாம் என்று தீர்ப்பு இருந்தும் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு நீங்கள் ஏற்றுங்கள், அதே நேரத்தில் மசூதி இருக்கிறது என்பதை கவனத்தில் கொள்ளுங்கள். சமூக நல்லிணக்கம், மத நல்லிணக்கம், சமூக இணக்கம் கெட்டு போயிரும் சொன்னாங்க. இந்துக்கள் யாரும் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நாங்க இல்ல. நீதிமன்ற உத்தரவு கொடுத்த போது கூட சட்டத்தின்படி தான் நாங்க அதை மதிச்சு போனோம். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல மேல்முறையீடுன்னு சொல்லி அந்த நீதிமன்றம் கொடுத்த உத்தரவுக்கு எதிராக மேல வந்து வாதிட்டு கோவிலுக்கு எதிராக, கடவுளுக்கு எதிராக, சமயத்துக்கு எதிராக, மக்களுடைய மத உணர்வுக்கு आज BIS के 79th फाउंडेशन डे के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे बीच भारत सरकार में बहुत ही लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी श्री संजीव शंकर जी, हमारे महानिदेशक BIS श्रीमान श्री संजय गर्ग जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमान भरत खेड़ा जी, उप महानिदेशक प्रशासन श्री शांतनु कुमार जी और DDG प्रमाणीकरण भारतीय मानक ब्यूरो HSJ ऋचा जी, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर BIS के सभी जुड़े हुए सम्मानित अधिकारी कर्मचारीगण, ऑनलाइन जुड़े हुए और अन्य सभी देश भर के BIS के सभी सम्मानित अधिकारी कर्मचारी जुड़े हुए संस्था के प्रतिभागी गणों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और हमारे इस हॉल में अन्य हमारे देवी और सज्जनों, मीडिया के सभी सम्मानित बंधु, हम सब आज 79वां 79th भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस मना रहे, और ये सफल यात्रा के लिए मैं सभी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह केवल संस्था का एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि यह उस राष्ट्रीय संकल्प का उत्सव है जिसने दशकों से भारत में गुणवत्ता, सुरक्षा और उपभोक्ता विश्वास की नींव को मजबूत किया है। सामान्य देवियों सज्जनों, BIS की यात्रा भारत के औद्योगिक और सामाजिक विकास की यात्रा के समानांतर चली है, और एक समय था जब ISI मार्क केवल एक तकनीक की पहचान था, लेकिन आज BIS का चिन्ह विश्वास का प्रतीक और सुरक्षा की गारंटी और न्यायपूर्ण बाजार का आधार बन चुका है। जब मेरे जैसे लोगों को उस समय पता नहीं था कि ISI क्या होता है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते थे और कोई भी चीज जब खरीदते थे तो हमसे दुकानदार कहता था कि ये है, लेकिन ये ISI मार्क है। माने एक विश्वास से गुणवत्ता उसे झलकती थी। लेकिन आज BIS की जो वास्तव में लंबी यात्रा है और हमने सफलता के साथ जो पूरी की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब इस देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के सभी क्षेत्रों में उन्होंने जिस तरह के संकल्प लिए और केवल सरकार ही बदलने का एहसास नहीं कराया, बल्कि उस शासन की सोच को बदलने का काम भी किया। प्राथमिकताएं बदली और परिणाम क्या होंगे, इनकी अपेक्षाओं को भी बदलने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में आते ही कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो इस देश में सभी का सामूहिक विकास में सबका प्रयास कैसे हो,
मुझे लगता है कि BIS से जुड़े हुए लोगों की जिम्मेदारी उससे अलग बन जाती है। 2047 में मेरा भारत, विकसित भारत की जो कल्पना की है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तब मैं कह सकता हूं कि हम सब ये एहसास करते होंगे कि इसमें हमारी सबकी भूमिका क्या रहने वाली है और क्या हमने भूमिका निभाने का काम किया है। ये विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए BIS के द्वारा चाहे किसी प्रकार के उत्पाद हो, खाने पीने की चीजें किसी प्रकार की हो, खेल के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, बच्चों के खिलौने के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, मुझे लगता है कि जब तक BIS की मोहर नहीं लगती तब तक लोगों के लिए उस चीज पर विश्वास झलकता नहीं है। और जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें हमारी विशेष भूमिका रहती है। और साथ ही साथ कुछ दिनों पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात कही थी। मुझे लगता है कि स्वदेशी की बात केवल कही नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिसका आह्वान करते हैं पूरा देश उस आह्वान पर उठ खड़ा होता है और पूरी तरह से उस आह्वान के अनुसार उस अभियान को सफल बनाने का काम करता है। आज स्वदेशी की चीजें जिस तरह से हमारे BIS के द्वारा प्रमाणित की जा रही है, वो देश में ही नहीं दुनिया में विश्वास का प्रतीक बन रही है। कभी हम स्वदेशी की बात को जब कहते थे तो स्वदेशी के माने लोग न जाने क्या क्या निकालते थे कि हम जब तक चीज इंपोर्टेड नहीं लेंगे, जब तक बाहर की नहीं लेंगे, तब तक लगता है कि हमारे देश में ऐसा कुछ है नहीं। तब मैं कहूंगा कि आज स्वदेशी वो स्वदेशी नहीं है जो केवल गांधी जी के चरखा से, खादी से लेकर कुछ चीजों तक सीमित हो। आज स्वदेशी और खास तौर से BIS के द्वारा प्रमाणित होने के बाद अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से मानकों के आधार पर हमारी चीजों को देश में ही नहीं दुनिया में स्वीकार करना होता है, स्वीकारता बढ़ रही है। और यही हमने देखा होगा अभी ऑपरेशन सिंदूर, उसमें स्वीकारता स्वदेशी अगर देखेंगे तो ब्रह्मोस मिसाइल तक की आपको देखनी पड़ेगी। उसमें जितने हथियार हमारे इस्तेमाल हुए उसमें से बहुत सारे स्वदेशी निर्मित थे। तब मेरा कहना है कि हमको सभी क्षेत्रों में इतने व्यापक हमारी संभावनाएं हैं, उन अपार संभावनाओं पर, और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं वाला देश है। उन उपभोक्ताओं का संरक्षण, उनकी विश्वसनीयता, मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा जिम्मेदारी किसी की नहीं है, हमको उसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। सामान्य देवियों सज्जनों, आज जब हॉल मार्किंग की बात होती है, मुझे लगता है कि ये निर्णय भी आदरणीय मोदी जी का बहुत ही एक ऐसा निर्णय था जिससे देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मैं तो गांव की कल्चर का आदमी हूं, गांव का रहने वाला हूं, छोटे कस्बों से वास्ता रहा है। तब आदरणीय मंत्री जी के सामने मैं कहना चाहता हूं, मैंने तो वो समय देखा है कि 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट तो अब हम जाने हैं। जब हॉल मार्किंग हुआ है, न जाने कितने इस प्रकार के गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग जाते थे दुकानों पर, उनको 14 कैरेट के हिसाब से आभूषण देने के बाद में, ज्वेलरी देने के बाद में पूरे के पैसे लगाए जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग के पैसे भी लगाए जाते थे। लेकिन आज हमारा जो अनिवार्य हॉल मार्किंग हुआ है स्वर्ण आभूषणों पर, तब मैं कह सकता हूं कि आज की जनरेशन जिस तरह से डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रही है, हो सकता है पुरानी पीढ़ी के लोग उतने समझदार ना हो, पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आज की युवा पीढ़ी उन चीजों को तो देखती है कि इसमें हॉल मार्किंग है कि नहीं। लेकिन कई बार शिकायत इस प्रकार की मिलती है, कुछ लोग इसमें भी
गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं, एक एक नंबर पर कई कई नंबरों के साथ। तब मुझे लगता है कि इस पर भी हमको चिंता करनी पड़ेगी कि हमने तो उसे प्रमाणित किया है, लेकिन उसका दुरुपयोग लोग न कर पाए, इसके लिए भी हमारे लिए कोई न कोई कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। और आवश्यकता हो तो ऐसे लोगों के साथ हम कोई कड़ी कार्रवाई भी करें तो कोई खास बात नहीं है। सामान्य साथियों, व्यापारी भी हमारा ही है, लेकिन सच ये है कि हम पारदर्शिता और उपभोक्ताओं को संरक्षण देना भी हमारा महत्वपूर्ण काम है। व्यापार भी साथ चले, लेकिन उपभोक्ताओं का कभी विश्वास न टूटे, इस तरह की परंपरा को हमें आगे बढ़ाना होगा। वास्तविक उपभोक्ता सशक्तिकरण की शुरुआत सबसे निचले स्तर से होती है। साथियों, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि नीतियां दिल्ली में भले ही बने, लेकिन उनका प्रभाव गांव गांव तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। और ये हमारा BIS इस काम को ठीक प्रकार से कर रहा है। मुझे विशेष रूप से जानकर प्रसन्नता हुई है कि BIS ने इस भावना के अनुरूप जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से 2 लाख से भी अधिक ग्राम पंचायतों को भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में जागरूक करने का काम किया। जैसा कि मैंने कहा कि हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन कैसे हम निचले पायदान तक लोगों के लिए अपने बारे में बता सके। जिस तरह से ISI को लोग जानते थे, आज घर घर जन जन तक BIS कैसे पहुंचे, उसका महत्वपूर्ण वास्तव में उनके लिए प्रमाणिकता है, उसके बारे में हमको नीचे तक ले जाना पड़ेगा। मानकों को ऐसे लोकतंत्रीकरण कर उन्हें एक अभिजात अवधारणा से निकालकर एक जन आंदोलन इस विश्वसनीयता का बने, इसके लिए हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गांव से लेकर ग्लोबल तक BIS के इन प्रयासों के फलस्वरूप आज प्रेशर कुकर हो, जैसा मैंने कहा, चाहे हेलमेट सुरक्षा के लिए हो, बिजली के उपकरण हो, आज आम नागरिक समझने लगा है कि मानव जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन का जो मंत्र दिया है, उसका सशक्त उदाहरण BIS की डिजिटल और फास्ट ट्रैक प्रमाणन प्रणाली है। आज मानक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उद्योग विशेषकर MSME को तेज, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएं देने का काम भी हो रहा है। ये केवल प्रक्रिया सुधार की नहीं, बल्कि उद्यमता को राजनीतिक संरक्षण देने का भी संकेत है। फास्ट ट्रैक प्रमाणन प्रक्रिया के विस्तार ने पात्र उत्पादकों की संख्या जहां पर कभी 758 होती थी, उसे बढ़ाते बढ़ाते आज 1088 करने के साथ साथ बाजार तक तेज पहुंच के साथ हमने इसको पहुंचाने का काम किया है, जिससे उद्योग जगत की काफी लाभ भी हुआ है। डिजिटल कार्य प्रवाह में ऐसे परिवर्तन में पारदर्शिता और व्यापार की सुगमता, जिसे हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं, इसको मजबूत करने का काम भी हुआ है। हमारी सरकार का मानना है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ विश्व के लिए भरोसेमंद भारत और भरोसे की नींव गुणवत्ता होती है। और आज भारत केवल वैश्विक मानकों का अनुसरण करने वाला ही देश नहीं रहा है, बल्कि उन्हें आकार देने वाला राष्ट्र बन गया है। IEC जैसी वैश्विक बैठकों की मेजबानी हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी हो, ये दर्शाता है कि भारत अब नियम बनाने वाला ही नहीं, नियम मानने वाला ही नहीं, नियम तय करने वाला दुनिया के अंदर अपना देश बना है। सामान्य देवियों सज्जनों, आने वाले समय में BIS की भूमिका और कैसे हम व्यापक बना सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में उपभोक्ताओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमें मानकों को केवल नियम के लिए नहीं, बल्कि गुणवत्ता को एक राष्ट्रीय संस्कार बनाने का काम करना है। जब माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हेलमेट खरीदते हो, खिलौने खरीदते हो, या किसान है अपनी खेती के लिए आधुनिक मशीनें खरीदता हो, चाहे उपभोक्ता स्वर्ण से लेकर के बाकी चीजें खरीदता हो, तब मैं कहूंगा यही सच्चा उपभोक्ता सशक्तिकरण है कि हम उनको विश्वसनीयता के साथ वो चीजें उपलब्ध कराने का काम करते हैं। सम्मानित देवियों सज्जनों, आज जब हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तब ये स्पष्ट हो चुका है कि गुणवत्ता का कोई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आवश्यकता है। जैसे जैसे भारत अपने विकास लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो रहा है, गुणवत्ता ही बाजारों में, शासन में
तथा वैश्विक सहभागिता में उसकी विश्वसनीयता की परिभाषित करने का काम करेगी। BIS की भविष्य की भूमिका केवल मानकों के निर्धारण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ऐसी मानसिकता के निर्माण में निहित है जहां गुणवत्ता अपेक्षित होती है और उसकी मांग की जाती है और उसका उत्सव भी मनाने का काम होता है। अंत में मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि BIS केवल एक संस्था नहीं, यह नए भारत की गुणवत्ता चेतना है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत विश्व के मंचों पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है तो उसके पीछे BIS जैसी संस्थाओं को जो भी कहा कि मौन जरूर दिखाई पड़ती है, लेकिन मजबूत भूमिका भी दिखाई पड़ती है। सम्मानित देवी और सज्जनों, जिस तरह से हमारे सामने बिल्डिंग खड़ी है, भारत मंडपम, ये बिल्डिंग हमको दिखाई पड़ती है, ये हॉल हमको दिखाई पड़ती है, ये मंच हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन जिस बुनियाद के ऊपर बिल्डिंग टिकी है वो ईंटें दिखाई नहीं पड़ती, जिसे हम बुनियाद कहते हैं। तब मैं कहूंगा कि इस देश के विकास में BIS की भूमिका एक बुनियाद की तरह से है। भले ही हम मौन हैं, भले हम दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन इस देश को मजबूत करने के लिए, इस देश को माननीय प्रधानमंत्री मोदी के जो विजन है उसको आगे बढ़ाने के लिए BIS सही मायनों में अपनी भूमिका अदा करता है। तो आइए आज हम सब मिलकर के संकल्प लें कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और जैसे जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहें हम उसके अनुसार आगे BIS को बढ़ाने का काम करेंगे। भारत का मानक विश्व का मानक बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. BIS is very grateful to you for guiding us through your speech. Ladies and gentlemen, it's a manner of great privilege, pride and joy for us that today on the occasion of 79th BIS Foundation Day celebration, the Honorable Union Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Minister of New and Renewable Energy, Shri Pralhad Joshi ji, is present among us. I have the distinct honor of humbly requesting our Honorable Minister, Shri Pralhad Joshi ji, to grace us with his presidential address. श्री BL वर्मा, श्री संजय गर्ग, DG BIS, श्री भरत खेरा, श्री संजीव शंकर, एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, कुमार शंतनु, DDG BIS, श्री पसरिचा, DDG BIS, and all other officials from the BIS and all other stakeholders, senior officials from the BIS and Ministry, distinguished dignitaries, esteemed guests, friends from media, ladies and gentlemen. At the outset, I congratulate you and extend my heartfelt wishes to everyone on account of 79th BIS Foundation Day. तो जैसे पहले भी उल्लेख हुआ, देश स्वतंत्र होने से 6-7 महीने पहले ही BIS का भी स्थापना हुई है। तो एक बहुत बड़ा हमको अपने आप में गर्व करने के एक विषय है, इसे मैं मानता हूं। We are not celebrating just an institution, but the powerful legacy that has shaped our nation's journey. This legacy stands as a symbol of our unwavering commitment to upholding core value of the quality, trust and excellence. The BIS mark has become the symbol of trust across the multiple sectors, promoting the growth in agriculture, manufacturing, technology. Today it is the time to celebrate our achievement, reflect on how far we have come and embrace the present and its challenges and set the course of the bright future. BIS has been instrumental in shaping the country's quality landscape since its inception in 1947. BIS has evolved into a robust institution that formulates, implements and promotes the standards across the diverse sectors.
our government, under the leadership of Prime Minister Shri Modi, introduced the Bureau of Indian Standard Act 2016 that established as a national standards body of India for the harmonious development of the activities of the standardization, marking and quality certification of the goods. The 2016 Act provides high quality products and services by preventing the manufacturing and the import of the substandard products. तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी होना, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इसका क्वालिटी भी अच्छे रहना चाहिए, बिकॉज इंडिया वांट्स टू बिकम द मैन्युफैक्चरिंग हब. नाउ वी आर द 4th largest economy. So from fragile 5 to today we are the 4th largest economy. Officially now we are the 4th largest economy, it is declared. And after becoming the 4th largest economy, now we are going to become the 3rd largest economy by another 2 or 3 years. So at that time, for pin to piano, we have to compete with the other 2 very big economies, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, टेक्नोलॉजी भी है, और हमारे तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी ज्यादा है. So, but still, in last few years, our achievement is, we cannot just say that नहीं तो हुआ ऐसा नहीं है. With the best effort, and उसमें इस लेवल पर लाने के लिए, from quality control order to implementing the standards and preventing the importing of the substandard materials, ये सब में आपके रोल बहुत बड़ा है. आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट ऑल्सो. जहां जहां समय के अनुसार आप खड़े उतरे हैं और उस तरह काम भी आप लोगों ने ही किया है, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद अर्पित करता हूं. और 2016 का और एक इम्पोर्टेंट पहलू है, दैट इज सपोर्ट्स द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड आत्मनिर्भर भारत. तो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना है, और अल्टीमेटली वी शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. देखिए, with all quality maintenance of the quality, हमने देश में जब एक समय था कि कोविड के बाद, स्पेशली व्हेन प्राइम मिनिस्टर सेड हम डिजिटलाइजेशन में जाएंगे, डिजिटल पेमेंट में जाएंगे, क्या क्या लेख लिखा गया था. जो पहले बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट मंत्री होते थे, वो सब क्या लिखा था. ये देश में भाषण अभी भी वो यूट्यूब में है, और उस टाइम मैं भी बैठा था. उस टाइम तो भाषण ऐसा हुआ था, भारत देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकते हैं. इट कैनॉट हैपन. बट इंडिया इज लीडिंग एज फार एज डिजिटल पेमेंट एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन इज कंसर्न. वी आर लीडिंग इन द वर्ल्ड. वी हैव गॉट 100 crore mobiles, and out of that majority of them are smartphone. So टेक्नोलॉजी यूज करके एक बहुत बड़ा बदलाव. वो मोबाइल भी almost 98% of the mobile manufactured, they are in India, and they have got very good standards. We have got now almost 30% share of the world as far as mobile market is concerned. Means अगर हम, if we decide, we can manufacture a very good standard products, and उसको implement के लिए हम प्रोत्साहन भी कर सकते हैं, हम रेगुलेट भी कर सकते हैं. ये आप लोगों ने करके दिखा है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी अर्पित करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं. तो इसका स्थिति क्या था जी? महाभारत काल से, मीन द्वापर युग से हमारा देश में कृष्ण भी खिलौने के साथ कैसे खेलते थे, ये सब हमने देखा है. लेकिन ऑलमोस्ट ऑल इंपॉर्टेंट टॉयज, मीन्स टॉयज दे वर इम्पोर्टेड, उसका भी क्वालिटी का बहुत बड़ा समस्या था. उससे हेल्थ हैजार्डनेस भी होता था. फिर भी कोई नोबडी वाज टेकिंग केयर. बट
when Prime Minister decided that as far as these toys are concerned, we should do something. टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ, टॉयज का एक्सपोर्ट शुरू हुआ और टॉयज का स्टैंडर्ड भी आपने इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके अच्छे स्टैंडर्ड सेट किया और एक्सपोर्ट भी हो रहा है, इंपोर्ट बंद हुआ है और उसका एक स्टैंडर्ड है. मीन्स व्हेन वी डिसाइड, जब हम डिसाइड करते हैं हम बदलाव ला सकते हैं. इसलिए मेरा कहना है कि इसको जन आंदोलन कैसे करते हैं. बहुत देशों में इंडस्ट्री बॉडी ही डिसाइड करते हैं हमारा क्वालिटी क्या रहना चाहिए, इससे बिलो क्वालिटी कभी भी हमको नहीं जाना चाहिए. दिस विल बी डिसाइडेड बाय द इंडस्ट्री बॉडी इटसेल्फ. इस लेवल पर व्हेन वी वांट टू बिकम विकसित भारत एंड कॉम्पीट विथ वेरी बिग इकोनॉमीज, देन आवर क्वालिटी इज बाय जस्ट रेगुलेटिंग, by just making mandatory, it will not happen. BIS as a body, as so far you have regulated well and you have tried to motivate them well. Now all together how we can make it a Jan Andolan, people's movement कैसे बना सकते हैं. और इंडस्ट्री बॉडी हम स्टैंडर्ड के ही एक लेवल से, इस लेवल से कम हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते. ऐसे एक वातावरण हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये हम लोगों को इसमें लिए बहुत काम करना है. क्योंकि भारत में पहले नहीं हुआ ऐसे नहीं है. एक स्टील स्ट्रक्चर है दिल्ली में 1600 ईयर ओल्ड है. सो फार इट इज नॉट रस्टेड, दिल्ली में ही है. मीन्स ऐसे स्टील देश में मैन्युफैक्चरिंग होता था. बट टुडे इन डेज टू कम हमारा स्थिति भी क्या हो गया, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बार जिक्र किया है, ये मैकाले के एजुकेशन सिस्टम आने के बाद हमारा मेंटल स्टेटस ऐसे हो गया, जो भी हमारे देश में मैन्युफैक्चर होता है, हमारा देश का सिस्टम है, वो थोड़ा इंफीरियर है, बाहर से जो आता है वो अच्छा है. ऐसे हमारा एक स्थिति बन गया, एक मेंटल स्टेटस बन गया. बट टुडे इंडिया ऐसे स्थिति में नहीं है. अगर हम सब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉल के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो हम दुनिया के बहुत बड़े देशों के साथ भी कॉम्पीट कर सकते हैं. वॉट एवर द मोबाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग, मेनी डेवलप्ड कंट्रीज आर यूजिंग दैट. एंड ऑल्सो वन थिंग वी नो, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज वेयर दे हैव मनी, मीन्स मनी पावर इज बेटर देन अस, बट उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कम हो रहा है क्योंकि उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है. तो अगर विद दिस ह्यूमन रिसोर्सेस, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वी कैन मैन्युफैक्चर गुड थिंग्स, स्टैंडर्ड थिंग्स, देन 21st सेंचुरी जैसे एक एनविजेज किया गया है. रिसेंट भी एक आर्टिकल भी आया था, आप सब देखे होंगे, वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज अगेन एंड इंडिया विल बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन दैट. एक आर्टिकल भी आया था. द वर्ल्ड ऑर्डर बिफोर World War II, it was a different world order. World War II के बाद World War II के बाद डिफरेंट था वर्ल्ड ऑर्डर. अभी कोविड के बाद और भारत अभी जैसे काम कर रहा है, आप सबके सहयोग के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अगेन वर्ल्ड ऑर्डर इज गोइंग टू चेंज एंड 21st century will be the India century. In that your contribution will be very, very important. Because ultimately we have to give the standard product to the world. Because there are in many countries, as I mentioned, there are no people to work. So technicians हमसे मांग रहे हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं हैं. जैसे मैं और एक मैं चीज कह सकता हूं, हमारा देश में मैं रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्री भी हूं. 2012-13 में पर यूनिट कॉस्ट ऑफ दी सोलार, पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द विंड क्या था, आज क्या है. रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पर यूनिट हम खरीदते तो 10 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए होता था. आप कितने में होता है, 2 रुपए, 3 रुपए, मैक्सिमम 2 रुपीज 70 पैसा विथ ए बैटरी स्टोरेज. एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट जीरो था. आज आवर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग हैज बिकम एक्सेस एंड वी आर एक्सपोर्टिंग. सेल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है. Means these qualities accepted by the world. तो in हर सेक्टर, in every sector, एक
स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो है उसको एक हैबिट बनाने का काम और उसका एक मेंटल स्टेटस में चेंज करने का काम, माइंडसेट चेंज करने का काम तो इंडस्ट्री को भी करना है, इंडस्ट्री के लिए प्रोत्साहित करना काम हमको भी करना है. During the 5th National Conference of the Chief Secretaries, Prime Minister has emphasized on the importance of the quality in whatever we do. Quality in governance. Quality in governance क्या होता है? हम सब बिल्डिंग बनाते हैं, अगर मेंटेन ठीक नहीं करते हैं तो दैट इज नॉट ए गुड गवर्नेंस, दैट इज नॉट ए क्वालिटी गवर्नेंस. स्कूल बनाते हैं, टीचर्स नहीं अच्छे हैं तो इट इज नॉट ए क्वालिटी गवर्नेंस. सो एक तरह एट वन साइड वी शुड हैव द गुड प्रोडक्शन सिस्टम, वी शुड हैव हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जो भी करते हैं दैट ऑल सच from toys to defense item, everything should be quality one. And at the same time, what Prime Minister has said, quality in governance, BIS का भी governance के quality में और भी क्या बदलाव ला सकते हैं. एक तरफ ease of doing business, एक तरफ quality. ये दोनों balance करना बहुत important है. नहीं तो कई कबार हम देखते हैं हमारे ऊपर comment ऐसे आता है, ये स्टैंडर्डाइजेशन लाने के कारण, ये QC के लाने के कारण MSME को प्रॉब्लम हो रहा है. ऐसे बोलने के लिए हमको मौका नहीं देना चाहिए. वी शुड नॉट अलाउ देम टू मेक सच कमेंट्स. ऐसे हम एक माहौल खड़े करना भी हमारा एक जिम्मेदारी है. क्वालिटी इन डिलीवरी और क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर द 3 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर हैज इंस्टिट्यूटेड व्हिच वी शुड टेक एज आवर मंत्र. क्वालिटी in governance, quality in delivery, quality in manufacturing. And Prime Minister, as I already mentioned, has given a clarion call to us work towards making the label Made in India synonymous with the quality. भारत में मैंने एक समय था जापान में मैन्युफैक्चरिंग होके आया है तो इसका क्वालिटी देखने का जरूरत नहीं है. ऐसे ही एक स्थिति आना, अगर भारत से मैन्युफैक्चरिंग करके कई भी देश में जाते हैं तो इसका क्वालिटी के बारे में कोई भी डाउट नहीं करना. ऐसे एक स्थिति पैदा करना हमारे सबके जिम्मेदारी है. तो क्वालिटी इज द फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एनी सक्सेसफुल enterprise and ensuring the quality is not a choice but it is the responsibility we owe to our citizens, industries and market. Today, quality is recognized as the competitive advantage. Standards play an instrumental role in guaranteeing the quality across the sectors. They serve as the benchmark guiding us towards the excellence and uniformity. The BIS has been pivotal in formulating and implementing the standards across the various sectors, ensuring the competitiveness and consumer protection. Presently, as already mentioned, around 23,000 Indian standards are in force, 23,700. Around 94% Indian standards are harmonized with ISO and IEC. This is also a very important thing and this is your credit. आपने इसको अच्छा किया है, इसलिए मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. 94%. जहां नहीं हुआ है वो भी भारत का प्रोडक्ट है, उसका दुनिया के स्टैंडर्ड बहुत कम, जैसे आयुर्वेद. तो बाकी देशों में ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है. अदरवाइज ऑलमोस्ट नियरली अबाउट 97-98% our standards are harmonized. As of November 2025, 26,793 certification obtained by the manufacturer for notified products. Almost an equal number of 24,330 certification have been obtained on voluntary basis. Means अभी लग रहा है हम BIS means ISI मार्क लगाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होता है. Ultimately commercial angle भी एक रहता है. So this is also one of the most which we can very well say and pat our own back that हमारे 20 more than nearly about 25,000 certification have been voluntary. And this shows that over a period of the time BIS standard marks has been attained credibility. And many manufacturers, especially MSMEs, are increasingly adopting the Indian standards to enhance the credibility and competitiveness.
BIS is continually evolving in the field of standardization and has been formulating and adopting the best practices which are internationally accepted. Today, Indian standards cover not only the traditional sector, but also renewable energy, electric mobility, smart infrastructure, digital technology, sustainability, and green products. BIS recent efforts to expand its standardization to the areas such as bomb disposal system and electric agricultural tractors indicate BIS is continuously evolving and reinforces our government commitments to the quality. Over last 11 years, under the leadership of Prime Minister, BIS has undergone the fundamental transformation. We have moved from regulation to facilitation, from compliances to culture. In continuing with the pursuit of encouraging the ease of doing business, BIS has made changes in the compliances of the procedure for MSME के लिए क्या किया है, इन-हाउस लैब के लिए हमने जो भी एग्जाम्शन दिया है वो सब प्रेजेंटेशन में आया है. I do not want to repeat. And now the focus is more on monitoring the quality of goods available in the market. तो फैक्ट्री में जाके इंस्पेक्शन करने के लिए थोड़ा कंप्लेंट बहुत ज्यादा आता था, इसीलिए आप लोगों ने ही निर्णय किया है, we will draw the more from sample from the market. So, to support MSME, financial incentives is provided by the BIS in annual minimum marking fees, 80% discount for micro enterprises, 50% for the small enterprises, 20% for medium enterprises. BIS has taken various other initiatives to strengthen the quality and the standards in the infrastructure in the country. As a part of our continued commitment to the quality and consumer trust, silver hallmarking scheme that is also being launched. I am pleased to announce over 20 lakh silver articles have already been hallmarked under the new HUID based system. This is also the people want hallmark gold, hallmark silver. This itself shows, because otherwise why people will come? Even jewelries, they will not come to us, because they have now come to understand. They are having full information that without this, हमारा sale कम हो जाएगा. E-learning modules have been launched and capacity building. And today, the beta version of the BIS standardization portal launched today is another initiative to support the ease of doing business and the global competitiveness. Though the newly launched Manak Se Mahila Shakti, BIS is trying to empower the woman for India's quality movement. This is in line with the BIS Quality Connect campaigns, standard clubs, and the Manak Mitras. The launch of BIS Saksham, the annual excellence recognition scheme, this will motivate our officers, employees. I hope everybody very enthusiastically, you will सिर्फ अवार्ड पाने के लिए नहीं है, ओवरऑल आपको एक रिकॉग्निशन मिलने के कारण एक बहुत बड़ा आपको इंस्पिरेशन बन जाता है, ऐसे मैं मानता हूं. द रिसेंट होस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल Electro-Technical Commission General Meeting, IECGM, the Apex Policy Making Committee of IAS focused on the consumer issues and awareness, a prime example of BIS leading in the international arena. Way forward, BIS Lab should continue to upgrade and modernize through the procurement of the latest and sophisticated equipment to reduce the human intervention. BIS to fast-track the standard-setting process, especially for the program of national priority and technical commitment, should develop new standards in the quickest possible time. BIS to take up the more and more leadership position at the international standardization arena, and to share our knowledge and experience for the betterment of the humanity across the globe. It is important for Bharat to recognize for its best quality and transform Made in India
to trusted by India and trusted by the world. The government of India under the leadership of Prime Minister Shri Modi, it is committed in ensuring that every citizen of India has access to the safe, reliable and high quality products and services. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, enunciated Shri Narendra Modi, Honorable Prime Minister of India, forms a cornerstone of India's development agenda. BIS plays a pivotal role in achieving this objective. I am proud to acknowledge their contribution. Thank you. Dhanyavad. Namaskar. Thank you, sir, for guiding and enriching us with your profound wisdom and invaluable insights, and for truly setting the tone of 79th BIS Foundation Day celebration. नमस्कार, राम राम साहब। राजस्थान के इस रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, आप सब उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही महत्वपूर्ण एआई इम्पैक्ट समिट के रीजनल समिट में जुड़ने के लिए। जैसा पहले वक्ताओं ने बताया, एआई आज हमारे जीवन के हर आयाम के साथ जुड़ चुकी है। जिस तरह से कुछ शताब्दियों में बड़ी बड़ी क्रांतियां पहले आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत बड़ा जीवन में चेंज आया, जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ा चेंज आया, सेमीकंडक्टर के कारण चेंज आया, और उसके बाद में इंटरनेट और मोबाइल से जो चेंज आया, उसी लेवल का चेंज एआई के द्वारा आएगा। साथियों, जिस तरह से आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वैसा ही एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंची, वैसे ही एआई से इंटेलिजेंस हर व्यक्ति, हर घर, हर उद्यम के साथ जुड़ेगी। ये एक ऐसा बड़ा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को हमें आत्मसात करके, जिसका उपयोग करके, जिसका लाभ उठा के हम अगर हमारे जीवन में इसको शामिल करें तो हमको बेनिफिट है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। 1.5 वर्षों के कम से जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले, और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं, और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइज करने वाला जो विजन है, ये विजन इस कॉमन कंप्यूट में परिलक्षित होता है।
साथ ही साथ कई ऐसे मॉडल्स हैं जो आज फ्री में उपलब्ध कराए गए एआई कोष के माध्यम से। जिस तेजी से एआई का डेवलपमेंट देश में दुनिया में हो रहा है, आज गौरव की बात है भारत के लिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई का इंडेक्स जारी करती है वो, उसमें भारत को टॉप 3 कंट्रीज में शामिल किया है एआई के इंडेक्स पर। चीन, अमेरिका और भारत, ये 3 टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हुए हैं जो कि एआई के लिए, एआई के उपयोग के लिए, एआई के डेवलपमेंट के लिए और एआई में रिसर्च के लिए आज विश्व भर में जाने जा रहे हैं। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत है और उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को इस नए युग के लिए तैयार करना, इस नए टेक्नोलॉजी के लिए सक्षम करना और हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के तहत 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है राजस्थान की शौर्य वीरों की पावन धरती से, और इसका लाभ सभी को मिलेगा, राजस्थान के नौजवानों को भी मिलेगा, देश के हर नौजवान को इसका लाभ मिलेगा। टीम को चैलेंज दिया हुआ है कि ये रोल आउट, जैसे 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट हुआ था विश्व में, जैसे सेमीकंडक्टर का टैलेंट डेवलपमेंट 300 यूनिवर्सिटीज में आज हो रहा है, वैसे ही एआई की स्किलिंग का काम भी उतनी ही तेजी के साथ हो और उतने ही बड़े पैमाने पे हो। मैं साथ ही साथ आज धन्यवाद देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का। आपने जो पॉलिसी आज एआई की लागू की है, घोषणा की है, उससे राजस्थान को बहुत लाभ मिलेगा। आपके जो स्टेप्स अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर को आकर्षित करने के लिए और आज एआई के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, उससे आने वाले समय में जरूर राजस्थान एक बड़ा टेक्नोलॉजी का हब बनकर निकलेगा। मैं आईआईटी जोधपुर को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। आईआईटी जोधपुर एआई मिशन के साथ आरंभ से जुड़ी है और बहुत अच्छी रिसर्च आईआईटी जोधपुर में एआई के संबंध में हो रही है। एक और आज मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले जब जयपुर आया था तब 2 संकल्प लिए थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का। अब उसका काम बहुत आगे अच्छा बढ़ गया है। लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती, सीआईआई और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है ICEA, ये तीनों मिलकर कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं 5000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग का। दूसरा, मैंने तब संकल्प लिया था कि एक बड़ा डेटा सेंटर राजस्थान में बनना चाहिए, जयपुर में विशेषकर बनना चाहिए। तो अब उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। आने वाले कुछ ही समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही निवेदन कर लेता हूं कि आप अपना समय देंगे, आपके पावन कर कमलों से इस डेटा सेंटर का भूमि पूजन भी बहुत जल्दी करेंगे। इसकी तैयारी भी हो गई है। तो जो राजस्थान की इस पावन धरती पर एक जो इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे, डबल इंजन की ये सरकार लेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा आग्रह रहता है कि बॉर्डर से जुड़े हुए इलाकों का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए बॉर्डर के एरियाज के लिए एक नया रेलवे नेटवर्क की भी कल्पना की गई है
और उसका काम चल रहा है, उसका डीपीआर बनाने का। बीकानेर से लेके जैसलमेर होते हुए नीचे भीलड़ी तक कनेक्शन रेलवे का करने का काम हाथ में लिया गया है। रेलवे स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और आज इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई का भी जुड़ाव हुआ है। इस पावन काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, कर्नल साहब को, जितेंद्र प्रसाद जी को कि आपने तीनों ने आके इस एआई रीजनल इम्पैक्ट समिट का जो आज काम हाथ में लिया है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। प्रगति की अपार संभावनाएं समेटे इस महासूर्य इस तकनीकी क्रांति से राजस्थान रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस और राजस्थान के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। देवियों और सज्जनों, किसी भी राज्य की असली पहचान होती है उसकी उपलब्धियों से और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, इन उपलब्धियों के साथ हम जब मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, विजन 47 के पर प्राण से पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जुनून को देखते हैं तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। और आज हम सबके बीच आप सबके प्रिय राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे अनुरोध अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन, अपना आशीर्वचन इन युवाओं को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। और साथ ही इंजीनियरिंग की शिक्षा आपने प्राप्त की है। अनुरोध अपना प्रेरणादायी उत्पीड़न और संबोधन हमें प्रदान करें। श्री अश्विनी वैष्णव, संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार। नमस्कार, राम राम साहब। राजस्थान के इस रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, आप सब उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही महत्वपूर्ण एआई इम्पैक्ट समिट के रीजनल समिट में जुड़ने के लिए। जैसा पहले वक्ताओं ने बताया, एआई आज हमारे जीवन के हर आयाम के साथ जुड़ चुकी है। जिस तरह से कुछ शताब्दियों में बड़ी बड़ी क्रांतियां पहले आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत बड़ा जीवन में चेंज आया, जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ा चेंज आया, सेमीकंडक्टर के कारण चेंज आया और उसके बाद में इंटरनेट और मोबाइल से जो चेंज आया, उसी लेवल का चेंज एआई के द्वारा आएगा। साथियों, जिस तरह से आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वैसा ही एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंची, वैसे ही एआई से इंटेलिजेंस हर व्यक्ति, हर घर, हर उद्यम के साथ जुड़ेगी। ये एक ऐसा बड़ा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को हमें आत्मसात करके, जिसका उपयोग करके, जिसका लाभ उठा के हम अगर हमारे जीवन में इसको शामिल करें तो हमको बेनिफिट है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो,
भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके, इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। 1.5 वर्षों के कम समय में इस एआई मिशन की उपलब्धियां आज विश्व में चर्चित है। बहुत देश आज भारत का जो प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइजेशन वाला मॉडल है उसको स्टडी कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। इस मॉडल में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है जन जन को एआई की कंप्यूट सुविधा उपलब्ध कराना। हम सब जानते हैं एआई का जो जीपीयू होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहां पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले, और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइज करने वाला जो विजन है, ये विजन इस कॉमन कंप्यूट में परिलक्षित होता है। साथ ही साथ कई ऐसे मॉडल्स हैं जो आज फ्री में उपलब्ध कराए गए हैं एआई कोष के माध्यम से। जिस तेजी से एआई का डेवलपमेंट देश में दुनिया में हो रहा है, आज गौरव की बात है भारत के लिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई का इंडेक्स जारी करती है, वो उसमें भारत को टॉप 3 कंट्रीज में शामिल किया है एआई के इंडेक्स पर। चीन, अमेरिका और भारत, ये 3 टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हुए हैं जो कि एआई के लिए, एआई के उपयोग के लिए, एआई के डेवलपमेंट के लिए और एआई में रिसर्च के लिए आज विश्व भर में जाने जा रहे हैं। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत है और उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को इस नए युग के लिए तैयार करना, इस नए टेक्नोलॉजी के लिए सक्षम करना और हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के तहत 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है राजस्थान की शौर्य वीरों की पावन धरती से, और इसका लाभ सभी को मिलेगा, राजस्थान के नौजवानों को भी मिलेगा, देश के हर नौजवान को इसका लाभ मिलेगा। टीम को चैलेंज दिया हुआ है कि ये रोल आउट, जैसे 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट हुआ था विश्व में, जैसे सेमीकंडक्टर का टैलेंट डेवलपमेंट 300 यूनिवर्सिटीज में आज हो रहा है, वैसे ही एआई की स्किलिंग का काम भी उतनी ही तेजी के साथ हो और उतने ही बड़े पैमाने पे हो। मैं साथ ही साथ आज धन्यवाद देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का। आपने जो पॉलिसी आज एआई की लागू की है, घोषणा की है, उससे राजस्थान को बहुत लाभ मिलेगा। आपके जो स्टेप्स अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर को आकर्षित करने के लिए और आज एआई के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, उससे आने वाले समय में जरूर राजस्थान एक बड़ा टेक्नोलॉजी का हब बनकर निकलेगा।
मैं आईआईटी जोधपुर को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। आईआईटी जोधपुर एआई मिशन के साथ आरंभ से जुड़ी है और बहुत अच्छी रिसर्च आईआईटी जोधपुर में एआई के संबंध में हो रही है। एक और आज मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले जब जयपुर आया था तब 2 संकल्प लिए थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का। अब उसका काम बहुत आगे अच्छा बढ़ गया है। लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती, सीआईआई और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है ICEA, ये तीनों मिलकर कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं 5000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग का। दूसरा, मैंने तब संकल्प लिया था कि एक बड़ा डेटा सेंटर राजस्थान में बनना चाहिए, जयपुर में विशेषकर बनना चाहिए। तो अब उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। आने वाले कुछ ही समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही निवेदन कर लेता हूं कि आप अपना समय देंगे, आपके पावन कर कमलों से इस डेटा सेंटर का भूमि पूजन भी बहुत जल्दी करेंगे। इसकी तैयारी भी हो गई है। तो जो राजस्थान की इस पावन धरती पर एक जो इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे, डबल इंजन की ये सरकार लेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा आग्रह रहता है कि बॉर्डर से जुड़े हुए इलाकों का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए बॉर्डर के एरियाज के लिए एक नया रेलवे नेटवर्क की भी कल्पना की गई है और उसका काम चल रहा है। उसका DPR बनाने का, बीकानेर से लेके जैसलमेर होते हुए नीचे भीलड़ी तक कनेक्शन रेलवे का करने का काम हाथ में लिया गया है। रेलवे स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और आज इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और AI का भी जुड़ाव हुआ है। इस पावन काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, कर्नल साहब को, जितेंद्र प्रसाद जी को कि आपने तीनों ने आके इस AI रीजनल इम्पैक्ट समिट का जो आज काम हाथ में लिया है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच प्रगति की अपार संभावनाएं समेटे इस महासोगी, इस तकनीकी क्रांति से राजस्थान रीजनल AI कॉन्फ्रेंस और राजस्थान के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। देवियों और सज्जनों, किसी भी राज्य की असली पहचान होती है उसकी उपलब्धियों से और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, इन उपलब्धियों के साथ हम जब मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, विजन 47 के पर प्राण से पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जुनून को देखते हैं तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। और आज हम सबके बीच, आप सबके प्रिय राजस्थान के योगपूर्ण यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे अनुरोध अपना उत्पीड़न, अपना संबोधन, अपना आशीर्वचन इन युवाओं को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा। संचार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भारत सरकार। नमस्कार, राम राम साहब। राजस्थान के इस रीजनल AI इम्पैक्ट समिट में उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे साथी मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ जी, आप सब उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही महत्वपूर्ण एआई इम्पैक्ट समिट के रीजनल समिट में जुड़ने के लिए। जैसा पहले वक्ताओं ने बताया, एआई आज हमारे जीवन के हर आयाम के साथ जुड़ चुकी है। जिस तरह से कुछ शताब्दियों में बड़ी बड़ी क्रांतियां पहले आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण बहुत बड़ा जीवन में चेंज आया, जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के कारण बहुत बड़ा चेंज आया, सेमीकंडक्टर के कारण चेंज आया, और उसके बाद में इंटरनेट और मोबाइल से जो चेंज आया, उसी लेवल का चेंज एआई के द्वारा आएगा। साथियों, जिस तरह से आज इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, वैसा ही एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने वाला है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी हर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंची, वैसे ही एआई से इंटेलिजेंस हर व्यक्ति, हर घर, हर उद्यम के साथ जुड़ेगी। ये एक ऐसा बड़ा परिवर्तन है जिस परिवर्तन को हमें आत्मसात करके, जिसका उपयोग करके, जिसका लाभ उठा के हम अगर हमारे जीवन में इसको शामिल करें तो हमको बेनिफिट है। एआई को अच्छे से भारत में डेवलप करने के लिए, हमारे नागरिकों के उपयोग में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक क्लियर विजन हम सबके सामने रखा। उसका पहला प्रिंसिपल है टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, यानी हर एक व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की उपलब्धता हो, भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके, आत्मनिर्भर भारत के टेक्नोलॉजी के गोल्स हम पूरे कर सके। इस पूरे प्रेरणादायी विजन को लेकर एआई मिशन ने और मंत्रालय ने कई अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करने के बाद में एआई मिशन की रचना की थी। 1.5 वर्षों के कम समय में इस एआई मिशन की उपलब्धियां आज विश्व में चर्चित है। बहुत देश आज भारत का जो प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइजेशन वाला मॉडल है उसको स्टडी कर रहे हैं और कॉपी कर रहे हैं। इस मॉडल में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है जन जन को एआई की कंप्यूट सुविधा उपलब्ध कराना। हम सब जानते हैं एआई का जो जीपीयू होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहां पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले, और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं, और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइज करने वाला जो विजन है, ये विजन इस कॉमन कंप्यूट में परिलक्षित होता है। साथ ही साथ कई ऐसे मॉडल्स हैं जो आज फ्री में उपलब्ध कराए गए एआई कोष के माध्यम से। जिस तेजी से एआई का डेवलपमेंट देश में, दुनिया में हो रहा है, आज गौरव की बात है भारत के लिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई का इंडेक्स जारी करती है, वो उसमें भारत को टॉप 3 कंट्रीज में शामिल किया है एआई के इंडेक्स पर। चीन, अमेरिका और भारत, ये 3 टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हुए हैं
जो कि एआई के लिए, एआई के उपयोग के लिए, एआई के डेवलपमेंट के लिए और एआई में रिसर्च के लिए आज विश्व भर में जाने जा रहे हैं। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत है और उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को इस नए युग के लिए तैयार करना, इस नए टेक्नोलॉजी के लिए सक्षम करना और हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के तहत 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है राजस्थान की शौर्य वीरों की पावन धरती से, और इसका लाभ सभी को मिलेगा, राजस्थान के नौजवानों को भी मिलेगा, देश के हर नौजवान को इसका लाभ मिलेगा। टीम को चैलेंज दिया हुआ है कि ये रोल आउट, जैसे 5G का रोल आउट फास्टेस्ट रोल आउट हुआ था विश्व में, जैसे सेमीकंडक्टर का टैलेंट डेवलपमेंट 300 यूनिवर्सिटीज में आज हो रहा है, वैसे ही एआई की स्किलिंग का काम भी उतनी ही तेजी के साथ हो और उतने ही बड़े पैमाने पे हो। मैं साथ ही साथ आज धन्यवाद देना चाहूंगा और अभिनंदन करना चाहूंगा राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी का। आपने जो पॉलिसी आज एआई की लागू की है, घोषणा की है, उससे राजस्थान को बहुत लाभ मिलेगा। आपके जो स्टेप्स अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सेमीकंडक्टर को आकर्षित करने के लिए और आज एआई के लिए जो आपने स्टेप्स लिए हैं, उससे आने वाले समय में जरूर राजस्थान एक बड़ा टेक्नोलॉजी का हब बनकर निकलेगा। मैं आईआईटी जोधपुर को भी विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। आईआईटी जोधपुर एआई मिशन के साथ आरंभ से जुड़ी है और बहुत अच्छी रिसर्च आईआईटी जोधपुर में एआई के संबंध में हो रही है। एक और आज मैं आप सबके सामने एक घोषणा करना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले जब जयपुर आया था तब 2 संकल्प लिए थे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 5000 युवाओं को ट्रेनिंग देने का। अब उसका काम बहुत आगे अच्छा बढ़ गया है। लघु उद्योग भारती के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा है। लघु उद्योग भारती, सीआईआई और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी एसोसिएशन है ICEA, ये तीनों मिलकर कार्यक्रम की रचना कर रहे हैं 5000 नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग का। दूसरा, मैंने तब संकल्प लिया था कि एक बड़ा डेटा सेंटर राजस्थान में बनना चाहिए, जयपुर में विशेषकर बनना चाहिए। तो अब उसकी तैयारी भी पूरी हो गई है। आने वाले कुछ ही समय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आज ही निवेदन कर लेता हूं कि आप अपना समय देंगे, आपके पावन कर कमलों से इस डेटा सेंटर का भूमि पूजन भी बहुत जल्दी करेंगे। इसकी तैयारी भी हो गई है। तो जो राजस्थान की इस पावन धरती पर एक जो इसका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने होंगे, डबल इंजन की ये सरकार लेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा आग्रह रहता है कि बॉर्डर से जुड़े हुए इलाकों का विशेष ख्याल रखें। इसीलिए बॉर्डर के एरियाज के लिए एक नया रेलवे नेटवर्क की भी कल्पना की गई है और उसका काम चल रहा है। उसका DPR बनाने का, बीकानेर से लेके जैसलमेर होते हुए नीचे भीलड़ी तक कनेक्शन रेलवे का करने का काम हाथ में लिया गया है। रेलवे स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है और आज इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और AI का भी जुड़ाव हुआ है। इस पावन काम के लिए, इस पवित्र काम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, कर्नल साहब को, जितेंद्र प्रसाद जी को कि आपने तीनों ने आके इस AI रीजनल इम्पैक्ट समिट का
जो आज काम हाथ में लिया है। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन और सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सचमुच प्रगति की अपार संभावनाएं समेटे इस महासोगी इस तकनीकी क्रांति से राजस्थान रीजनल एआई कॉन्फ्रेंस और राजस्थान के मुखिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। देवियों और सज्जनों, किसी भी राज्य की असली पहचान होती है उसकी उपलब्धियों से, और राजस्थान के शिखर की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं, इन उपलब्धियों के साथ हम जब मौजूदा नेतृत्व को देखते हैं, विजन 47 के पर प्राण से पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के जुनून को देखते हैं, तो अपने आप को सौभाग्य से भरा पाते हैं। और आज हम सबके बीच आप सबके प्रिय राजस्थान के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, आपसे अनुरोध अपना उत्प्रेरण, अपना संबोधन, अपना आशीर्वचन इन युवाओं को प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल शर्मा जी। मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी आदरणीय पीयूष गोयल जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय पीयूष जी से है कि आपको संबोधित करें। Thank you very much. A very happy new year to all the friends from the media. It is indeed a matter of great satisfaction that the Honorable High Court of Tamil Nadu, in a division bench order today, has given justice to the devotees of this very, very old and ancient temple atop the Thirupparankundram hills, where Bhagwan Murugan resides, where for centuries now lamps have been lit in reverence of Lord Kartikeya, and for centuries now Hindu Dharam has celebrated the Lord and carried out this practice of lighting a lamp, which this year was expected to be lit on 4th of December 2025. It is not a mere coincidence that the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, his son, Mr. Udayanidhi, and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided, and attacked Sanatan Dharam. So much so that on 2nd September 2023, Mr. Udayanidhi made an audacious and reprehensible demand for the eradication of Sanatan Dharam itself. And
for the first time, few months after that, the lighting of the lamp on the Thirupparankundram hill associated with Lord Kartikeya, the Murugan, Bhagwan Murugan, was prevented. This coincidence should not be missed out. They did not allow it to the celebrations and the tradition to be carried out in 24 also. And therefore the devotees went to the court for justice, and justice was delivered by Justice Swaminathan, who permitted through his judgment on 1st December 2025 to continue the practice of lighting the lamp, the Deepathun at Thirupparankundram. It is extremely unfortunate that the state government went in appeal against the Honorable Judge's order, clearly reflecting a bias against Hindu Dharam, against Sanatan Dharam, clearly reflecting an anti-Hindu mindset, in fact, showing the hatred that Mr. Stalin, his son Mr. Udaynidhi, and the DMK party and their friends in the India alliance have against Hindu Dharma. Their mindset was also reflected by their impeachment motion against Justice Swaminathan. This impeachment motion has been submitted by different members of Parliament of the India Alliance, including Ms. Priyanka Vadra Gandhi, including leaders of the Samajwadi Party, Dharmendra Yadav, Dimple Yadav, leader of NCP Sharad Pawar Group, Supriya Sule, leaders of Shiv Sena, Uddhav Thackeray, Mr. Arvind Sawant, senior leaders and members of Parliament of DMK, including Mr. Raja, who are all at the forefront of this anti-Hindu effort. And they are trying to intimidate the judiciary by filing this impeachment motion and making all false allegations against Honorable Justice G.R. Swaminathan. Because of a judgment, they have called him anti-secular. Because of the judgment, they have alleged falsely that he showed favoritism to somebody. Because of this judgment, they have falsely alleged that there was favoritism to advocates from a particular community. And they have also made the ridiculous allegation against the judiciary of political bias or favoring a particular political ideology. This shows, friends, that the so-called people who claim to uphold the Constitution are intimidating the judiciary so that anybody who gives a judgment which they do not like, they will intimidate them with actions such as this impeachment motion. Today, a division bench of the Honorable High Court, Madurai bench of the Madras High Court, Justices G. Jayachandran and Justice K.K. Ramakrishnan have on the Thirupparankundram Deepastambam issue given conclusive
directions that this is an age-old practice, that the dharam and the sentiments of the local people, which has been going on for centuries altogether, should be respected. The Deepam festival should be permitted to be carried out. And they have clearly lifted the veil from the DMK government, from the leaders of the DMK. They have clearly shown that the DMK and the India Alliance is anti-Hindu. They have clearly accepted that this is an ancient and historical practice and directed that the lamp be lit at the hilltop. Friends, the state government's argument about possible law and order problems has also been totally debunked by the Honorable High Court, because apprehension of law and order was an imaginary ghost created by the state authorities as per the judgment. The Honorable High Court has held, and I quote, apprehension of law and order was an imaginary ghost created by state authorities. After all, there have never been any problems. It is only the appeasement politics of the India Alliance, trying to appease members of one community, trying to curry favor from the community who has a small dargah over there and who oppose the practice of the centuries-old practice of Deepam. The reality has been exposed. The Honorable High Court has said, and I quote, that it may happen, that is the law and order problem, it may happen only if such a disturbance is sponsored by the state itself. They have given a very, very big indictment against the state government and their thinking and their approach, and clearly shown that the state government of DMK and Congress, the India Alliance government in Tamil Nadu, may themselves sponsor a disturbance to support their anti-Hindu agenda. Very clearly, this is a party and a set of parties in the India Alliance who, when it doesn't suit them, an order of the court doesn't suit them, they attack the constitutional authority of the court, they put impeachment motions in parliament against them, they cast aspersions on judges and their impartiality and their upholding the constitution. When the election commission doesn't give a favorable judgment to suit their interest, the election commission becomes bad, and they threaten them that if they ever come to power, which seems a very remote possibility, but they threaten them that we will change the law retrospectively and come after you. This kind of anti-India, anti-constitutional activities of the India Alliance has been exposed by the Honorable Judge today, the judges today in their order, and I think it is important that the people of India recognize and respect that institutions and constitutional authorities are today protecting the constitution, protecting the rights and freedoms to pursue one's religion freely and fairly without obstruction, and any effort by anti-Hindu parties of the India Alliance, by the DMK, by Mr. Udayanidhi
Stalin, by Mr. M.K. Stalin, by the DMK and Congress government in Tamil Nadu will not be permitted by the people. It is a wake-up call for the people of Tamil Nadu. ये देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जागो, बचो इस प्रकार की सोच जो इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी, जो डीएमके, जो समाजवादी पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस, इस टाइप की पार्टीज की जो सोच है, इससे देश के लोगों को बचना पड़ेगा। ये चेतावनी फिर एक बार हमारे सामने आई है। ये देश तुष्टीकरण की राजनीति कभी स्वीकारित नहीं करेगा। ये देश हर एक को सम्मानित करता है, हर एक धर्म को सम्मान देता है, और ऐसी पार्टियां जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती हैं, जो अब कहती हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी भी उनको ये स्वीकृत नहीं हुआ। इतना बड़ा कोर्ट के जजमेंट के बाद, डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, उनकी आलोचना होने के बाद डीएमके और कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि हिंदू धर्म की विजय हुई है, उनकी आस्था की विजय हुई है। ये पचा नहीं पा रही है और उनकी तुष्टीकरण उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बाध्य करती है। मैं घोर निंदा करता हूं इस प्रकार की सोच का। आई कंडेम the India Alliance. I condemn the DMK led by M.K. Stalin and Udaynidhi. I condemn the Congress party, Samajwadi party, and other Uddhav Thackeray ji and Sharad Pawar ji for their anti-Hindu thinking. And I'm sure the people of India will give them a befitting response at every single opportunity, just like they gave them a response in Bihar, just like they gave a resounding victory to the BJP and our allies in the NDA in Maharashtra Nagar Nigam elections. In every single opportunity, the anti-Hindu forces will be given a fitting response by the people of India. Thank you. हमने तो बार बार उजागर किया है, महाराष्ट्र में अब सभी लोगों को समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे जी एंटी हिंदू है, हिंदुत्व के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहेब ठाकरे के हर उद्देश्य को छोड़ दिया है, हिंदुत्व को त्याग दिया है, और अब चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे उनके नए मित्र मन से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी और उनकी पारिवारिक पार्टी हो, ये हिंदुत्व के खिलाफ है। और महाराष्ट्र की जनता जो छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेती है, जो संभाजी महाराज के दिखाए हुए हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा और आस्था रखती है, वो कदापि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले जैसे हिंदू विरोधी पार्टियों का कभी समर्थन नहीं करें। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं, उसका हर बार उनको भुगतान मिला है, जनता ने जवाब दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता इस प्रकार के विवादित बयान और धमकियों से डरती भी नहीं है, और मुंह तोड़ जवाब इस प्रकार के हिंदुत्व के खिलाफ सोच रखने वाले लोगों को देगी।
लगता है एसआईआर तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर कुछ वर्षों में होती है। एसआईआर के माध्यम से जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, जो लोगों की मृत्यु हो गई है या जिनका डबल वोट है, कई बार लोग प्रवासी होते हैं, दूसरे प्रदेश में जाके दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं, उनका वोट अगर 2 जगह हो जाए तो स्वाभाविक रूप से एक जगह कटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्होंने जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो इस प्रकार के वोटों के कारण जीत के आते थे पहले, और इसीलिए बिहार में जहां इतना उन्होंने विरोध किया एसआईआर का, उसके बाद जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देके हराया। जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और हमारे एनडीए के चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र राम मांझी जी, हमारा पूरा एनडीए गठबंधन को जो ऐतिहासिक विजय बिहार में मिली है, ये स्पष्ट दिखलाता है कि भारत की जनता संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ है। और ऐसे जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टियों की भारत विरोधी और हिंदू विरोधी सोच है, इसको कभी भारत में पनपने नहीं देंगे। This is not a political issue for the Bharatiya Janata Party or for the NDA. This is a matter of upholding high constitutional principles. It is a matter of respect for different religions and the secular fabric of India, which respects all religions. It is a fight against the appeasement politics that the India Alliance, that the Congress, that the DMK have for years followed to divide Indian society, to divide the people of India on the basis of caste, creed, religion, language. This mindset of the DMK and the Congress of dividing society, this mindset of becoming anti-Hindu to further their appeasement politics, this approach of the India Alliance of the Congress to attack constitutional authorities, whether it is the judge who gave an order, file an impeachment motion. If the Election Commission is carrying out its duties to have a clean and correct electoral roll, threaten them with action. When a media person asks an innocent question to Mr. Rahul Gandhi, he alleges you are an agent of the BJP. Even you are not left. You are an equally important constitutional power, upholder of the Constitution. You uphold high standards that this nation is proud of. And therefore, whether the judiciary, whether other constitutional authorities or the press, all of you are victims of the high-handed behavior of the Congress party and the India Alliance. They still live in the old thinking as if there is only one family, the Gandhi family in this country, as if there is only one family, the Stalin family in Tamil Nadu, and everybody else has to be subservient to that family. Well, in Hindi there's an old saying, समझने वाले समझ गए. We cannot help do anything about those people who do not see the writing on the wall, who do not respect constitutional authorities and judgments of the court, who do not respect the verdict of the people of India. And I think such parties and such leaders are clearly they stand exposed today, and the people of India will give them
a befitting reply at every single opportunity. Not at all. The basic principle was that the Deepam has to be lit on the hill where it has been lit for centuries now, and it's a very sacred abode of Lord Murugan. The Congress party and the DMK were attacking and opposing the very lighting of lamp itself at the sacred location, which has been happening for centuries. And I think the fact that the division bench has permitted the lamp to be lit is a big victory of Hindu Dharam, and it's a slap on the face of those who practice appeasement politics. Thank you. Well, I think here we are discussing the anti-Hindu stand of the DMK and Congress, and very clearly the DMK and the Congress are standing exposed today. If Mr. Vijay understanding of the situation is that we are on the same side, then I do believe the people of Tamil Nadu have to think twice before they even take him seriously as a political player. मित्रों नमस्कार। अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और तमिलनाडु के चुनाव प्रभारी आदरणीय पीयूष गोयल जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे मीडिया प्रमुख और मुख्य प्रवक्ता सांसद अनिल बलूनी जी हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन आदरणीय पीयूष जी से है कि आपको संबोधित करें। Thank you very much. A very happy new year to all the friends from the media. It is indeed a matter of great satisfaction that the Honorable High Court of Tamil Nadu, in a division bench order today, has given justice to the devotees of this very, very old and ancient temple atop the Thirupparankundram hills, where Bhagwan Murugan resides, where for centuries now lamps have been lit in reverence of Lord Kartikeya, and for centuries now Hindu Dharam has celebrated the Lord and carried out this practice of lighting a lamp, which this year
was expected to be lit on 4th of December 2025. It is not a mere coincidence that the Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, his son, Mr. Udayanidhi, and other senior leaders of the DMK have consistently berated, derided, and attacked Sanatan Dharam. So much so that on 2nd September 2023, Mr. Udayanidhi made an audacious and reprehensible demand for the eradication of Sanatan Dharam itself. And for the first time, few months after that, the lighting of the lamp on the Thirupparankundram hill associated with Lord Kartikeya, the Murugan, Bhagwan Murugan, was prevented. This coincidence should not be missed out. They did not allow it to the celebrations and the tradition to be carried out in 24 also. And therefore the devotees went to the court for justice, and justice was delivered by Justice Swaminathan, who permitted through his judgment on 1st December 2025 to continue the practice of lighting the lamp, the Deepathun at Thirupparankundram. It is extremely unfortunate that the state government went in appeal against the Honorable Judge's order, clearly reflecting a bias against Hindu Dharam, against Sanatan Dharam, clearly reflecting an anti-Hindu mindset, in fact, showing the hatred that Mr. Stalin, his son Mr. Udayanidhi, and the DMK party and their friends in the India Alliance have against Hindu Dharma. Their mindset was also reflected by their impeachment motion against Justice Swaminathan. This impeachment motion has been submitted by different members of Parliament of the India Alliance, including Ms. Priyanka Vadra Gandhi, including leaders of the Samajwadi Party, Dharmendra Yadav, Dimple Yadav, leader of NCP Sharad Pawar Group, Supriya Sule, leaders of Shiv Sena Uddhav Thackeray, Mr. Arvind Samant, senior leaders and members of Parliament of DMK, including Mr. Raja, who are all at the forefront of this anti-Hindu effort. And they are trying to intimidate the judiciary by filing this impeachment motion and making all false allegations against Honorable Justice G.R. Swaminathan. Because of a judgment, they have called him anti-secular. Because of the judgment, they have alleged falsely that he showed favoritism to somebody. Because of this judgment, they have falsely alleged that there was favoritism to advocates from a particular community. And they have also made the ridiculous allegation against the judiciary
of political bias or favoring a particular political ideology. This shows, friends, that the so-called people who claim to uphold the constitution are intimidating the judiciary so that anybody who gives a judgment which they do not like, they will intimidate them with actions such as this impeachment motion. Today, a division bench of the Honorable High Court, Madurai bench of the Madras High Court, Justices G. Jayachandran and Justice K. Ramakrishnan, have on the Thirupparankundram Deepastambam issue given conclusive directions that this is an age-old practice, that the dharam and the sentiments of the local people, which has been going on for centuries altogether, should be respected. The Deepathun festival should be permitted to be carried out. And they have clearly lifted the veil from the DMK government, from the leaders of the DMK. They have clearly shown that the DMK and the India Alliance is anti-Hindu. They have clearly accepted that this is an ancient and historical practice and directed that the lamp be lit at the hilltop. Friends, the state government's argument about possible law and order problems has also been totally debunked by the Honorable High Court, because apprehension of law and order was an imaginary ghost created by the state authorities as per the judgment. The Honorable High Court has held, and I quote, apprehension of law and order was an imaginary ghost created by state authorities. After all, there have never been any problems. It is only the appeasement politics of the India Alliance, trying to appease members of one community, trying to curry favor from the community who has a small dargah over there and who oppose the practice of the centuries old practice of Deepam. Their reality has been exposed. The Honorable High Court has said, and I quote, that it may happen, that is the law and order problem, it may happen only if such a disturbance is sponsored by the state itself. They have given a very, very big indictment against the state government and their thinking and their approach, and clearly shown that the state government of DMK and Congress, the India Alliance government in Tamil Nadu, may themselves sponsor a disturbance to support their anti-Hindu agenda. Very clearly, this is a party and a set of parties in the India Alliance who, when it doesn't suit them, an order of the court doesn't suit them, they attack the constitutional authority of the court. They put impeachment motions in parliament against them. They cast aspersions on judges and their impartiality and their upholding the constitution. When the election commission doesn't give a favorable judgment to suit their interest, the election commission becomes bad, and they threaten them that if they ever come to power, which seems a very remote possibility,
but they threaten them that we will change the law retrospectively and come after you. This kind of anti-India, anti-constitutional activities of the India Alliance has been exposed by the Honorable Judge today, the judges today in their order, and I think it is important that the people of India recognize and respect that institutions and constitutional authorities are today protecting the Constitution, protecting the rights and freedoms to pursue one's religion freely and fairly without obstruction, and any effort by anti-Hindu parties of the India Alliance, by the DMK, by Mr. Udayanidhi Stalin, by Mr. MK Stalin, by the DMK and Congress government in Tamil Nadu will not be permitted by the people. It is a wake-up call for the people of Tamil Nadu. ये देश के लोगों के लिए एक चेतावनी है कि जागो, बचो इस प्रकार की सोच जो इंडिया अलायंस, जो कांग्रेस पार्टी, जो डीएमके, जो समाजवादी पार्टी, जो तृणमूल कांग्रेस, इस टाइप की पार्टीज की जो सोच है, इससे देश के लोगों को बचना पड़ेगा। ये चेतावनी फिर एक बार हमारे सामने आई है। ये देश तुष्टीकरण की राजनीति कभी स्वीकारित नहीं करेगा। ये देश हर एक को सम्मानित करता है, हर एक धर्म को सम्मान देता है, और ऐसी पार्टियां जो हिंदू धर्म के खिलाफ काम करती हैं, जो अब कहती हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अभी भी उनको ये स्वीकृत नहीं हुआ। इतना बड़ा कोर्ट के जजमेंट के बाद, डिवीजन बेंच के जजमेंट के बाद, उनकी आलोचना होने के बाद डीएमके और कांग्रेस पचा नहीं पा रही है कि हिंदू धर्म की विजय हुई है, उनकी आस्था की विजय हुई है। ये पचा नहीं पा रही है और उनकी तुष्टीकरण उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए बाध्य करती है। मैं घोर निंदा करता हूं इस प्रकार की सोच का। आई कंडेम द इंडिया अलायंस, आई कंडेम द डीएमके led by MK Stalin and Udayanidhi. I condemn the Congress party, Samajwadi party, and other Uddhav Thackeray ji and Sharad Pawar ji for their anti-Hindu thinking, and I'm sure the people of India will give them a befitting response at every single opportunity, just like they gave them a response in Bihar, just like they gave a resounding victory to the BJP and our allies in the NDA in Maharashtra Nagar Nigam elections. In every single opportunity, the anti-Hindu forces will be given a fitting response by the people of India. Thank you. हमने तो बार बार उजागर किया है, महाराष्ट्र में अब सभी लोगों को समझ में आ गया है कि उद्धव ठाकरे जी एंटी हिंदू है, हिंदुत्व के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहेब ठाकरे के हर उद्देश्य को छोड़ दिया है, हिंदुत्व को त्याग दिया है, और अब चाहे वो उद्धव ठाकरे जी हो, चाहे उनके नए मित्र मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी हो, चाहे शरद पवार जी और उनकी पारिवारिक पार्टी हो, ये हिंदुत्व के खिलाफ है। और महाराष्ट्र की जनता जो छत्रपति शिवाजी से प्रेरणा लेती है, जो संभाजी महाराज के दिखाए हुए हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा और आस्था रखती है, वो कदापि
उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले जैसे हिंदू विरोधी पार्टियों का कभी समर्थन नहीं करें। अब ये इंडिया अलायंस के लोग इस प्रकार का व्यक्तिगत माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो बयान देते हैं, उसका हर बार उनको भुगतान मिला है, जनता ने जवाब दिया है। मुझे पूरा विश्वास है भारत की जनता इस प्रकार के विवादित बयान और धमकियों से डरती भी नहीं है और मुंह तोड़ जवाब इस प्रकार के हिंदुत्व के खिलाफ सोच रखने वाले लोगों को देगी। मुझे लगता है एसआईआर तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर कुछ वर्षों में होती है। एसआईआर के माध्यम से जो लोग भारत के नागरिक नहीं है, जो लोगों की मृत्यु हो गई है या जिनका डबल वोट है, कई बार लोग प्रवासी होते हैं, दूसरे प्रदेश में जाके दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं, उनका वोट अगर 2 जगह हो जाए तो स्वाभाविक रूप से एक जगह कटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्होंने जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो इस प्रकार के वोटों के कारण जीत के आते थे पहले और इसीलिए बिहार में जहां इतना उन्होंने विरोध किया एसआईआर का, उसके बाद जनता ने उनको मुंह तोड़ जवाब देके हराया। जो ऐतिहासिक विजय भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और हमारे एनडीए के चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जितेंद्र राम मांझी जी, हमारा पूरा एनडीए गठबंधन को जो ऐतिहासिक विजय बिहार में मिली है, ये स्पष्ट दिखलाता है कि भारत की जनता संवैधानिक प्रक्रियाओं के साथ है और ऐसे जो इंडिया अलायंस के गठबंधन के पार्टियों की भारत विरोधी और हिंदू विरोधी सोच है, इसको कभी भारत में पनपने नहीं देंगे। This is not a political issue for the Bharatiya Janata Party or for the NDA. This is a matter of upholding high constitutional principles. It is a matter of respect for different religions and the secular fabric of India, which respects all religions. It is a fight against the appeasement politics that the India Alliance, that the Congress, that the DMK have for years followed to divide Indian society, to divide the people of India on the basis of caste, creed, religion, language. This mindset of the DMK and the Congress of dividing society, this mindset of becoming anti-Hindu to further their appeasement politics, this approach of the India Alliance of the Congress to attack constitutional authorities, whether it is the judge who gave an order, file an impeachment motion. If the Election Commission is carrying out its duties to have a clean and correct electoral roll, threaten them with action. When a media person asks an innocent question to Mr. Rahul Gandhi, he alleges you are an agent of the BJP. Even you are not left. You are an equally important constitutional power, upholder of the Constitution. You uphold high standards that this nation is proud of. And therefore, whether the judiciary, whether other constitutional authorities or the press, all of you are victims
of the high-handed behavior of the Congress party and the India Alliance. They still live in the old thinking as if there is only one family, the Gandhi family in this country, as if there is only one family, the Stalin family in Tamil Nadu, and everybody else has to be subservient to that family. Well, in Hindi there's an old saying, "Samajhne wale samajh gaye." We cannot help do anything about those people who do not see the writing on the wall, who do not respect constitutional authorities and judgments of the court, who do not respect the verdict of the people of India. And I think such parties and such leaders are clearly they stand exposed today, and the people of India will give them a befitting reply at every single opportunity. Not at all. The basic principle was that the Deepam has to be lit on the hill where it has been lit for centuries now, and it's a very sacred abode of Lord Murugan. The Congress party and the DMK were attacking and opposing the very lighting of lamp itself at the sacred location, which has been happening for centuries. And I think the fact that the division bench has permitted the lamp to be lit is a big victory of Hindu Dharam, and it's a slap on the face of those who practice appeasement politics. Thank you. Well, I think here we are discussing the anti-Hindu stand of the DMK and Congress, and very clearly the DMK and the Congress are standing exposed today. If Mr. Vijay understanding of the situation is that we are on the same side, then I do believe the people of Tamil Nadu have to think twice before they even take him seriously as a political player. Thank you. आदरणीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, आदरणीय सचिव सर, यहाँ पधारे हुए सारे मीडिया के साथी, हमारे साथी अमित जी और निर्वाचन विभाग से और कार्यालय से साथी अधिकारीगण, आप सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का सादर अभिवादन है। आप सभी अवगत हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में, जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में जारी है, आगामी 6 तारीख को आलेख प्रकाशन है। उस क्रम में हमारे बीच में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय मुखातिब हैं और वो आप मीडिया के साथियों को
इसी क्रम में संबोधित करेंगे। आप सभी से यहाँ पे सादर आग्रह है, आप लोग यहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त करेंगे, जो भी यहाँ से सूचनाएं प्राप्त करेंगे, वो अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अरविंद जी। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण, आज विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग पब्लिश कर रहे हैं और सारे 75 जनपदों में आज जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उनको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की एक प्रिंटेड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीईओ उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है, वेब पोर्टल CEO uttarpradesh.nic.in जो स्क्रीन पे है, इसको जैसे ही हम खोलते हैं, इस वेब पोर्टल पे जाते हैं, तो पहला ये जो पॉपअप विंडो सामने आप देख रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पॉपअप विंडो आएगा जिसमें जो नीचे है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, उस पर क्लिक करके हम किसी जनपद की किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और हमारा 27 अक्टूबर 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, जिसमें 4 नवंबर 2025 से इसका जो पहला चरण था, जिसको एन्यूमरेशन फेज हम बोलते हैं, गणना चरण, वो प्रारंभ हुआ था। गणना चरण में क्या हुआ, सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ इसका SIR का, उस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी एग्जिस्टिंग एज ऑन दैट डेट, उसको फ्रीज कर दिया गया था और उसमें जितने भी मतदाता थे 15,44,30,092, उन सारे मतदाताओं का इंडिविजुअल एक का अलग से यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और 2-2 कॉपियों में, और BLO को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें 1 सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2,97,00,000 के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफी तेजी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया, इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयां समाप्त हो गई थी और हमारा 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन की तिथि थी। लेकिन साथ ही साथ इस जो हमारा फील्ड में जो वर्क चल रहा था, इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मध्य स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था, तो काफी ऐसे मध्य स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मध्य स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है, इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस
ड्राफ्ट इलेक्ट्रल रोल को हमने पब्लिश किया है। और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है। और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी, सो इसलिए एक मिनट, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख, और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं, 2.17 करोड़। और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70%, 18.70% है। सो फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,55,56,025 मतदाता हैं। और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स BLA, इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए, और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है, जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं। वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण
की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था। तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है, और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं, और 1,04,00,000 के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए, ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची, इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची, फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ, तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। ऐसा भी इस दौरान हुआ है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट कर गए, लेकिन उन्होंने BLO को संपर्क करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया, इस आशा के साथ कि हम यहाँ से नए घर में अपना शिफ्ट करा लेंगे। तो उसके लिए फॉर्म 8 अवेलेबल है, उसको भर सकते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण है कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है, जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसे भर दें। और इसके साथ ये तो हमारा नेट पे है, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं, ECI नेट करके मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उससे फोन से भी मतदाता इन फॉर्म्स को ले सकता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये हर वोटर के लिए है, हर 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि अपना नाम चेक कर ले, और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कुछ करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है, और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन, शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8
भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा है PWD चिन्हांकन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मार्किंग के लिए इसका लाभ होता है। जब इलेक्शन डे में कोई हेल्प चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उन्हीं लोगों को हमें पहले से इस डेटाबेस से पता लगता है, तो उनको हम लोग विशेष सुविधा उसमें दे सकते हैं। किसी का नाम कटवाना है, अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है, लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 7 उस पोलिंग स्टेशन का कोई भी मतदाता भर सकता है। और फॉर्म 6A 6 क है, विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, तो सामान्य रूप से तो भारत में निवास नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं साल 2 साल के लिए, लेकिन भारत के नागरिक हैं, तो वो वोटर बन सकते हैं। उस पोलिंग स्टेशन में उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है, उस लोकल एड्रेस के पोलिंग स्टेशन पे वो वोटर बन सकते हैं। और ऐसे वोटर्स, ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, इन हार्ड कॉपी में भर के दिया भी जा सकता है। और इसमें एपिक नहीं मिलता है ऐसे वोटर को। वो अगर इलेक्शन के दौरान भारत में है, तो अपने निवास स्थान वाले पोलिंग स्टेशन में जाके अपना पासपोर्ट ओरिजिनल में दिखा के उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वोट डाल सकता है। इनके लिए फॉर्म 6A है। और आवेदन पत्र जैसे बताया कि इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है तो voters.eci.gov.in पे जाके ऑनलाइन भर सकते हैं, डाउनलोड की जरूरत नहीं, उसी पे एंट्री किया, उसी पे अपलोड किया डॉक्यूमेंट, और उसको ऑनलाइन ही सबमिशन हो जाता है। और चाहे तो डाउनलोड करके फिजिकली भर के हमारे अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आप दे सकते हैं। और वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर है हर तहसील में, जहाँ SDM बैठते हैं, उनके एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर है, उस पर भी दे सकते हैं। और हमने इस दौरान जो गणना चरण के दौरान राजनीतिक दलों के साथ कई चरणों में बैठकें हुई। राज्य स्तर पर 3 बैठक हुई, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो SDM स्तर के हमारे अधिकारी हैं, उनके स्तर पे भी बैठकें हुई। कुल 1546 ऐसी बैठकें हमने राजनीतिक दलों के साथ इस गणना चरण में किया। और तो अब आज की तारीख में फॉर्म वो भर सकते हैं वो लोग जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2008 से पहले जिनका जन्म हुआ है, 1 जनवरी 2008 को जन्म हुआ है या उससे पहले जन्म हुआ है, उनका वोट नहीं बना हुआ है, तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो यूं 1 अक्टूबर 2026 को जो 18 साल का हो रहा है वो भी भर सकता है, लेकिन उसका नाम ये जो 6 मार्च की मतदाता सूची आएगी उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एलिजिबल हो रहे हैं 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को या 1 अक्टूबर को, लेकिन उनके फॉर्म वो अभी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। सो उनका फॉर्म पड़ा रहेगा, उसकी प्रोसेसिंग जब ये हमारी फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद, यानी जिनका 1 अप्रैल 2026 को हो रहा है उनका अप्रैल में वोट बन जाएगा, जिनका 1 जुलाई को जो 18 साल के हो रहे हैं उनका जुलाई महीने में बन जाएगा, और जिनका 1 अक्टूबर 2026 को जो 18 साल के हो रहे हैं वो अक्टूबर 2026 में वोटर बन जाएंगे। यानी आज की तारीख में 17.25 साल से ऊपर के लोग वोट फॉर्म 6 भर सकते हैं। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये जानकारी युवा छात्रों को मिले कि अगर वो 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल के हो रहे हैं तो वो फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। बट महत्वपूर्ण है कि अभी जो नाम आएगा हमारी 6 मार्च को वो केवल उन लोगों का आ पाएगा जिनका 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी हो गई थी। गणना चरण में निर्देश ये थे, BLOs को हमने फॉर्म 6 भी दिया था कि आप जब घर जाए तो पुराना वोटर जिसका नाम ऑलरेडी है उसको तो एन्यूमरेशन फॉर्म दें, गणना चरण दें, हस्ताक्षर कराएं, लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम नहीं है, नए वोटर बनना चाहते हैं, उनको फॉर्म 6 दें। तो ऐसे लगभग 15,78,483 हमारे फॉर्म 6 ऑलरेडी भर के हमारे सिस्टम में आ गए हैं। फिजिकली तो इससे ज्यादा आए हैं, क्योंकि पिछले जब से हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे 8-9 दिनों में वो ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो ये 15,78,483 वो हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी आ गए हैं।
लेकिन हमारा अंदाजा है इससे काफी ज्यादा पिछले 9-10 दिनों में हमारे ऑफिसर्स के पास फॉर्म 6 आ गए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो हमारा अब जो महीना है जनवरी 15,78,483 15,78,483 तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। तो इनका सिर्फ हम फॉर्म भर पाए थे गणना चरण में, इनका नाम अब जुड़ेंगे। इनमें से जो लोग पात्र होंगे जिन्होंने घोषणा, इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने घोषणा पत्र नहीं भरा, यानी 27 अक्टूबर 25 से पहले भरा था, तो BLOs के माध्यम से उन वोटर्स को बताया जाएगा कि आप इस घोषणा पत्र को भी भर दें और एक दस्तावेजों की सूची है उसमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। 11 दिसंबर को जब हमारा पहला समय हमें मिला था भारत निर्वाचन आयोग से और समय अवधि खत्म हो रही थी गणना चरण की, उस समय तक हमारा काम लगभग पूरा हो गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बड़ी संख्या में 2,97,00,000 के आसपास ऐसे नाम निकल के आ रहे थे, तो हमने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा कि हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स हैं इनके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को लगा के कि कोई BLO की गलती से मिस ना हो गए हो नाम। सो उसमें हमें काफी BLS से हमने वोटर लिस्टें शेयर की थी, वो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे भी लगा दी थी कि कौन लोग वोटर लिस्टें नहीं, कौन लोग अनुपस्थित, कौन लोग मृतक हैं, कौन लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हैं। ये सारी लिस्टें 12 दिसंबर से राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को रिसीव करा दी गई थी और जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे विधानसभा वार बूथवार अपलोड कर दी गई थी, वो लोग देख सकते थे। तो इस जो 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला उसका लाभ ये मिला कि हमें लगभग 8-9 लाख अधिक वोटर, हम जो 11 दिसंबर को जितने एन्यूमरेशन फॉर्म आए थे उससे लगभग 8-9 लाख हम लोग अधिक वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म भर पाए। तो ये जो हमने अवधि ली थी उसका ये लाभ हमें मिला। और आज हमने पॉलिटिकल पार्टीज जो मान्यता प्राप्त है, राजनीतिक दल, हमारे 6 राष्ट्रीय दल हैं मान्यता प्राप्त और 2 राज्य के हैं। इन 8 राजनीतिक दलों में से NPPP के यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट में है उनका, तो ज्यादा यहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, तो 7 दलों के मुख्यतः हैं, उनको सबको हमने हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी वोटर लिस्ट की दे दी है। पब्लिक की जानकारी के लिए हमारे CEO उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आपको ले जाता है voters.eci.nic.in, भारत निर्वाचन आयोग का जो वेबसाइट है, तो उस पे भी अगर कोई डायरेक्टली जाए सर्च योर नेम इन इलेक्टोरल रोल से उसको देख सकता है। एक सेकंड बस मैं अपना कंप्लीट कर दूं फिर आई विल टेक योर क्वेश्चंस। और अब जिनका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में आ गया है, जिनका नाम सालेख्य मतदाता सूची में आ गया है, उनका नाम अगर कटना है तो बिना उनको नोटिस दिए हुए और बिना AERO या ERO के लिखित स्पीकिंग ऑर्डर के बिना उनका नाम कटेगा नहीं। और कुछ लोगों को नोटिस जाएगा, अगर किसी ने फॉर्म 7 भरा है किसी व्यक्ति का नाम कटवाने के लिए तो भी नोटिस जाएगा, या जिनकी मैपिंग इस गणना चरण में नहीं हुई उनको नोटिस जाएगा। सो प्रयास ये है कि हम लोग कोई भी पात्र मतदाता है वो इससे छूटे नहीं। हमारे फाइनल इलेक्टोरल रोल जो SIR का आ रहा है, तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में हमारे पास फॉर्म 6 राजनीतिक दलों के सहयोग से और आपके माध्यम से जो अवेयरनेस हम कर रहे हैं उसके माध्यम से जनता तक बात पहुंचेगी और अपना नाम लोग चेक करके फॉर्म 6 भरेंगे। इसके साथ ही साथ बस मैं भी अब क्वेश्चन ले रहा हूँ। एक चीज और आपको बता दूं, आज ही हमारे यहाँ जो 2 हाउस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे एक है खंड स्नातक क्षेत्र और एक है खंड शिक्षक क्षेत्र। इसमें खंड स्नातक के 5 और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचक क्षेत्रों का आज वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट हमने पब्लिश की है। तो इसमें हमारे ये भी आज ही जारी हुई है। लखनऊ खंड स्नातक में 2,11,756 मतदाता हैं, वाराणसी खंड स्नातक में 2,69,372 हैं। इसी प्रकार हमारे बाकी जो क्षेत्र है, इसका हमने अलग से प्रेस विज्ञप्ति निकाला जिसमें इनकी डिटेल है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं।
एक सेकंड ये मेरे ख्याल एक एक करके अगर कर ले तो फ्री लो। एक तरफ से एक क्वेश्चन है। आप जिनको कहेंगे वो पूछ लेंगे। आप दोनों जैसे शोर हो जाएगा। आप ऐसे बोलोगे ना भाई आप लें तब होगा, नहीं तो क्या है फिर फ्री फॉर ऑल है। हाँ आपका एक सेकंड पहले इसी का आंसर दे, पहले एक से जिसका नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल में आ गया है, लगभग 8.25% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हुई, तो उनको नोटिस आएगा। नोटिस आने पे उनको नोटिस में लिखा होगा, एक डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है 12-13 की, उसमें से एक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके साइन करके, हाँ उनको BLO के माध्यम से उनके तक आएगा। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न पूछा। ये जो आप देख रहे हैं सबसे नीचे ब्लू में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, इसके जस्ट ऊपर लिखा है ASDDR लिस्ट, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट, रिफ्यूज टू साइन। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो जिलेवार, विधानसभा वार, बूथ वार लिस्टें हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पता लग जाएगा, अगर जैसा आपने कहा कि हमने तो साइन करके दिया, तो ये पता लग जाएगा उसको क्या गलती से मृतक दिखा दिया या स्थानांतरित दिखा दिया, क्या दिखाया, इस तरह से लिस्ट आ जाएगी। इसमें एक फीचर और है जो अगर हम बैक ले जाए, वो आसान फीचर है, वो अभी शाम तक इसको हम एक्टिवेट कर देंगे, जो ग्रीन वाला है। इसमें अगर आपके पास एपिक कार्ड है, वोटर अपना एपिक कार्ड लेगा तो उसको सर्च करना नहीं, वो एकदम से आ जाएगा कि आपका नाम इसमें अगर है तो क्या दिखाया है गलत। सीओ साहब ठीक है, अपना अच्छा प्रश्न है कि ऑब्जेक्शन कहाँ करें या क्लेम कहाँ करें। ये हमने इसमें जो आपको प्रेस विज्ञप्ति में भी बताया कि इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, voters.eci.nic.in पे 6 फॉर्म 6 भरेंगे तो क्लेम है, 7 भरेंगे तो ऑब्जेक्शन है, और डाउनलोड करके BLO को फिजिकली भी दे सकते हैं, वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर पे फिजिकली भी दे सकते हैं। दिरमा जी भाई आप थोड़ा ये जहाँ बोलेंगे हम, मैं बैठूंगा थोड़ी देर, एक मिनट। ठीक सर अरे पूछे तो यार क्या बात है? सर मेरा सवाल सर किसी अन्य अथॉरिटी को देने का नहीं है, हम लोग जिनका नाम अगर सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया तो नाम की लिस्ट दे दी जाए। सर एक सर मेरा सवाल ये है, दो पॉइंट है मेरे। इस वक्त जो आपने अभी वोटर लिस्ट डिक्लेयर की है, वो फाइनल ड्राफ्ट तो 1 महीने बाद आएगा या मार्च में आएगा, इसमें EP रेशियो और जेंडर रेशियो क्या है? ठीक है, अभी हमने वो आंकड़े रखे नहीं है और रख देंगे बाद में, लेकिन 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने, 6 मार्च को हमारी फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, 2 महीने बाद आएगी। हेलो, अच्छा एक सवाल सर, नवदीप सर, अच्छा लेने दो ले रहा। अच्छा अभी पहले पब्लिक को हम ये बताना चाह रहे हैं इसकी जो जानकारी है वोटर लिस्ट और इसके बारे में। सर नवदीप सर एक सवाल है, नवदीप सर सवाल यहाँ से है। नहीं एक इनका दे दूं जो इन्होंने कहा कि SIR को लेकर सर लखनऊ के नवदीप सर एक सवाल है कि जब ये SIR हो रही थी यहाँ से, सर राघवेंद्र पांडे रिपब्लिक से बोल रहा हूँ सर। जी एक बार मैं थोड़ा उत्तर दे दूं। इनका प्रश्न अच्छा था कि अगर किसी की मृत्यु नहीं हुई, उसको गलत से मृतक दिखा दिया है, तो उसमें पहला काम तो फॉर्म 6 भर देना चाहिए, क्योंकि अभी जो फाइनल रिजल्ट, तो जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वही है, ये ड्राफ्ट है। हो सकता है
जानबूझ के कर दिया, हो सकता है गलती से हो गया हो, तो उसमें इम्पोर्टेंट ये कि चेक जरूर कर ले, हर वोटर चेक करे कहीं उसका नाम गलती से या किसी ने जानबूझ के कटवा तो नहीं दिया, इसको करें। SIR को लेकर के सर और उसमें जहां ऐसी गलती होगी उसके जांच कराई जाएगी, और उसमें अगर ये आएगा कि जानबूझ के गलत मंशा से काटा है तो कार्रवाई होगी। SIR को लेकर सर लखनऊ के आउटर में कई गांवों में सर मैं गया था और भी कई जिलों में गया था सर, वहां पर यह देखा गया कि जो SIR BLO ने जो लिस्ट सबमिट की है या ऑनलाइन जो उसको भरा है, उसमें फोटोग्राफ लेटेस्ट कलर कंपलसरी तो नहीं था, लेकिन आपने एक मंशा जताई थी कि लोग अपनी नवीनतम फोटो दें, लेकिन ऐसा पाया गया है शायद 50% से ज्यादा बिना फोटो लगाए फॉर्म जमा हुए हैं। ऐसे में अगर मतदाता जब वोटिंग के लिए जाएगा तो आप उम्मीदवार को यानी कि मतदाता को कैसे पहचानेंगे अगर वोटर ID कार्ड से पहचानना हो, बिना फोटो के फॉर्म जमा हुए हैं। तो ये सर मतलब देखा जाए डिजिटल उपकरण होते हुए भी ये लापरवाही क्यों हुई, इसको अनिवार्य क्यों नहीं किया गया, और सभी कलर फोटो के साथ मतदाता आई कार्ड क्यों नहीं बनाया गया, इस पे एक सवाल है सर। ठीक है, ये तो ताली बजाने की बात है, प्लीज शांति से उत्तर लीजिए। नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि ऐसी शंका काफियों को हो सकती है। तो इसका पहला तो आपको मैं ये निश्चित आप हो जाए कि अगर किसी ने फॉर्म में फोटो लगाया नहीं लगाया या दूसरे का लगाया, आज की तारीख में जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में फोटो आई है वो वही है जो 27 अक्टूबर 2025 को थी। ठीक। दूसरी बात एपिक उसके पास पहले से ही है, तो उसको वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं है। नया जारी होगा SIR के बाद या पुरानी एपिक ही रहेगी? देखिए, जब अगर एपिक जारी होना होगा तो उसकी बकायदा सूचना दी जाएगी, अभी ऐसी कोई बात नहीं। सर, डालीबाग में एक बूथ है जहां पे 120 वोटर एक मकान में है, मकान नंबर 7 में 120 वोटर है, क्या ये मुमकिन है? अभी SIR देखिए, ऐसा है कि आपको मैं बता दूं कि जो मकान नंबर का प्रश्न है, आपने इस प्रश्न से एक बात निकली है, बहुत से वोटर मकान नंबर शहर में है भी नहीं। ठीक, तो वो लोग जब फॉर्म भरते हैं तो कुछ जगह तो 00 लिख देंगे, कुछ जगह खाली छोड़ देंगे, कुछ जगह कुछ और लिख देंगे। तो ये जो मकान नंबर सेम है और उसमें वोटर इतने हैं, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा फिजिकली क्या वाकई वो वोटर उस बिल्डिंग में है, एक जगह है, या मकान नंबर गलत लिख दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो मकान नंबर होते ही नहीं है, उसमें नोशनल नंबर दिया जाता है। शहरी क्षेत्रों में कहीं है कहीं नहीं है। सो इसलिए ये वाला जो आपने कहा कि संभव है कि नहीं है, इसके कई कारण हो सकते हैं उसमें। जो मैरिड वुमेन जिनका नाम चेंज हो जाता है, एड्रेस चेंज हो जाता है, ऐसी महिलाएं के लिए जो आपने 12 डॉक्यूमेंट्स आपने बताए हैं देना है, अगर उनका रेसिडेंस चेंज हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, यानी उनकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसमें नाम अगर वर्मा था वो शर्मा हो जाती है, पहले वो बाराबंकी में थी अब लखनऊ में जाती है, तो ऐसे महिलाओं के लिए वो 12 डॉक्यूमेंट में से कौन से डॉक्यूमेंट है जो उनके लिए अप्रोप्रिएट होगा एज अ ड्राफ्ट रोल में अपने आप को साबित करना, मैप करने के लिए? नहीं, पहला तो एक तो ये कर सकते हैं कि अगर किसी का नाम अपने पिता वाले घर में है पहले से, तो उसको आप शिफ्टिंग करा के, जो आपका नया एड्रेस है हस्बैंड का, शिफ्टिंग करा के उसको ले आए। उसमें बाद में आपको करेक्शन के लिए एक बार फॉर्म 8 और भरना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पुरानी जगह फॉर्म 7 भर के नाम कटवाएं और नई जगह फॉर्म 6 भर के नाम दे। बट प्रेफरेबल ये है कि शिफ्ट करें पहले, उसके बाद करेक्शन का फॉर्म दोबारा भरें। एक वो माइक लेके दे दीजिए ताकि माइक के थ्रू होगा, जिसको हेलो प्लीज आपसे निवेदन ये है कि रणदीप जी, जिनके में क्रम से बात होगी, कृपया आप जितना क्लियरिटी से सुन पाएंगे उतना क्लियर आप कन्वे कर पाएंगे। तो निवेदन है कि क्रम से आप अपनी बात रखें। जिनके वोटर ID कार्ड में डिलीटेड लिख के आ गया है, वो लखनऊ के लोकल हैं, उनका कहीं बना भी नहीं है, वो बांग्लादेशी भी नहीं है, उन्होंने पिछली बार वोट भी डाला था, अब वो मारे फिरे क्योंकि जबरदस्ती उनके में डिलीटेड लिख दिया गया है। उनके माँ का है, बाप का है, पत्नी का है। पहला तो और BLO सर कह रहे हैं, मैं नहीं जानता। एक मिनट, थोड़ा सा मतलब शांति से करें हम लोग की। वोटर ID कार्ड में कभी डिलीटेड लिखा नहीं आता।
नहीं, उसके पास जो है, तो अगर डिलीटेड अब वो डाउनलोड कर रहे हैं तो उनका नाम, इसका मतलब डिलीटेड में है। तो सबसे पहला काम तो जैसे मैंने कहा कि ASDDR लिस्ट में चेक कर लें कि उनको क्या कह के निकाल दिया गया है। अगर 27 अक्टूबर 2025 को उनका नाम था, अब अगर डिलीटेड आ रहा है तो इसमें देख लें क्या है, और फिर तरीका पहला तो फॉर्म 6 भरना ही चाहिए और फिर उसकी शिकायत लगा देंगे। तो हम लोग जांच करेंगे कि ये जानबूझ के किया, प्लान्ड वे में किया, या कोई लिपिक त्रुटि हुई या मानवीय त्रुटि हुई, तो इसमें एक्शन लिया जाएगा ऐसे केसेस। ये बताइए, मैम भाई कौन है? नहीं है। हेलो सर, सर एक मेरा सवाल है सर, सर मेरा एक सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। सर आपके BLOs जो हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट से आए हुए हैं, वो कहीं भी मुकम्मल किसी के घर में जा नहीं रहे हैं, ठीक, किसी एक जगह बैठ जाते हैं बूथ पे, और वो कहते हैं हम दूसरे डिपार्टमेंट से आए हैं, हमारे ऊपर जबरदस्ती ये काम डाल दिया गया है। सर उसका कोई समस्या का समाधान होगा? नहीं, ये बताना चाहूंगा कि BLOs ने, हम लोग भी फील्ड में गए हैं और BLOs ने काफी मेहनत की है, BLOs ने बहुत मेहनत की है। क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि वो मेहनत ज्यादा की है, तनाव में आ गए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे BLOs गए हैं फील्ड में और उन्होंने मेहनत की है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है, और सर का भी हमने बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने सभी सूचनाएं दी। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। अरे बैठ जाओ भैया। आदरणीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, आदरणीय सचिव सर, यहाँ पधारे हुए सारे मीडिया के साथी, हमारे साथी अमित जी और निर्वाचन विभाग से और कार्यालय से साथी अधिकारीगण, आप सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का सादर अभिवादन है। आप सभी अवगत हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में, जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में जारी है, आगामी 6 तारीख को आलेख प्रकाशन है। उस क्रम में हमारे बीच में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय मुखातिब हैं और वो आप मीडिया के साथियों को इस क्रम में संबोधित करेंगे। आप सभी से यहाँ पे सादर आग्रह है, आप लोग यहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त करेंगे, जो भी यहाँ से सूचनाएं प्राप्त करेंगे, वो अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अरविंद जी। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण, आज विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग पब्लिश कर रहे हैं और सारे 75 जनपदों में आज जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उनको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की एक प्रिंटेड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, CEO उत्तर प्रदेश का जो
पोर्टल है, वेब पोर्टल co.uttarpradesh.nic.in जो स्क्रीन पे है, इसको जैसे ही हम खोलते हैं, इस वेब पोर्टल पे जाते हैं तो पहला ये जो पॉपअप विंडो सामने आप देख रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पॉपअप विंडो आएगा जिसमें जो नीचे है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, उस पर क्लिक करके हम किसी जनपद की किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और हमारा 27 अक्टूबर 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, जिसमें 4 नवंबर 2025 से इसका जो पहला चरण था, जिसको एन्यूमरेशन फेज हम बोलते हैं, गणना चरण, वो प्रारंभ हुआ था। गणना चरण में क्या हुआ, सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ इसका SIR का, उस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी एग्जिस्टिंग एज ऑन दैट डेट, उसको फ्रीज कर दिया गया था और उसमें जितने भी मतदाता थे 15,44,30,092, उन सारे मतदाताओं का इंडिविजुअल एक का अलग से यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और 2-2 कॉपियों में, और BLO को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें 1 सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2,97,00,000 के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफी तेजी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया, इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयां समाप्त हो गई थी और हमारा 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन की तिथि थी। लेकिन साथ ही साथ इस जो हमारा फील्ड में जो वर्क चल रहा था, इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मध्य स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था, तो काफी ऐसे मध्य स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मध्य स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को हमने पब्लिश किया है। और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे जिनके साइन करके नहीं आए वो 18.70% है और उसका जो ब्रेकअप है किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए,
वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे, जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी, सो इसलिए एक मिनट, हम क्वेश्चन बाद में लेंगे, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ। सो मृतक मतदाता 46.23 लाख 46.23 लाख और परसेंटेज के टर्म्स में 2.99% या 2.99%। स्थानांतरित मतदाता जो अपने निवास स्थान से कहीं और शिफ्ट कर गए, वो घर छोड़ दिया जहां उन्होंने वोटर लिस्ट में जब अपना नाम दर्ज कराया था, जिस घर में थे, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए, या वो लापता या अनुपस्थित रहे या उनको फील्ड में बीएलओ को मिले नहीं, ऐसे 2.17 करोड़ मतदाता हैं, 2.17 करोड़। और अगर प्रतिशत में कहें तो 14.06 14.06%। और तीसरी श्रेणी है जो मतदाता सूची में एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत पाए गए, ऐसे 25.47 लाख 25.47 लाख वोटर्स थे, जो 1.65% है। सो कुल मिलाकर जो अनकलेक्टेबल था, जिनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया, वो 2.89 करोड़ या 18.70% 18.70% है। सो फाइनल हमारी जो आज फाइनल मतलब आज जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हो रही है पब्लिश, उसमें 12,55,56,025 मतदाता हैं। और इसमें हमारे सभी 75 जनपदों के जिला निर्वाचन अधिकारियों, 403 हमारी विधानसभाएं उनके निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, 2042 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और हमारे 1,62,486 बूथ जो थे संभाजन से पूर्व, उतने बूथ लेवल अधिकारियों ने वॉलंटियर्स के साथ इस काम को अंजाम दिया। तो बहुत बड़ी संख्या में ये जो हमारे पास मतदाताओं से संपर्क करके हम लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स को, साइंड एनेशन फॉर्म्स को कलेक्ट कर पाए। और इसमें राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स BLA, इनका भी सहयोग रहा। तो 5,76,611 बूथ लेवल एजेंट्स सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए और इनकी भी सहायता हमने ली। अब आज जब हम आलेख्य प्रकाशन कर रहे हैं, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश कर रहे हैं, तो उसके बाद 1 महीने की अवधि है जिसको हम दावा एवं आपत्ति अवधि बोलते हैं, क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस पीरियड। ये 6 जनवरी से, आज से दावा आपत्ति लोग दे सकते हैं, वो 6 फरवरी तक ये दावा आपत्ति का पीरियड रहेगा इस रिवीजन इंटेंसिव रिवीजन में। और साथ ही साथ 6 जनवरी से नोटिस चरण भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे मतदाता जिनका मैपिंग नहीं हुआ था, विगत प्रगाढ़ पुनरीक्षण की इलेक्टोरल रोल से, जो उत्तर प्रदेश में 2003 में हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में 2002 से लेकर 2006 तक था, तो उस इलेक्टोरल रोल से जिस भी मतदाता का गणना चरण में एन्यूमरेशन फॉर्म साइन होके मिला, उन्हीं के लिए मैपिंग का शब्द रेलेवेंट है। तो जब हमें फॉर्म मिला, उस फॉर्म में ही 2 कॉलम्स थे। एक में था कि यदि मतदाता का स्वयं का नाम विगत इंटेंसिव रिवीजन में रहा हो इलेक्टोरल रोल में, उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी रोल में, तो वो अपना विवरण दे रहा था। अगर उसका नाम स्वयं का नहीं था तो अपने माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी या नाना नानी में से दे रहा था। उसको हम मैपिंग बोलते हैं। जहां ऐसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसको हमने मैप बोला कि इलेक्टोरल मैप हो गया। तो हमारा लगभग 91% से अधिक मैपिंग उत्तर प्रदेश में हुई। सो मैपिंग की जब बात कर रहे हैं तो वो केवल ये जो 12,55,56,025 इन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में है। और हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज्यादा % अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे, जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और
और 1,04,00,000 के पास 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर देनी है। और 6 मार्च 2026 को हमारा अंतिम मतदाता सूची इस पूरे SIR की विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अंतिम मतदाता सूची फाइनल इलेक्टोरल रोल 6 मार्च 2026 को हम पब्लिश करेंगे। तो इसमें जैसे ही आज जैसे पब्लिश हुआ तो पहला कार्य हमने अभी राजनीतिक दलों के साथ भी जिले में बैठक की, राज्य स्तर पर भी आज कर रहे हैं। तो यही कह रहे हैं कि सबसे पहला काम हर वोटर का ये है कि इस पे क्लिक करके, और जब आप क्लिक करते हैं और अपना एपिक नंबर डालते हैं तो आपको बता देता है कि आपका नाम किस विधानसभा के किस बूथ संख्या के किस सीरियल नंबर पर है। तो सारे मतदाता उत्तर प्रदेश के इसको अवश्य चेक कर लें ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल को, और यदि उनका नाम है तो फिर उनको फॉर्म 6 नहीं भरना, और यदि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरना है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि सीओ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं जो पहला पॉपअप विंडो आता है उसमें फॉर्म 6 अवेलेबल है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और कुछ उसमें करेक्शन कराना है, फोटो सही नहीं है, नाम सही नहीं है, आयु सही नहीं है, पिता का नाम सही नहीं है, इसको करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भरते हैं हम लोग। एक और भी चीज के लिए फॉर्म 8 महत्वपूर्ण कार्य के लिए भरा जाता है, वो है शिफ्टिंग के लिए। ऐसा भी इस दौरान हुआ है कि कुछ लोगों ने शिफ्ट कर गए लेकिन उन्होंने BLO को संपर्क करके अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भर दिया इस आशा के साथ कि हम यहाँ से नए घर में अपना शिफ्ट करा लेंगे। तो उसके लिए फॉर्म 8 अवेलेबल है, उसको भर सकते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण है कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भी है जो भी हिंदी अंग्रेजी में दोनों अवेलेबल है, डाउनलोड करके उसे भर दें। और इसके साथ ये तो हमारा नेट पे है, डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। ECI नेट करके मोबाइल एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। उससे फोन से भी मतदाता इन फॉर्म्स को ले सकता है, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम दे सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहला कदम आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद ये हर वोटर के लिए है, हर 18 साल से ऊपर के उत्तर प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के लिए, कि अपना नाम चेक कर ले और अगर नाम नहीं है तो फॉर्म 6 भर दे। नाम है, कोई गलती है, कुछ करेक्शन कराना है तो फॉर्म 8 भर दे। नाम है लेकिन पोलिंग स्टेशन पुराने घर का दिख रहा है, उन्होंने फॉर्म भर दिया, अब कहीं और आ गए हैं तो फॉर्म 8 भर के शिफ्टिंग करा लें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए 1 महीने का समय है। तो इसमें हम सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जगह जगह कार्यकर्ता हैं कि इस मुहिम में 1 माह में हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग या जो भी एलिजिबल हैं वो अपना नाम उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में लेके आ जाएं। जैसा मैंने बताया कि दावा मतलब फॉर्म 6 नए मतदाताओं के लिए आवेदन होता है और फॉर्म 8 4 वजहों से भरा जा सकता है, जिसमें प्रविष्टियों में सुधार, करेक्शन ऑफ एंट्रीज, दूसरा है निवास स्थान परिवर्तन शिफ्टिंग के लिए, तीसरा है एपिक प्रतिस्थापन, एपिक रिप्लेसमेंट, अगर किसी का एपिक गुम जाता है तो उसमें भी फॉर्म 8 भर के इसको वापस हम एपिक अपना प्राप्त कर सकते हैं, और चौथा है PWD चिन्हांकन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का मार्किंग के लिए। इसका लाभ होता है जब इलेक्शन डे में कोई हेल्प चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी को, तो उन्हीं लोगों को हमें पहले से इस डेटाबेस से पता लगता है तो उनको हम लोग विशेष सुविधा उसमें दे सकते हैं। किसी का नाम कटवाना है, अगर हम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारे परिवार के किसी सदस्य का नाम गलती से आ गया, वो विदेश में रह रहा है बहुत समय से, वो दिल्ली में या मुंबई में रह रहा है लेकिन हमने फॉर्म भर के दे दिया था, या डेथ हो गई, तो फॉर्म 7 अवश्य इसको भर दें। फॉर्म 7 उस पोलिंग स्टेशन का कोई भी मतदाता भर सकता है। और फॉर्म 6A 6 क है विदेश में निवास करने वाले मतदाता द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने हेतु आवेदन। ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, विदेश में रह रहे हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली, तो सामान्य रूप से तो भारत में निवास नहीं कर रहे, बाहर कर रहे हैं 1-2 साल के लिए, लेकिन भारत के नागरिक हैं तो वो वोटर बन सकते हैं। उस पोलिंग स्टेशन में उनके पासपोर्ट में जो एड्रेस लिखा है उस लोकल एड्रेस के पोलिंग स्टेशन पे वो वोटर बन सकते हैं।
और ऐसे वोटर्स ऐसे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं, इन हार्ड कॉपी में भर के दिया भी जा सकता है। और इसमें एपिक नहीं मिलता है ऐसे वोटर को। वो अगर इलेक्शन के दौरान भारत में है तो अपने निवास स्थान वाले पोलिंग स्टेशन में जाके अपना पासपोर्ट ओरिजिनल में दिखा के उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए वोट डाल सकता है। इनके लिए फॉर्म 6A है। और आवेदन पत्र जैसे बताया कि इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन भरना है तो voters.eci.gov.in पे जाके ऑनलाइन भर सकते हैं। डाउनलोड की जरूरत नहीं, उसी पे एंट्री किया, उसी पे अपलोड किया डॉक्यूमेंट और उसको ऑनलाइन ही सबमिशन हो जाता है। और चाहे तो डाउनलोड करके फिजिकली भर के हमारे अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आप दे सकते हैं। और वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर है हर तहसील में, जहां एसडीएम बैठते हैं उनके एक वोटर रजिस्ट्रेशन सेंटर है, उस पर भी दे सकते हैं। और हमने इस दौरान जो गणना चरण के दौरान राजनीतिक दलों के साथ कई चरणों में बैठकें हुई। राज्य स्तर पर 3 बैठक हुई, जिला स्तर पर जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ हुई और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो एसडीएम स्तर के हमारे अधिकारी हैं उनके स्तर पे भी बैठकें हुई। कुल 1546 ऐसी बैठकें हमने राजनीतिक दलों के साथ इस गणना चरण में किया। और तो अब आज की तारीख में फॉर्म वो भर सकते हैं वो लोग जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के पूरे हो रहे हैं, यानी 1 जनवरी 2008 से पहले जिनका जन्म हुआ है, 1 जनवरी 2008 को जन्म हुआ है या उससे पहले जन्म हुआ है, उनका वोट नहीं बना हुआ है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म तो यूं 1 अक्टूबर 2026 को जो 18 साल का हो रहा है वो भी भर सकता है, लेकिन उसका नाम ये जो 6 मार्च की मतदाता सूची आएगी उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो लोग एलिजिबल हो रहे हैं 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को या 1 अक्टूबर को, लेकिन उनके फॉर्म वो अभी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। सो उनका फॉर्म पड़ा रहेगा, उसकी प्रोसेसिंग जब ये हमारी फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी उसके बाद, यानी जिनका 1 अप्रैल 2026 को हो रहा है उनका अप्रैल में वोट बन जाएगा, जिनका 1 जुलाई को जो 18 साल के हो रहा है उनका जुलाई महीने में बन जाएगा, और जिनका 1 अक्टूबर 2026 को जो 18 साल के हो रहे हैं वो अक्टूबर 2026 में वोटर बन जाएंगे। यानी आज की तारीख में 17.25 साल से ऊपर के लोग वोट फॉर्म 6 भर सकते हैं। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से ये जानकारी युवा छात्रों को मिले कि अगर वो 1 अक्टूबर 2026 को 18 साल के हो रहे हैं तो वो फॉर्म अभी भी भर सकते हैं। बट महत्वपूर्ण है कि अभी जो नाम आएगा हमारी 6 मार्च को वो केवल उन लोगों का आ पाएगा जिनका 1 जनवरी 2026 को 18 साल की आयु पूरी हो गई थी। गणना चरण में निर्देश ये थे, बीएलओस को हमने फॉर्म 6 भी दिया था कि आप जब घर जाए तो पुराना वोटर जिसका नाम ऑलरेडी है उसको तो एन्यूमरेशन फॉर्म दें, गणना चरण दें, हस्ताक्षर कराएं, लेकिन ऐसे लोग जिनका नाम नहीं है, नए वोटर बनना चाहते हैं, उनको फॉर्म 6 दें। तो ऐसे लगभग 15,78,483 हमारे फॉर्म 6 ऑलरेडी भर के हमारे सिस्टम में आ गए हैं। फिजिकली तो इससे ज्यादा आए हैं, क्योंकि पिछले जब से हम रैशनलाइजेशन कर रहे थे 8-9 दिनों में वो ऑनलाइन नहीं हो पाए, तो ये 15,78,483 वो हैं जो सिस्टम में ऑलरेडी आ गए हैं, लेकिन हमारा अंदाजा है इससे काफी ज्यादा पिछले 9-10 दिनों में हमारे ऑफिसर्स के पास फॉर्म 6 आ गए। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगला जो हमारा अब जो महीना है जनवरी 15,78,483 15,78,483 तो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। तो इनका सिर्फ हम फॉर्म भर पाए थे गणना चरण में, इनका नाम अब जुड़ेंगे। इनमें से जो लोग पात्र होंगे जिन्होंने घोषणा, इनमें से वो लोग भी हैं जिन्होंने घोषणा पत्र नहीं भरा, यानी 27 अक्टूबर 25 से पहले भरा था, तो बीएलओस के माध्यम से उन वोटर्स को बताया जाएगा कि आप इस घोषणा पत्र को भी भर दें, और एक दस्तावेजों की सूची है उसमें से कोई एक दस्तावेज दे दें। 11 दिसंबर को जब हमारा पहला समय हमें मिला था भारत निर्वाचन आयोग से और समय अवधि खत्म हो रही थी गणना चरण की, उस समय तक हमारा काम लगभग पूरा हो गया था। लेकिन जैसा मैंने बताया कि बड़ी संख्या में 2,97,00,000 के आसपास ऐसे नाम निकल के आ रहे थे, तो हमने 15 दिन का अतिरिक्त समय मांगा कि हम प्रयास करेंगे कि जो हमारे राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स हैं इनके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों को लगा के कि कोई बीएलओ की गलती से मिस ना हो गए हो नाम,
सो उसमें हमें काफ़ी BLS से हमने वोटर लिस्टें शेयर की थी, वो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे भी लगा दी थी कि कौन लोग, वोटर लिस्टें नहीं, कौन लोग अनुपस्थित, कौन लोग मृतक हैं, कौन लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हैं। ये सारी लिस्टें 12 दिसंबर से राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को रिसीव करा दी गई थी और जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पे विधानसभा वार, बूथ वार अपलोड कर दी गई थी, वो लोग देख सकते थे। तो इस जो 15 दिन का अतिरिक्त समय मिला, उसका लाभ ये मिला कि हमें लगभग 8-9 लाख अधिक वोटर, हम जो 11 दिसंबर को जितने एन्यूमरेशन फॉर्म आए थे उससे लगभग 8-9 लाख हम लोग अधिक वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म भर पाए। तो ये त्यातलं मुंबई नाव देशाची केवळ आर्थिक राजधानी नाही, महाराष्ट्राची राजधानी नाही, तर मुंबईची ओळख ही मुंबईकरांपासून येते आणि त्या मुंबईच्या ओळखीला देखील या आघाडीमध्ये महत्व दिलेलं आहे। या मुंबईची व्याख्या आपल्याला माहित असेल की इंडिया आघाडी आम्ही काढली होती, त्यावेळेला त्या इंडिया या शब्दाचा फोड करून आपल्याला सांगितले होते। तशाच पद्धतीनं मुंबई या शब्दाची आम्ही फोड त्या ठिकाणी केलेली आहे। मुंबई फॉर युनिटी, मोबिलिटी, ब्रदरहुड अँड इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट, एकता, गतिशीलता, बंधुभाव आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी मुंबई। ज्यावेळेला आम्ही एकता म्हणतो, आज ज्या पद्धतीनं विवादाचं चित्र निर्माण झालेलं आहे, प्रत्येक जातीच्या नावानं, धर्माच्या नावानं, भाषेच्या नावानं, प्रांताच्या नावानं, आज मुंबईला एक करण्याची आवश्यकता आहे, विवादांपासून विकासाकडे घेऊन जाण्याची आवश्यकता। आणि त्यामुळेच मुंबई फॉर युनिटी, मुंबईच्या संदर्भामध्ये बोलायचं तर एकता हा अतिशय महत्वाचा शब्द आहे। गतिशीलता, संपूर्ण देशामध्ये सगळ्यात गतिशील कुठलं शहर असेल तर ते मुंबई आहे। आणि या कालावधीमध्ये ज्या पद्धतीचं प्रशासन हे भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि ज्यांनी राज्य केलं त्यांच्या माध्यमातून मिळालं, मुंबई जवळपास ठप्प करण्याचं काम केलं आणि त्यामुळे पुन्हा गतिशील करायची आहे मुंबईला। आज ट्रॅफिकचा प्रचंड मोठा प्रश्न या ठिकाणी आहे आणि मुंबई जर चालली नाही तर देश चालणार नाही, हे देशाचं इंजिन आहे आणि त्यामुळे गतिशीलता हा अतिशय महत्वाचा शब्द आहे। मुंबई फॉर मोबिलिटी, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या मुंबईकरांना एकमेकांबद्दलची असलेली सहानुभूती, या मुंबईकरांचं जे अस्तित्व आहे ते एकमेकांशी असलेल्या संवेदनाने जोडलं जातं। तो कुठल्याही जातीचा, धर्माचा, प्रांताचा असू दे, इथं मुंबईमध्ये आल्यानंतर तो मुंबईकर होऊन जातो आणि त्यामुळेच मुंबई फॉर ब्रदरहुड, विकास हा बंधुभावाच्या माध्यमातून होऊ शकतो, द्वेष तिरस्काराच्या माध्यमातून होऊ शकत नाही। त्यामुळे मुंबईला जर पुन्हा आपल्याला आंतरराष्ट्रीय शहराचा दर्जा द्यायचा असेल तर बंधुभाव, संवेदना, एकमेकांबद्दलची आस्था, प्रेम असणं फार आवश्यक आहे। जसं भारत जोडो यात्रा ही राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली, काँग्रेस नेते राहुल गांधीजींच्या नेतृत्वाला निघाली होती भारत जोडण्याचा, तसंच मुंबई जोडण्याचा प्रयत्न हा मुंबई काँग्रेस आणि मुंबई विकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहे। आणि सगळ्यात महत्वाचा शेवटचा जो विषय आहे तो आहे इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंटचा आय, मुंबईचा आय। आज ज्या पद्धतीचा विकास जो चाललेला आहे, केवळ धनाढ्यांचा विकास होतोय, सर्वसामान्य गोरगरीब जे मुंबईकर आहेत त्यांच्याकडे लक्ष नाही। मध्ये अहवाल आला होता की मुंबईच्या 25 वॉर्डांना निधी देखील दिला गेला नव्हता किंवा कमी निधी पोहोचलेला आहे। मुंबईकरांना शौचालयाची आवश्यकता आहे, मुंबईकरांना त्या ठिकाणी फुटपाथची आवश्यकता आहे, मुंबईकरांना रुग्णालयांची आवश्यकता आहे, मुंबईकरांना शाळांची आवश्यकता आहे। त्यामुळे ही मुंबईची जी फोड आहे, इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट, सर्वसमावेशक, संवेदनशील आणि माणुसकी असलेला विकास, हे केवळ अदानी आला त्या ठिकाणी किंवा उद्योजकांचा विकास नाही, तर गोरगरिबांसहित सर्वांचा विकास। मुंबई ही केवळ पेडर रोड किंवा त्या ठिकाणी कप्परेटमध्ये नाही, तर मुंबई ही तुम्हाला धारावीमध्ये दिसते, मुंबई ही तुम्हाला घाटकोपरमध्ये दिसते, मुलुंडमध्ये दिसते, मुंबई ही तुम्हाला बेरामपाड्यामध्ये दिसते, सगळीकडे मुंबई आहे आणि त्या सगळ्यांचा विकास समान पातळीवर झाला पाहिजे, यासाठी ही मुंबई विकास आघाडी आम्ही स्थापन केलेली आहे। मी आता विनंती करतो की हा जो जाहीरनामा मिशन मुंबई आम्ही जो ठेवलेला आहे त्याच्या संदर्भात प्रकाश टाकण्याचं काम हे मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षाताई गायकवाड जी आपल्या समोर करतील।
सगळ्यांचे या ठिकाणी स्वागत करते आणि आपल्याला एक गोष्ट निश्चितपणे सांगू इच्छिते की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट यांच्या वतीने आज आम्ही मिशन मुंबई आपल्या सगळ्यांसमोर घेऊन आलेलो आहोत। ही पत्रकार परिषद या ठिकाणी घेण्यामागचं कारणच मुळात हे आहे की समोर मुंबई महानगरपालिकेची इमारत आहे। सातत्याने मी सांगते, जवळपास 3 वर्ष 9 महिने जे आहे त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नाहीत। आज मुंबई महानगरपालिकेचं जे इलेक्शन होत आहे ते पण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार होत आहे। त्यामुळे या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी यावे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जनतेची इच्छा असताना आपण बघत होतो की कशा तऱ्हेने इलेक्शन टाळता यावं यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू होते। पण हे इलेक्शन होत आहे आणि 15 तारखेला जे आहे ते मतदान होणार आहे, 16 तारखेला निकाल लागणार आहे आणि आम्ही आज आपल्या सगळ्यांसमोर जे आहे ते आमचं मिशन 2026 सादर करत आहोत, ज्याच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आम्ही सांगत आहोत की एकता, गतिशीलता, बंधुता आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी मुंबई हा मुद्दा घेऊन आम्ही आपल्या सगळ्यांसमोर आलेलो आहोत। याच्यामध्ये विविध गोष्टी आहेत, जसं मागे आपल्याला माहिती आहे की 1 तारखेला मी एक सांगितलं होतं की वर्षाची सुरुवात होते, त्यावेळी 6 गोष्टींचा आम्ही उल्लेख केला होता, ज्याच्यामधली मुंबई महानगरपालिकेच्या बंद पडलेल्या ज्या शाळा आहेत, मराठी शाळा, त्यांना सुरू करण्याबाबत, त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणे, तिथले असलेले वर्गखोल्या असतील, टॉयलेट असेल, पाण्याचे व्यवस्थापन असेल, या संदर्भामध्ये बोललो। बीएसटीच्या बाबतीमध्ये 6000 बसेसच्या संदर्भात बोललो आणि या व्यतिरिक्त आम्हाला हेल्थ कार्ड जे आहे ते युनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड जे आहे मुंबई महानगरपालिकेतून मिळालं पाहिजे, चांगलं आरोग्याचे व्यवस्थापन मिळालं पाहिजे, ही सुद्धा भूमिका आम्ही मांडली। त्याचबरोबर मुंबईकरांना मुबलक जे आहे ते पाणी पुरवठा व्हायला पाहिजे, ही सुद्धा आम्ही त्यावेळेला भूमिका मांडली। एक तुम्हाला सांगते मी, प्रत्येक गोष्ट आम्ही ज्या वेळेला जाहीरनाम्यातल्या गोष्टी डिक्लेअर केल्या, आपल्याला माहिती आहे की आम्ही परवा बीएसटीचा आमचा जाहीरनामा सांगितला, त्या जाहीरनामा आम्ही मुंबादेवीला जे आहे ते बीएसटीचं डेपो होतं त्याच्यासमोर केला। ज्या वेळेला वायू प्रदूषणाबद्दल आम्ही सातत्याने बोलत आहोत, कारण मुंबई आज अनहेल्दी पासून डेंजरस म्हणजे हजार्डस पर्यंत गेलेली आहे, धोकादायक पर्यंत झालेली परिस्थिती आहे मुंबईची। त्याचा ज्यावेळी आम्ही जाहीरनामा केला होता तो आम्ही नरिमन पॉइंटला केला होता आणि आज आम्ही सगळेजण हा जो जाहीरनामा मिशन मुंबईचा करतो, ज्याच्यामध्ये आम्ही बॉटॅनिकल गार्डन, आम्ही पाण्यासंदर्भात बोलतोय, घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात बोलतोय, या सगळ्या प्रश्नाच्या बाबतीत आपल्यासमोर आता आम्ही हा पूर्ण जाहीरनामा दिलेला आहे। त्यामुळे मला हीच या ठिकाणी सगळ्यांना सांगायचं आहे की या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही मुंबईकरांचा जे प्रश्न आहे, जो आवाज आहे, तो बुलंद करण्याचं काम आम्ही करत आहोत। मला या ठिकाणी सर्वांचे आभार मानायला पाहिजेत, सर्व उपस्थित नेत्यांचे मला आभार मानायला पाहिजेत की त्यांनी या ठिकाणी आज या जाहीरनाम्याला पूर्णपणे समर्थन दिलेलं आहे। सगळ्यांची चर्चा करून हा जाहीरनामा आम्ही बनवलेला आहे। आमचे सन्माननीय आमदार असलम शेखजी, सन्माननीय आमदार अमीन पटेलजी, कारण माझ्यानंतर अमीन पटेलजी बोलतील कारण ते या कॅम्पेन कमिटीचे जे आहे ते अध्यक्ष आहेत आणि नंतर मग असलम शेखजी आणि आदरणीय गवई साहेब, त्या ठिकाणी जे रासपाचे आहेत ते लोक सदस्य या ठिकाणी बोलतील। पण आज आम्ही मुंबईकरांचा आवाज सातत्याने उचलण्याचं काम केलेलं आहे। मी बघते की जिकडे तिकडे जे आहे ते दबाव यंत्र चालू आहे। मी मगाशी चर्चा करत होते की ज्या तऱ्हेने कुलाब्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की इलेक्शनच्या बाबतीमध्ये मोठी घटना घडली, त्या ठिकाणी फॉर्म भरायला लोकांना जाऊ नये म्हणून 3-3, 4-4 तास त्या ठिकाणी अध्यक्ष बसून होते आणि त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे स्टाफ त्या ठिकाणी बसून होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये आपण बघतोय की विविध विषयावर चर्चा चालू, त्याच्यामध्ये जास्त चर्चा ही धर्मवाद, जातीवाद, प्रांतवाद आणि भाषावादावरती सुरू आहे। आम्ही सातत्याने सांगतोय की आम्हाला विवाद नको, आम्हाला विकास हवा, आम्हाला विवाद नको, आम्हाला प्रगती हवी, आम्हाला विवाद नको, आम्हाला मुंबईचं मिशन पाहिजे आणि म्हणून मुंबईच्या विषयावरती आम्ही इलेक्शन सातत्याने लढत आहोत। जे मुंबईचे विषय ट्रॅफिक असेल, घनकचरा असेल, पाणी असेल, याचं नियोजन कसं करणार याबद्दल आम्ही सातत्याने बोलत आहोत। जे भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आम्ही मांडले त्याच्याबद्दल आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये काय कारवाई करणार आहोत या संदर्भात आम्ही आपल्याशी त्या ठिकाणी बोलण्याचं काम केलेलं आहे। त्यामुळे आज आम्ही हा जाहीरनामा मुंबईच्या जनतेला समर्पित करत आहोत। तुमचे प्रश्न, तुमचा आवाज आम्ही या ठिकाणी उचलण्याचं काम करणार आहोत आणि मुंबईकराच्या टॅक्स मधला पै न पै जो आहे तो मुंबईच्या जनतेवर खर्च व्हायला पाहिजे ही आम्ही अपेक्षा करतो। खाजगीकरणाला आम्ही विरोध करत आहोत। बीएसटी असेल, हॉस्पिटल असेल, शाळा असेल, याच्या खाजगीकरणाला मुंबई महानगरपालिकेच्या यंत्रणेला आम्ही विरोध करत आहोत। हे सुविधा म्हणजे मूलभूत सुविधा आरोग्याची असेल, मूलभूत सुविधा शिक्षणाची असेल, जसं मी सांगितलं की बाकीच्या बाबतीमध्ये असेल, या सगळ्या सुविधा ज्या आहेत त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दिल्या गेल्या पाहिजेत। मुंबईच्या लोकांना जे आहे ते, कारण मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी, जागतिक लेवलचं शहर, त्याला त्या तऱ्हेने विकसित केलं गेलं पाहिजे। सचिन सावंत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या मताशी मी सुद्धा सहमत आहे की मुंबई शहरामध्ये
2 मुंबई शहरं राहतात. एक मुंबई शहराचा त्यांनी उल्लेख केला, पण बाकीच्याही मुंबई शहराचा आपण जसं आम्हाला तुम्हाला मी घेऊन मिठी रिव्हरच्या ठिकाणी गेले होते, ज्या वेळेला आपण एक आरोपपत्र त्या ठिकाणी दाखवलं होतं आणि मी दाखवलं होतं की खरी मुंबईची परिस्थिती काय. आणि मला एक गोष्ट अजून सांगायला पाहिजे की मुंबईच्या विकासामध्ये काँग्रेसची भागीदारी काय हे मला वेगळं सांगायची गरज नाही. सी लिंक पासून ईस्टर्न आणि वेस्टर्न सबब, ईस्टर्न ग्रीन फ्लायओव्हर हे सगळे काँग्रेसच्या काळात झालेल्या गोष्टी आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की कोस्टल रोडची संकल्पना असेल किंवा अटल सेतूची संकल्पना असेल किंवा आपण जर आमचा 2014चा मॅनिफेस्टो बघितला तर मेट्रोची सुद्धा संकल्पना असेल, ही काँग्रेसच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी झालेली आहे. काँग्रेस पार्टी नेहमीच जे आहे ते विकासाच्या बरोबर राहिलेली आहे, जनमानसांच्या प्रश्नाच्या बरोबर राहिलेली आहे. आणि म्हणून आज मला या मॅनिफेस्टोच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या सगळ्यांसमोर मिशन मुंबई घेऊन येत आहोत आणि मला अपेक्षा आहे की मुंबईकर ह्याचं आमचं स्वागत करतील आणि याला प्रतिसाद देऊन आमच्याबरोबर उभे राहतील आणि मुंबईच्या लढाईमध्ये आवाज बुलंद करतील. धन्यवाद. देते ना आम्ही हिंदी में बोलते ना. मी विनंती करतो महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असलम शेखजींना आमदार अमीन पटेल जी आपल्याला संबोधित करतील. ते कॅम्पेन कमिटीचे अध्यक्ष आहेत ना. कॅम्पेन कमिटीचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण प्रचार यंत्रणा मुंबई विकास आघाडीची राबते, ते अमीन पटेलजी बोलतील. सर्वांचे हार्दिक स्वागत. मुंबई विकास आघाडी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट, मिशन मुंबई विकास आघाड़ी का जो मुद्दे हैं, वर्षा गायकवाड़ जी ने जो हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष है और सचिन सावंत जी ने आगे हमें बहुत डिटेल में रखा है, मगर हमने देखा है कि पिछले 25 सालों से जिन लोगों का महापौर था और उनके साथ में जिन लोगों का उप महापौर था, उन्होंने मुंबई को लूटने का काम किया, मुंबई को बर्बाद करने का काम किया है. आज बेसिक एमिनिटीज जो फंडामेंटल राइट है मुंबई कर का, जिसका मुंबई का टैक्स भरते हैं, उसके नाम पे कोई सुविधा न सामान्य आदमी को न गाड़ी चलाने वाले को मिलती है. कांग्रेस पार्टी और मिशन मुंबई ने जो मुंबई विकास आघाड़ी है, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है जो आने वाले दिनों में अमल में लाया जाएगा. उसके अंदर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है. आज मुंबई के अंदर कई इलाकों में एक गिलास साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता है. उसके लिए कम से कम 5000 मिलियन लीटर पानी डेली का सिक्योरिटी किया जाएगा ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके. हर घर में जो नल है उसके अंदर जल आ सके और लोगों को 24 घंटा पानी मिल सके, उसके लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा. दूसरा, जितनी भी मराठी स्कूल बंद हो गई है, हर मराठी स्कूल को फिर से शुरू किया जाएगा. हर क्लासरूम में कंप्यूटर हो गए. हर लैंग्वेज में जो बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है उसको उसकी मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा. उसके लिए स्कूल एजुकेशन के ऊपर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा. आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से मुंबई में प्रदूषण बढ़ गया है, हमने एक प्रदूषण के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया, आप सब लोग मौजूद थे. उसके बदले में इस सरकार ने हम सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करके केस बनाया है. मुंबई के अंदर साफ हवा नहीं देने वाली सरकार, जो लोग मुंबई के अंदर प्रदूषण हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती है. हमारा मकसद है कि मुंबई के अंदर जो आरोग्य ये प्रदूषण की वजह से गिरता जा रहा है, जो लंग्स की तकलीफें हो रही, छोटे छोटे बच्चों को क्लीन एजुकेशन देने का काम किया जाएगा. आज हेल्थ इतना महंगा हो गया है और मुंबई महानगर पालिका के अस्पतालों में और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दवाओं के नाम पे पर्ची दी जाती है बाहर से दवा लाने के लिए. हर अस्पताल जो मुंबई महानगर पालिका का होगा उसमें फ्री मेडिसिन दिया जाएगा. एक यूनिवर्सल फ्री हेल्थ कार्ड दिया जाएगा. मुंबई करों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा जिसके हेल्थ कार्ड को लेकर जाकर वो मुंबई महानगर पालिका में इलाज करा सकते हैं. ओपीडी सर्विस और डायग्नोसिस जो होता है वो होगा 24 घंटा. जो है सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन और एक्सरे मशीन बीएमसी की अस्पतालों में 24 घंटा सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन चलाई जाएंगे. जो हॉकर को लेके जो पॉलिसी है, आज जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो बंद है. हॉकिंग पॉलिसी कुछ नहीं है. आज नए हॉकिंग पॉलिसी बना करके
इस ट्रैफिक को कम किया जाएगा और हॉकरों को सही जगह दी जाएगी अपना सामान बेचने के लिए। पीपल सेंट्रिक ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी किया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका ने BST को बंद करने का काम किया है, प्राइवेटाइज करने का काम किया है, बिल्डरों को बेचने का काम किया है, डिपो को बेचा है, बसों को बंद किया है। आज मुंबई के अंदर 6000 से ज्यादा बस चलाने का हमारा कार्यक्रम है ताकि आम मुंबईकर बस के अंदर ट्रेवल कर सकता है। और आज जो प्राइवेट बसेस चल रही है जो 50, 100, 150, 200, 250 रुपया लेकर लोगों को ट्रेवल करवा रही, उनको बंद करके मुंबई महानगर पालिका की BST के बसों को चलाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर से भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा। जो क्लस्टर रिडेवलपमेंट का पॉलिसी है जो 4000 मीटर का है उसको कम करके 3000 मीटर का क्लस्टर पॉलिसी लाया जाएगा। 9 मीटर के जो रोड है, जो बड़े रोड है, उनके तुलना में छोटे रोडों को भी FSI दी जाएगी ताकि पुरानी जर्जर इमारत में जिसमें मुंबई का रहता है उनको अपने हक का मालकी का घर देने का काम आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस मुंबई मिशन है उसके अंदर किया जाएगा। मी आता विनंती करतो महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असलेले मुंबई विकास आघाडीचे मित्र पक्ष घटक पक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जवळी गटाचे प्रमुख मी राजेंद्र गवईजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करा। काँग्रेस पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वंचित बहुजन आघाडी, रासपा आणि कम्युनिस्ट पक्ष आम्ही सगळ्यांनी मिळून ही मुंबई विकास आघाडी स्थापन केलेली आहे। आणि आमचा उद्देश काय आम्ही यापूर्वी बाकीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, आदरणीय वर्षाताईंनी सांगितलं, अमितजींनी सांगितलं, सचिनजींनी सांगितलं, सगळ्यात महत्वाचं ब्रदरहूड हे डेव्हलप करणं। कारण की या शहरामध्ये सर्व धर्म समभावाचा विचार असतो, परंतु काही लोक हा विचार एकमेकांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, जो आम्हाला टाळायचा आहे। जसं ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या जातीचे लोक एकेका ठिकाणी राहतात, एका गावामध्ये हा अमुक पुरा, तसं या मुंबईमध्ये नसतं। बाहेरच्या प्रांताचे, बाहेरच्या समाजाचे अनेक लोक एकाच बिल्डिंगमध्ये प्रेमाने गुन्हा गोविंदाने राहतात। हे आम्हाला टिकवायचं आहे, ब्रदरहूड टिकवायचं आहे। बाकीचे जर BSTचा मुद्दा अमिनबाईंनी सांगितलाच आहे, स्वच्छ पाण्याचा मुद्दा सुद्धा सांगितलेला आहे। शाळेमध्ये सुविधा कशा असाव्या त्याबद्दल सुद्धा अमीनजी यांनी सांगितलं आहे, वर्षाताईंनी सांगितलं, सचिनजींनी सांगितलं आहे। मी स्वतः डॉक्टर आहे, MBBS आहे, त्वचारोग तज्ञमध्ये उच्च शिक्षित आहे। सोमया मेडिकलला मी प्राध्यापक होतो। जेव्हा एक पेशंट येतो, गरीब पेशंट येतो, तेव्हा त्याच्यावरती काय बीतते आणि त्याच्या परिवारावरती काय बीतते हे मी तेव्हा अनुभवलेलं आहे। तेव्हा युनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये गेल्या त्या हेल्थ कार्डमुळे आपल्याला योग्य सुविधा मिळू शकते, फुकट औषध मिळू शकते, CT स्कॅन लागलं तर CT स्कॅनची व्यवस्था होऊ शकेल, अल्ट्रासाऊंड लागलं तर त्याची व्यवस्था होऊ शकेल। अशा प्रकारच्या अनेक यामध्ये नमूद केलेले आहेत आणि ही महाविकास आघाडी जे आहे जे काय नमूद केलेलं आहे या जाहीरनाम्यामध्ये ते पूर्ण करून दाखवेल। जय भीम। एनी क्वेश्चन? काही प्रश्न असतील तर वर्षाताई आपल्याला उत्तर देतील। भाई आज थेट फुटपाथवरच ही अजेंडा जो आहे manifesto जो आहे जाहीरनामा तो करण्यात आलेला आहे, यामागे सुद्धा काही विशेष कारण आहे? बिलकुल आपण बघितलं असेल तर ही जागा बिलकुल मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या समोरची आहे आणि या ठिकाणी आम्ही मुंबई महानगरपालिकेमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये काय भूमिका घेऊन जाणार आहोत, या फुटपाथवरून त्या फुटपाथपर्यंत जाताना आमचा मार्ग काय असणार आहे हे या पुस्तकाच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आणि आमचं विजन हे सुस्पष्ट आहे, जसं आम्ही सांगतोय की त्याप्रमाणे आमचं विजन आहे एकता, गतिशीलता, बंधुता आणि सर्वसमावेशक विकास। हे आमचं विजन आम्ही घेऊन चालले, ज्याच्यामध्ये विविध जे मुद्दे आहेत त्याच्यामधले काही मुद्दे अमीन पटेल साहेबांनी सांगितले, काही मुद्दे सचिन सावंत साहेबांनी सांगितले, काही मुद्दे मी सांगितले। पण आमचा हा प्रयत्न राहणार आहे, कारण शेवटी ज्या जनमानसांसाठी किंवा मुंबईकरांसाठी हा आम्ही जाहीरनामा तयार केलेला आहे त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या समोर येऊन आम्ही करावा। कारण तुम्ही बघितलं असेल की BSTचा पण आम्ही BSTच्या डेपोच्या बाहेर केला, त्या ठिकाणी आम्ही प्रदूषणाचा केला तो आम्ही नरिमन पॉइंटला केला। आम्ही ह्या माध्यमातून एक सांगू इच्छितो की मुंबईकरांच्या प्रश्नासाठी
मुंबईचा महापौर असेल होणाऱ्या काळामध्ये त्याने जमिनी उतरून मुंबईच्या प्रश्नावरती काम करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मुंबईमध्ये आज प्रश्न काय, मुंबईमध्ये ट्रॅफिकचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये रस्त्याचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे. तर ज्या फुटपाथवर आपण बसलो किती ठिकाणी फुटपाथचा सुद्धा प्रश्न आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की गार्डन्स नाहीयेत, ग्रीन झोन नाहीयेत, त्याच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आरेमध्ये कत्तल झाली, इतर ठिकाणी झालेली आहे. आणि आज वायू प्रदूषण हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे बॉटॅनिकल गार्डन्स असतील, विविध व्यवस्थापन असेल, या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सांगत आहोत. त्यामुळे ही जागा ऐतिहासिक जागा आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीसमोर आम्ही बसलेलो आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये आमचे नगरसेवक आतमध्ये जाऊन त्या जाहीरनाम्यावरती काम करण्याचं काम करतील. यामागे काही कटकारस्थान आहे? नाही, हे तर मोठं षडयंत्र आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं, मगाशी सुद्धा मी एक चर्चा करत होते काही पत्रकारांशी वैयक्तिक, त्यामुळे त्यांना म्हटलं की 3-3 तास तर अध्यक्ष बसत असे विधानसभेचे त्या ठिकाणी आरोच्या समोर आणि ऑफिसमध्ये आपल्या स्टाफला घेऊन, आपल्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन आणि बाकीच्या त्या ठिकाणी गेलेल्या सगळ्या कॅन्डिडेटला 3 तास स्कुटनीच्या नावाखाली पेपर तपासणी चालली असेल आणि त्या आतमध्ये जाऊ शकलेले आहे कॅन्डिडेट आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी फॉर्म घेतला नसेल तर कसं चालणार? आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जे कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी आहेत ते किती दबावाखाली आहेत. म्हणजे तुमच्या घरामधले भाऊ वहिनी लढत असतील म्हणून तुम्ही लोकांवरती इतका दबाव निर्माण केला, तुमचे त्याचे व्हिडिओ सुद्धा आले. आज आम्ही बघतोय की तिथे लोकांना टोकन दिले गेले, लोकांनी पैसे सुद्धा भरले. मग असं असताना आपल्या सगळ्यांना माहिती, जितके इथे बसले ते सगळ्यांना, माझा राज्य निवडणूक आयोगाला त्या ठिकाणी प्रश्न आहे की जर टोकन आहे, पैसे दिले तर त्याचे फॉर्म का नाही घेतले? रात्री 11:30 पर्यंत आम्ही निवडणूक आयोगाला सांगत होतो, बरोबर ना मी पटेल साहेब, की आपण फॉर्म स्वीकारावा, पण फॉर्म स्वीकारले गेलेले नाही. बरोबर का साहेब? तुम्ही सुद्धा स्वतः फोन केला ना. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही स्कुटरीच्या वेळी काही पेपर समजा असतील तर बदलू काही शकतो, काही चेंज करू शकतो. असं असल्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी गेलो. सकाळी 9:30ला पण विधानसभेचे अध्यक्ष तिथे, म्हणजे रात्रभर तुम्ही अख्खा दिवस बसलात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित आहे, जेव्हा की त्यांच्या कुलाबा मतदारसंघाची किती वाजता हिअरिंग होती. म्हणजे तुम्ही काय त्या ठिकाणी करत होता? बसून दबाव टाकत होता आणि निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार आहे सुमोटो ऍक्शन घेण्याचा. माझी अपेक्षा आहे, आता आम्ही ऐकलं की कोणी लोक न्यायालयात जातात, पण माझं म्हणणं आहे की राज्य निवडणूक आयोगाने दिनेश वाघमारे साहेबांनी स्वतःहून जे आहे देशाच्या संविधानाच्या माध्यमातून ते बसलेले आहेत, त्यांनी स्वतःहून हा निर्णय घेतला पाहिजे सुमोटो आणि अशा गोष्टीवरती कारवाई केली गेली पाहिजे. ज्या तऱ्हेने व्हिडिओ आले, पण व्हिडिओ न करता पण खूप लोकांना त्या ठिकाणी त्रास झालेला आहे. लोकांना फॉर्म भरायला अडवण्याचं काम त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आज संपूर्ण मुंबईमध्ये आपण पाहतोय की बॅनर पोस्टर्स लागलेले आहेत महायुतीचे. शिवसेना नाही, आमचा जाहीरनामा हा आम्ही लोकांमधून विचार करून घेतलेला आहे. याच्यावरती एक कमिटी बसून कमिटीने पूर्ण अभ्यास आणलेला आहे. याच्यामध्ये सगळ्या पक्षांचे सुद्धा त्या ठिकाणी विचार घेऊन आम्ही आलेलो आहोत आणि सातत्याने आम्ही मुंबईकरांच्या मुद्द्यावरती लढत आहोत आणि मुंबईला पुढे कसं घेऊन जाता येईल, मुंबईला कसं विजन देता येईल, या दृष्टिकोनातून मुंबई विजन आम्ही तुमच्या समोर मिशन म्हणून घेऊन आलेलो आहोत. भाजप आणि शिवसेनेची संपूर्ण मुंबईत बॅनर पोस्टर्स पाहायला मिळतात. बस स्टॉप असू द्या किंवा मोठमोठे होर्डिंग लागलेत आणि मुंबईचा विकास महायुतीच करणार असा दावा करण्यात आला. या दाव्यामध्ये किती तथ्य नाही, आता किती वर्षापासून त्यांच्याच हातात आहेत. जसं यांनी सांगितलं, जेव्हा महापौर होते तेव्हा उपमहापौर कोणाचे होते, जेव्हा स्टँडिंग एकाकडे होती तेव्हा इम्प्रुव्हमेंट कोणाकडे होती, आणि आता तर जवळपास 4 वर्ष झाले सरकार त्यांचंच आहे ना, महायुतीचं. चालवतंय कोण? मुंबई महानगरपालिका आयुक्त चालवतात. आयुक्त पदाधिकारी आहेत, प्रशासकीय अधिकारी आहेत, पण करतंय काम कोण? सर्वांना माहिती आहे. या फायली सगळ्या मंत्रालयातून साईन होत आहेत आणि मंत्रालयातून निर्णय होत आहेत. मी परवा बीएसटीचं उदाहरण दिलं, त्याच्या आधी मी किती उदाहरणं दिली जे फायली मंत्रालयातून होतात. सगळे टेंडर, पाण्याच्या लाईनीचं काय, पाईपला कुठला मटेरियल वापरलं गेलं पाहिजे ते 2च फॅक्टरी देऊ शकतात, 2च कंपनी देऊ शकतात. त्याआधी पण बदललं जातं. अजून एक आहे काय म्हणतात कन्सल्टंट, एक नवीन कन्सल्टंट एक आलेले आहे बीएमसी मध्ये. मला कळत नाही की बीएमसी मध्ये इतके इंजिनियर आहेत, इतके इंजिनियर बीएमसी मध्ये आहेत, मग कन्सल्टंटची तुम्हाला बाहेरच्या काय जरुरी पडते? आणि ते कन्सल्टंट सांगणार इथून मटेरियल घ्या, याच कंपनीचं घ्या, याच पॅकेटचं घ्या. हे खूप मोठा भ्रष्टाचार या मागचा आहे. आता आम्ही यांनी आता सत्तेची आली, त्यांना मस्ती आहे माहितीच आहे सर्वांना. इतकी मस्ती आली आहे, इतका दबाव यांचा चाललाय सत्तेची मस्ती, तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आम्ही बिनविरोध, म्हणजे मी महाराष्ट्राबद्दल सातत्याने बोलते की सकाळी महिलांना पोलीस संरक्षणामध्ये जावं लागतं. तर म्हणून सत्तेची आली आहे मस्ती, म्हणून मुंबईकरांना नको आता भाजप आणि महायुती. त्यामुळे आमचं म्हणणं असं आहे की यावेळेला मुंबईच्या प्रश्नावर इलेक्शन व्हायला पाहिजे. जात, धर्म, भाषा, प्रांतच्या पलीकडे जाऊन
विवाद न करता विकासावर मिशनवरती बोला. मुंबईला कसं घेऊन जाणार त्याच्यावर चर्चा करा. पण यामध्ये नितेश राणे यांचं वक्तव्य होतं, हिरव्या सापांची वळवळ कुठे होऊ देऊ नका, भाजपच केवळ. मी तेच सांगते ना, ह्याच्यावरतीच आपण चर्चा करणार. कारण 4 वर्षामध्ये त्यांनी जो भ्रष्टाचार केलाय, मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवीमधले 12,000 कोटीची तूट केलेली आहे. बीएसटी 2,000 कोटीच्या तोट्यामध्ये सगळ्या यंत्रणाचं खाजगीकरण चाललंय, खच्चीकरण चाललंय. त्याच्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही, सुविधांबद्दल त्यांना बोलायचं नाही, मुंबईच्या रस्त्याची काय अवस्था आहे, मुंबईच्या ट्रॅफिकची काय अवस्था आहे याच्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही, देवणाची काय अवस्था आहे, मिठी रिव्हर कोणाला दिली त्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही, मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या जमिनी कोणाला देण्याचं काम चाललंय त्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही. हे प्रश्न त्यांना बोलायचे नाहीत. त्यांना सातत्याने धार्मिक राजकारण करायचं आणि त्या विषयावर इलेक्शन घेऊन जायची त्यांची भूमिका असते. पण आम्ही मुंबईकरांचा आवाज बनणार आहोत. कारण मुंबईकरांना ज्यावेळी मुंबईत निघतात त्यावेळी मुंबईकरांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, आता यांना विचारा, तुम्ही पण खूप लोक येता, किती ट्रॅफिकचा त्रास आहे मुंबईकरांना, परिवहनाची व्यवस्था पण नाही, सार्वजनिक परिवहन तुम्ही बंद करण्याच्या मागे लागलेला आहात आणि प्रायव्हेट गोष्टींना प्रोत्साहन देता, हे बरोबर नाही असं आमचं म्हणणं आहे. नाही, वंचित आघाडीचे मला स्वतःचा त्यांचा मेसेज होता बाळासाहेबांचा, आणि बाळासाहेबांनी सांगितलेलं आहे की ते आज त्यांची कुठेतरी पूर्वी कमिटमेंट असल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. पण त्यांनी मला सांगितलंय की वर्षा तू कर, आणि हा ज्यावेळी जाहीरनामा केलेला आहे याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेले सगळे मुद्दे जे आहेत ते आम्ही त्यामध्ये घेतलेले आहेत. त्यांच्यामुळे विचारून त्यांच्याशी परवानगी घेऊनच आम्ही हा जाहीरनामा केलेला आहे. मला एक अजून गोष्ट बोलायची की विलासरावांबद्दल मी काल एक स्टेटमेंट ऐकलं. असं आहे की विलासराव देशमुख साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. ज्यावेळी आम्ही पहिल्यांदा निवडून आलो त्यावेळी विलासराव देशमुख साहेबांच्या अंडर आम्हाला, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली होती. काल मी रवींद्र चव्हाणांचं एक स्टेटमेंट ऐकलं की ते विलासराव आता काय बोलत होते, नाव मिटून जाईल आणि ते नाव मिटून जाईल, विस्मरणात जातील असं काय ते बोलले. मला त्यांना एक गोष्ट प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्हाला माहिती काय म्हणणार आहे. याचं कारण असं की विलासराव हे एक उमदा नेतृत्व होतं, अजात शत्रू होते. ते विरोधकांशी पण मैत्रीपूर्ण आणि सौजन्यपूर्ण संबंधाचं नाव जर कोणी उदाहरण राज्याचं मुख्यमंत्री म्हणून बघितलं जाईल तर ते नाव विलासराव देशमुख असेल. आजही मी तुम्हाला सांगते, कोणत्याही अधिकाऱ्यांना तुम्ही भेटा, आजही लोक विलासरावांची आठवण करतात. कारण त्यांची कामाची शैली, बोलण्याची पद्धत, इथे पत्रकार सुद्धा आहेत. आज पत्रकारांना सुद्धा माहिती आहे की एखादा छापायचा म्हटला फोटो की एखादी न्यूज छापायची म्हटली की परवानगी घ्यावी लागते. एखादी निगेटिव्ह खबर म्हणजे नकारात्मक गोष्ट छापली की कसा त्रास होतो. पण विलासराव एवढ्या उमद्याचे होते की त्या दिवशी त्या व्यक्तीला बोलून सांगायचे, अरे काय सांग मला, असा काय म्हणतो लोकांचा राजा, लोकांच्या मनामधला. ज्यावेळी ते वारले त्यावेळी मी लातूरला गेलो होतो. घराघरातली चूल बंद होती, घराघरातली चूल. त्यांना लोक विसरतील. आपल्या घरातला सदस्य गेल्यासारखं त्यांच्याबद्दल त्या ठिकाणी शोकाकुळ वातावरण होतं. आणि म्हणून अशा तऱ्हेने वक्तृत्व करणं ही मला वाटतं आपल्या स्वतःच्या मानसिकतेची दिवाळखोरीचं उदाहरण रवींद्र चव्हाण साहेबांनी दिलेलं आहे. बिलकुल माफी मागावी. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित शहा यांनी अस्लम शेख यांच्या नावाचा उल्लेख केलाय की जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते तेव्हा तुम्ही त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री होता. एका मुस्लिम उमेदवाराला त्यांनी मंत्री केलं, त्यांनी कुठेतरी आक्षेप घेतला अमित शहा यांनी की हे कितपत योग्य आहे. हे असं आहे की भारतीय जनता पार्टीची जेव्हा सरकार होती, देशाचे राष्ट्रपती पण JP अब्दुल कलामला करण्यात आले. आणि अमित साटमचं जर बघायला गेलं तर मला वाटतं की त्यांचे जर आधीचे काय त्या व्हिडिओ दाखवलं तर चांगल्या पद्धतीने आमच्या धर्माचा कलमा कसा असतो, टोपी कशी घालता येतं, हे सगळं मतं मागताना त्यांनी सगळं प्रयोग केलेले आहे. तर कमीत कमी या मुंबईमध्ये काँग्रेस पक्ष फक्त यावर आम्ही निवडणुका लढतोय, कोण हिरवा बोलतोय, कोण पिलवा बोलतोय, कोण काय बोलतोय त्याच्यावरती जायचंच नाही. सध्या परिस्थिती अशी की मालाडवरून मला इथे यायला 2 तास लागले. त्या संदर्भात साठर काय बोलतील का, त्यांच्या विभागातले 100 लोक महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये ऍडमिट आहे, लहान मुलांपासून मोठ्या. जाऊन तुम्ही तिकडे जे आहे तर त्यांचं रुग्णालय मोठा, तिकडे जाऊन तुम्ही तपासणी करा. 100 त्याच्या संदर्भात ते काय बोलतील का. आणि गेल्या 3 महिन्यामध्ये रोड ऍक्सिडेंट त्यांच्या मतदारसंघामध्ये 5 झाले, त्याच्या संदर्भात काय बोलतील का. मुंबईच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबईच्या प्रगतीबद्दल मुंबईला तुम्ही काय देणार आहे ते काही शब्द नाही. पहिल्या दिवशीपासून खान, पठाण, शेलार, शिंदे, शेख हे सगळं बोगस काम चालू आहे. मुंबईकरांनी कमीत कमी जे आहे ना काहीतरी न्यूयॉर्क पासून शिकला पाहिजे की सगळं जे फालतू गोष्ट त्या टायमाला ट्रम्प करत होतं ना सगळं बाहेर करून त्यांनी एक चांगला तिकडे मेयरने बोललं. हिंदीमध्ये वाटत नाही का की विकासाचा मुद्दा सोडून महापौर कोणत्या धर्माचा होणार, नेते कोणत्या धर्माचे आहेत याच्यावरती टीका भाजपकडे वेगळा
पॉझिटिव्ह सेट केला काँग्रेस भूमिका घेतली विवाद नको विकास हवा. ते आम्ही पहिल्यापासूनच बोलतोय की विवाद नको विकास हवा आणि मुंबईला समजणारा महापौर हवे. कुठल्या जातीचा कुठल्या धर्माचा कुठल्या भाषेचा हे सगळं नको. हे जे पोल्युशन काढू शकतोय हे जे ट्रॅफिक काढू शकतोय या मुंबईमध्ये हॉकर्स पॉलिसी जी लागू करू शकतोय फुटपाथ चांगला करू देऊ शकतोय. महानगरपालिका एका मराठी शब्दाच्या संदर्भात मराठी भाषेवरती तुम्ही लोकांना मारता. 6 वर्ष झाली शिक्षकांना मराठी एनजीओला देण्यात आहे. प्रायव्हेट शाळा तुम्ही टॅक्स पेअरचे पैशातून मानता आणि तुम्ही प्रायव्हेट एनजीओ जे तुमच्या पक्षामध्ये जोडले त्यांना देण्याचं काम करत आहेत. त्यांच्याकडून भाडा नाही घेत आहेत आणि ते शाळाने ते लोकांकडून पैसे कमवत आहेत. म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेचं नस निघून गेलेलं आहे. अशी परिस्थिती येथे मुख्यालयामध्ये झालेली आहे. तर मुंबईला आणखी तुम्ही कुठे नेणार? दुबाई मतदार रोखण्याचं हे जबाबदारी इलेक्शन कमिशनची आहे. त्यांनी हे बघितलं पाहिजे आणि हे काम जे आहे ते करतील व्यवस्थित. आणि दुबार मतदारसंघाचे दुबारचे नावं जे आलेले आहेत त्या संदर्भात कितीदा तुम्ही बोलणार त्याच्यावरती कारवाई करा. ज्यांची नावं डबल आहे त्यांना काढून घ्या. आम्ही कुठे आक्षेप घेतो? देवेंद्र फडणवीस आधी म्हणायचे की विरोधक ईव्हीएम वर बोलतात. आता त्यांनी मुद्दा सरकवलेला आता ते बिनविरोधवर बोलायला लागले. बिनविरोधची परिस्थिती का अशी झाली? का लोकांचं नॉमिनेशन तुम्ही घेतलं नाही? का लोकांवरती दबाव आणला? किती पोलिसांचा उपयोग त्यामध्ये करण्यात आला आहे? किती एजन्सीचा उपयोग त्याच्यात करण्यात आलेला आहे? कमीत कमी थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडियाने पण घेतली पाहिजे. हा चौथा स्तंभ आहे. का त्यांचा फॉर्म घेऊ शकले नाही? का इलेक्शन कमिशनला तुम्ही विचारत नाही की तिथपर्यंत पोहोचल्यानंतर का घेऊ शकत नाही? सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जे निवडणुका लढायचं आहे कोणाचाही फॉर्म रद्द नाही झाला पाहिजे ही जबाबदारी इलेक्शन कमिशनची असते. त्याच्याबद्दल तुम्ही त्यांना जाऊन विचारा की हे तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनचं पालन का नाही केलं? हिंदी I think we should talk on the manifesto. Let's talk only about what is going to happen for Mumbai, what is going to be the process for Mumbai, what best any party is going to give for Mumbai. I think so. We are just diluting our vision and what we are supposed to do for Mumbai. देखिए हमारे जो मुद्दे हैं वो मुंबई शहर के लोगों से पूछ के बनाए गए और हम खुद मुंबई शहर में रहते हैं. सबसे बड़ी जो मुंबई की समस्या है वो ट्रैफिक है. हर आदमी ट्रैफिक में इतना उलझा हुआ है. यानी अगर एक कोने से दूसरे कोने दहीसर से अगर किसी को चर्चगेट में आना है तो 2.5 घंटे से नीचे नहीं लगता है. यानी आप दिल्ली चले जाओ यहाँ से उतनी समस्या है. फुटपाथ के ऊपर कोई चल नहीं सकता इस मुंबई शहर के अंदर. या तो हॉकर्स है या तो फुटपाथ जो है खराब हुए पड़े. हॉकर्स के संदर्भ में पूरे मुंबई में जो है हॉकर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर फाइन मारी जा रही है. आमदार लोग भारतीय जनता पार्टी के उनको मारने का काम कर रहे हैं. तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से मुंबई पॉलिसी के हिसाब से उनको बिठाना चाहिए. आप देखिए कि पोल्यूशन का क्या है. पोल्यूशन के संदर्भ में अभी अमित पटेल जी ने बताया कि हमने उनका विरोध किया. हमने कहा कि पोल्यूशन किस तरीके से रुकना चाहिए. हमारा तो छोड़िए, हाईकोर्ट ने बोलने के बाद भी कमिश्नर जो है उसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई कर नहीं पाए. आज भी जो हमारा मुंबई का जो पोल्यूशन है इस देश के अंदर 1 नंबर के ऊपर मुंबई का पोल्यूशन है. आज भी महिला के संदर्भ में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर महानगर पालिका की स्कूल जहाँ पे करीबन 4-5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, या तो उनके बाजू में पान पट्टी की दुकान है या वो जगह इंक्रोच है. बच्चे सही तरीके से घर से निकल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते. ये परिस्थिति है. मुंबई में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आज 40-40, 50-50 साल से जो सीवर लाइन मुंबई में डाली गई है उसके बाजू में जो है पानी का पाइपलाइन गया हुआ है. आज सीवर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो पीने का है कंटेमिनेशन हो रहा है. उसके बारे में जो है हमारा ये सारा मुद्दा है. ये सारे मुद्दे आज मुंबई की जरूरत है. इस पे चलेंगे तो मुंबई आगे बढ़ेगा. फिर एक बार कहता हूँ मीडिया से, ये जो फालतू बातें करते हैं चाहे मंत्री हो चाहे भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का जो भी बड़ा नेता हो, उनको आप बिल्कुल ये पूछे कि मुंबई शहर के जो मूल मुद्दे है उस पर आप बात करिए, बाकी बातें आप मत करिए. शब्द ठाकरेंचा 30 वर्ष होता ना आज पहा. चला रविंद्र चौहान के स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया जो उन्होंने इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है कि रविंद्र चौहान 2 स्टेटमेंट दे चुके हैं. एक अजीत पवार पर, विलासराव देशमुख जी पर. अजीत पवार ने इससे जब ये सवाल पूछा गया उन्होंने कहा नो कमेंट. क्या अभी अजीत दादा डर चुके हैं? जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट आ रहा है बीजेपी के खिलाफ उनकी सहयोगी पार्टियां बोल भी नहीं रही है, बाकी लोग भी कोई नहीं बोल रहा है. नहीं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है सबको पता है.
क्योंकि सेंटर में जो है वो सबसे बड़ा उनका पावर है, और फिर बाद में बहुत सारी चीज़ों की वजह से जिस कारण वो वहाँ पे सब लोग गए हैं, वो कारण क्या है आप सबको पता है। वहाँ पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, और बिल्कुल जो है हाँ, और जैसा उनके ऊपर बोला था, मैं तो अपेक्षा था कि पीसिंग एंड पीसिंग, किसने बोला था ये मुझे मालूम बताने की जरूरत है। देश के प्राइम मिनिस्टर ने 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की थी, लेकिन 70,000 घोटाले के बाद क्या हुआ, हम सब पूरे देश में देख रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन आई है, जो भाजपा में जाते हैं फिर वो स्वच्छ हो जाते हैं। तो जो गए हैं वो उनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर पाएंगे। आज भाजपा की जो राजनीति, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो मस्ती आई है कि आप 3-3 घंटा आरओ के सामने बैठे अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और आप सभी को लेके बैठे और बाकी कैंडिडेट बाहर खड़े। तो ऐसा होता था क्या कभी? ये जो मस्ती आई है कि ये जो बिन विरोध के नाम पे सब चल रहा है, या हम जो करेंगे वो ही सही है, ये अलग चर्चा चल रही है, वो सही नहीं है। जैसा उन्होंने विलासराव देशमुख जी के बारे में कहा वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विलासराव देशमुख जी के अंडर हमने सबने काम किया है। जब पहली बार मैं विधायक बनी तो विलासराव देशमुख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक उम्दा मुख्यमंत्री, एक अजात शत्रु मुख्यमंत्री। आप विरोधी पक्ष के लोगों को भी पूछिए किस तरह से उनको जो है उनके साथ बर्ताव हुआ करता था, किस तरह से उनसे बातचीत थी। एक हृदय उनको सब लोग कहते थे, और जब जिस दिन वो मरे उस दिन हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पूरे दुख की लहर थी। लातूर के घर घर में उस दिन खाना नहीं बना था, क्योंकि उनको लगा था हमारे कुटुंब का एक सदस्य गुजरा है। तो जिनके प्रति लोगों की इतनी संवेदना है, क्या लोग उन्हें भूल पाएंगे? लोग कभी नहीं भूलते, लोग याद रखते हैं। रविंद्र चौहान जी का तो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि वो थाना, और उसमें क्या हो रहा है उनका, और क्या हो रहा है उनके। मैं समझ, एक तो मुझे ये समझ में भी नहीं आता कि राज्य में सब लोग तीनों साथ में है, इलेक्शन में एक अलग कैसे हो गए। तो राजीव दादा ने राजीनामा भी नहीं दिया है, तो एक जगह पे शिंदे और भाजपा लड़ रही है, और एक जगह पे पवार के ग्रुप से लोग लड़ रहे हैं, जबकि सत्ता में सब एक साथ, और जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं उनकी बेटी बैठती सत्ताधारी पक्ष के साइड में। तो ये कैसी राजनीति हुई भाई साहब? सत्ताधारी के बीच में रहो, सत्ताधारी की तरफ फंड लो। बार बार मैं कह रही हूँ कि मुंबई महानगर पालिका के सामने बैठने का उद्देश्य भी हमारा ये है कि जिस तरह से पैसा गया मुंबई महानगर पालिका 99% रुपया किसको गया? सत्ताधारी पक्ष को गया। जो लोग पार्टी में ले गए, मेरा मुख्यमंत्री महोदय से कहना है, बार बार कहते मैं पारदर्शक कारभार की बात करता हूँ, बार बार कहते हैं क्या मैं एकदम स्वच्छ कारभार करूंगा, दिख तो नहीं रहा है। जिनको पैसा दिया है जमीन पे काम हुआ है कि नहीं मालूम किया आपने? छोड़ा बोला पैसा नहीं दिया आपने। 1500 करोड़ रुपया गया है, तो किधर गया वो 1500 करोड़ रुपया 4 साल का, बताइए। और किसको दिया है? 99% वो पैसा किसके अकाउंट में गया है? तो सत्ताधारी पक्ष में जो आए हैं ये सत्ताधारी पक्ष से है। विरोधक को क्या दिया आपने? वो विरोधक का सत्ताधारी पक्ष का सवाल नहीं, वो मुंबई का पैसा है, मुंबई करके विकास में खर्चा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धन्यवाद। त्यातलं मुंबई नाव देशाची केवळ आर्थिक राजधानी नाही, महाराष्ट्राची राजधानी नाही, तर मुंबईची ओळख ही मुंबईकरांपासून येते, आणि त्या मुंबईच्या ओळखीला देखील या आघाडीमध्ये महत्व दिलेलं आहे। या मुंबईची व्याख्या आपल्याला माहित असेल की इंडिया आघाडी आम्ही काढली होती, त्यावेळेला त्या इंडिया या शब्दाचा फोड करून आपल्याला सांगितलं होतं। तशाच पद्धतीनं मुंबई या शब्दाची आम्ही फोड त्या ठिकाणी केलेली आहे। मुंबई फॉर युनिटी, मोबिलिटी, ब्रदरहुड अँड इन्क्लुसिव्ह डेव्हलपमेंट, एकता, गतिशीलता, बंधुभाव आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी मुंबई। ज्यावेळेला आम्ही एकता म्हणतो, आज ज्या पद्धतीनं विवादाचं चित्र निर्माण झालेलं आहे, प्रत्येक जातीच्या नावानं, धर्माच्या नावानं, भाषेच्या नावानं, प्रांताच्या नावानं, आज मुंबईला एक करण्याची आवश्यकता आहे, विवादांपासून विकासाकडे घेऊन जाण्याची आवश्यकता। आणि त्यामुळेच मुंबई फॉर युनिटी, मुंबईच्या संदर्भामध्ये बोलायचं असतं, एकता हा अतिशय महत्वाचा शब्द आहे। गतिशीलता,
संपूर्ण देशामध्ये सगळ्यात गतिशील कुठलं शहर असेल तर ते मुंबई आहे. आणि या कालावधीमध्ये ज्या पद्धतीचं प्रशासन हे भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि ज्यांनी राज्य केलं त्यांच्या माध्यमातून मिळालं. मुंबई जवळपास ठप्प करण्याचं काम केलेलं आणि त्यामुळे पुन्हा गतिशील करायची आहे मुंबईला. आज ट्रॅफिकचा प्रचंड मोठा प्रश्न या ठिकाणी आहे आणि मुंबई जर चालली नाही तर देश चालणार नाही. हे देशाचं इंजिन आहे आणि त्यामुळे गतिशीलता अतिशय महत्वाचा शब्द आहे. मुंबई फॉर मोबिलिटी. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या मुंबईकरांना एकमेकांबद्दलची असलेली सहानुभूती, या मुंबईकरांचं जे अस्तित्व आहे ते एकमेकांशी असलेल्या संवेदनाने जोडलं जातं. तो कुठल्याही जातीचा, धर्माचा, प्रांताचा असू दे, इथं मुंबईमध्ये आल्यानंतर तो मुंबईकर होऊन जातो आणि त्यामुळेच मुंबई फॉर ब्रदरहूड. विकास हा बंधुभावाच्या माध्यमातूनच होऊ शकतो, द्वेष तिरस्काराच्या माध्यमातून होऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईला जर पुन्हा आपल्याला आंतरराष्ट्रीय शहराचा दर्जा द्यायचा असेल तर बंधुभाव, संवेदना, एकमेकांबद्दलची आस्था, प्रेम असणं फार आवश्यक आहे. जसं भारत जोडो यात्रा ही राहुलजींच्या नेतृत्वाखाली, काँग्रेस नेते राहुल गांधीजींच्या नेतृत्वाला निघाली होती भारत जोडण्याचा, तसंच मुंबई जोडण्याचा प्रयत्न हा मुंबई काँग्रेस आणि मुंबई विकास आघाडीच्या माध्यमातून आम्ही करणार आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचा शेवटचा जो विषय आहे तो आहे इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंटचा आय, मुंबईचा आय. आज ज्या पद्धतीचा विकास जो चाललेला आहे केवळ धनाढ्यांचा विकास होतोय. सर्वसामान्य गोरगरीब जे मुंबईकर आहेत त्यांच्याकडे लक्ष नाही. मध्ये अहवाल आला होता की मुंबईच्या 25 वॉर्डांना निधी देखील दिला गेला नव्हता किंवा कमी निधी पोहोचलेला आहे. मुंबईकरांना शौचालयाची आवश्यकता आहे, मुंबईकरांना त्या ठिकाणी फुटपाथची आवश्यकता आहे, मुंबईकरांना रुग्णालयांची आवश्यकता आहे, मुंबईकरांना शाळांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ही मुंबईची जी फोड आहे, इन्क्लुझिव्ह डेव्हलपमेंट, सर्वसमावेशक, संवेदनशील आणि माणुसकी असलेला विकास, हे केवळ अदानी आला त्या ठिकाणी किंवा उद्योजकांचा विकास नाही तर गोरगरिबांसहित सर्वांचा विकास. मुंबई ही केवळ पेडर रोड किंवा त्या ठिकाणी कप्परेटमध्ये नाही तर मुंबई ही तुम्हाला धारावीमध्ये दिसते, मुंबई ही तुम्हाला घाटकोपरमध्ये दिसते, मुलुंडमध्ये दिसते, मुंबई ही तुम्हाला बेरामपाड्यामध्ये दिसते. सगळीकडे मुंबई आहे आणि त्या सगळ्यांचा विकास समान पातळीवर झाला पाहिजे. यासाठी ही मुंबई विकास आघाडी आम्ही स्थापन केलेली आहे. मी आता विनंती करतो की हा जो जाहीरनामा मिशन मुंबई आम्ही जो ठेवलेला आहे त्याच्या संदर्भात प्रकाश टाकण्याचं काम हे मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षाताई गायकवाडजी आपल्या समोर करतील. सर्वप्रथम मी आपल्या सगळ्यांचं या ठिकाणी स्वागत करते आणि आपल्याला एक गोष्ट निश्चितपणे सांगू इच्छिते की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट यांच्या वतीने आज आम्ही मिशन मुंबई आपल्या सगळ्यांसमोर घेऊन आलेलो आहोत. ही पत्रकार परिषद या ठिकाणी घेण्यामागचं कारणच मुळात हे आहे की समोर मुंबई महानगरपालिकेची इमारत आहे. सातत्याने मी सांगते जवळपास 3 वर्ष 9 महिने जे आहे त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी नाहीत. आज मुंबई महानगरपालिकेचं जे इलेक्शन होत आहे ते पण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार होत आहे. त्यामुळे या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी यावे ही सर्वोच्च न्यायालयाची जनतेची इच्छा असताना आपण बघत होतो की कशा तऱ्हेने इलेक्शन टाळता यावं यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू होते. पण हे इलेक्शन होत आहे आणि 15 तारखेला जे आहे ते मतदान होणार आहे, 16 तारखेला निकाल लागणार आहे आणि आम्ही आज आपल्या सगळ्यांसमोर जे आहे ते आमचं मिशन 2026 सादर करत आहोत, ज्याच्या माध्यमातून मुंबई महानगरपालिकेमध्ये आम्ही सांगत आहोत की एकता, गतिशीलता, बंधुता आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी मुंबई हा मुद्दा घेऊन आम्ही आपल्या सगळ्यांसमोर आलेलो आहोत. याच्यामध्ये विविध गोष्टी आहेत. जसं मागे आपल्याला माहिती आहे की 1 तारखेला मी एक सांगितलं होतं की वर्षाची सुरुवात होते त्यावेळी 6 गोष्टींचा आम्ही उल्लेख केला होता, ज्याच्यामधली मुंबई महानगरपालिकेच्या बंद पडलेल्या ज्या शाळा आहेत, मराठी शाळा, त्यांना सुरू करण्याबाबत, त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेमध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणे, तिथले असलेले वर्गखोल्या असतील, टॉयलेट असेल, पाण्याचे व्यवस्थापन असेल, या संदर्भामध्ये बोललो. BSTच्या बाबतीमध्ये 6000 बसेसच्या संदर्भात बोललो आणि या व्यतिरिक्त आम्हाला हेल्थ कार्ड जे आहे ते युनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड जे आहे मुंबई महानगरपालिकेतून मिळालं पाहिजे, चांगलं आरोग्याचे व्यवस्थापन मिळालं पाहिजे, ही सुद्धा भूमिका आम्ही मांडली. त्याचबरोबर मुंबईकरांना मुबलक जे आहे ते पाणी पुरवठा व्हायला पाहिजे, ही सुद्धा आम्ही त्यावेळेला भूमिका मांडली. एक तुम्हाला सांगते मी, प्रत्येक गोष्ट आम्ही ज्या वेळेला जाहीरनाम्यातल्या गोष्टी डिक्लेअर केल्या, आपल्याला माहिती आहे की आम्ही परवा BSTचा आमचा जाहीरनामा सांगितला, त्या जाहीरनामा आम्ही मुंबादेवीला जे आहे ते BSTचं डेपो होतं त्याच्यासमोर केला. ज्या वेळेला वायू प्रदूषणाबद्दल आम्ही सातत्याने बोलत आहोत
कारण मुंबई आज अनहेल्दी पासून डेंजरस म्हणजे हजार्डस पर्यंत गेलेली आहे, धोकादायक पर्यंत झालेली परिस्थिती आहे मुंबईची. त्याचा ज्यावेळी आम्ही जाहीरनामा केला होता तो आम्ही नरिमन पॉइंटला केला होता आणि आज आम्ही सगळेजण हा जो जाहीरनामा मिशन मुंबईचा करतो, ज्याच्यामध्ये आम्ही बॉटॅनिकल गार्डन, आम्ही पाण्यासंदर्भात बोलतोय, घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात बोलतोय, या सगळ्या प्रश्नाच्या बाबतीत आपल्या समोर आता आम्ही हा पूर्ण जाहीरनामा दिलेला आहे. त्यामुळे मला हीच या ठिकाणी सगळ्यांना सांगायचं आहे की या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून आम्ही मुंबईकरांचा जे प्रश्न आहे, जो आवाज आहे, तो बुलंद करण्याचं काम आम्ही करत आहोत. मला या ठिकाणी सर्वांचे आभार मानायला पाहिजेत, सर्व उपस्थित नेत्यांचे मला आभार मानायला पाहिजेत की त्यांनी या ठिकाणी आज या जाहीरनाम्याला पूर्णपणे समर्थन दिलेलं आहे. सर्वांची चर्चा करून हा जाहीरनामा आम्ही बनवलेला आहे. आमचे सन्मान्य आमदार असलम शेखजी, सन्मान्य आमदार अमीन पटेलजी, कारण माझ्यानंतर अमीन पटेलजी बोलतील कारण ते या कॅम्पेन कमिटीचे जे आहेत ते अध्यक्ष आहेत आणि नंतर मग असलम शेखजी आणि आदरणीय गवई साहेब त्या ठिकाणी जे रासपाचे आहेत ते लोक सदस्य या ठिकाणी बोलतील. पण आज आम्ही मुंबईकरांचा आवाज सातत्याने उचलण्याचं काम केलेलं आहे. मी बघते की जिकडे तिकडे जे आहे ते दबाव यंत्र चालू आहे. मी मगाशी चर्चा करत होते की ज्या तऱ्हेने कुलाब्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की इलेक्शनच्या बाबतीमध्ये मोठी घटना घडली, त्या ठिकाणी फॉर्म भरायला लोकांना जाऊ नये म्हणून 3-3, 4-4 तास त्या ठिकाणी अध्यक्ष बसून होते आणि त्यांचे कार्यकर्ते, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे स्टाफ त्या ठिकाणी बसून होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या इलेक्शनमध्ये आपण बघतोय की विविध विषयावर चर्चा चालू, त्याच्यामध्ये जास्त चर्चा ही धर्मवाद, जातीवाद, प्रांतवाद आणि भाषावादावरती सुरू आहे. आम्ही सातत्याने सांगतोय की आम्हाला विवाद नको, आम्हाला विकास हवा, आम्हाला विवाद नको, आम्हाला प्रगती हवी, आम्हाला विवाद नको, आम्हाला मुंबईचं मिशन पाहिजे आणि म्हणून मुंबईच्या विषयावरती आम्ही इलेक्शन सातत्याने लढत आहोत. जे मुंबईचे विषय ट्रॅफिक असेल, घनकचरा असेल, पाणी असेल, याचं नियोजन कसं करणार याबद्दल आम्ही सातत्याने बोलत आहोत. जे भ्रष्टाचाराचे मुद्दे आम्ही मांडले त्याच्याबद्दल आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये काय कारवाई करणार आहोत या संदर्भात आम्ही आपल्याशी त्या ठिकाणी बोलण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे आज आम्ही हा जाहीरनामा मुंबईच्या जनतेला समर्पित करत आहोत. तुमचे प्रश्न, तुमचा आवाज आम्ही या ठिकाणी उचलण्याचं काम करणार आहोत आणि मुंबईकराच्या टॅक्स मधला पै न पै जो आहे तो मुंबईच्या जनतेवर खर्च व्हायला पाहिजे ही आम्ही अपेक्षा करतो. खाजगीकरणाला आम्ही विरोध करत आहोत. बीएसटी असेल, हॉस्पिटल असेल, शाळा असेल, याच्या खाजगीकरणाला मुंबई महानगरपालिकेच्या यंत्रणेला आम्ही विरोध करत आहोत. हे सुविधा म्हणजे मूलभूत सुविधा आरोग्याची असेल, मूलभूत सुविधा शिक्षणाची असेल, जसं मी सांगितलं की बाकीच्या बाबतीमध्ये असेल, या सगळ्या सुविधा ज्या आहेत त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून दिल्या गेल्या पाहिजेत. मुंबईच्या लोकांना जे आहे ते, कारण मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी, जागतिक लेवलचं शहर, त्याला त्या तऱ्हेने विकसित केलं गेलं पाहिजे. सचिन सावंत साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे त्यांच्या मताशी मी सुद्धा सहमत आहे की मुंबई शहरामध्ये 2 मुंबई शहरं राहतात. एक मुंबई शहराचा त्यांनी उल्लेख केला, पण बाकीच्याही मुंबई शहराचा आपण जसं आम्हाला तुम्हाला मी घेऊन मिठी रिव्हरच्या ठिकाणी गेले होते, ज्या वेळेला आपण एक आरोपपत्र त्या ठिकाणी दाखवलं होतं आणि मी दाखवलं होतं की खरी मुंबईची परिस्थिती काय. आणि मला एक गोष्ट अजून सांगायला पाहिजे की मुंबईच्या विकासामध्ये काँग्रेसची भागीदारी काय हे मला वेगळं सांगायची गरज नाही. सीलिंग पासून ईस्टर्न आणि वेस्टर्न सबब, ईस्टर्न ब्रिज, फ्लायओव्हर, हे सगळे काँग्रेसच्या काळात झालेल्या गोष्टी आहेत. आणि आपल्याला माहिती आहे की कोस्टल रोडची संकल्पना असेल किंवा अटल सेतूची संकल्पना असेल किंवा आपण जर आमचा 2014चा मॅनिफेस्टो बघितला तर मेट्रोची सुद्धा संकल्पना असेल, ही काँग्रेसच्या काळामध्ये त्या ठिकाणी झालेली आहे. काँग्रेस पार्टी नेहमीच जे आहे ते विकासाच्या बरोबर राहिलेली आहे, जनमानसांच्या प्रश्नाच्या बरोबर राहिलेली आहे आणि म्हणून आज मला या मॅनिफेस्टोच्या माध्यमातून आम्ही आपल्या सगळ्यांसमोर मिशन मुंबई घेऊन येत आहोत आणि मला अपेक्षा आहे की मुंबईकर ह्याचं आमचं स्वागत करतील आणि याला प्रतिसाद देऊन आमच्याबरोबर उभे राहतील आणि मुंबईच्या लढाईमध्ये आवाज बुलंद करतील. धन्यवाद. देते ना आम्ही हिंदी में बोलते. मी विनंती करतो महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असलम शेखजींना आमदार अमीन पटेलजी आपल्याला संबोधित करतील. ते कॅम्पेन कमिटीचे अध्यक्ष आहेत ना, कॅम्पेन कमिटीचे अध्यक्ष यांच्या नेतृत्वाखाली आज संपूर्ण प्रचार यंत्रणा मुंबई विकास आघाडीची राबते, ते अमीन पटेलजी बोलतील. सर्वांचे हार्दिक स्वागत. मुंबई विकास आघाडी, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, राष्ट्रवादी समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रवादी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गट, मिशन मुंबई विकास आघाड़ी का जो मुद्दे हैं, वर्षा गायकवाड़ जी ने, जो हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष है, और सचिन सावंत जी ने आपके हमने बहुत डिटेल में रखा है, मगर हमने देखा है कि पिछले 25 सालों से जिन लोगों का महापौर था और उनके साथ में जिन लोगों का उप महापौर था, उन्होंने मुंबई को लूटने का काम किया, मुंबई को बर्बाद करने का काम किया है. आज
बेसिक एम्यूनिटीज, जो फंडामेंटल राइट है मुंबई कर का, जिसका मुंबई का टैक्स भरते हैं, उसके नाम पे कोई सुविधा न सामान्य आदमी को न गाड़ी चलाने वाले को मिलती है। कांग्रेस पार्टी और मिशन मुंबई ने, जो मुंबई विकास आघाड़ी है, उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है जो आने वाले दिनों में अमल में लाया जाएगा। उसके अंदर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया है। आज मुंबई के अंदर कई इलाकों में एक गिलास साफ पीने का पानी तक नहीं मिलता है। उसके लिए कम से कम 5,000 मिलियन लीटर पानी डेली का सिक्योरिटी किया जाएगा ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। हर घर में जो नल है उसके अंदर जल आ सके और लोगों को 24 घंटा पानी मिल सके, उसके लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। दूसरा, जितनी भी मराठी स्कूल बंद हो गई है, हर मराठी स्कूल को फिर से शुरू किया जाएगा। हर क्लासरूम में कंप्यूटर हो गए। हर लैंग्वेज में जो बच्चा जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहता है उसको उसकी मातृभाषा में एजुकेशन दिया जाएगा। उसके लिए स्कूल एजुकेशन के ऊपर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान दिया जाएगा। आज आप देख रहे हो कि जिस तरह से मुंबई में प्रदूषण बढ़ गया है, हमने एक प्रदूषण के लिए मैनिफेस्टो लॉन्च किया, आप सब लोग मौजूद थे। उसके बदले में इस सरकार ने हम सब के ऊपर एफआईआर दर्ज करके केस बनाया है। मुंबई के अंदर साफ हवा नहीं देने वाली सरकार, जो लोग मुंबई के अंदर प्रदूषण हटाना चाहते हैं, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करती है। हमारा मकसद है कि मुंबई के अंदर जो आरोग्य ये प्रदूषण की वजह से गिरता जा रहा है, जो लंग्स की तकलीफ हो रही, छोटे छोटे बच्चों को क्लीन एजुकेशन देने का काम किया जाएगा। आज हेल्थ इतना महंगा हो गया है और मुंबई महानगर पालिका के अस्पतालों में और स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में दवाओं के नाम पे पर्ची दी जाती है बाहर से दवा लाने के लिए। हर अस्पताल जो मुंबई महानगर पालिका का होगा उसमें फ्री मेडिसिन दिया जाएगा। एक यूनिवर्सल फ्री हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। मुंबई करों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाएगा, जिसके हेल्थ कार्ड को लेकर जाकर वो मुंबई महानगर पालिका में इलाज करा सकते हैं। ओपीडी सर्विस और डायग्नोसिस जो होता है वो होगा 24 घंटा। जो है सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन और एक्सरे मशीन बीएमसी की अस्पतालों में 24 घंटा सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन चलाई जाएंगे। जो हॉकर को लेके जो पॉलिसी है, आज जो टाउन वेंडिंग कमेटी है वो बंद है। हॉकिंग पॉलिसी कुछ नहीं है। आज नई हॉकिंग पॉलिसी बना करके इस ट्रैफिक को कम किया जाएगा और हॉकरों को सही जगह दी जाएगी अपना सामान बेचने के लिए। पीपल सेंट्रिक ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी किया जाएगा। मुंबई महानगर पालिका ने बीएसटी को बंद करने का काम किया है, प्राइवेटाइज करने का काम किया है, बिल्डरों को बेचने का काम किया है, डिपो को बेचा है, बसों को बंद किया है। आज मुंबई के अंदर 6,000 से ज्यादा बस चलाने का हमारा कार्यक्रम है ताकि आम मुंबईकर बस के अंदर ट्रेवल कर सकता है। और आज जो प्राइवेट बसेस चल रही है, जो 50, 100, 150, 200, 250 रुपया लेकर लोगों को ट्रेवल करवा रही, उनको बंद करके मुंबई महानगर पालिका की बीएसटी के बसों को चलाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट के अंदर से भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा। जो क्लस्टर रिडेवलपमेंट का पॉलिसी है, जो 4,000 मीटर का है, उसको कम करके 3,000 मीटर का क्लस्टर पॉलिसी लाया जाएगा। 9 मीटर के जो रोड है, जो बड़े रोड है, उनके तुलना में छोटे रोडों को भी एफएसआई दी जाएगी ताकि पुरानी जर्जर इमारत में जिसमें मुंबई का रहता है उनको अपने हक का, मालकी का घर देने का काम आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस मुंबई मिशन है उसके अंदर किया जाएगा। मी आता विनंती करतो महाराष्ट्राचे माजी मंत्री असलेले मुंबई विकास आघाडीचे मित्र पक्ष घटक पक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जवळी गटाचे प्रमुख मी राजेंद्र गवईजींना विनंती करतो की त्यांनी आपल्याला संबोधित करा। काँग्रेस पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वंचित बहुजन आघाडी, रासपा आणि कम्युनिस्ट पक्ष आम्ही सगळ्यांनी मिळून ही मुंबई विकास आघाडी स्थापन केलेली आहे। आणि आमचा उद्देश काय, आम्ही त्यापूर्वी बाकीच्या वक्त्यांनी सांगितलं, आदरणीय वर्षाताईंनी सांगितलं, अमितजींनी सांगितलं, सचिनजींनी सांगितलं। सगळ्यात महत्वाचं ब्रदरहूड हे डेव्हलप करणं,
कारण की या शहरामध्ये सर्व धर्मसंभाचा विचार असतो, परंतु काही लोक हा विचार एकमेकांमध्ये एकमेकांमध्ये निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, जो आम्हाला टाळायचा आहे. जसं ग्रामीण भागामध्ये वेगवेगळ्या जातीचे लोक एकेका ठिकाणी राहतात, एका गावामध्ये हा अमुक पुरा, तसं या मुंबईमध्ये नसतं. बाहेरच्या प्रांताचे, बाहेरच्या समाजाचे अनेक लोक एकाच बिल्डिंगमध्ये प्रेमाने गुण्यागोविंदाने राहतात. हे आम्हाला टिकवायचं आहे, ब्रदरहूड टिकवायचं आहे. बाकीचे जर BSTचा मुद्दा मीनबाईंनी सांगितलाच आहे, स्वच्छ पाण्याचा मुद्दा सुद्धा सांगितलेला आहे. शाळेमध्ये सुविधा कशा असाव्या त्याबद्दल सुद्धा अमीनजी यांनी सांगितलं आहे, वर्षाताईंनी सांगितलं, सचिनजींनी सांगितलं आहे. मी स्वतः डॉक्टर आहे, MBBS आहे, त्वचा रोग तज्ञमध्ये उच्च शिक्षित आहे. सोमया मेडिकलला मी प्राध्यापक होतो. जेव्हा एक पेशंट येतो, गरीब पेशंट येतो, तेव्हा त्याच्यावरती काय बीतते आणि त्याच्या परिवारावरती काय बीतते हे मी तेव्हा अनुभवलेलं आहे. तेव्हा युनिव्हर्सल हेल्थ कार्ड म्हणजे हॉस्पिटलमध्ये गेल्या त्या हेल्थ कार्डमुळे आपल्याला योग्य सुविधा मिळू शकते, फुकट औषध मिळू शकते. CT स्कॅन लागलं तर CT स्कॅनची व्यवस्था होऊ शकेल, अल्ट्रासाऊंड लागलं तर त्याची व्यवस्था होऊ शकेल. अशा प्रकारच्या अनेक यामध्ये नमूद केलेले आहेत आणि ही महाविकास आघाडी जे आहे जे काय नमूद केलेलं आहे या जाहीरनाम्यामध्ये ते पूर्ण करून टाकते. जय भीम. एनी क्वेश्चन? काही प्रश्न असतील तर वर्षाताई आपल्याला उत्तर देतील. भाई आज थेट फुटपाथवरच ही अजेंडा जो आहे जाहीरनामा तो करण्यात आलेला आहे. यामागे सुद्धा काही विशेष कारण आहे? बिलकुल आपण बघितलं असेल तर ही जागा बिलकुल मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीच्या समोरची आहे आणि या ठिकाणी आम्ही मुंबई महानगरपालिकेमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये काय भूमिका घेऊन जाणार आहोत, या फुटपाथावरून त्या फुटपाथपर्यंत जाताना आमचा मार्ग काय असणार आहे हे या पुस्तकाच्या माध्यमातून आम्ही आपल्याला दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आमचं विजन हे सुस्पष्ट आहे. जसं आम्ही सांगतोय की त्याप्रमाणे आमचं विजन आहे एकता, गतिशीलता, बंधुता आणि सर्वसमावेशक विकास. हे आमचं विजन आम्ही घेऊन चाललोय, ज्याच्यामध्ये विविध जे मुद्दे आहेत त्याच्यामधले काही मुद्दे अमीन पटेल साहेबांनी सांगितले, काही मुद्दे सचिन सावंत साहेबांनी सांगितले, काही मुद्दे मी सांगितले. पण आमचा हा प्रयत्न राहणार आहे, कारण शेवटी ज्या जनमानसांसाठी किंवा मुंबईकरांसाठी हा आम्ही जाहीरनामा तयार केलेला आहे त्या मुंबई महानगरपालिकेच्या समोर येऊन आम्ही करावा. कारण तुम्ही बघितलं असेल की BSTचा पण आम्ही BSTच्या डेपोच्या बाहेर केला, त्या ठिकाणी आम्ही प्रदूषणाचा केला तो आम्ही नरिमन पॉइंटला केला. आम्ही ह्या माध्यमातून एक सांगू इच्छितो की मुंबईकरांच्या प्रश्नासाठी मुंबईचा महापौर असेल होणाऱ्या काळामध्ये त्याने जमिनी उतरून मुंबईच्या प्रश्नावरती काम करण्याची आवश्यकता आहे. आणि मुंबईमध्ये आज प्रश्न काय, मुंबईमध्ये ट्रॅफिकचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये रस्त्याचा प्रश्न आहे, मुंबईमध्ये पाण्याचा प्रश्न आहे. ज्या फुटपाथवर आपण बसलो किती ठिकाणी फुटपाथचा सुद्धा प्रश्न आहे. आता आपल्याला माहिती आहे की गार्डन्स नाही आहेत, ग्रीन झोन नाही आहेत, त्याच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आरेमध्ये कत्तल झाली, इतर ठिकाणी झालेली आहे. आज वायू प्रदूषण हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे बॉटॅनिकल गार्डन्स असतील, विविध व्यवस्थापन असेल, या संदर्भामध्ये सुद्धा आम्ही या ठिकाणी सांगत आहोत. त्यामुळे ही जागा ऐतिहासिक जागा आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या इमारतीसमोर आम्ही बसलेलो आहोत आणि येणाऱ्या काळामध्ये आमचे नगरसेवक आतमध्ये जाऊन त्या जाहीरनाम्यावरती काम करण्याचं काम करतील. यामागे काही कारस्थान आहे? नाही, हे तर मोठं षडयंत्र आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी सुद्धा मी एक चर्चा करत होते काही पत्रकारांशी वैयक्तिक, त्यामुळे त्यांना म्हटलं की 3-3 तास तर अध्यक्ष बसत असे विधानसभेचे त्या ठिकाणी आरोच्या समोर आणि ऑफिसमध्ये आपल्या स्टाफला घेऊन, आपल्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन आणि बाकीच्या त्या ठिकाणी गेलेल्या सगळ्या कॅन्डिडेटला 3 तास स्कुटनीच्या नावाखाली पेपर तपासणी चालली असेल आणि त्या आतमध्ये जाऊ शकले नाही कॅन्डिडेट आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी फॉर्म घेतला नसेल तर कसं चालणार. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जे कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी आहेत ते किती दबावाखाली आहेत. म्हणजे तुमच्या घरामधले भाऊ वहिनी लढत असतील म्हणून तुम्ही लोकांवरती इतका दबाव निर्माण केला, तुमचे त्याचे व्हिडिओ सुद्धा आले. आज आम्ही बघतोय की तिथे लोकांना टोकन दिले गेले, लोकांनी पैसे सुद्धा भरले. मग असं असताना आपल्या सगळ्यांना माहिती, जितके इथे बसले ते सगळ्यांना, माझा राज्य निवडणूक आयोगाला त्या ठिकाणी प्रश्न आहे की जर टोकन आहे, पैसे दिले तर त्याचे फॉर्म का नाही घेतले. रात्री 11:30 पर्यंत आम्ही निवडणूक आयोगाला सांगत होतो, बरोबर ना अमीन पटेल साहेब, की आपण फॉर्म स्वीकारावा, पण फॉर्म स्वीकारले गेलेले नाही. बरोबर का बाई साहेब, तुम्ही सुद्धा स्वतः फोन केला ना. दुसऱ्या दिवशी सकाळी आम्ही स्कुटनीच्या वेळी काही पेपर समजा असतील तर बदलू काही शकतो, काही चेंज करू शकतो. असं असल्यामुळे आम्ही त्या ठिकाणी गेलो. सकाळी 9:30ला पण विधानसभेचे अध्यक्ष तिथे, म्हणजे रात्रभर तुम्ही अख्खा दिवस बसलात. दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी उपस्थित आहे. जेव्हा
माझी अपेक्षा आहे, आता आम्ही ऐकलं की कोणी लोक न्यायालयात जातात, पण माझं म्हणणं आहे की राज्य निवडणूक आयोगाने दिनेश वाघमारे साहेबांनी स्वतःहून जे आहे देशाच्या संविधानाच्या माध्यमातून ते बसलेले आहेत, त्यांनी स्वतःहून हा निर्णय घेतला पाहिजे सुमोठा, आणि अशा गोष्टीवरती कारवाई केली गेली पाहिजे. ज्या तऱ्हेने व्हिडिओ आले, पण व्हिडिओ न करता पण खूप लोकांना त्या ठिकाणी त्रास झालेला आहे. लोकांना फॉर्म भरायला अडवण्याचं काम त्या ठिकाणी झालेलं आहे. आज संपूर्ण मुंबईमध्ये आपण पाहतोय की बॅनर्स पोस्टर्स लागलेले आहेत महायुतीचे. शिवसेना नाही, आमचा जाहीरनामा हा आम्ही लोकांमधून विचार करून घेतलेला आहे. याच्यावरती एक कमिटी बसून कमिटीने पूर्ण अभ्यास आणलेला आहे. याच्यामध्ये सगळ्या पक्षांचे सुद्धा त्या ठिकाणी विचार घेऊन आम्ही आलेलो आहोत, आणि सातत्याने आम्ही मुंबईकरांच्या मुद्द्यावरती लढत आहोत, आणि मुंबईला पुढे कसं घेऊन जाता येईल, मुंबईला कसं विजन देता येईल, या दृष्टिकोनातून मुंबई विजन आम्ही तुमच्या समोर मिशन म्हणून घेऊन आलेलो आहे. भाजप आणि शिवसेनेची संपूर्ण मुंबईत बॅनर्स पोस्टर्स पाहायला मिळतात. बस स्टॉप असू द्या किंवा मोठमोठे होर्डिंग लागलेत, आणि मुंबईचा विकास महायुतीच करणार असा दावा करण्यात आला. या दाव्यामध्ये किती तथ्य नाही, आता किती वर्षापासून त्यांच्याच हातात आहेत. जसं ह्यांनी सांगितलं, जेव्हा महापौर होते तेव्हा उपमहापौर कोणाचे होते, जेव्हा स्टँडिंग एकाकडे होती तेव्हा इम्प्रुव्हमेंट कोणाकडे होती, आणि आता तर जवळपास 4 वर्ष झाले सरकार त्यांचंच आहे ना, महायुतीचं. चालवतंय कोण? मुंबई महानगरपालिका आयुक्त चालवतात. आयुक्त पदाधिकारी आहेत, प्रशासकीय अधिकारी आहेत, पण करतंय काम कोण? सर्वांना माहिती आहे. या फायली सगळ्या मंत्रालयातून साईन होत आहेत, आणि मंत्रालयातून निर्णय होत आहेत. मी परवा बीएसटीचं उदाहरण दिलं, त्याच्या आधी मी किती उदाहरणं दिली जे फायली मंत्रालयातून होतात. सगळे टेंडर, पाण्याच्या लाईनीचं काय, पाईपला कुठला मटेरियल वापरलं गेलं पाहिजे ते 2च फॅक्टरी देऊ शकतात, 2च कंपनी देऊ शकतात. त्याआधी पण बदललं जातं. एक नवीन अजून एक आहे, काय म्हणतात, कन्सल्टंट, एक नवीन कन्सल्टंट एक आलेले आहे बीएमसी मध्ये. मला कळत नाही की बीएमसी मध्ये इतके इंजिनियर आहेत, इतके इंजिनियर बीएमसी मध्ये आहेत, मग कन्सल्टंटची तुम्हाला बाहेरच्या काय जरुरी पडते, आणि ते कन्सल्टंट सांगणार इथून मटेरियल घ्या, याच कंपनीचं घ्या, याच पॅकेटचं घ्या. हे खूप मोठा भ्रष्टाचार या मागचा आहे. आता आम्ही आता सत्तेची आली, त्यांना मस्ती आहे, माहितीच आहे सर्वांना. इतकी मस्ती आली आहे, इतका दबाव यांचा चाललाय सत्तेची मस्ती, तर तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की आम्ही बिनविरोध, म्हणजे मी महाराष्ट्राबद्दल सातत्याने बोलते की सकाळी महिलांना पोलीस संरक्षणामध्ये जावं लागतं, तर म्हणून सत्तेची आली आहे मस्ती, म्हणून मुंबईकरांना नको आता भाजप आणि महायुती. त्यामुळे आमचं म्हणणं असं आहे की यावेळेला मुंबईच्या प्रश्नावर इलेक्शन व्हायला पाहिजे. जात, धर्म, भाषा, प्रांतच्या पलीकडे जाऊन विवाद न करता विकासावर, मिशनवरती बोला, मुंबईला कसं घेऊन जाणार त्याच्यावर चर्चा करा. पण यामध्ये नितेश राणे यांचं वक्तव्य होतं, हिरव्या सापांची वळवळ कुठे होऊ देऊ नका, भाजपच केवळ. मी तेच सांगते ना, ह्याच्यावरतीच आपण चर्चा करणार, कारण 4 वर्षामध्ये त्यांनी जो भ्रष्टाचार केलाय, मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवीमधले 12,000 कोटीची तूट केलेली आहे. बीएसटी 2,000 कोटीच्या तोट्यामध्ये सगळ्या यंत्रणाचं खाजगीकरण चाललंय, खच्चीकरण चाललंय, त्याच्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही. सुविधांबद्दल त्यांना बोलायचं नाही. मुंबईच्या रस्त्याची काय अवस्था आहे, मुंबईच्या ट्रॅफिकची काय अवस्था आहे, याच्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही. देवणाची काय अवस्था आहे, मिठी रिव्हर कोणाला दिली त्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही. मुंबईच्या महानगरपालिकेच्या जमिनी कोणाला देण्याचं काम चाललंय त्याबद्दल त्यांना बोलायचं नाही. हे प्रश्न त्यांना बोलायचे नाहीत. त्यांना सातत्याने धार्मिक राजकारण करायचं आणि त्या विषयावर इलेक्शन घेऊन जायची त्यांची भूमिका असते. पण आम्ही मुंबईकरांचा आवाज बनणार आहोत, कारण मुंबईकरांना ज्यावेळी मुंबईत निघतात त्यावेळी मुंबईकरांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, आता यांना विचारा, तुम्ही पण खूप लोक येता, किती ट्रॅफिकचा त्रास आहे मुंबईकरांना, परिवहनाची व्यवस्था पण नाही, सार्वजनिक परिवहन तुम्ही बंद करण्याच्या मागे लागलेला आहात आणि प्रायव्हेट गोष्टींना प्रोत्साहन देता, हे बरोबर नाही असं आमचं म्हणणं आहे. नाही, वंचित आघाडीचे मला स्वतःचा त्यांचा मेसेज होता बाळासाहेबांचा, आणि बाळासाहेबांनी सांगितलेलं आहे की ते आज त्यांची कुठेतरी पूर्वी कमिटमेंट असल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत, पण त्यांनी मला सांगितलंय की वर्षा तू कर, आणि हा ज्यावेळी जाहीरनामा केलेला आहे याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलेले सगळे मुद्दे जे आहेत ते आम्ही त्यामध्ये घेतलेले आहेत. त्यांच्यामुळे विचारून त्यांच्याशी परवानगी घेऊनच आम्ही हा जाहीरनामा केलेला आहे. मला एक अजून गोष्ट बोलायची की विलासरावांबद्दल मी काल एक स्टेटमेंट ऐकलं. असं आहे की विलासराव देशमुख साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. ज्यावेळी आम्ही पहिल्यांदा निवडून आलो त्यावेळी विलासराव देशमुख साहेबांच्या अंडर आम्हाला, त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्हाला काम करण्याची संधी मिळाली होती. काल मी रवींद्र चव्हाणांचं एक स्टेटमेंट ऐकलं की ते विलासराव आता काय बोलत होते, नाव मिटून जाईल आणि ते नाव मिटून जाईल, विस्मरणात जातील असं काय ते बोलले. मला त्यांना एक गोष्ट प्रश्न विचारायचा आहे, तुम्हाला माहिती काय म्हणणार आहे? याचं कारण असं की विलासराव हे एक उमदा नेतृत्व होतं, अजात शत्रू होते. ते विरोधकांशी पण मैत्रीपूर्ण आणि सौजन्यपूर्ण संबंधाचं नाव जर कोणी उदाहरण राज्याचं मुख्यमंत्री म्हणून बघितलं जाईल तर ते नाव विलासराव देशमुख असेल. आजही मी तुम्हाला सांगते, कोणत्याही अधिकाऱ्यांना तुम्ही भेटा, आजही लोक विलासरावांची आठवण करतात, कारण त्यांची कामाची शैली, बोलण्याची पद्धत. इथे पत्रकार सुद्धा आहेत. आज पत्रकारांना सुद्धा माहिती आहे की एखादा छापायचा म्हटला फोटो की एखादी न्यूज छापायची म्हटली की परवानगी घ्यावी लागते.
एखादी निगेटिव्ह खबर म्हणजे नकारात्मक गोष्ट छापली की कसा त्रास होतो, पण विलासराव एवढ्या उमद्या दिलाचे होते की त्या दिवशी त्या व्यक्तीला बोलून सांगायचे, अरे काय सांग मला, असा काय म्हणतो लोकांचा राजा, लोकांच्या मनामधला. ज्यावेळी ते वारले त्यावेळी मी लातूरला गेलो होतो. घराघरातली चूल बंद होती, घराघरातली चूल. त्यांना लोक विसरतील? आपल्या घरातला सदस्य गेल्यासारखं त्यांच्याबद्दल त्या ठिकाणी शोकाकुळ वातावरण होतं. आणि म्हणून अशा तऱ्हेने वक्तृत्व करणं ही मला वाटतं आपल्या स्वतःच्या मानसिकतेची दिवाळखोरीचं उदाहरण रवींद्र चव्हाण साहेबांनी दिलेलं आहे. बिलकुल माफी मागावी. भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित शेख यांनी अस्लम शेख यांच्या नावाचा उल्लेख केलाय की जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते तेव्हा तुम्ही त्यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये मंत्री होता. एका मुस्लिम उमेदवाराने त्यांनी मंत्री केलं, त्यांनी कुठेतरी आक्षेप घेतला आता अमित शेख यांनी की हे कितपत योग्य आहे? हे असं आहे की भारतीय जनता पार्टीची जेव्हा सरकार होती, देशाचे राष्ट्रपती पण जे अब्दुल कलामला करण्यात आले. आणि अमित साटमचं जर बघायला गेलं तर मला वाटतं की त्यांचे जर आधीचे काय त्या व्हिडिओ दाखवलं तर चांगल्या पद्धतीने आमच्या धर्माचा कलमा कसा असतो, टोपी कशी घालता येतं, हे सगळं मतं मांडताना त्यांनी सगळं प्रयोग केलेला आहे. तर कमीत कमी या मुंबईमध्ये काँग्रेस पक्ष फक्त यावर आम्ही निवडणुका लढतोय, कोण हिरवा बोलतोय, कोण पिलवा बोलतोय, कोण काय बोलतोय त्याच्यावरती जायचंच नाही. सध्या परिस्थिती अशी की मलाडवरून मला इथे यायला 2 तास लागले. त्या संदर्भात सातार काय बोलतील का? त्यांच्या विभागातले 100 लोक महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये ऍडमिट आहे, लहान मुलांपासून मोठ्या. जाऊन तुम्ही तिकडे जे आहे तर त्यांचं रुग्णालय मोठा, तिकडे जाऊन तुम्ही तपासणी करा. 100 त्याच्या संदर्भात ते काय बोलतील का? आणि गेल्या 3 महिन्यामध्ये रोड ऍक्सिडेंट त्यांच्या मतदारसंघामध्ये 5 झाले, त्याच्या संदर्भात काय बोलतील का? मुंबईच्या अध्यक्ष झाल्यानंतर मुंबईच्या प्रगतीबद्दल मुंबईला तुम्ही काय देणार आहे ते काही शब्द नाही. पहिल्या दिवशीपासून खान, पठाण, शेलार, शिंदे, शेख हे सगळं बोगस काम चालू आहे. मुंबईकरांनी कमीत कमी जे आहे ना काहीतरी न्यूयॉर्क पासून शिकला पाहिजे की सगळं जे फालतू गोष्ट त्या टायमाला ट्रम्प करत होतं ना सगळं बाहेर करून त्यांनी एक चांगला तिकडे मेयरने बोललं. हिंदीमध्ये वारंवार वाटत नाही का की विकासाचा मुद्दा सोडून महापौर कोणत्या धर्माचा होणार, नेते कोणत्या धर्माचे आहेत याच्यावरती टीका करत भाजपकडनं वेगळा नॅरेटिव्ह सेट केला. काँग्रेस भूमिका घेतली, विवाद नको विकास हवा. आम्ही पहिल्यापासूनच बोलतोय की विवाद नको विकास हवा आणि मुंबईला समजणारा महापौर हवे. कुठल्या जातीचा, कुठल्या धर्माचा, कुठल्या भाषेचा हे सगळं नको. हे जे पोल्युशन काढू शकतोय, हे जे ट्रॅफिक काढू शकतोय, या मुंबईमध्ये हॉकर्स पॉलिसी जी लागू करू शकतोय, फुटपाथ चांगला करू देऊ शकतोय. महानगरपालिका एका मराठी शब्दाच्या संदर्भात मराठी भाषेवरती तुम्ही लोकांना मारता. 6 वर्ष झाली शिक्षकांना मराठी एनजीओना देण्यात आहे. प्रायव्हेट शाळा तुम्ही टॅक्स पेअरच्या पैशातून बांधता आणि तुम्ही प्रायव्हेट एनजीओ जे तुमच्या पक्षामध्ये जोडले त्यांना देण्याचं काम करत आहेत. त्यांच्याकडून भाडा नाही घेत आहेत आणि ते शाळाने ते लोकांकडून पैसे कमवत आहेत. म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेचं नस निघून गेलेलं आहे. अशी परिस्थिती येथे मुख्यालयामध्ये झालेली आहे. तर मुंबईला आणखी तुम्ही कुठे नेणार? दुबई मतदार रोखण्याचं हे जबाबदारी इलेक्शन कमिशनची आहे. त्यांनी हे बघितलं पाहिजे आणि हे काम जे आहे ते करतील व्यवस्थित. आणि दुबार मतदारसंघ दुबारचे नावं जे आलेले आहेत त्या संदर्भात कितीदा तुम्ही बोलणार, त्याच्यावरती कारवाई करा. ज्यांची नावं डबल आहे त्यांना काढून घ्या. आम्ही कुठे आक्षेप घेतो? देवेंद्र फडणवीस आधी म्हणायचे की विरोधक ईव्हीएम वर बोलतात, आता त्यांनी मुद्दा सरकवलेला, आता ते बिनविरोधवर बोलायला लागले. बिनविरोधची परिस्थिती का अशी झाली? का लोकांचं नॉमिनेशन तुम्ही घेतलं नाही? का लोकांवरती दबाव आणला? किती पोलिसांचा उपयोग त्यामध्ये करण्यात आला आहे? किती एजन्सीचा उपयोग त्याच्यात करण्यात आलेला आहे? कमीत कमी थोडी रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडियाने पण घेतली पाहिजे. हा 4था स्तंभ आहे. का त्यांचा फॉर्म घेऊ शकले नाही? का इलेक्शन कमिशनला तुम्ही विचारत नाही की तिथपर्यंत पोहोचल्यानंतर का घेऊ शकत नाही? सर्वप्रथम कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये जेव्हा निवडणुका लढायचं आहे कोणाचाही फॉर्म रद्द नाही झाला पाहिजे, ही जबाबदारी इलेक्शन कमिशनची असते. त्याच्याबद्दल तुम्ही त्यांना जाऊन विचारा की हे तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनचं पालन का नाही केलं? हिंदी I think we should talk on the Let's talk only about what is going to happen for Mumbai, what is going to be the process for Mumbai, what best any party is going to give for Mumbai. I think so. We are just diluting our vision and what we are supposed to do for Mumbai. देखिए हमारे जो मुद्दे हैं
मुंबई शहर के लोगों से पूछ के बनाए गए और हम खुद मुंबई शहर में रहते हैं। सबसे बड़ी जो मुंबई की समस्या है वो ट्रैफिक है। हर आदमी ट्रैफिक में इतना उलझा हुआ है, यानी अगर एक कोने से दूसरे कोने दहिसर से अगर किसी को चर्चगेट में आना है तो 2.5 घंटे से नीचे नहीं लगता है। यानी आप दिल्ली चले जाओ यहाँ से, उतनी समस्या है। फुटपाथ के ऊपर कोई चल नहीं सकता इस मुंबई शहर के अंदर, या तो हॉकर्स है या तो फुटपाथ जो है खराब हुए पड़े। हॉकर्स के संदर्भ में पूरे मुंबई में जो है हॉकर्स को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन पर फाइन मारी जा रही है। आमदार लोग भारतीय जनता पार्टी के उनको मारने का काम कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से, मुंबई पॉलिसी के हिसाब से उनको बिठाना चाहिए। आप देखिए कि पोल्यूशन का क्या है। पोल्यूशन के संदर्भ में अभी अमित पटेल जी ने बताया कि हमने उनका विरोध किया। हमने कहा कि पोल्यूशन किस तरीके से रुकना चाहिए। हमारा तो छोड़िए, हाईकोर्ट ने बोलने के बाद भी कमिश्नर जो है उसके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई कर नहीं पाए। आज भी जो हमारा मुंबई का जो पोल्यूशन है, इस देश के अंदर 1 नंबर के ऊपर मुंबई का पोल्यूशन है। आज भी महिला के संदर्भ में जो सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर महानगर पालिका के स्कूल जहाँ पे करीबन 4-5 लाख बच्चे पढ़ रहे, या तो उनके बाजू में पान पट्टी की दुकान है या वो जगह इंक्रोच है। बच्चे सही तरीके से घर से निकल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, ये परिस्थिति है। मुंबई में सीवर लाइन का प्रोजेक्ट आज 40-50 साल से जो सीवर लाइन मुंबई में डाली गई है, उसके बाजू में जो है पानी का पाइपलाइन गया हुआ है। आज सीवर का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन जो पीने का है, कंटेमिनेशन हो रहा है, उसके बारे में जो है हमारा ये सारा मुद्दा है। ये सारे मुद्दे आज मुंबई की जरूरत है। इस पे चलेंगे तो मुंबई आगे बढ़ेगा। फिर एक बार कहता हूँ मीडिया से, ये जो फालतू बातें करते हैं, चाहे मंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना का जो भी बड़ा नेता हो, उनको आप बिल्कुल ये पूछे कि मुंबई शहर के जो मूल मुद्दे है उस पर आप बात करिए, बाकी बातें आप मत करिए। एक शब्द ठाकरेंचा 30 वर्ष होता ना आज बरोबर पहा। आहे चला रविंद्र चौहान के स्टेटमेंट का रेफरेंस दिया जो उन्होंने इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी है कि रविंद्र चौहान 2 स्टेटमेंट दे चुके हैं, एक अजीत पवार पर, विलासराव देशमुख जी पर। अजीत पवार ने इससे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा नो कमेंट। क्या अभी अजीत दादा डर चुके हैं? जिस तरीके से लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, बीजेपी के खिलाफ उनकी सहयोगी पार्टियां बोल भी नहीं रही है, बाकी लोग भी कोई नहीं बोल रहे हैं। पहले शिंदे साहब के साथ हुआ। नहीं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है सबको पता है, क्योंकि सेंटर में जो है वो सबसे बड़ा उनका पावर है, और फिर बाद में बहुत सारी चीजों की वजह से जिस कारण वो वहाँ पे सब लोग गए हैं, वो कारण क्या है आप सबको पता है। वहाँ पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की बहुत सारी चीजें उनके पास है, और बिल्कुल जो है हाँ, और जैसा उनके ऊपर बोला था, हमें तो अपेक्षा था कि पीसिंग एंड पीसिंग, किसने बोला था ये मुझे मालूम बताने की जरूरत है। देश के प्राइम मिनिस्टर ने 70,000 करोड़ के घोटाले की बात की थी, लेकिन 70,000 घोटाले के बाद क्या हुआ? हम सब पूरे देश में देख रहे हैं कि एक वॉशिंग मशीन आई है, जो भाजपा में जाते हैं फिर वो स्वच्छ हो जाते हैं, तो जो गए हैं वो उनके सामने बोलने की हिम्मत कैसे कर पाएंगे? आज भाजपा की जो राजनीति, जो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो मस्ती आई है कि आप 3-3 घंटा आरओ के सामने बैठे अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और आप सभी को लेके बैठे और बाकी कैंडिडेट बाहर खड़े। तो ऐसा होता था क्या कभी? ये जो मस्ती आई है कि ये जो बिन विरोध के नाम पे सब चल रहा है, या हम जो करेंगे वो ही सही है, ये अलग चर्चा चल रही है, वो सही नहीं है। जैसा उन्होंने विलासराव देशमुख जी के बारे में कहा, वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि विलासराव देशमुख जी के अंडर हमने सबने काम किया है। जब पहली बार मैं विधायक बनी तो विलासराव देशमुख हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, एक उम्दा मुख्यमंत्री, एक अजात शत्रु मुख्यमंत्री। आप विरोधी पक्ष के लोगों को भी पूछिए किस तरह से उनको जो है उनके साथ बर्ताव हुआ करता था, किस तरह से उनसे बातचीत थी। एक सहृदयी उनको सब लोग कहते थे, और जब जिस दिन वो मरे उस दिन हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पूरे दुख की लहर थी। लातूर के घर घर में उस दिन खाना नहीं बना था, क्योंकि उनको लगा था हमारे कुटुंब का एक सदस्य गुजरा है। तो जिनके प्रति लोगों की इतनी संवेदना है, क्या लोग उन्हें भूल पाएंगे? लोग कभी नहीं भूलते, लोग याद रखते हैं। रविंद्र चौहान जी का तो ऐसा है कि आपने देखा होगा कि वो थाना, और उसमें क्या हो रहा है उनका, और क्या हो रहा है उनके। मैं समझ, एक तो मुझे समझ में भी नहीं आता कि राज्य में सब लोग तीनों साथ में है, इलेक्शन में एक अलग कैसे हो गए? तो राजीव दादा ने राजीनामा भी नहीं दिया है, तो एक जगह पे शिंदे और भाजपा लड़ रही है, और एक जगह पे पवार के ग्रुप से लोग लड़ रहे हैं, जबकि सत्ता में सब एक साथ, और जिनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं उनकी बेटी बैठती सत्ताधारी पक्ष के साइड में। तो ये कैसी राजनीति हुई भाई साहब? सत्ताधारी के बीच में रहो, सत्ताधारी की तरफ फंड लो। बार बार मैं कह रही हूँ कि मुंबई महानगर पालिका के सामने बैठने का उद्देश्य भी हमारा ये है कि जिस तरह से पैसा गया मुंबई महानगर पालिका 99% रुपया किसको गया? सत्ताधारी पक्ष को गया।
जो लोग पार्टी में ले गए मेरा मुख्यमंत्री महोदय से कहना है, बार बार कहते मैं पारदर्शक कारभार की बात करता हूँ, बार बार कहते हैं क्या मैं एकदम स्वच्छ कारभार करूंगा, दिख तो नहीं रहा है। जिनको पैसा दिया है जमीन पे काम हुआ है कि नहीं मालूम किया आपने? छोड़ा बोला पैसा नहीं दिया आपने। 1500 करोड़ रुपया गया है, तो किधर गया वो 1500 करोड़ रुपया 4 साल का, बताइए। और किसको दिया है? 99% वो पैसा किसके अकाउंट में गया है? तो सत्ताधारी पक्ष में जो आए हैं, ये सत्ताधारी पक्ष से है। विरोधक को क्या दिया आपने? वो विरोधक का सत्ताधारी पक्ष का सवाल नहीं, वो मुंबई का पैसा है, मुंबई करके विकास में खर्चा होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। धन्यवाद। ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ರ? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನೇ ವಿತಿನ್ 2 minutes ನಾನು SP ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೈ ಮೀರಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈತೇವೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬೈಯೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆತ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಏನೋ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ.
ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೀಡಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಂದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವಮಾನ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಾದಂತ ತೊಂದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆಗೆ ಆದಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಇವನ್ನ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ 2.5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಕೈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ MP ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ
ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕರಿಬೇಡಿ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದೇನೋ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಝಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಝಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಝಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ದೇನು ಯಾವ ತರದ ತಕರಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಇದನ್ನ ಗೌರವನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, DHO ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿದ್ದ, ಏನು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು, ಬ್ಯಾನರ್ ಅರ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಲೋಲೋಕೆ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ನಮಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಯಲಲಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿವಿಗೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ನ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಮನೆಗೆ
ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬುರೆ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ, 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ 24-25 ಓಕೆ 29ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಅದೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೋ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ಯಾರಲ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MLA ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗನ್ಮೆನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ
ಇರೋಂಥ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಮಾಜಿ ಎಂಪಿನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ರ. ಅವರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನೇ ವಿತಿನ್ 2 minutes ನಾನು SP ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೈ ಮೀರಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈತೇವೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬೈಯೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆತ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೀಡಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಅನೇಕ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವಮಾನ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಾದಂತ ತೊಂದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆಗೆ ಆದಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಇವನ್ನ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ 2.5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಕೈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಯು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂಥ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಕರಿಬೇಡಿ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದೇನೋ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಝಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಝಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ದೇನು ಯಾವ ತರದ ತಕರಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದಂಥ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಇದನ್ನ ಗೌರವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, DHO ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನಾರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಎಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹುತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿದ್ದ ಏನು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು, ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಲೋಲೋಕೆ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ನಮಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಯಲಲಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ನ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ 24-25 ಓಕೆ 29ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು? ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಅದೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೋ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ಯಾರಲ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MLA ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MP ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗನ್ಮೆನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಮಾಜಿ MP ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ನಾವು ಎದ್ದೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ನಾವು ಎದ್ದೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನೇ ವಿತಿನ್ 2 minutes ನಾನು SP ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೈ ಮೀರಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈತೇವೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬೈಯೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆತ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಏನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಏನೋ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೀಡಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳತ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವಮಾನ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಾದಂತ ತೊಂದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆಗೆ ಆದಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಇವನ್ನ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ 2.5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಕೈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ
ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ MP ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡಿ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇನೋ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ Z ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Z ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ದೇನು ಯಾವ ತರದ ತಕರಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದಂತಹ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಇದನ್ನ ಗೌರವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, DHO ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್
ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದಿದ್ದ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು, ಬ್ಯಾನರ್ ಅರ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಲೋಲೋಕೆ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ನಮಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಯಲಲಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿವಿಗೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ನ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು? ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ 24-25 ಓಕೆ 29ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೋ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.
ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ಯಾರಲ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MLAಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MP ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗನ್ಮೆನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇರಂತ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಮಾಜಿ MP ನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ನಾವು ಎದ್ದೋ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶ್ರೀರಾಮರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನೇ ವಿತಿನ್ 2 minutes ನಾನು SP ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೈ ಮೀರಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈತೇವೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬೈಯೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೀಡಾಗಿ, ಶಾಂತಿ, ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನ ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವಮಾನ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಾದಂತ ತೊಂದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆಗೆ ಆದಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಇವನ್ನ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ BJP 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ,
ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ 2.5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಕೈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಪಿಯವರು ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕರಿಬೇಡಿ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಪರಿಸರ ನೋಡಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇನೋ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ Z ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Z ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ದೇನು ಯಾವ ತರದ ತಕರಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದಂತ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಇದನ್ನ ಗೌರವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, DHO ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ
ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಗುಂತದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿದ್ದ ಏನು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು, ಬ್ಯಾನರ್ ಅರ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಲೋಲೋಕೆ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ನಮಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಯಲಲಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿವಿಗೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ನ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಕಾರಣಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ, 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ 24-25 ಓಕೆ 29 ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೋ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರು ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ, ಈ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ.
ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ಯಾರಲ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ಲು ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. MLAಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MP ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮ್ರಿಗೆ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗನ್ಮೆನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಮಾಜಿ MP ನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ
ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಮೀರಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೆದ್ರ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವರು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನೇ ವಿತಿನ್ 2 minutes ನಾನು SP ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕೈ ಮೀರಿತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂಥ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಏನೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮವ್ರು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಏನಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಾಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಬೈತೇವೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಬೈಯೋ ಶಕ್ತಿ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪಾಪ ನೀವು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಡ್ಯೂಟಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಾಜಶೇಖರ್ ಮನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಪಾಪ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಆತ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ತಾಯಿಯಂದಿರು, ಆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ತಿಂಗಳಗಟ್ಟಲೆ ಇದ್ದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಂತಿ ಬೀಡಾಗಿ, ಶಾಂತಿ ಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನ ತಾಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆ ಇದು ಬಹಳ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ನೋವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಏನೇನು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸತ್ಯ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಏನು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತ ಅವಮಾನ, ಬಳ್ಳಾರಿಗಾದಂತ ತೊಂದರೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆಗೆ ಆದಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ನಷ್ಟ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ, ಇವನ್ನ ಈಗ ಚೇತರಿಸಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ 3 ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ, ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ 2.5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆದಂತ ಕೈ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ DC ಅವರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಇಂದ ಹಿಡಿದು 5 ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಗೌರವನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ. ಯೋಗರಾಜ್ ಅವರು ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುತ್ಥಳಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಫೋಟೋಗಳು ಕೂಡ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ MP ಕೂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದಂತ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಕರಿಬೇಡಿ ಕೂಡ ಅಂತೇಳಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ವಿಚಾರ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜನರಲ್ ಶಾಸಕರು, ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಶಾಸಕರು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವಂತ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿ ಇದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವ್ದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದೇನೋ ನನಗೆ ಭಯ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಪ Z ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. Z ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದವರು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನಮ್ದೇನು ಯಾವ ತರದ ತಕರಾರು ಕೂಡ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಜೆಪಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಸಂಪತ್ತು ಭರಿತವಾದಂತಹ ಬಳ್ಳಾರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಇದನ್ನ ಗೌರವನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬಂದು ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, DHO ಕೇಳಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ತೆಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ನನಗಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ಗಳು ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ 2 ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಗುಂತದ ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ತಿರ್ಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಡೀತಾ, ಇಲ್ಲ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಿದ್ದ, ಏನು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ್ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರನೇ ಮಾಡಿಸ್ದ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪು, ಬ್ಯಾನರ್ ಹರಿಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಬಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಪ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಒಬ್ರು ಏನೇ ಎಷ್ಟು ಲೋಲೋಕೆ ಇದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೀತು, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿಗೂ ಏನಿತ್ತು, ನಮಗೂ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೂ ಏನ್ ನಡೀತು, ನಮಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಅದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಬೆಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಘನತೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಏನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು, ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಯಲಲಿತಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಸ್ಪಾಟ್ ಅದು ಯಾವ್ದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಟಿವಿಗೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನೆ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬುಲೆಟ್ ನ ಮಾಜರ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಆ ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ತಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಮೈಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟೇ ಇದೆ, ಅದೇನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪುತ್ಥಳಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಗೌರವದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಈಗ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಹೋಮ ನಡೆದಿದೆ. 27ನೇ ತಾರೀಕು ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ 25 ಓಕೆ 29ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಹಳ ಕುಂಭಮೇಳದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನ ಪಾಪ ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು, ಈ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಬಂತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲೂ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೇರ್ಕೊಂಡ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ
ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಯಾರು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಮುಂದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಟ್ತಾರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ ಕಟ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಆಸ್ತಿ. ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದೆ, ಯಾರಿಗೋ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿಗೋ ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೋ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಈ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾರೆ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲುತ್ತವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಅವರೇ ಕೈ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಖಂಡತ್ವದಲ್ಲೇ ಇದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಇದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳ ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬ್ಯಾರಲ್ಲು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೇಳ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಬೇಕು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸನ ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MLA ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, MP ಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇಬ್ರು ಸೇರಿ 5 ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 5 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರೀರಾಮುಲುಗೆ ಇಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗನ್ಮೆನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇವರು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗನ್ಮೆನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥ ಜನ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿನ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನ, ಮಾಜಿ MP-ನ ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಬಿಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ
ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಯಾರು ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ಇರಬಾರ್ದು, ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ MLA ಇದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅವರ ಊರಿನ ಗೌರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ನಮಗೂ ಕ್ಷೇಮ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ, ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಕ್ಷೇಮ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೇಕು. ಏನು ಸುಮಾರು 8 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಜನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ, ಲಾರಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.